Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, oh, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more Crazy Coins with Kunal. हाय गाइस, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील. तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे. बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन
एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे? याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं. जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्सपेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंट साठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे. पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल. तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून ह्या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईल मध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जी या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. Blockchains have a bridge problem and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests
and holding a lot of currency, and unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो की इस क्रेजी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है मिलेनियल्स पे चढ़ा क्रिप्टो का क्रेज। तो दोस्तों, हर सेंचुरी के दौरान टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव होते हुए देखा गया है। जैसे कि 20वीं सेंचुरी में इंटरनेट एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसने पूरी जनरेशन को बदल कर रख दिया। ठीक उसी तरह 21वीं सेंचुरी में ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी से आई बदलाव की लहर यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा क्रिप्टो की माला जभी नहीं रही है, बल्कि उसे अपनाकर मुनाफा भी कमा रही है। यह बात सच है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कई तरह के रिस्क और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज से भरे हुए हैं, लेकिन इसका अट्रैक्शन ऐसा है कि इन सब के बावजूद लोग चाहकर भी इसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। महज बातों में नहीं, बल्कि चलिए इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स की तरह नजर घुमाते हैं। जहां इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक को 1 करोड़ क्लाइंट्स के अकाउंट तक पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता था, वही वजीरेक्स और कॉइन डिसेक्स ने देखते ही देखते लगभग 4 साल से भी अधिक 1 करोड़ क्लाइंट्स का आंकड़ा अपने नाम कर लिया है। जबकि कॉइनसेज कुबेर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 1 साल में भी 1 करोड़ के क्लाइंट्स को खुद से जोड़ लिया। इंडिया के बाद अगर बात इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है तो चीजें यहां भी बेहद चौंकाने वाली है। फॉरेन में 45% यंग जनरेशन यानी 18 to 35 वर्ष के लोग क्रिप्टो को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करना पसंद से लेकर उन मर्चेंट को भी ट्रस्ट करते हैं जिनके द्वारा क्रिप्टो को ऑफर किया जाता है। वही दूसरी तरफ सर्वे में शामिल 18 से 35 वर्ष के लगभग 40% लोगों का कहना है कि आने वाले साल में गुड्स एंड सर्विसेज के भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखते हुए 42% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने कहा कि उन्होंने 2020 में एप्पल पे या गूगल पे जैसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके फियाट में पेमेंट किया था, जबकि 21% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने बताया कि उन्होंने बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन को भी अपनाया था। अब 18 से 35 वर्ष के लड़के और लड़कियों के बीच कौन कितने परसेंट आने वाले 12 महीनों में किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, चलिए आपको बताते हैं। जहां 24% लड़के हमेशा क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, वहीं सिर्फ 11% लड़कियों ने अपनी हामी भरी है। दूसरी तरफ जहां 33% लड़के काम के मामले में क्रिप्टो का ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, वहीं 28% लड़कियों ने भी इसे चुना है। हालांकि 43% लड़के और 61% लड़कियां इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनके अलावा बात करें इन्वेस्टोपीडिया द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे की, तो अमेरिका में मौजूद 28% मिलेनियल्स का कहना है कि वो क्रिप्टो को अपने रिटायरमेंट को सपोर्ट करने के रूप में देख रहे हैं। यह आंकड़ा उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है जिन्होंने कहा था कि वो बचत 25% और स्टॉक इन्वेस्टमेंट 27% का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां लोग क्रिप्टो के नाम से डरा करते थे, कई इसे सट्टे तक का नाम दिया करते थे, उनका अब पिछले 2 साल में क्रिप्टो की दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल चुका है, जिसकी वजह तेजी से आई इस दुनिया में आया हुआ उछाल है। खास करके हमारी न्यू जनरेशन बड़ी संख्या में क्रिप्टो पर अपना भरोसा जमा रहा है, जबकि पुराने जनरेशन से कई इसे रिटायरमेंट के लिए सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आसमान में इतना न उड़ते उड़ते आगे निकल जाए कि अपना वापस लौटना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ जो क्रिप्टो को रिटायरमेंट के रूप में देख रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से अपना फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो की इस तेजी से आगे बदल रही दुनिया से आपको दूर रहना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन टेक्नोलॉजी की इस रेस में बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी दिलचस्प जानकारी को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis
and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello everyone, you're watching your favorite series, Crypto Masters, where masters of the game are giving us a guided tour of the entire crypto ecosystem. And today we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak, who is a blockchain enthusiast, a blockchain expert, and a certified international blockchain advisor. Welcome Ajay, welcome to Crypto Masters. Thank you, Vinita. Thanks a lot. I'm so happy to be here. But I must also admit that I cannot certify myself, or I cannot claim the title of being a master. I am a very humble student of this technology. This technology is evolving so much. It is implicating itself in so much various use cases and other things that every day that I learn about it, I am really, it's an awesome industry, and it really inspires so much of an awe inside me. So I'm still learning, and I'm happy to help others who want to learning, and that's what I currently do a little bit. We are very, very happy to share with our viewers that you are really an expert in your domain of knowledge, which is none other than blockchain. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? Right. So whenever there is a path-breaking technology which comes into the foray, like we can compare this with the first time internet came into the foray. It takes people to, get adjusted to it, to understand it, and see how it can be, applied to different processes that we are entailing into. If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. But then you take a deeper dive into it, and you will see that what it is actually trying to do is it is trying to rewrite the history by the way we are writing our ledgers. Nothing else. Okay. So it's a fundamental shift from having a trusted centralized third party who used to keep our ledgers, and we are replacing the trust factor into the ledger keeping from a trusted central third party to cryptographic proof of transactions. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. So it is kind of enabling people like you and me, saying that, well, we can do our things ourselves. And it's a very honest, trusted system, and mathematics is governing us. Yes. So that's basically at the fundamental level what it is trying to do. Well, you certainly mentioned about cryptographic proof of transaction. Would you like to elaborate on this? Okay, so what is happening basically, we human beings are transacting in nature. Yes. Our society is transactional in Yes, nature, yes, right? yes. So there's a lot of transactions which happens. Now, all these transactions which happen between people needs to be recorded somewhere. True. And that's where the ledgers are for. Yes. Now, if I keep my ledger and you keep your ledger about some transaction that we may have entered, let's say 20 years back, Right. and I have my version of it and you have your version of it, Yes, and yes. today, if we are trying to match our versions, nobody knows which one is true, correct? Exactly. So that's a problem. So to eradicate that problem, what we did is that we said that, okay, there is a third party between us. Now, we are first and second party to the transaction. Now, there is a third party to us. Whenever we are transacting the first time, let's say that 20 years back, we both will approach the third party and say that, please record my transaction. You will say, please record my transactions. We Yes, both will get. indeed. Now, 20 years later, if we are having that dispute, we both will again approach that guy Right. saying that, okay, which one is correct? Then he will say, okay, Vinita, you are correct, Ajoy is wrong. And his, word becomes final because he is the person who is deemed to be the single source of truth. Basically, he's sort of Right. our trusted third party. Trusted third party. That's the concept. Now, what is happening with blockchain is whenever we are transacting, we are basically generating an immutable proof of the transaction, which can never be hacked, which can never be changed. Okay. And that is what is cryptography enabling us to do. All right. Right? Now, suddenly, we don't need that third guy. So, when we are transacting, we are generating a cryptographic proof of that.
and we are putting it into a digital ledger. Okay. We are storing it, and that is being shared with everyone. So everyone knows about that transaction. Okay. So if 20 years later we visit that transaction saying which one is correct or which one is wrong, they will pull up, my claim of my ledger Right. will be hashed again and matched with that record which is 20 years back. Right. And your claim will also be hashed and matched with that record. So there seems to whosoever's- be a yes. sort of a time stamping to the records that Yes, there's a time stamping, there is an cryptographic hash algorithm, creation, transaction hashing, and all these things. The basic idea is that if all transactions are known within the society, Right. then and everybody agrees that this is the sequence of the transactions which has happened, then basically trying to change it or trying to rephrase it or trying to represent it in a willful manner is just not possible. So basically, there won't be any corruption in the system. There won't be any corruption in the system. There won't be somebody, the central trusted third party, he can change those records as per his wills. Exactly. He's a human. Yes. Or he could also, erringly introduce some human errors into the system. Right, right. In a digital system, that's not going to happen. Absolutely. Right? So these are some of the advantages of blockchain technology, and this is creating a shared trusted ledger which is hack proof, Okay. immutable in nature, and it's digital. Everybody can go and see it at any point of time. It is up to dated all the point of time, Okay. because that is and it acts as a single source of history for all the transactions that we are Yeah, keeping. because it's an automatic process. That's It's an right. automation, right? That's correct. That's absolutely correct. Great, great. So that is what is happening with blockchain, and we believe that it is such a powerful concept that it is going to be adopted by each and everyone eventually. The adoption feel rate so. is growing. You are hearing all this buzz. Exactly. And it's going to fundamentally change the way we do things. So what makes blockchain technology suddenly so popular? Okay. Quite an interesting question to ask. I think the entire story of blockchain and its social placement into our lives got painted a bit, it got painted in a way. We can't change history, really. And if Right. you look at how blockchain came into existence and the most popular use cases or applications of blockchain, the only thing which comes to mind is Bitcoin. So blockchain got introduced into the system with Bitcoin, and cryptocurrency is something which, stole the show, because it was the first application of blockchain, and it kind of held the hand of blockchain and brought it into the fore, and it introduced it to the world, and the world was like, wow, this is something which is Right, great. right. But The mysterious Satoshi Nakamoto. the mysterious Satoshi Nakamoto and the mysterious Bitcoin. Yes. But I must add to this that cryptocurrency is just an application of blockchain. Yes. Blockchain has got many advantages worldwide, but it still gets referred to as cryptocurrencies and things like that. So cryptocurrencies currently is stealing the show. You know what I mean? They're the limelight kind of a thing. Right. And the popularity what blockchain enjoys is a little bit about the kind of the kind of price movements that we have seen recently in the cryptocurrency markets and other things. Okay, I'm not taking anything away from cryptocurrencies. Cryptocurrencies are in themselves quite a wonderful thing. But I think blockchain is a wider concept. Distributed ledger technology is a much wider concept. It is a much more applicable concept. And blockchains can function without cryptocurrencies also. And we have seen Okay. that. There could be enterprise blockchains, permission networks, which give you similar kind of an efficiency into the system without using cryptocurrencies. Wow. So can you give us some real life use cases of blockchain which is apart from cryptocurrencies? Oh, wonderful. Yes, there are a lot of use cases, and even the moment that we talk about, people are picking up cases from the business world and trying and researching and seeing that how could it be, changed, how benefits Right. could be brought into anything. So, Vinita, let me touch upon a point which is very much closer to your profession, and you're an expert, so that you'd be
understanding the context of it. So we know, the media and entertainment industry. Yes. So Vinita, let me just ask you, you're from the media industry, Yes, right? So yes. it's, it and throughout. Tell me, do you understand IP infringement problems with the media industry? Very much. In fact, the media industry today has been rigged with intellectual property infringements, and we are looking for a savior. Do you think blockchain technology can actually create a very, very conducive ecosystem Absolutely. for That- everyone to thrive? Absolutely correct. The immutable ledger which is getting created, that environment could really drastically decrease the IP infringement thing. I'll Okay. try and explain you how it happens. Yeah. So in the media industry, if you ask me, I could perhaps foresee three distinct advantages. Okay. First is decreasing IP infringements. Okay. Second thing which I see is disintermediation. Okay. By disintermediation, I mean that we users pay a huge amount of money, Yes. whereas you content creators, you get so little amount of money. So true. Correct? So true. So, as per some of the industry reports, I think only about 12% of what the industry spend, the consumer spend, gets to the content creators. Okay. About 88% is lost in the intermediation part of it. You mean to say the middleman takes the entire chunk away? Yes, that's a huge distribution Yes. system, content creation, processing, distribution, and other things. Yes. So the actual content creator gets only about 12% of it. Okay. Now, I am not against intermediation, because intermediation does add a lot of value. Okay, but then how much of an value is added? Exactly. So once an original content is prepared, Okay. by distribution and other things, maybe 5%, 10%, 12%, 15%, Yes. at the best 20%. Right. So the content creator, whatever he or she is receiving, should be 80% of the value. The person who's originating some idea or a thought or a creator, He should be properly rewarded. yes, he or she hardly gets the due revenue or even, let's say, the remuneration that they deserve. I mean, it's so I see, sad. I'm touching a nerve over there. You actually, you triggered something, and I was very, very excited to ask you that how can blockchain simplify the entire media ecosystem? So, blockchain, happens on a peer-to-peer network. Okay. Right? Yes. It's a peer-to-peer network, means the creators can directly communicate with the users, actual Right, users. right. Correct? Now, you create some content. Let's say you create an NFT, a non-fungible token with your content. And you create a smart contract in between which says that anybody who is using my content has to pay me this much Okay. whenever he uses it. So whenever I go as a user and click that particular NFT so as to watch it. Okay. Okay, maybe you have put up some content over there and I want to Alright. watch it. Okay. Every time I watch it, there will be a smart contract which will be asking me, in case you want to watch it, you'll have to pay, let's say, 0.002 ethers. Okay. Okay. So every time a viewer wants to watch the content of any creator, Right. so a smart contract becomes that bridge between the two, the artist and also The user. the user, the viewer. Yes. And that becomes sort of a building block, if I'm not wrong. So that becomes the chain of the blocks. Oh, wow. Okay. Now, then I pay, it goes directly to your wallet. I get to watch and I pay very little, kind of a metered revenue. Now, let's say, for example, I have Netflix with me. Right. Last 1 month in my life had been very hectic. I have not been able to watch Netflix. Okay. And today's morning, I get a message that, 1 month's subscription fee has been deducted. Yeah. True. I haven't even watched it and I'm still having to pay for it. That means this But if the- intermediaries, they're just That's right. So taking it all away. if this is kind of on a P2P network and I need to watch your movies or any other thing, I make a direct payment and I watch it. right. Maybe you do not want, you do not have the skills of kind of post-production or distribution and any other thing. Right. So you can choose that which platform to go and subscribe to and things like that. It still Right. remains kind of an, it takes into the intermediation part of it, whichever is value adding. So Okay. you do not lose control over your content entirely. Okay. And the value adders,
you can compensate them from whatever you are receiving as royalty payments from all these micro payments that you're getting from the users. Okay. So all this thing is happening in the digital kind of a thing. It's helping you with disintermediation. Okay. It is much more remunerative to you. Absolutely. It is much less costly to me as an user. Yes, because it's direct. Right. So Yeah. all these efficiencies could be built. Okay. And we could really have a much more vibrant media industry with content creators having full right of their intellectual property rights, IP rights, and control over their own content. Wow, that is such an essential topic that you touched upon, and I'm sure many of our viewers and many of the artists who are out there and who are actually seeking out to create new ideas, new stories, new proposals or concepts, they would be actually seeking the blockchain technology Yes, in order to improve their I think your industry already has some of the Revenue. pioneers in Amitabh Bachchan and Salman Khan. exactly They're doing those are the something news. they're doing something on NFT platforms. They're creating their own content. I think Amitabh Bachchan, he's put up his father's contents on an NFT Yes. platform and things like that. So all these things are happening as we are So talking. how does this NFT platform help all these creators? So NFT is non-fungible token. Okay. By fungibility, we mean basically, let's say for example, same thing which has got, which can be replicable. Right. That's fungibility. Okay. Right. I mean, we need our money to be fungible because, just one note cannot satisfy the needs of everyone. True. Right? Yeah. So we should be having multiple copies of that note. So multiple $10 bills, multiple $20 bills and things like that, or multiple 10 rupee notes or 20 rupee notes. Whereas in non-fungibility comes in this particular space, which is like arts, media, music, and all these things. Okay. So you have got unique contents. Okay. Yes. And it is not replicable. So you create an NFT out of it. All right. So you create a non-fungible token out of it. And tokenization, it gives you the benefit of basically putting your content onto the digital platform, addressing a wider audience, and you can break it down to such small portions that everybody could afford it. The affordability also goes up. Would you like to explain this in details? Correct. So let's say, for example, one Bitcoin. Okay. What is one Bitcoin's worth today? It's about 40 lakh rupees. Now, 40 lakh rupees could be a huge amount of money. Wherever, there are 100 million parts of a Bitcoin is possible. Yes. 10 to the power 8. Yes. So that's called a Satoshi. So now let's say, for example, we create an NFT of 1 crore and we create 100 million tokens of it, NFTs, one single NFTs. So those subdivisions could be then distributed, and people could really invest into that with smaller sums of money, with a wider reach. It's kind of embracing the pyramiding structure of it, empowering the masses Right. to participate with smaller amounts of money and becoming owners of that particular NFT. Okay. That's but also how possible. does NFT actually benefit a creator, if you'd like to So highlight? let's say, for example, you have an NFT over there. Yes. Okay. It cannot be replicated and things like that. True. So, and you enable a royalty payment smart contract in between, Okay. enabling a micropayments. Correct? All right. So whenever, let's say today, tomorrow, 20 years later, if somebody wants to use your content, they will be actually, when they are downloading your content for a particular view or things like that, that smart contract, which is an automated contract in between, self-executing one, it will be triggering a payment into your wallet. So that thing will keep on happening. You don't need to monitor it. You don't have any counterparty risk associated with it. And once you have created a content and put it on an NFT platform, you keep on, using it. So basically, now, one more thing you can do is basically you can create a content and you can auction it. okay. Okay. So NFT platforms also give you the chance of auctioning your contents All right. on an e-auction platform kind of a thing. Okay. And then the new user will enjoy the same royalty benefits which a content creator was actually enjoying. So you can basically monetize upfront or keep on monetizing over a long period of time. Both the options are there for you. Do whatever you want to. That's amazing. So an artist will not be deprived of his or her royalty, which is a huge, huge benefit. Absolutely, and I think that's the
things should be that way. Exactly. You know, I mean, original content and things should be appreciated and should be rewarded, so that So the true. creativity keeps on happening. You know, I mean, it takes dimensions, and I think that's a better world for each one of us. Well, that was an excellent thought. And with that thought, I would like to ask you, what do you think the future of blockchain technology in the media industry can be? Obviously, as I said, that we could see much more creator-controlled platforms coming up, Okay. wherein creators upload their own content, and users directly pay the creators to, watch the content Right. for, let's say, 1 time or 2 times if they like it much better. You get better traffic flow. You get actual use. You get to know much better data can be generated. And even the quality of these content will improve, right? Because Yeah, now you definitely. know what the users actually like. Right. And now you'll be actually evaluated and not manipulated. Kind of, yes. So basically, the feedback system becomes much more direct, Absolutely. right? So you create 10 contents of 10 different flavors, put it up, and then if you find that, okay, one of my content is gaining popularity, it is having, people visiting that over and over again, Right. then you know that, okay, this is something which, the mass is liking. So you can create more of that. So your effort will then become channelized, concentrated, and you'll take a deeper dive and explore more creative ideas with that kind of interaction and things like that. So it's going to improve everybody's life overall, I believe. And see, I mean, the larger concept today, we are talking of the fourth industrial revolution, whereas the cybernetic processes and the social processes are kind of merging together. True. Correct? Yes. So we are talking about Internet of Things, we are talking about artificial intelligence, machine learning, and all these things, robotics. And even the metaverse. Yes, and all these things, all this cyber social ecosystem that we are talking about, or Correct. the metaverse that we are talking about, Yes, yes. is basically going to be very fast-paced transactions between elements, not only human beings but also things, Yes. right? Yes. And this needs to be digitally recorded somewhere, and in distributed consensus model within blockchain technology or any other distributed ledger technology could actually support this kind of an revolution coming forward. So we are in for exciting times. Yes, yes, yes. I do not know how this will unfold into the futures. I cannot tell it now. But like what Morpheus told to Neo in the Matrix, I can give you the red pill, I can give you the blue pill, and I can welcome you to the world of Matrix. You have to come through the door, see yourself, and enjoy it. So that's it. Well, that was an excellent insight into the world of blockchain and how it's going to actually metamorphosize our lives. So we're extremely excited to have you, Ajay, with us. And thank you so much for your time and the quality of talks that you have given us. Well, we are really, really excited to have you more with us Thank you. very often. Thank you, Vinita. The pleasure is all mine. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much, Ajay. And thank you, viewers, for joining us in this episode of Crypto Masters. As you just heard, some amazing thoughts and amazing concepts. We are going to bring to you these kind of concepts. So keep watching your favorite channel, Crypto TV. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge.
let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. I'm really happy when this report was recently published. So now people can refer to this report and make their business cases. Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. And our second guest is Tom Lyons. We have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble, and we also wanted to do some original research in that direction. बारह साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। इनफैक्ट इस करंट एज ग्रुप में भी हम में से बहुत से हैं जो क्रिप्टो या एनएफटीज की एबीसी तक नहीं जानते। ऐसे में हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कुछ ऐसे होशियार बच्चे जो टीनेज हिट करने से पहले ही मिलियनेयर बन गए हैं। जी हाँ, जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। हैरानी की बात तो ये है कि बेन्यामिन ने ये कमाई एनएफटीज के जरिए क्रिप्टो में की है। क्रिप्टो पंक्स की तर्ज पर बने ये वियर्ड वेल कैरेक्टर्स तो आपने देखे ही होंगे। दरअसल इन फेमस वियर्ड वेल्स एनएफटी के पीछे का असल चेहरा है बेन्यामिन। जी हाँ, 8th क्लास में पढ़ने वाले बेन्यामिन ने ही क्रिएट की है ये पिक्सेलेटेड वेल्स जो रातों रात सुपर डुपर हिट हो गई, और वो भी इस कदर कि बेन्यामिन का क्रिप्टो वॉलेट करीब $1 मिलियन के साथ लबालब हो गया, और वो भी 1 साल से कम वक्त में। Isn't that just crazy? है ना? अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भला वीडियो गेम खेलने की उम्र में ऐसी क्रिएटिव एनिमेटेड इमेजेस क्रिएट करने का आइडिया और उनकी एनएफटीज बनाने की नॉलेज इसे कहां से मिली? तो हुआ कुछ ऐसा कि बेन्यामिन के फादर के एक फ्रेंड जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रामर है, उन्होंने $27,000 में एक रेयर पेपे इमेज खरीदी। बेशक उस वक्त हर कोई उन्हें हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि भला एक जेपेग पर कोई इतनी भारी रकम क्यों बर्बाद करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने उसी इमेज को $500,000 पर बेचकर तमाम हंसने वालों को करारा जवाब दिया। खैर, ये किस्सा बेन्यामिन के दिलो दिमाग में घर कर गया कि एक जेपेग इतनी कीमती साबित हो सकती है। जाहिर है एनएफटी अवतार्स की तरफ बेन्यामिन का ध्यान खिंचा, जहां क्रिप्टो पंक्स ऑलरेडी करोड़ों में कमाई कर रहे थे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बेन्यामिन 5 साल की उम्र से कोडिंग सीख रहा है, लेकिन एनएफटी की इस दुनिया को करीब से जानने और समझने के लिए बेन्यामिन ने दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करना सीखा। फिर काफी सोच विचार के बाद बेन्यामिन ने वियर्ड वेल कैरेक्टर डिजाइन किया। वैसे वेल का कैरेक्टर चूज करने के पीछे भी एक वजह है। जिन रईसों के पास 1000 बिटकॉइन से ज्यादा होते हैं उन्हें वेल कहा जाता है। इसीलिए बेन्यामिन ने इस कार्टूनिश और पिक्सेलेटेड वेल कैरेक्टर के जरिए खुद क्रिप्टो वेल बनने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बेन्यामिन ने जून 2021 में पहली वियर्ड वेल रिलीज की और एक ट्वीट के थ्रेड के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की। मजे की बात तो यह है कि उनकी पोस्ट वायरल हो गई और वो एनएफटी यूनिवर्स में सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी बन गए। बेन्यामिन की कामयाबी का आलम अब यह है कि वो ऐसे डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो मार्वल और डिज्नी के लिए काम करते हैं। बेन्यामिन की इस कलेक्शन में 3350 वेल्स हैं, जिनमें से कुछ ने बेसबॉल कैप या स्वेट बैंड्स पहने हैं, कुछ सिगार के मजे ले रही हैं, तो कुछ हैट फ्लॉन्ट कर रही हैं। बेन्यामिन के पास इस कलेक्शन का डिजिटल कॉपीराइट भी है और इनमें से कुछ तो $20,000 तक में बिकी हैं। बेन्यामिन ने अब तक जितनी वेल कलेक्शन पर काम किया है उनकी टोटल ट्रेडेड कलेक्शन है $5 मिलियन, जिसमें से करीब $1 मिलियन बेन्यामिन के वॉलेट में है। अब तक बेन्यामिन ने अपने वॉलेट में मौजूद क्रिप्टो को फियाट करेंसी में कन्वर्ट नहीं किया है और ना ही इसे कन्वर्ट करने का उनका कोई इरादा है। इनफैक्ट बेन्यामिन के पास तो कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। खैर, बेन्यामिन का मानना है कि क्रिप्टो की वैल्यू आसमान छुएगी, इसीलिए फिलहाल अपनी इस क्रिप्टो दौलत को छूना भी नहीं चाहते और वक्त के साथ इसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल कैरेक्टर डिजाइन करने से लेकर इनकी एनएफटीज बेचने तक बेन्यामिन ने सब कुछ बहुत चुपचाप और सीक्रेटली किया। इनफैक्ट उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को तो तब पता चला जब बेन्यामिन की सक्सेस स्टोरी ने सुर्खियां बटोरी। बेन्यामिन को इस बात की खुशी है कि उनकी फैमिली उन पर गर्व महसूस करती है और खास तौर पर उनके बीमार ग्रैंडफादर को बेन्यामिन की मीडिया कवरेज देखकर बहुत खुशी हुई। 12 साल की छोटी सी उम्र में बेन्यामिन ने जिंदगी का फलसफा सीख लिया है, जो ये मानते हैं कि असल खुशी दौलत से नहीं बल्कि फैमिली के साथ बिताए ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स से मिलती है। थी ना दिलचस्प कहानी? वेल, ऐसी ही कई और यंग एनएफटी मिलियनेयर की कहानियां मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। हैव अ ग्रेट डे। Today we are going to discuss metaverse in details, and today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar. Metaverse is the 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. We can see the lot of development of the metaverse in upcoming time. नमस्कार, मी वैभवी सावंत पुन्हा एकदा आपला शो क्रिप्टोची गपशप मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। तर मित्रांनो, मागील एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेतलं की स्टेबल कॉइन म्हणजे काय, ते कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचे प्रकार कोणते। तर आज आपण चर्चा करणार आहोत टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। त्या अगोदर आपल्या माहितीसाठी रशियाने युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी आपली लढाई तीव्र करत असतानाच क्रिप्टोकरन्सीची किंमत ग्रो होताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे एकूण क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप हे $2 ट्रिलियन ओलांडले आहे। आता पाहूयात टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। तर सर्वात प्रथम स्टेबल कॉइन आहे तेथर। तेथर हे 2014 मध्ये रिअल कॉइन म्हणून लॉन्च केलेले पहिले स्टेबल कॉइन होते। तेथर हे क्रिप्टो मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टेबल कॉइन आहे, ज्याचे एकूण मार्केट कॅप $77.5 बिलियन एवढे आहे। तेथर 428 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांना वापरण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात उपलब्ध असलेले स्टेबल कॉइन म्हणून ओळखलं जातं। तेथरची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि मार्केट लीडरचा दर्जा असूनही वारंवार होणाऱ्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमुळे आणि ऑडिट नाकारल्यामुळे तेथरला बऱ्याच लीगल सिक्युरिटीला समोर जावे लागत आहे। तेथरला $41 मिलियन एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि न्यूयॉर्कमध्ये सराव करण्यास बंदीही घातली गेली। जरी या निष्कर्षाचा तेथरच्या क्रिप्टो मार्केटमधील दैनंदिन कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरीही गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगून तेथरशी संपर्क केला आहे। दुसऱ्या क्रमांकावर आहे USD कॉइन म्हणजेच USDC। USDC कॉइन 2018 मध्ये कॉइन बेसद्वारे सादर केले गेले होते, जे जगातील पहिले पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज आहेत। USDC सध्या मार्केट कॅप नुसार दुसरा सर्वात मोठा स्टेबल कॉइन आहे। त्याचे मूल्य $42.1 बिलियन आहे। USDC 294 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहे आणि अधिक व्यापकपणे उपलब्ध आहे। दरम्यान फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि रेग्युलेटर सोबत सुद्धा USDC काम करत आहे। तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बायनान्स USD म्हणजेच BUSD। BUSD हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंज बायनान्सने 2019 मध्ये लॉन्च केले होते। मार्केट कॅप सह BUSD सध्या तिसऱ्या नंबरवर असून $14.3 बिलियन एवढे आहेत।
जे केवळ 103 एक्सचेंजवर उपलब्ध असून BUSD त्याच्या कॉम्पिटिटर पेक्षा लेस ॲसेसिबल आहे. BUSDच्या युजर्सना बायनान्सवर शून्य शुल्क ट्रेडिंग आणि कन्व्हर्शन प्रवेश मिळतो आणि त्याचे स्टेबल कॉइन्स लेंडिंग सर्व्हिसमध्ये जमा करू शकतात, ज्यात वार्षिक 15% पर्यंत उत्पन्न मिळतो. सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो तेव्हा गुंतवणूकदारही निश्चित राहू शकतात, कारण BUSD मासिक ऑडिट्स प्रकाशित करते आणि जे वॉल स्ट्रीट रेग्युलेटर्सनी मंजूर केलेल्या 3 स्टेबल कॉइन पैकी एक आहे. चौथ्या क्रमांकावर आहे टेरा USD म्हणजेच UST. टेरा हे ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क आहे जे लुना टोकनद्वारे गव्हर्न्ड डिसेंट्रलाइज अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइनचा सेट ऑफर करते. कॉइन मार्केट कॅपच्या डेटानुसार मार्चच्या सुरुवातीस लुना $90 खाली ट्रेड करत होता, परंतु 29 मार्च पहाटे आशिया वेळेनुसार लुना $106.14 चा नवीन सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. टेरा लुनाची भक्कम कामगिरी शक्यतो युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू करण्यासाठी रशियन सेनेने प्रवेश केल्यापासून जागतिक बाजारपेठेला घेरलेल्या अनसर्टनिटीतून येते. अखेरीस 5व्या क्रमांकावर आहे डाय. डाय हे सर्वात लोकप्रिय कोलॅटरलाइज स्टेबल कॉइन आहे आणि मार्केट कॅपनुसार एकूण 5व्या क्रमांकावर आहे. त्याचे मूल्य सध्या $9 बिलियन आहे. डाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि 221 वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर प्रवेश केला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चरली डाय इतर स्टेबल कॉइन पेक्षा कितीतरी जास्त तांत्रिक आहे. USDT सारख्या US डॉलर्सद्वारे थेट पाठिंबा मिळवण्याऐवजी डाय ETH सारख्या क्रिप्टो मालमत्ता लॉकअप करण्यासाठी आणि त्या कोलॅटरलवर आधारित टोकन तयार करण्यासाठी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरते. हे मेकर प्रोटोकॉलचे उत्पादन आहे जे इथेरियम ब्लॉकचेनवर चालते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला स्टेबल कॉइन बद्दल संपूर्ण माहितीही कळलीच असेल. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. क्रिप्टोची गपशप या शो मध्ये मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो TV. Death is significant and inevitable part of life. Thinking and talking about it may be considered dystopian.
However, when it comes to financial matter, it is best to anticipate the inevitable and take adequate precautions and make appropriate provisions. Tongzo, a 33-year-old, lost his life savings after vesting his funds with a cryptocurrency trader who died, taking the password to access funds to the grave. Zoe is among the thousands of customers left in lurch after following Gerald Jerry Cotton's mysterious death in 2018 at an age of 30, leaving $150 million worth of crypto assets in limbo. Zoe trusted Quadriga CX, Canadian largest cryptocurrency exchange, with $500,000. A big chunk of it was given to him by his parents, but when co-founder Cotton died during a honeymoon in India, the money was lost forever. Investing in cryptocurrency is considered risky, and to die without detailing on how to access the savings for near and dear ones can be termed as irresponsible. This is Manoj Dara. You are watching a special show on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? There are plenty of examples of horror stories of people passing away without making a proper plan to bequeath their crypto holdings to their family. According to a study by Cremation Institute, nearly 90% of the crypto owners are worried about what will happen to their crypto after they pass away. As far as cryptocurrency is concerned, it's important to understand how to secure your cryptocurrencies and leave instructions with your loved ones for retrieving your financial assets after you die. There are a number of ways for crypto investors to bestow their crypto to the next generation. All crypto traders store their holdings either in hot wallets or cold wallets. Sharing keys with trusted family members is probably one of the most straightforward methods to pass on your cryptos. Some of the most prominent people in the crypto industry have publicly claimed to use this method to ensure their crypto fortunes get passed on to the next generation. Hal Finney, an earlier supporter of Bitcoin and recipient of the first Bitcoin transaction from BTC creator Satoshi Nakamoto, willed his crypto holdings to his children by simply providing his keys. This crypto inheritance practice of sharing the keys with the trusted family members is straightforward but may not be suitable for everyone in the crypto community. This way of bequeathing Bitcoin could also be considered risky, as shared keys come with the responsibility of keeping those assets secure. As far as hot wallets are concerned, major cryptocurrency exchanges from around the world allow the bereaved to gain access to the family members' assets after providing a number of documents, including a death certificate and a last will. There are also some projects that are dedicated to ensuring the inheritance of digital assets. For example, companies such as Safe Haven, CASA, and Trustverse are working on their own solutions that allow people to bequeath their crypto assets using blockchain technology and cryptography. Protecting our family and loved ones is every individual's top priority. So make sure you have a proper plan and a will in place so that even when you are not around, your crypto holdings are there to protect your family's financial future. We will leave you with a slice of conversation Crypto TV had with Mr. Jeetu Kataria, CEO DIFX, where he emphasized about a new nomination feature his exchange has introduced. The biggest tech what we have integrated just this month, and we went live with our architectural change, is the nomination program, wherein what we feel that we have seen lots of exchanges today. I won't name these exchanges, but they are sitting on billions and billions of dollars of crypto assets which are unclaimed, wherein the family members of these users who just gone, who died, they don't know how to get these assets. Today, within 6 months, we made this whole platform of DIFX nomination program, wherein you can nominate up to 5 family members, and if anything happens to you, automatically these all assets what you have on DIFX platform will automatically goes to your family members, and that's all is on blockchain. Everything what a user is putting in is recorded on the blockchain. So that's how tech and transparently we have shown to the world that how an exchange should run. Thank you so much for watching this special story on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? Please like, subscribe and share. Thank you. Today we are going to discuss Metaverse in details, and today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar. Metaverse is the 3D virtual reality of this world,
which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. We can see the lot of development of the metaverse in upcoming time. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies. These Axies are NFTs and their crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable. And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. 3D, 4D और यहाँ तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। रुचि, what's up with you? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। You are daydreaming? Yeah, I'm daydreaming. This is a crime. It is a crime। पर पता मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया। मैडम, आपकी मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आरटीओ वाले की पर्ची आई होगी। हाँ, क्योंकि मैं 80 से ऊपर चला रही थी। Very true. So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी सोच लिया, तो बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं। तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट मैंने अभी लिया, गुच्ची का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका। तो सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहां पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स। सो आज हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या-क्या things that are required. We have also understood that a crypto wallet बनाने के लिए KYC and basic simple चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना, अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज।
कीज? Yes, सिर्फ exactly. चाबी रहती है इसके अंदर? तो ये चाबी आपके घर की नहीं है. इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप यू कैन गेट इट बना देता बैक. चाबी वाला. But this is the key which you will lose. You will lose all your money. Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ. Public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address. That is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing, but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete, and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. हाँ बिल्कुल बताइए. मेरा ना दिमाग बहुत, तुम तो जानते ही हो, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें. तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ. तो अगर यही मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No. Because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. My God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं. जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टोकरेंसी. आई वांट टू नो दैट. सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट. सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स. सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेफ नहीं होंगे. सेफ नहीं है. इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम. एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड. और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक कंसर्न होता है हॉट वॉलेट्स में. तो मतलब हॉट वॉलेट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है. So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही इतना, मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point. देखा, I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ. तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं. यू कैन स्टोर इट. देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, एक्स एंड एक्स. तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर. एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन योर प्राइवेट की. यू हैव टू स्टोर इट, इन अ लॉकर. हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली. या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड. आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूं, मुझे ज्यादा इजी है. लिख लूंगी फिर रख लूंगी. Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए. हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं. तो उसके लिए एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मैं ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हम बताते हैं कि इट इज ऑलवेज सिक्योर टू कीप अ two-way authentication. One, it comes in your email. One, it comes as an OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, right? So how to keep it safe and secure, two-way authentication. There is always advisable to keep a two-way authentication. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? This is the most important aspect because hackers जो होते हैं वो बहुत smart होते हैं. They are organized criminals. So in fact they can get into your browser, they can steal your money easily and you will not even come to know. So it is most important that you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप
तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है. नेवर यू आर सपोज टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना ओटीपी किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. Extraordinary. So this was our tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर कैसा पासवर्ड बनाओ कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही strong पासवर्ड होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा, एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते ना, हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा, ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है. थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज कर सकती हूँ सिक्योर? Very valid point which you have raised, because that means you are thinking over how to double your investment. So it is always advisable not to use public Wi-Fi, because they can divert you to some of the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहां से आपका सारा डेटा उनके इजीली विद इन सेकंड्स आ सकता है. They can steal your money with a wink of an eye. Oh my God. And it's gone. That means it's gone forever. Nothing is safe. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, that is safe? Of course, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links, download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course. There are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid such attacks or cybercrime attacks, or maybe some hackers, they are really smart. As we have always telling, the hacker का एक बहुत बड़ा, हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also जिनका अभी जैसे DeFi के frauds बढ़ गए हैं, decentralized finance में लगभग 600% से ज्यादा उनका cyber crime बढ़ गया है. That means they have stolen roughly around $10.5 billion worth. चलो, मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मेरा फोन तो यूज कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. दैट इज सेफ. आपका फोन यूज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क, सो दैट सच एक्टिविटीज डजंट रिपीट. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट बेट. हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग that's a basic hygiene level which we maintain. If you are partying also, then definitely you have to ensure that you don't reveal your secrets, just like you are not supposed to reveal your cryptocurrencies. हाँ, बिल्कुल absolutely. अच्छा, कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, if I tell somebody, a friend, my brother, my sister to handle, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी, तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 2-वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको 2-वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसा लेके भी ऐसे ही भाग जाएंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. Thank you so much. आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली एक गुची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा.
Of course, that is something which you have. I mean, choices is Up yours, to me, huh? but definitely you have take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and Ruchi Sharma. thank you. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Good morning and a very warm welcome to all the viewers of 3.0 TV. I'm Vinita Chatterjee, leading you into the world of digital currencies. Crypto TV has rebranded itself as 3.0 TV to provide an all-round update to viewers and help broaden the understanding of the evolving digital segment, including cryptocurrencies, blockchain projects, metaverse, non-fungible tokens, cyber security, and several other related issues. So keep watching 3.0 TV for all things related to Web3 to keep abreast of all the ongoing happenings and transformation in the digital space. And here are the top trending stories. Cryptocurrencies trade mixed amid policy uncertainty, says a US economic data. FTX could acquire BlockFi for merely $15 million, says a report. Sepolia is the first Ethereum testnet to get a post-merge upgrade. CryptoPunks briefly flip Bored Apes as NFT prices continue to crater. Nike becomes world's highest earning brand from NFT sales. Former OpenSea employee accused of insider trading files motion to dismiss indictment. Crypto NFT collateralizing platform BendDAO attempts to avert liquidation. Samsung, among others, to launch crypto exchanges in 2023. NFT transactions to reach 40 million globally by 2027.
Cryptocurrencies consolidated after tumbling over the past few days as investors remained wary ahead of the Federal Reserve Chair Jerome Powell's speech later this week amid a flurry of US economic data. Bitcoin hovered near $21,300. US stocks, which are strongly correlated with the crypto market, extended their decline on Monday, with the tech-focused Nasdaq and S&P 500 both sinking over 2%, and the Dow Jones Industrial Average also falling nearly as much at close of trading. Investors expect Fed's Powell to deliver a hawkish speech at the Jackson Hole Symposium on Friday, amid expectations that the central bank will continue to ramp up rates, even if inflationary pressures abate, to stay ahead of the curve. Ahead of the Powell speech, private sector PMIs later today, core durable goods orders due on Wednesday, jobless claims and second quarter GDP, inflation data and personal spending figures will be in focus during this week. Disappointing US economic indicators will reignite fears of a US economic recession, while positive data released will fuel fears of a hawkish Fed Chair Powell speech. Bitcoin recently traded around $21,300, down 0.6% in the past 24 hours. Ether, the second biggest cryptocurrency, traded near $1,620, up nearly 1% in a similar time span. All other major altcoins traded mixed, though mostly lower. Sam Bankman-Fried-led FTX could buy troubled BlockFi for as low as $15 million, the minimum price offer made earlier, if the crypto lender failed to meet the laid-out performance targets, reports said. Among several options that BlockFi, which got a $400 million credit line from FTX, will have to fulfill includes performance targets around a winning SEC approval and more than doubling assets that boost the purchase price to $240 million. BlockFi would need to get US Securities and Exchange Commission approval for a yield product that would generate interest on depositors' crypto by lending the crypto out at a higher rate and also boost assets to at least $10 billion by the time FTX exercises its options to buy the company, reports said. Sepolia, an Ethereum test network chain, received the first post-merge update on any of the Ethereum proof-of-stake testnets on August 22nd at 3:01 UTC. The update was scheduled for August 17th, but it was delayed for 4 days to allow some offline validators to reconnect to the network. In preparation for the Ethereum merge, which is expected to take place in mid-September, a number of test networks or testnets have gone through the merge process and switched from proof of work to proof of stake. On July 6th, one of these testnets, Sepolia, successfully merged with its proof of stake beacon chain. The Sepolia testnet's execution layer, or EL, has upgraded at block 1735371. This caused EL clients to disconnect from any peers who had not switched to proof of stake, a process that helps Ethereum mainnet a healthy network. According to the Ethereum Foundation, the upgrade will not add any new functionality to the chain. On Monday, the CryptoPunk non-fungible tokens floor price briefly surpassed that of the rival blue chip collection Bored Ape Yacht Club, highlighting the battle for the top dog in the cooled-off NFT market. This flip didn't last long. By late morning New York time, Bored Apes had retaken the lead on trading platform OpenSea, where both collections' floors were hovering around 66 to 67 ethers, or around $104,000. The race to the bottom may not be over. Between cascading loan liquidations and recent declines in NFT trading volumes, both collections may continue to lose value before recovering. Nike topped the list of highest earning brands from NFT sales.
with sales of $185 million. Nike not only had 7 times the revenue of the next company on the list, but it also had over 67,000 transactions. Other athletics and fashion companies dominated the top 5 spots on the list. Dolce & Gabbana, Tiffany, and Gucci came in second and third, with total revenue of $25 million, $12 million, and $11 million respectively. Dolce & Gabbana has over 9,000 transactions. Gucci has nearly 4,000 transactions, and Tiffany has earned that amount from only 74 transactions. Adidas finished 5th with $10 million in total revenue, but the second highest number of transactions at over 51,000. Nate Cheston, the former product head at non-fungible token marketplace OpenSea, has asked a US court to dismiss insider trading charges involving the sale of NFTs on the popular platform from according to a motion filed early Monday. Filed in the United States District Court for the Southern District of New York, the motion argued that NFTs cannot be classified as securities or commodities, a requirement for wire fraud charges. His attorney also said that NFT transactions in question were processed on the Ethereum blockchain. Given the blockchain's open source nature and the public viewing availability, the lawyers argued the transactions could not have been used for money laundering. The DOJ has called Cheston's activities the first ever digital asset insider trading scheme. Well, those were the top trending stories. Keep watching your favorite channel, 3.0 TV. I'm Vinita Chatterjee, signing off. नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप कसालकर आणि क्रिप्टोच्या या दुनियेत आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, आतापर्यंत आपल्याला आपल्या क्रिप्टो टीव्हीच्या माध्यमातून NFT म्हणजे काय, NFT चे कोणते प्रकार आहेत, NFT ची संपूर्ण प्रोसेस काय आहे याबद्दल आपण जाणून घेतलं. पण आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण त्या क्रेझी NFTs बद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्याबद्दल तुम्ही नक्कीच कधी ऐकलं नसेल आणि कधी विचारही केला नसेल. तर चला मग एंटर करूया क्रेझी NFTच्या अजब गजब दुनियेत. जगातला सर्वात पहिला डिजिटल परफ्यूम ज्या प्राइसवर चांगले रिअल परफ्यूम विकत घेण्याची हिंमत करत नाहीत, त्या प्राइसवर बर्लिन मधील लुक्स लॅबची सायबर ऑड डे परफ्यूम विकलं गेलंय आणि तेही $18,000 मध्ये. वाव! या परफ्यूमची NFT एका अतिशय हुशार आणि जाणकार व्यक्तीने घेतली आहे, ज्याचा सुगंध घेण्यासाठी तो आता जीवनभर तरसणार आहे. सही आहे, NFT बनवणारे अजब आणि विकत घेणारे गजब. असो, अजूनही अशा बऱ्याच प्रकारची अतरंगी NFTs बाकी आहेत. आता तर NFTs मॅच मेकर सुद्धा बनली आहे. अहो, जसे हिंदी रीतिरिवाजांमध्ये भटजी हे लग्न पार पाडतात, ओम मंगलम भगवान विष्णू, आणि चर्च मध्ये प्रिस्ट, बस तोच रोल आता NFT करतोय. हो, सेंट फ्रान्सिस्कोचे पीटर आणि रेबेका यांनी चर्च मध्ये नाही तर ब्लॉकचेन वर लग्न केलंय. कारण पीटर आणि रेबेका दोघेही कॉइन बेस मध्ये डील करतात. तर त्यांची खास करून तबात नावाचा टोकन त्यांनी बनवलाय, ज्याचा ज्यूइश मध्ये अर्थ आहे रिंग्स, आणि त्याच्या मार्फत आपल्या रिंग्सला NFT बनवली आणि नंतर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या मदतीनं आपलं लग्न हे पार पाडलं.
दोघांनी एकमेकांना तबाट टोकन्स पाठवून आपली NFT रिंग्स एक्सचेंज केली आणि आता ते त्यांच्या क्रेझी लिटिल वर्ल्ड मध्ये आनंदाने राहत आहेत. काय मग कसं वाटतंय? मजा येते? असेच अतरंगी स्टोरीज ऐकून आता अतरंगी सोबत NFTs मध्ये सतरंगी गोष्टी सुद्धा घडतायत. मला सांगा, तुम्ही हा कलर घातलात कसा? हा तर माझा कलर आहे, माझ्याकडे याचे अधिकार आहेत, मी याची NFT विकत घेतली आहे. काय हडबडून गेलात? मित्रांनो, NFTच्या या अजब गजब दुनियेत आता रंग सुद्धा विकले जात आहेत. tzcolors.io नावाच्या वेबसाईटवर 1000 कलर्स आहेत आणि तुम्हाला जो कलर आवडेल तो तुम्ही विकत घेऊ शकता आणि नंतर तो कलर फक्त तुमचाच होणार आहे. येथे काही एक्झॉटिक कलर सुद्धा आहेत, जसे की वॅम्पायर ब्लॅक आणि YouTube रेड यामध्ये सुद्धा सामील आहेत. या रंगांना तुम्ही विकत घेऊन त्यानंतर प्रॉफिटसाठी ऑक्शन हाऊसवर सुद्धा विकू शकता. सुपर्ब ना? बघा, काही लीगल इश्यूज होऊ नये म्हणून मी अगोदर तुम्हाला सांगतोय की मी 9 आणि 103 नंबर विकत घेतलाय. त्यामुळे तुम्ही या नंबर्सला ब्लॉकचेनवर वापरू नका, नाहीतर खरं सांगतो मला तुमच्यावर नाईलाजाने केस करावी लागेल. अरे, मला समजत नाहीये की तुम्ही माझ्या प्रत्येक गोष्टींना का मस्करीत घेताय. तर मित्रांनो, आता तुम्ही तुमचा लक्की नंबर सुद्धा विकत घेऊ शकता, ज्यांना तुमच्याशिवाय ब्लॉकचेनवर कोणीही वापरू शकत नाही. वर्ल्ड NFTs मध्ये एक N प्रोजेक्ट आहे, ज्यामध्ये 8888 NFTs आहेत. येथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार 0 ते 14 या नंबर्स मधील कोणत्याही नंबरच्या कॉम्बिनेशनला विकत घेऊ शकता. यामधील प्रत्येक नंबर हा $4500 मध्ये उपलब्ध आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की सप्टेंबर 2021 मध्ये N प्रोजेक्टची मार्केट कॅपिटलायझेशन $40 मिलियन एवढी होती. कमाल आहे ना? म्हणजे ऍक्च्युअली अशी बरीच लोक आहेत की ज्यांना वाटतंय की ते कोणत्याही नंबरचे मालक होऊ शकतात. ग्रेट. मित्रांनो, शेवटी कुणीतरी आपल्या हाताच्या एका भागाची NFT अखेरीस बनवलीस. क्रोएशियन टेनिस प्लेयर ओलेक्सँड्रा ऑलिनकेव्हने स्पॉन्सरशिप मनी रेस करण्यासाठी आपल्या शरीरालाच डिजिटाइज करणं सुरू केलंय. त्याने आपल्या फोआर्मच्या एका भागाला NFT मध्ये विकून अक्षरशः $5000 कमवले आहेत. म्हणजे ज्यांनी कुणी या फोआर्मची NFT विकत घेतली आहे, तो आता 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर साईज मध्ये या भागावर कोणताही प्रकारचा टॅटू बनवू शकतो. अजब आहे रे बाबा ही दुनिया आणि गजब आहेत अशा NFTs. आता मी तुम्हाला अशा NFT बद्दल सांगणार आहे ज्याला ऐकून तुम्हाला डायरेक्टर रोहित शेट्टी आणि त्याच्या कार स्टंटची आठवण करून देईल. खरं तर स्टोम्स नावाच्या NFT आर्टिस्टने एक मोठी सरप्राईज प्लॅन केली. पहिले एक सेकंड हँड लॅम्बोर्गिनी हुराकान कार विकत घेतली. त्यानंतर एक एक्सप्लोसिव्ह एक्सपर्टच्या मदतीनं त्या कारचा स्फोट तर केलाच, पण त्याचा संपूर्ण व्हिडिओही बनवला आणि मग इंटरव्ह्यू मध्ये घोषणा केली की हे सर्व त्यांनी क्रिप्टो करन्सी इन्व्हेस्टरच्या गेट रिच क्विक माइंडस्ट या विरोधात एका प्रोटेस्टच्या स्वरूपात केलाय. श्लोमने त्या कारचे 999 जळलेल्या पीसेसची NFT बनवली आणि ते आता आपल्या कमाईची वाट बघतायत. त्यांना विश्वास आहे की ते या NFTच्या माध्यमातून $1 मिलियन तर नक्कीच कमवणार. हेच ते NFTचे विचित्र जग आहे, जिथे अशा अजब गजब टॅलेंटला दुनिया ही सलाम करते आणि अतरंगी NFTs वर क्रिप्टो ही खर्च करते. तर मित्रांनो, ही स्पेशल स्टोरी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर या स्टोरीला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर जरूर करा. आणि हो, कमेंट बॉक्स मध्ये आपल्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. अशाच प्रकारच्या माझ्या क्रेझी स्टोरीज पाहण्यासाठी क्रिप्टो टीव्हीला आजच लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. धन्यवाद. यस. ओह हाय. वो क्या है ना, मैं जरा गेमिंग में बिजी हो गई थी. क्या गेम है यार. वाओ, आई एम जस्ट ब्लोन अवे. Amazing graphics, attractive in-game features and ample opportunities to earn. Yes, खेलते खेलते कमाओ. और क्या चाहिए लाइफ में. अरे मैं गेमिंग के यूनिवर्स यानी मेटावर्स की बात कर रही हूँ, जिसका बज़ आजकल हर तरफ है. और हो भी क्यों ना, जो रेवेन्यू इन दिनों मेटावर्स क्रिएट कर रहा है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. एक तो गेमिंग का क्रेज और उस पर NFT की सुपर हिट कलेक्शन का रिकॉर्ड. ये एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसे हर कोई आजमाना चाहता है. नो वंडर 2021 में NFT गेमिंग ने
$5.17 बिलियन जनरेट किए थे, यानी 1.75 ट्रिलियन रुपीस। वाओ! इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में NFT गेमिंग ने ओवर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया, और ये तो महज साल की शुरुआत है। आगे आने वाले तमाम क्वार्टर्स की रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, ये बात तो तय है। यानी अब बात अरबों से खरबों तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप सोच रहे थे कि पेंट ब्रश उठाकर पीपल की तरह पेंटिंग बनाकर मिलियंस कमाएंगे, देन थिंक अगेन, बिकॉज़ NFT गेमिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ कई ज्यादा कमाने के चांसेस काफी ब्राइट है। ब्लॉकचेन गेमिंग ना सिर्फ तेजी से बढ़ रही है, बल्कि NFT स्पेस पर राज भी कर रही है। यकीन नहीं होता? अरे मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, पूरी रिसर्च करके आई हूँ। I will talk in numbers. 2022 की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक NFT की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 बिलियन से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि जितनी रियल जमीन नहीं बिक रही, उससे कहीं ज्यादा गेमिंग वर्ल्ड में वर्चुअल लैंड बिक रहा है। सोचिए, हम रियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, फिर लोन लेते हैं, और लोग वर्चुअल लैंड ले रहे हैं, वो भी फुल डाउन पेमेंट पर। मेटा मेट्रिक सॉल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वर्चुअल लैंड की सेल $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा जंप आया है। हांगकांग बेस्ड कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने जनवरी 2022 में करीब $5 बिलियन रेज किए हैं। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? यही नहीं, क्रिप्टोकिटीज डेवलपर डैपर लैब्स ने अपने NBA टॉप शॉट के प्रोजेक्ट के साथ अप्रैल 2022 में करीब $305 मिलियन की सेल की। वहीं पोकेमॉन से इंस्पायर्ड NFT बैटलिंग गेमिंग एक्सी इन्फिनिटी ने फरवरी 2022 में ओवर $4 बिलियन के साथ हाईएस्ट NFT सेल्स वॉल्यूम का रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है ये फिगर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेमिंग NFT इज द फ्यूचर। आई मीन, एंटरटेनमेंट और अर्निंग का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर पेरेंट्स ब्लॉकचेन पर गेमिंग खेलने पर डांटे, तो उन्हें जरा ये सक्सेस नंबर्स दिखा देना। आई एम श्योर फिर वो कहेंगे, अरे अरे खेलो खेलो, मन लगाकर खेलो, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बट बिफोर कंक्लूडिंग, लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर। NFT और ब्लॉकचेन गेमिंग क्रिप्टो वर्ल्ड का ही पार्ट है, जहां पर अक्सर बना रहता है डिजिटल लुटेरो यानी हैकर्स का खतरा। बात करें गेमिंग जायंट एक्सी इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म की, तो एट द एंड ऑफ मार्च 2022, ऑलमोस्ट क्लोज टू अप्रैल फूल डे, कुछ हैकर्स ने रॉनिन ब्रिज की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सी इन्फिनिटी से $625 मिलियन चुरा लिए, यानी करीब 4,750 करोड़ रुपीस की चोरी। अब वो बात अलग है कि एक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर स्काई मेविस और उनके बाइनेंस जैसे सपोर्टर्स की जेबें और उसमें रखी दौलत कुएं से भी गहरी है, इसीलिए उन्होंने गेमर्स की चोरी हुए पैसे रीइंबर्स करने का वादा किया है। So my advice is, before you start your blockchain and NFT gaming journey on any platform, make sure कि आप उस प्लेटफॉर्म का व्हाइट पेपर पढ़ें, पता लगाएं कि उसके डेवलपर्स और सपोर्टर्स कौन हैं। क्या उनके व्हाइट पेपर में इन द इवेंट ऑफ हैक आपके हार्ड अर्न्ड कैश को रीइंबर्स करने का क्लॉज है। ऑल्सो मेक श्योर आप नए सिंगल या लिमिटेड गेम्स वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, क्योंकि यू नेवर नो ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे या नहीं। बेहतर होगा आप रोबस्ट इकोसिस्टम वाले बिग प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें, थोड़ा धन कमाएं, फिर चाहे तो अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक यू कैन डैबल इन न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। So all the best, keep playing, keep earning and keep watching Crypto TV. Till then, this is Ruchi Sharma signing off. Have a great day. वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी।
mind. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some racks to build it with stacks, because I know the stats and a hodler say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history, and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal. Cryptocurrency is a new notion, and it's difficult to grasp in a society where actual goods have long had exchangeable value. Cryptocurrency is the future of online payment, and we say this confidently because millions of cloud services and e-commerce websites already accept Bitcoin and other cryptocurrencies as a payment mode. You can buy a luxury car in Singapore and other countries, and real estate properties in El Salvador, United States of America, and many other nations with cryptocurrencies. In India, the government has recently taxed profits from cryptos at 30%, which is an indicator that crypto transactions have a future in the Indian markets. However, these businesses need to integrate a crypto payment gateway to accept Bitcoins or other cryptocurrencies on their websites or app. There are many crypto payment providers, but most of them do not fit the Indian market. This video will provide you with all the information related to crypto payments along with some of the best crypto gateway services in India. I am Manoj Dara and you are watching this special segment on what is cryptocurrency payment gateway. A cryptocurrency payment gateway, like payment processors, gateway, and acquiring bank credit cards, is a payment processor for digital currencies. It allows you to accept cryptocurrency as a mode of payment for your goods and services. It can be integrated on your website, mobile app, or to receive a payment via a link. Every payment you make online is processed through a payment gateway like C-Avenue, Razorpay, etc. These payment gateways provide payment modes like credit card, debit cards, and net banking. On the contrary, crypto gateway receive payments from buyers' crypto wallets and deposit it in the seller's crypto wallet. The crypto payment processor also converts and deposits fiat currency directly in the vendor's bank account after deducting of necessary charges. A suitable crypto payment processor could accept all popular cryptocurrencies like Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tether, etc. Payment gateway. Why it is crucial? The Indian online market is catching up with global cryptocurrency market.
India is the hub of world services industries with thousands of BPOs, service exporters, and SaaS businesses that need receive payments from abroad. As cryptocurrency is free from exchange rates and highly secure with blockchain technology, the crypto payment gateway is one of the best ways to receive international payments. The payment gateway allows you to accept cryptocurrencies as payment and receive fiat currency in exchange. If you don't understand or trust it, let's get into the details. Flow of the payment will make you understand how this following workflow is carried out in terms of steps. First step, the customer opt to pay its cryptocurrency during a checkout, which is in store or in the web or in the app. Step 2, the crypto gateway calculates the required payment in terms of cryptocurrencies specified by the buyer. Step 3, the buyer pays the amount in crypto through his crypto wallet. Step 4, the blockchain is scanned using the integrated payment gateway where nodes confirm validates the transactions. Step 5, once the transaction is confirmed, the fee is generated. Crypto payment gateway credits the merchant's account with the desired cryptocurrency opted by him. Step 6, the crypto payment processor sends payment to merchants in designated bank account or other payment services like PayPal. Just an example, this is done at the regular intervals or as requested by the merchants. So you must be wondering what are the advantages if you opt for a payment gateway. No geo barriers. Unlike fiat money, vendors can quickly receive international transfers without regulatory compliance. No bank account. A single digital wallet is used to send and receive cryptocurrency. Vendors don't even need a bank account to receive payments. Low transaction fees. The transaction fees made for payments received made through a payment gateway cryptocurrency is very low when you compare with other modes of payment. No chargebacks. Cryptocurrency payment gateway gives sellers freedom from chargebacks as completed payments can't be reversed under any circumstances. Fifth point, allows you to receive any valid crypto payment securely. Sixth one is reduces volatility risk as most of the gateways provide fixed buying and selling rates. 7 point, it allows users to exchange the crypto for fiat money or one crypto to other easily. So you must be wondering, we have gone through all the advantages, what are the disadvantages associated with it? Because you may be receiving payments from all over the world in different time zones, you must rely on providers' capability to offer uninterrupted services. Second, the payment does go through a third party and become traceable, defeating the primary purpose of cryptocurrency. Third, the transaction fees are considered higher when payment is received through a crypto gateway. Fourth, in case your payment gateway is hacked, any funds in your provider's account will be lost while you wait for them to be transferred. Well, the crypto market has tremendous potential for inclusivity and advantages when compared to bank transfer. So we have all understood how integrating crypto payment gateway in websites and app would help businesses to receive payments from around the globe in real time without any complications. It is high time that Indian merchants adopt these payment options for expansion, growth and profitability. But will they have government support? That only time will tell. Until then, keep watching Crypto TV. This is Manoj Dara signing off. Thank you so much. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। Hello everyone, you're watching Crypto Masters. I'm Vinita Chatterjee. Crypto Masters is a show where the masters of the game give us a guided tour of the entire crypto ecosystem. And today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar, who is none other than a gaming expert, a tech enthusiast, and a metaverse
Meta starter. Welcome to the show. Hello, Vinita. Thank you for the invitation on the Crypto TV. I'm honored to be here. Thank you so much, Vikram, for joining us today, because today we are going to discuss Metaverse in details. So tell me, Vikram, what is Metaverse all about? Yeah, this is a very good question. The Metaverse, we have to understand first what is a Metaverse. What Metaverse is a 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. So there is a mixed combination where we can take the experience of the 3D virtual world in gaming, shopping, singing. We can see the lot of development of the metaverse in upcoming time. So why do you think Metaverse is so popular among the youngsters today? Yeah, this is a very interesting question. I think like the technology is one of the part of this world that is going to change the universe very rapidly. So I think the metaverse as well as the blockchain technology, and if we are integrating all them together on one platform, that's make me more excited, and it's feeling of every tech enthusiast, either if it's youngsters of or a aged person, or however, the technology and the metaverse have potential to change the world. Now, everything, whatever we are doing in the real world, in physical world, we can see these things in the virtual world. We can, whatever we are doing, जो हम चीज डेली लाइफ में हम रूटीन में करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मेटावर्स में पॉसिबल हो सकती है. तो कहने का मतलब, हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, ये चीज भी वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकती है. हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, इसके अलावा भी जैसे गेमिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सारी एक्टिविटीज हम इसमें इजीली कर सकते हैं. और यही इसको खास बनाती है मेटावर्स को यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने में. आप कह रहे हैं कि हम लोग जो रियल लाइफ में कर सकते हैं वो सारे मेटावर्स में एक अलग तरीके से कर सकते हैं, तो आप थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं? या डेफिनेटली, अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और कोई आपको एसेट है, वो आपको जज करना है, उसके पैरामीटर्स चेक करने हैं, तो वो चीज आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंजॉय कर सकते हैं बाय बाइंग समथिंग, बाय यूटिलाइजिंग समथिंग. और अगर आपके पास कोई चीज बाय की हुई है, उसको आप अगर रेंट पे भी देना चाहें तो भी दे सकते हैं, अगर वो आपके पास यूज पे नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आप गेमिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है गेम खेलते खेलते अगर आपका टूर का कोई आप ट्रिप जाना चाहते हैं, तो ट्रिप का प्लान बन जाता है. आफ्टर 3 days यू कैन कम एंड यू कैन फिनिश दैट गेम अगेन. सो ऐसी चीजें जो वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकती है, ये Web3 के आने के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है. और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे. अभी के टाइम में गेमिंग सेक्टर के अंदर हमें काफी सारा रुझान देखने को मिल रहा है जो Web3 बेस्ड है और ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग है. तो उसका ज्यादा हमें स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है. अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपसे पूछूं कि जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं, तो उसमें और एक मेटावर्स की दुनिया में गेमिंग में क्या डिफरेंस दिखेगा? सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि पबजी की गेम में आप कोई कैरेक्टर बाय कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होती है, वो कैरेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड हो सकते हैं. बट मेटावर्स गेमिंग में कुछ प्री डिफाइंड क्वांटिटीज होती है जो कि उसको एनएफटीज फॉर्म में हो सकती है क्रिप्टो एसेट्स के फॉर्म में हो. इन अपकमिंग टाइम ये सारी चीजें क्लियरली आपको देखने को मिलेगी. उस जो एनएफटी और क्रिप्टो बेस्ड जो आइडेंटिटीज होती है, उनकी एक वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से वो चीज उसको यूनिक बनाती है. नॉर्मल गेमिंग में आपका एक कैरेक्टर होता है, उसके जैसे आप रेप्लिका अलग अलग तैयार कर सकते हैं. इट्स लाइक इन पोकेमॉन और अदर गेमिंग्स. There are a lot of examples in the normal game, traditional game, which is based on the Web 2. But metaverse games में आपके जो भी एसेट होता है यूटिलाइज करते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ NFTs होता है, और उसका एक प्रॉपर एक सिग्निफिकेंस, एक रोल होता है, एक कॉपीराइट होता है, उसका एक एग्जिस्टेंस होता है. उस एग्जिस्टेंस की वजह से वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक यूनिक होता है. वो ब्लॉकचेन बेस होने के कारण उसका पब्लिक लेजर में एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए देखने को मिलता है. तो ऐसी चीजें जो हम ब्लॉकचेन गेमिंग में कुछ पॉसिबल कर सकते हैं, वो मेटावर्स गेमिंग में पॉसिबल है, और उसका प्राइस एप्रिशिएशन टाइम बाय टाइम होता है. सबसे अलग चीज जो मेटावर्स गेमिंग में हमें देखने को मिलती है वो है
एनएफटीज आप होल्ड कर सकते हैं, आप रेंट पे भी दे सकते हैं, आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि मतलब आम आदमी जैसे नॉर्मली गेम खेलता है तो उसके लिए वो जो एसेट्स होता है वो कोई वैल्यू का नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेटावर्स की दुनिया में गेम खेलते हो तो आप एनएफटी क्रिएट कर सकते हो और उसको आप रेंट भी कर सकते हो। प्लीज थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना। या जैसे कि आपने एक्स इन्फिनिटी गेम है, उसमें उसमें कुछ एक्सेस है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेटावर्स का एक गेम है जो काफी पॉपुलर है। एक्सेस कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ एक वर्क करना पड़ेगा, इज लाइक यू हैव टू बाय 3 एक्सेस फॉर द एंट्री इन द गेम एंड टू प्ले। फॉर दैट यू हैव टू कलेक्ट दोज एनएफ इन फॉर्म ऑफ द एनएफटी। जो भी आप एक्सेस इकट्ठी कर रहे हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, उनको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, और उन एक्सेस को आप यूटिलाइज करके बैटल्स को जीत के और भी आप अच्छे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनएफटी और इन फॉर्म ऑफ एनी क्रिप्टो। सो बेसिकली स्मूथ लिविंग पोर्शन है एसएलपी, उस फॉर्म में आपको एक्सेस के साथ में आपको कई सारे रिवॉर्ड्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये जो रिवॉर्ड्स हमें मिलता है वो क्या हम लोग रियल लाइफ में इनकैश कर सकते हैं? या ये बहुत ही नॉमिनल सी क्वांटिटी में होने की वजह से इसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है, और इसके टाइम बाय टाइम वैल्यू एप्रिसिएशन होने की वजह से इन जो एसेट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ एनएफटी और इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो और टोकन, क्रिप्टो है टोकन है, वो डायरेक्टली एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, आइदर इट्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। नाउ इफ इट्स एनएफटी यू कैन सेल, publicly sell, you can trade, however you can store. This is a very interesting thing that people are storing the NFTs, few NFTs, which is more profitable in upcoming time. और आपने $100 में आपने कोई NFTs बाय किया, एक्सेस इकट्ठी की, और अपकमिंग टाइम में जैसे जैसे वो NFTs सारे सेल आउट हो जाते हैं तो उन एक्सेस की वैल्यू बढ़ जाती है और आप उसे अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ द एक्स इन्फिनिटी गेम। गेमिंग वर्ल्ड में मेटावर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जी, एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं इंडिया में बात करूं तो टेक महिंद्रा ने एक टेक एमवर्ज जो लास्ट मंडे आई थिंक लास्ट वीक में ही अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से एक इंडिया में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी टेक कंपनीज है वो इंडिया में आने के इंडिया में अच्छा वर्क करके और मेटावर्स में डायरेक्टली एंट्रीज लेना चाहती है। नो डाउट इंडिया इज द बिगेस्ट हब ऑफ आईटी, सो डेवलपमेंट के मामले में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपकमिंग टाइम में भी देखने को मिलेगा और ये कंटिन्यू भी है, और इससे और भी ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो अभी गेमिंग सेक्टर में ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डेवलप्ड इन द गेमिंग साइड, अदर सेक्टर्स विल बी ओपन सून। सो अपकमिंग टाइम में जो अदर सेक्टर्स है उन पे भी हमारा फोकस रहेगा, मेटावर्स का फोकस रहेगा कि उन सेक्टर्स को हम कैसे ब्लॉकचेन बेस और क्रिप्टो बेस और एआई बेस बना सकते हैं। ओके अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि अभी गेमिंग इज़ द फ्यूचर। तो हमारी देश की जनता मेटावर्स और गेमिंग को लेके आगे क्या देख सकती है? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स एंड गेमिंग इन इंडिया? ब्लॉकचेन में फ्यूचर है, फ्यूचर था और फ्यूचर रहेगा। ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो अदर एजुकेशन सेक्टर से भी हो सकते हैं, गेमिंग भी हो सकती है, बट गेमिंग सेक्टर में होने की वजह से इसके काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। जैसे जैसे इंडिया के टेक जायंट्स हैं वो एंट्री ले रहे हैं, तो ये काफी बढ़िया वे है कि हम इसको और भी ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। ग्रेट। So what are the popular Indian gaming brands in the metaverse at the moment? It's a universe where all platforms works in a global way. Roblox and Geppetto and Minecraft. These are the top brands which is entered in the metaverse recently. So these are the Indian brands. तो अभी जो हाल ही में सिनेरियो है, दुनिया में वॉर हो रहा है और बहुत ही तकलीफ का माहौल है, आपको लगता है कि हमारे जो मेटावर्स की दुनिया है वहाँ पर भी इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ये क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और अभी बहुत लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, यू थिंक इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स लाइक वॉर? व्हाट डू यू थिंक? आपने वॉर के सीन की बात की, वॉर के सीन में एक क्रिप्टो मार्केट में अनसर्टेनिटीज देखने को मिली थी, बट ब्लॉकचेन सेक्टर में ट्रस्ट बढ़ा था, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट है जो वापस रिकवरी भी हुआ था। उसकी एक खास वजह यह है कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, और इवन
यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो बेस जो ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन फॉर्म ऑफ asset, or you can say a cryptocurrency. Why is metaverse so significant for a common man? There are some players who want to fulfill their dreams in the practical life, but they cannot fulfill due to lack of assets, resources, infrastructure, and they want to be on the top in their dreams. So that thing can be fulfilled. अगर मैं मार्स पे जाना चाहूँ तो मैं मेटावर्स के अंदर ऐसे गेम्स है अपकमिंग टाइम में हमें देखने को मिलेंगे, या ऐसी एक दुनिया है जो क्रिएट होगी जिसमें मैं मार्स के ट्रैवल कर सकता हूँ, वहाँ का 3D व्यू ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में एक कॉमन मैन के लिए ये मेटावर्स है वो जरूरी है। As an artist, you also think like the metaverse can be revolutionary step. Bollywood has completely come into metaverse. So many artists are launching their own creations in metaverse. आपको क्या लगता है metaverse हमारी जिंदगी को improve कर सकता है? फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज इम्पॉसिबल होती है और डिफिकल्ट होती है वो चीजें मेटावर्स में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आपको यूएस में कोई पेमेंट ट्रांसफर करनी है बट आप उस बैंक का एक स्टाफ से मिलना चाहते हैं, ऐसा ही कैरेक्टर एक स्टाफ उस बैंक का मेटावर्स में भी पॉसिबल हो सकता है, जिससे आप डील करें, उनका बिहेवियर चेक करें, उनकी कस्टमर सर्विस किस लेवल पे है वो चेक करें। ऐसी सारी चीजें जो हम एक फिजिकली देखना चाहते हैं कर सकते हैं, और विद इन ए टाइम फ्रेम हम उन चीजों को वर्चुअली भी कर सकते हैं। Any closing comments for our viewers? जहां तक आपको होता है परफेक्ट नॉलेज लीजिए और फिर आप अपने करियर की शुरुआत कीजिए मेटावर्स के अंदर। Thank you so much Vikram for coming to our show and encouraging us about the world of metaverse. आपके साथ बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि मेटावर्स की दुनिया तो बहुत ही exciting है and we are waiting eagerly to see what lies in the future. Thank you very much. Thank you Vinita. And thank you viewers, keep watching Crypto Masters to get the guided tour of the world of crypto, blockchain, metaverse, web3 and everything that is to do with technology. Keep watching your favorite channel, Crypto TV. नमस्कार, मी संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीव्हीच्या या खास शो मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, क्रिप्टो करन्सी सध्याच्या या दुनियेत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे। परंतु सध्या याचा वापर केवळ नफा कमवण्यासाठीच नाही तर दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठीही केला जातोय। आज आपण क्रिप्टोशी संबंधित अशाच काही इन्स्पायरेशनल आणि इम्पॅक्टफुल गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत, जे वास्तविक जीवनातील घटना आहेत आणि ज्यामुळे लोकांचे जीवन बदलले आहे। याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया मधलं युद्ध। या युद्धामध्ये एक 20 वर्षांचा युक्रेनियन रेफ्युजी, ज्याला रशियन आक्रमण सुरू असताना आपला देश सोडावा लागला, त्यावेळी त्याच्याकडे फक्त $2000चे बिटकॉइन्स होते आणि त्याला या युद्धामुळे त्याच्या पेनड्राईव्ह आणि कोल्ड वॉलेट मध्ये स्टोअर असणारी क्रिप्टोज शेवटी त्याच्यासाठी आशेचं किरण ठरली। असंच एक दुसरं उदाहरण आहे अफगाणिस्तानमध्ये राहणारी एक टेक कंपनीची सीईओ रोया मेहबूबचं। मागील वर्षी तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर रोयाला अफगाणिस्तान सोडण्यापलीकडे काहीच पर्याय नव्हता, आणि तेही अशा वेळेस जेव्हा रोयाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अफगाणी महिलांना बाहेर काम करण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यांना त्यांच्या बँक अकाउंट्सला सुद्धा ऍक्सेस करण्यासाठी काही बंधनं लादली गेली होती। अशा कठीण परिस्थितीमध्ये या अफगाणी महिलांचा आधार बनला क्रिप्टो। रोया मेहबूबने आपल्या अफगाणी एम्प्लॉईजला बिटकॉइन मध्ये त्यांचा पगार देऊन त्यांची मदत केली। मित्रांनो, क्रिप्टोचे महत्त्व लोकांना तेव्हा कळलं जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये तुफान युद्ध सुरू झालं। जेव्हा चारही बाजूला युद्धाचे वातावरण होतं, स्टॉक एक्सचेंज, बँक्स पूर्णपणे बंद होते, एटीएम मशीनची अक्षरशः तोडफोड झाली होती, लोकल करन्सीची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट डाऊन झाली होती, तेव्हा युक्रेनच्या मदतीला जगभरातून लोक धावून आली आणि अखेरीस क्रिप्टोमध्ये आर्थिक मदत म्हणजेच डोनेशन्स देण्यात आले। युक्रेनचे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे डेप्युटी मिनिस्टर मिस्टर अलेक्स बॉनियाकॉव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार
युक्रेनला आतापर्यंत $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन मिळाले आहेत, ज्याचा उपयोग ते बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाईट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाय आणि हेल्थकेअर साठी करतायत. मित्रांनो, युक्रेनियन सरकार सध्या बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट आणि डोज कॉइन मध्ये क्रिप्टो डोनेशन ऍक्सेप्ट करते आहे. तर दुसरीकडे काही नॉन प्रॉफिट्स आणि फिलॅन्थ्रॉपिक ऑर्गनायझेशन जसे कमबॅक अलाइव्ह, युक्रेन डाव, एंडॉवमेंट आणि क्यू इंडिपेंडन्स सुद्धा क्रिप्टो करन्सी डोनेशन्सला डायरेक्टली ऍक्सेप्ट करतात. मित्रांनो, यात काही दुमत नाहीये की काळानुसार क्रिप्टो करन्सीमध्ये डोनेशनची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढताना पाहायला मिळते. मित्रांनो, 2020च्या तुलनेत 2021 मध्ये डिजिटल ऍसेट डोनेशन्स मध्ये 583% वृद्धी पाहायला मिळाली होती. लोक क्रिप्टो डोनेशनचा उपयोग युद्धग्रस्त देशांमध्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीडित लोकांच्या मदतीसोबत पर्यावरण संरक्षण, कोरोना पॅन्डेमिक सारख्या कठीण प्रसंगामध्ये वंचित लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी करते. जर पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात म्हटलं तर पृथ्वीच्या 6% पृष्ठभागाला कव्हर करणारा ब्राझिलियन अमेझॉनच्या जंगलाला डिफॉरेस्टेशन आणि फॉरेस्ट फायर पासून वाचवण्यासाठी 1987 मध्ये स्थापित केलेला रेन फॉरेस्ट फाउंडेशनने क्रिप्टो कम्युनिटीच्या मदतीमुळे $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन अक्वायर केले आहे, ज्याचा उपयोग वातावरणाला प्रोटेक्ट करण्यासाठी केला जाणार आहे. दुसरीकडे सेव्ह द चिल्ड्रन हे जगातील प्रथम आंतरराष्ट्रीय NGO आहे, ज्याने फिलिपाईन्समध्ये टायफून हायानमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर 2013 पासून बिटकॉइनला डोनेशनच्या स्वरूपात स्वीकार करण्यास सुरुवात केली होती. यासोबत मागील वर्षी या ऑर्गनायझेशनने #HODLHOPE कॅम्पेनच्या माध्यमातून $5 मिलियन पेक्षा जास्त डोनेशन स्वीकारले आहेत, ज्याचा उपयोग युक्रेनच्या युद्धग्रस्त भागातील मुलांच्या मदतीसाठी करण्यात येतोय. भारतात जर म्हटलं तर मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इथेरियमचे को फाउंडर विटालिक बुटेरिन यांनी $1.5 बिलियन ची क्रिप्टो करन्सीज बऱ्याच NGOला डोनेट केली, ज्यामध्ये कोविड-19 रिलीफ फंडच्या स्वरूपात भारताला देखील $1 बिलियन डोनेशन मिळाले. पण मित्रांनो, शेवटी जिथे माया म्हणजेच क्रिप्टो आहे तिथे माया जाल नसणं असे होऊ शकणार नाही. अलीकडे अशा बऱ्याच घटना समोर आल्या जिथे स्कॅमर्सने फेक क्रिप्टो डोनेशन वेबसाइट्स आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या माध्यमातून युक्रेनच्या नावावर लोकांना अक्षरशः लुटलंय. एवढंच नाही तर पॅन्डेमिक दरम्यान सुद्धा डार्क वेबवर असे बरेच फेक कोविड-19 चॅरिटीजने सुद्धा $मिलियन चा घोटाळा केला होता. म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही चॅरिटी किंवा NGOला क्रिप्टो डोनेट करायचं असेल तर त्या NGO आणि ऑर्गनायझेशन बद्दलची संपूर्ण माहिती ही थोरोली चेक जरूर करून घ्या. अमेरिकेसह बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोमध्ये डोनेशन्स दिल्यावर डोनर्सला टॅक्स इन्सेंटिव्ह सुद्धा मिळतात. पण अनफॉर्च्युनेटली भारतात क्रिप्टो डोनेशन्सवर सध्या टॅक्स लावला जातोय. लेट्स होप भविष्यात भारतात फियाट करन्सी सारखंच क्रिप्टो डोनेशन्स मध्ये सुद्धा टॅक्स इन्सेंटिव्ह मिळेल, की जेणेकरून जास्तीत जास्त क्रिप्टो होल्डर्स हे क्रिप्टो डोनेशनच्या मार्फत गरजूंना मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे घेऊ शकतील. मित्रांनो, मला आशा आहे की आमची खास स्टोरी आपल्याला नक्कीच आवडली असणार. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला तुम्ही नक्कीच लाईक करा व शेअर करा आणि हो, कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल 3.0 TV. मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी. व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 TV में रीब्रांड. क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर Web3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहे 3.0 TV. और ये है आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज. पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बीच क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिक्स्ड ट्रेड. FTX मात्र $15 मिलियन में BlockFi को कर सकता है एक्वायर. सेपोलिया बना पोस्ट मर्ज अपग्रेड प्राप्त करने वाला पहला इथेरियम टेस्टनेट. NFT की कीमतों के हलचल के बीच क्रिप्टोपंक्स निकला बोर्ड एप से आगे.
NFT सेल्स से नाइकी बना दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ब्रांड। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में फंसे पूर्व ओपनसी कर्मचारी ने इंडाइटमेंट खारिज करने के लिए फाइल किया प्रस्ताव। बेंडाउ द्वारा किया जा रहा है लिक्विडेशन को रोकने का प्रयास। सैमसंग 2023 में कर रहा है क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने की तैयारी। पिछले कुछ दिनों में गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसीज ने कंसोलिडेट किया ताकि यूएस इकोनॉमिक डेटा के बीच इस हफ्ते के अंत में फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावल के भाषण से पहले इन्वेस्टर्स सावधान रहे। वहीं बिटकॉइन को $21,300 के करीब देखा गया। यूएस स्टॉक्स जो क्रिप्टो मार्केट के साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, इसने सोमवार को टेक फोकस्ड नास्डैक और S&P 500 दोनों के साथ 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ अपने नीचे जाने के स्तर को बढ़ाया और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को भी ट्रेडिंग के दौरान नीचे जाते हुए देखा गया। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि फेड के पाउल शुक्रवार को जैक्सन होल सिंपोजियम में एक तीखा भाषण देंगे, इस उम्मीद के बीच कि सेंट्रल बैंक्स रेट में बढ़ोतरी जारी रखेगा, भले ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.6% नीचे जाते हुए अराउंड $21,300 पर ट्रेड किया। वहीं ईथर को उसी समय के दौरान थोड़ा ऊपर जाते हुए 1620 पर देखा गया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर क्रिप्टो लेंडर निर्धारित परफॉर्मेंस टारगेट्स को पूरा करने में विफल रहता है तो सैम बैंकमैन-फ्राइड के लीड वाला FTX $15 मिलियन से कम के लिए ट्रबल्ड BlockFi को खरीद सकता है, जो पहले की गई मिनिमम प्राइस की ऑफर है। FTX से $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्राप्त करने वाले BlockFi के कई ऑप्शंस में से एक जीतने वाले SEC अप्रूवल के आसपास परफॉर्मेंस टारगेट्स और दोगुने से ज्यादा एसेट्स शामिल है, जो परचेज प्राइस को $240 मिलियन तक बूस्ट कर देता है। BlockFi को यील्ड प्रोडक्ट के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का अप्रूवल लेने की आवश्यकता होगी, जो क्रिप्टो को हायर रेट पर उधार देकर डिपोजिटर्स के क्रिप्टो पर इंटरेस्ट जनरेट करेगा और तब तक FTX अपने ऑप्शंस को खरीदने के लिए एसेट्स को कम से कम $10 बिलियन तक बूस्ट कर देगा। ये बातें कंपनी की रिपोर्ट में कही गई है। सेपोलिया, एक इथेरियम टेस्ट नेटवर्क चेन को 22 अगस्त को 301 UTC पर किसी भी इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक टेस्टनेट पर पहला पोस्ट मर्ज अपडेट रिसीव हुआ है। अपडेट 17 अगस्त के लिए स्केड्यूल किया गया था, लेकिन कुछ ऑफलाइन वैलिडेटर्स को नेटवर्क से फिर से कनेक्ट करने की अनुमति देने के लिए इसमें 4 दिनों की देरी हुई है। इथेरियम मर्ज की प्रिपरेशन में जो मिड सितंबर में होने की उम्मीद है, कई टेस्ट नेटवर्क्स मर्ज प्रोसेस से गुजरे और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदल गए हैं। 6 जुलाई को इनमें से एक टेस्टनेट सेपोलिया सक्सेसफुली अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक बीकन चेन के साथ मर्ज हो गया। सेपोलिया टेस्टनेट की एग्जीक्यूशन लेयर EL को ब्लॉक 1735371 पर अपग्रेड किया गया था। इससे EL क्लाइंट्स डिस्कनेक्ट हो गए जिन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच नहीं किया था, एक प्रोसेस जो इथेरियम को एक हेल्दी नेटवर्क बनाए रखने में मदद करती है। इथेरियम फाउंडेशन के अनुसार अपग्रेड चेन में कोई नई फंक्शनैलिटी में कोई नई वर्किंग कैपेसिटी नहीं जुड़ेगा। सोमवार को क्रिप्टोपंक नॉन फंजिबल टोकन्स फ्लोर प्राइस कंपेटिटर ब्लू चिप कलेक्शंस बोर्ड एप यॉट क्लब से कुछ समय के लिए आगे निकल गया, जो कूल्ड ऑफ NFT मार्केट में टॉप डॉग के लिए बैटल को हाईलाइट करता है। ये फ्लिप ज्यादा देर तक नहीं चला। न्यूयॉर्क टाइम के लेट मॉर्निंग तक बोर्ड एप्स ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपनसी पर फिर से बढ़त बढ़ा ली, जहां दोनों कलेक्शंस के फ्लोर्स 66-67 ईथर्स या लगभग $104,000 के आसपास मंडरा रहे थे। ये दौर अभी खत्म नहीं हुई है। कैस्केडिंग लोन लिक्विडेशंस और NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में रीसेंट गिरावट के बीच दोनों कलेक्शंस वसूली से पहले अपनी वैल्यू खोना जारी रख सकते हैं। $185 मिलियन की सेल्स के साथ NFTs की सेल्स में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले ब्रांड्स की लिस्ट में नाइकी सबसे ऊपर है।
नाइकी के पास लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी के रेवेन्यू का ना सिर्फ 7 गुना था, बल्कि उसके पास 67,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी थे। दूसरे एथलेटिक्स और फैशन कंपनीज लिस्ट में टॉप 5 स्पॉट्स पे हावी रहे। डोल्चे एंड गबाना, निफ्टी और गुची रिस्पेक्टिवली $25 मिलियन, $12 मिलियन और $11 मिलियन के टोटल रेवेन्यू के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर आए। वहीं डोल्चे एंड गबाना के पास 9,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है, गुची के पास लगभग 4,000 ट्रांजैक्शंस है और टिफनी ने सिर्फ 74 ट्रांजैक्शंस से वो अमाउंट अर्न कर ली है। आदिदास टोटल रेवेन्यू में $10 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर रहा, लेकिन 51,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस की उसकी सबसे बड़ी संख्या थी। सोमवार को दायर एक प्रस्ताव के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी के फॉर्मर प्रोडक्ट हेड नेट चेस्टन ने एक यूएस कोर्ट से पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर NFTs की सेल से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस को खारिज करने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क के सादर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर इस प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि NFTs को सिक्योरिटीज या कमोडिटीज में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है, जो वायर फ्रॉड चार्जेस के लिए एक ज़रूरत है। उनके वकीलों ने ये भी कहा कि विचाराधीन NFT ट्रांजैक्शंस इथीरियम ब्लॉकचेन पर प्रोसेस किए गए थे। ब्लॉकचेन के ओपन सोर्स नेचर और पब्लिक व्यूइंग अवेलेबिलिटी को देखते हुए वकीलों ने तर्क दिया ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। DOJ ने चेस्टन की एक्टिविटीज को फर्स्ट एवर डिजिटल एसेट इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम कहा है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स द्वारा अपने ज्यादातर टोकन्स वापस लेने के बाद NFT कोलैटरलाइज्ड क्रिप्टो लोन्स प्लेटफॉर्म बेनडाओ लिक्विडेशन से बचने के लिए इथीरियम डिपॉजिटर्स के बीच विश्वास बनाने के लिए अपने प्रोटोकॉल में कई बदलाव कर रहे हैं। बेनडाओ के प्रस्तावित चेंजेस लिक्विडिटी सीमा को 95% से 70% तक कम करना चाहते हैं। एक लिक्विडेशन एमनेस्टी विंडो को 2 दिनों से 4 घंटे तक छोटा और ज़्यादा ईथर डिपॉजिट्स और रीपेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में ग्रोथ करना चाहते हैं। बेनडाओ का 48 आवर्स का एमनेस्टी प्रोग्राम बोरोअर्स को लोन और पेनल्टी चुकाकर अपनी NFTs को बचाने का समय देता है। प्रोटोकॉल के प्रस्ताव के बदलाव को बेनडाओ के ज्यादातर नेटिव गवर्नेंस टोकन बेन होल्डर्स द्वारा पास किए जाने की उम्मीद है, जो आज दिन के अंत तक प्रभावित हो जाएगा। तो ये थे आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल 3.0 TV। नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स। उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी, लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ, NFT की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के यूगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है।
लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टोपंक्स की लंका में आग कैसे लगी। दरअसल क्रिप्टोपंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी। 2017 में जब क्रिप्टोपंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे। देखते देखते क्रिप्टोपंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा। जे-ज़ी, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे। एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टोपंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप याcht क्लब ने एंट्री मारी। अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और एनएफटी होल्डर्स को क्रिप्टोपंक्स की खामियां चुभने लगी। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टोपंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी। जैसे कि बोर्ड एप के एनएफटी ओनर्स को एनएफटी के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। लेकिन क्रिप्टोपंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे। लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टोपंक्स के एनएफटी ओनर्स को आईपी, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं। क्रिप्टोपंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही एनएफटी अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। क्रिप्टोपंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर एनएफटी है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है। इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप याcht क्लब ने 2 और फ्री एनएफटीज लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप याcht क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके साथ ही एनएफटी होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड एप याcht क्लब अपने एनएफटी होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टोपंक्स के एनएफटी होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टोपंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव एनएफटी प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोपंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड एनएफटी तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड एनएफटी को रैप्ड V1 एनएफटी करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपन सी मार्केट से हटा लिया गया। लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के आईपी को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो एनएफटी होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज्ड राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू आईपी के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो एनएफटी होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार एनएफटीज का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में
कई बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge. Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. I'm really happy when this report was recently published. So now people can refer to this report and make their business cases. Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. And our second guest is Tom Lyons. We have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble, and we also wanted to do some original research in that direction. Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee, and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today, we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work by following a simple protocol: if, when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action when predetermined conditions have been made and verified. These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed.
That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved, and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV.
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IERC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उठाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लगी गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था। इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्रीकृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था। अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि FBI अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली CBI को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि FBI ने इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही US प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए CBI से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है। मुकदमा कोर्ट में है।
और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power out now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixel that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Hello and welcome to Digitally Unplugged. So, with the gaining popularity around the metaverse, Gartner predicted that by 2026, 25% of the people will spend at least 1 hour a day of work, shopping, education, social media and entertainment in the metaverse. However, as the world migrates towards the virtual arena, the crypto threat landscape has also got a new dimension in the metaverse. And to discuss about all the threats in the metaverse cybersecurity concern, we have invited two special guests. Let me introduce you to our first guest, Colonel Dr.
Inderjeet Singh, Cyber Security Officer. He is a TEDx speaker and India's top 30 blockchain influencers. Sir, welcome on Crypto TV. Thank you very much. It's a pleasure to be part of the Crypto TV show today. And our second guest is Deepika Singh, founder, DeepSight Cyber Labs, ex-fellow Maharashtra Cyber Police Department. Deepika, welcome on Crypto TV as well. Thank you so much. Happy to be here. So my first question is to Dr. Inderjeet is, in recent months, there has been quite a buzz around the metaverse. So everyone from startup, social media, gaming companies to IT services and even automobile company have joined the metaverse. So, and this space is also getting more attention. So what do you think, what is metaverse and why there is sudden surge in the interest? If you can just begin with, sir. Yeah, well, it's a wonderful question. And, just to get you everybody on the board that metaverse is not a new concept. It is already there since quite some time. And it evolved basically in 1992 after one of the novels which were being written by Neil Stephenson. And that was a start point where he started calling that the Snow Crash as a novel. And thereafter, we saw a movie which came in 2013, that was Ready Player One. That was the part of the metaverse. And the buzz which we are seeing today, right, it actually started after Facebook changing the name from Facebook to Meta. And thereafter, we are seeing so much of impetus which is happening all across in the metaverse space. So what really is metaverse? Just to put in the right perspective, it's a fusion of physical, augmented and virtual reality, and the public virtual reality world can be accessed by the internet, right? So that's how the things are going to be. The material things in the virtual world are going to be accessed. You'll have the virtual currencies, you'll have virtual characters. It will be recreation of the things which you'll see and how you're going to get into it. So you're going to have, digital avatars, which you can use it to traverse online. And this will be basically identical to your real world, things which are there built on imagination or combination of both, right? And how do you really get into metaverse? So you're going to have virtual reality headsets and the digital avatars, that's you. Who's going to really, allow you to get into the metaverse. And primarily, it's going to be a collaborative virtual world where currency can be used to buy, sell lands, building avatars, identities, paintings, everything which you possibly see, you're going to buy it there. And NFT is one of the currencies which is going to be part of it. So the metaverse is already happening. NFTs, we're already talking of. We are talking of the Web3, which is there. We already seen lots of games like Roblox, which are the games which touts itself as a metaverse corporation. So, and the musics in the metaverse. So that's how the really metaverse is really evolving right now. And we are seeing so much of things happening in the metaverse, and every day we are seeing something or the other, getting wrong in the metaverse. So you can have events, you can have a cafe. We saw a bank opening up its branch in that. We're seeing airlines getting into the metaverse. We're seeing the Space Force coming up. It's a real interesting world what we are seeing today. It's a real interesting world, what we are seeing it today. That's what Colonel Inderjeet Singh has described about the metaverse. So what's your opening remarks on about this segment, which we are, since this segment is about the cybersecurity concerns in the metaverse. So we are trying to understand what is metaverse first so that we can build upon the cybersecurity concerns in this segment. Over to you, Deepika. Certainly. The genesis of cyber attacks is proportional to the number of touch points that any user has. Now, following up to what Dr. Singh mentioned about having the world transcend into a virtual reality and augmented reality, and essentially transcending into a 3D space with certain 4D elements as well. Fantastic. So it's just now not the, you can say, renditions which are there in 3D, but also 4D elements attached to it, which are related to our 5 senses, that is sight, touch, smell, etc. Now, whenever cyber attacks are concerned, the more the touch points, the more convoluted the attack scenario. Exactly.
And to be very honest, we are at a very nascent stage where even real life cyber crimes are concerned. So I think we are at an embryonic stage, rather a pre-embryonic stage, and it will not be an overstatement too, whenever it comes to the cybersecurity concerns. The main thing is with respect to the regulators and the lawmakers who are setting the guidelines, because if cyber attacks come, the lawmakers make an important role. They too have still not understood the concept. There's a lot of myths, and the myths are being driven by commercial companies who are looking to take the advantage of the buzz that has been generated to increase their valuations. So I think we have a long way to go, not only in understanding, comprehending, but also analyzing the potential threats when it comes to metaverse. So since we are talking about, sir, we are talking about cybersecurity concerns. So we'll start with our first segment. And my next question to you is, along with the extensive growth opportunities, the metaverse comes with a legitimate concern about privacy. That's what Deepika has also highlighted. And data security, which is actually a big concern as of now. So as everything is built virtually in the metaverse, you have beautifully described in your opening remarks, cyber criminals have plenty of options to hack the data and misuse it for their personal gains. So how do you want to explain this situation, sir? So, if you look at the overall metaverse and how the cyber crimes are going to happen, and we're already seeing rape happening in cyber metaverse, we are already seeing the other type of crimes which are happening, bullying which is happening, frauds which are happening, fake NFTs which are getting onto metaverse. So those are the kind of things which are very important, which we need to really see it. And whatever the real life crimes are, they're all going to be there. In addition to that, the metaverse really raises concern about the three things, right? And I'll say that the concept of 3 M's, that's about monitoring users, you're manipulating the users, and you're going to be monetizing users. And how you're really going to do all that part of it. So you've already seen so much of things happening on the social media where, your data is being taken by all the biggies which are there, and they're earning $1 trillion onto that. So similarly, in the case of metaverse, because you're getting on to the metaverse with the AR, VR, and the headset and the haptic, sensors which are going to be there. So in a metaverse, they can practically track what you do, where you look, what are you gazing at, track your gait, track your posture. They can monitor your facial expressions. They can have your vocal inflections which are there. Also, they can get onto your heart rate, your respiration rate, your pupil dilation. So all those kind of things. Now, if somebody gets control of it, he's going to really, monitor you, and he can get all the details of your life, your experience, what you do, what you feel, everything of that nature. So monitoring is a major concern. Thereafter, monetizing part of it. Like we already seeing in the case of the social media, we are more of a product for sale to the advertisers rather than a customer. Similarly, in the case of metaverse, our data is going to be sold unless and until we have the right kind of privacy, right kind of policies, right kind of regulations which are going to be there with us. So these are the kind of challenges what we are going to see. Also, we're going to see the manipulation of your avatars which are going to be there. You can have a deepfake avatar which can be created because they already have your details of your facial expressions altogether. Right. So that's how they can use your facial expression. They can take your details. So real challenge when it comes to the metaverse when it is there. So we're going to see lots of crimes of that nature happening. Okay. And sure. The other aspect which is very important is like there are going to be different metaverses which are going to happen. So transversing from one metaverse to another metaverse is a challenge right now. How are we going to look into that? So those are the kinds of things which are a real point of concern. So Inderjeet sir has highlighted many concerns and challenges. One of what I've picked up is the concerns over data being sold. So what is your opinion about this, Deepika? To be very honest, in the metaverse, you can multiply the data points just by at least 10 raised to 3 to 10 raised to 4 with respect to what is the kind of data being collected today. And metaverse here is more of an intersection between our offline and online worlds. Rather,
where right now only phone data, gallery data, our locations, etc. are being sold. But when we come to the metaverse arena, we are going to see our vitals, the data recorded, by our location trackings, the places that we are visiting, our conversations also. Because when we have certain smart VR headsets, let alone virtual assistants, they are tracking us day in and day out. So it is technically placing a 24/7 mechanical eavesdropping device around yourself. So this is something which is a little hazardous if not treated properly, and is a golden, you can say, opportunity for marketing companies who just want to crunch maximum amounts of data. Let's take any example with respect to a health brand that is only looking for people between age groups of 24 to 30 with certain ailments. This kind of data set is giving them the exact digital profile, rather giving them a humanoid version of itself. Fantastic. So this is something that we are, tending towards. And if the users themselves don't understand the repercussions of the privacy parts, if they are lackadaisical and being so romanticized, by the idea of metaverse, and it's actually a privilege for them to being on the metaverse, that's how users are behaving. But we are forgetting the fundamental rule, which earlier experts have also mentioned on the show as well, that if you are not paying for the product, you are the product or service yourself. Fantastic. And this is something that people should not allow them to be commoditized. Should take strict measures. Superb. A very important statement is coming from Deepika about if you are not paying for the product, you are the product yourself. So my next question is to you, Doctor, is another cybersecurity concern which we are talking about. Unique to Metaverse is the preservation of the virtual identity of users. So that's what Deepika has also highlighted. What's your opinion, very quick opinion before we move to our next segment? So practically what is happening is you're giving your biometric data in terms of your fingerprint, you're giving your retina scans, you're giving your voice prints, you're giving your facial geometry, which causes a major privacy concern with the virtual reality headset, what you're putting it. And, the other challenge is the augmented reality, right? And there what we're going to see is how's the person or the company which is having your data or the augmented reality data, how they're collecting it, how they're giving it to the third party, for what purpose are they giving it, what are the encryptions methods which are being followed by them for the same. So these are the kind of challenges which we are going to see with both AR and the VR, right? So these are the real security concerns which are emanating now. So this brings us to our second segment, how to handle metaverse cybersecurity concerns, wherein both the guests will answer many questions on. So my next question to Deepika is, should all metaverse platform, first of all, what is according to you, is India prepared for this metaverse leap? And how well it is placed to take advantage of this billion-dollar opportunity since we are talking about, but there are a lot of speed breakers ahead. If you can just highlight that. Certainly. The idea of metaverse right now in India is very gimmicky. It is being used in 3D holograms. Our politicians also have used that in some aspect or the other. But right now, India is stabilizing itself in 2D crimes, if I may use the word right now. But we have a long way to go to assimilate what type of crimes may happen in the metaverse, let alone prepare the SOP for the same. In essentially, right now, compared to the other countries, and we've analyzed the same, the Indian privacy data laws, the PDP bills, the amendments to the IT rules with respect to the intermediaries have just come out. That is to last year. I'm referring to the intermediary guidelines. And here also the intermediaries have a major role to play. But unless and until the government scenario and the other machinery resolves those metrics so that they'll be able to gain rightful redemption from these intermediaries, it'll be very difficult for us and especially consumers to register their complaints. More often than not, whenever we go towards the judiciary side, let alone the law enforcement side, corroboration of evidence will become a major problem. Because again, fabrication of evidence comes into the picture, thus leaving us to, sort of a situation where which of the evidences are true is very hard to point. And the perpetrators definitely, since they are more advanced, they will be looking to, outsmart this entire initiative. So I mean, it's a fantastic statement which is coming in from Deepika, Doctor, is about the evidence.
something about the evidence she has highlighted about. So, according to you, should all the metaverse platform adopt a zero trust policy and trust nothing, validate everything? Or it requires a solid framework for the preservation of data, since we are talking about a lot of concerns in this segment, and we are here to highlight how to resolve this metaverse cybersecurity concern. What is your opinion on this? So it's very relevant, and the regulations will play a major role when it comes to investigating a particular case. We are also trying to talk of something like a meta cops in future, because that's how you have the cyber cops, which we really talk of, and preserving the data. That's a major function which is going to be there by the companies holding the metaverse, and then you have to have the governance around that, where you're going to have the regulators which will regulate what are the metaverses which are going to come up, what are the kind of digital forensics which can be carried out, what are the kind of governance issues which are there. So net, they have to have a regulation which is very strong. Privacy bill, which we're already looking in for India from the cyber perspective, will have to relook the complete privacy bill from a metaverse perspective, because when we look at the metaverse, it's a totally different ball game from what we are seeing today, right? Then is the identity related things which are there, and it comes up with how you're going to have the different identity management which are going to be handled by the metaverse companies, your data management issues which are going to be there, data tampering issues which I earlier brought it out, your privacy enhancement which is going to be there. So these are the kind of challenges what we are going to see, and we have to really overcome. And very rightly said that we are still in a very nascent stage of the metaverse. Fantastic. And the technology stack which actually forms a metaverse are evolving. Sure. Right? Like we talk about the Web3 and the blockchain, or we talk about the robotics, AR, VR. We are trying to work on all the stack parameters which are there, the framework which is going to come up. So once the stack is formalized, because that again is a challenge when it comes to the metaverse. So those are the kind of things which we are looking at. And the security, of course, becomes a major part of the metaverse while the framework is being drafted. Because most of the technologies, when they come, the security or the cyber security is look at the last component of any framework. But here, I think it's going to be the most important factor, and that's how the most of the discussions are really coming up. So, in order to solve these challenges, do you think that the inclusion of artificial intelligence and machine learning can improve the efficiency of the cybersecurity space, which is under a broader concern? So, whenever we are coming to the predictive policing component of it, which slowly and steadily is also being impacted and adopted in India, artificial intelligence, virtual reality will play a very important role in order for data crunching, analyzing patterns, and analyzing the crime belts that are existing here. Crime belts, when I say this word, it includes the modus operandi, it includes the people who are involved into it and their tendencies, plus their background. So this will not only help us stay ahead of the curve, but also help us adopt a strategy which is known as red teaming, that is, simulating a crime before it happens, in order to prevent and maintain the defense mechanism to defend yourself against the crime. So this is something that if, we adopt it in a very genuine manner by the experts who know and can design such a framework, and not just, rubber stamps just for the sake of it, we will be in a very good position to align the forecasting solutions. So since Deepika, Dr. Deepika mentioned about a few minutes back, she mentioned about some AR, VR headsets. So actually, this is the cause of many hacks as well. So how do you suggest our viewers how to prevent such kind of frauds and how to stay away from this? Yeah, what happens really, there are lots of security risks when you are having the haptic sensor and when you're putting that head-mounted device. And if you distinctly work it out, the threats which are related to the augmented reality, they are quite prominent, and they actually pertain to the privacy of the user. And like I brought it out, these are the security risks which are kind of
the user privacy if a hacker compromises AR device itself, right? And that's all possible today. How will the augmented reality firm use and safeguard the data collected from the user? So that's another question which always arises. And where do the businesses store the augmented reality data, right? What are the kind of places, how it is being stored, what are the encryptions methodologies which are being followed, and do the companies share the augmented reality data with the third parties, and for what purpose, whether it's being commoditized or it's being sold to somebody else for some other reason. Now, the AR was one component, but the virtual reality at the same time also poses a similar kind of security risks which are there. And these are the privacy issues in the metaverse, but then you have to understand that you are a vulnerable target in the metaverse. And your iris, your fingerprints, your scans, your voice, your facial geometry, your eye dilation, everything is a risk in a virtual reality, and it really raises privacy concerns altogether. And also, it can lead to the ransomware attack. It can lead to identity theft. It can lead to other kind of credential thefts. So these are the kind of thefts which can happen. These are the kind of cyber crimes which can happen because of the augmented reality and the virtual reality, which are the key components of metaverse. So we'll take a small break, and when we return back, we'll talk about privacy issues, identity theft, and flash impersonation with both the guests. Thank you so much, and stay tuned on Crypto TV. Blockchains have a bridge problem, and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests and holding a lot of currency, and unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure. Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dara, and we are talking about privacy issues, identity thefts in metaverse. So my next question to Deepika, to you is, in addition to the conventional threats like phishing, social engineering, ransomware, and malware attacks, some cyber threats are specific to the metaverse. It's no surprise that cyber criminals are gravitating towards the Web3 space. That's what the main intention is. So identity theft is another critical threat we have already discussed in the metaverse, and sophisticated attackers can be mounting to impersonate unsuspecting users, which then can be used to undertaking transactions on the user's behalf, which is actually a big concern as of now. So how would you like to explain this situation for our viewers? Certainly. What is happening currently in the 2D world, if we may establish an analogy there is, a lot of data sets are being bound to gain the trust of the user by conducting certain social engineering exercises and helping them believe that we are the people talking from the source that is trying to contact. Now, when we transcend to the 3D world even further, where users are a little aware of how to even identify the intermediary, certain blue ticks or certain verification marks are just a passe. They are age-old right now. We need to set up certain mechanisms in place where multiple checkpoints are dynamic in nature. And rather than the vendor or the contractor verifying the users, it should also be the other way around. The user should have the opportunity to verify the authenticity from where the source is coming. When we come to the 2D world, so I'll be shifting into both, to establish the analogy here. The veracity and the vitality of the information
because it is coming from multiple sources, is very, very difficult to comprehend. So we need to establish certain practices in place so that impersonations, data points, identity thefts, or certain identity access management systems don't have any loopholes that can, affect users in a negative manner. And more often than not, and this is something that through investigation of around more than 1,800 cases that our team has developed, air gapping or digital air gapping is a very important factor. Because if you break the link between your digital profile, your personal data, as well as your vital data, this is something that is going to go a very long way in safeguard. Cyber attacks are very linked. They are connecting the dots between point A to point B. If we break the connection between point A to point B, the public and the private profile, the professional and the personal profile, then I think it'll be difficult for the hackers to circumvent the same. So that's my number one giveaway to address this. So doctor, in a follow-up question to what Deepika has already mentioned about is, apart from the financial crimes, digital harassments through stolen identity is also possible, since you spoke about an incident that happened on a social networking site. Yeah, sure. What Deepika brought about the credential thefts, anybody can access your network credentials and can easily assume an identity in the metaverse. That's a very important point. And, they can compromise your network credentials of users through wearable gadgets itself. Like we have been talking about the AR, VR. So if somebody hacks into it, so you have real problem. And then you can have your financial and the personal information, which can be compromised. And it can be used for anything for that matter, which is possible. And when it comes to identity theft, you are really a vulnerable target for identity theft in the metaverse as well, right? And the VR headset, what we are wearing, is anybody can gain access to the motion tracking data. Exactly. Your sensors, you can create digital duplicates by leveraging your motion tracking data. So those are the kind of challenges which are going to always evolve as we go along, in the metaverse, as regards your credential and the identity thefts are concerned. So Deepika, we move to our next segment, which we are going to talk about NFT frauds and regulations on. So users are trading NFTs without enrolling in metaverse platform. That is actually the case study which we have got for you. And we want you to explain the situation for us to turn on profits. So risk including aggressive market manipulations, rug pulls, and honeypots are what all stakeholders should be cautious of, and how you can explain this situation that is actually going on in the metaverse as far as the NFT segment is concerned. I would like to headline this segment by talking about one example of a purported event which is being organized. It is known as the Hyperverse. A lot of campaigns were made, a number of people were invited, etc. The entire gimmick as a physical concert or an event is held, the same process was used in that. The reason I'm saying purported, because that event actually never happened. Nobody went to that event, it was never organized. At least in the tangible world, we have certain tangibility to test with. Metaverse takes us away from this. So this is the area that we are entering into, and that's why the veracity or identifying the checkpoints become very, very helpful. You are seeing plagiarism cases right now, even in the 2D world, the physical world where, songs or crafts or graphics are being plagiarized, let alone in the metaverse where there are multiple sources claiming that they are the originators of that particular NFT. And again, people should not go in a herd mentality that because so-and-so is buying it, because there are certain buzzes that are being generated that a person just named one particular GIF as a particular industry and end up getting bought. These are stories that people should understand that are planted to increase the gravitas in that particular scenario. And Sure. Not everything that you see on the internet is true. So again, we were talking about the zero trust policy. I would say up that with not only a zero trust or a proper validation part, but question everything. And prove your distrust only when you are not, happy with what you are being offered. Because this is something that
once the consumer understands the responsibility that they have on it, they will stop relying completely on the intermediaries for this. So fantastic. So my next question to to you is, digital art galleries are on the rise. But there is a risk of great digital NFT art heist looming in the metaverse. So if there is any such example, if you can just highlight for our viewers. And there's so many thefts which are happening, taking the NFT along. There are fake NFTs which are already there. And people who are buying NFT, they really don't know where the NFT is being stored, whether really they own the NFT altogether. And one of the case of the NFT thefts which were there that happened in February 2022, right, where there were almost 1.7 million worth of NFTs which are being siphoned off from one of the largest, NFT marketplace, that's OpenSea, and it really caused quite a havoc and a lot of noise about it. And we are seeing so much of scams related to NFT, and like I brought in the fake NFTs. And the major part is people really don't know where the NFT is stored today. Even if I buy an NFT, where is the NFT location, right? He paid for it, but then whether it's being sold or resold, or whether NFT existed at all, right? So that is how we are seeing so much of NFT thefts, in fact. And more so, if you have an NFT, the exchanges itself are so vulnerable. All right. So Deepika, my next question to you is, since we are talking about metaverse and the crimes related to it, so one of the biggest problem in the original art world is that it's becoming the lead way to launder money, and the NFT world is following suit. So if you can just give us some examples, if you can just explain the situation with some examples. So right now, the fad of Hollywood, Bollywood celebrities, and they actually auctioning some of their NFTs was actually in trend. And people always have had a craze, for being associated with certain celebrities. I'm not only talking about entertainment industry, but also scientists. Sure. There were reported facts of late Stephen Hawking sir's, the wheelchair parts which were there. Those were trying to be auctioned. And such kind of things, when they create an exclusive circle around the same, that only people who pass this barometer or parameter are eligible to buy the same. Mm-hmm. They create a very eliticized private market. So you can consider this when, certain stores right now also, especially in the elite cities in the world, don't allow you to come unless you're eligible to come to shop there. Just having money doesn't mean you are having the eligibility. So this was by far the most primest examples, because those people were so, you can say, fanatic fans of Dr. Hawking. But we saw that they did not verify the authenticity of the same, and were it the actual parts. And then it was found that the entire wheelchair of Dr. Hawking was already safe in place at one of his hometowns. So this is something that we need to analyze and just see that if they are creating this hype around the same, not fall prey. So doctor, can you just share one example with our viewers? How can you just explain this entire situation of a broader theft, or for that matter, a concern or crime which you have witnessed is, according to you, the biggest thing happened in the metaverse? So, like one of the crimes which is quite talked about, and it was by the Meta itself, when they were doing a beta testing of Meta. And one of the lady who was doing the testing itself became a victim, right? And she became a victim of groping and rape. And that was one of the start points where it itself, the Meta, which is supposed to be the originator and the most talked about, the creator of the metaverse right now. So that's how the things happened. So like any technology, it's really becoming a big problem. And then of late in the month of April also, we heard about a case of a lady being raped by some of the fellows who are there in the metaverse itself. And really, it's a really point of concern where your avatar can be molested or it can be raped. And because it's a
primarily an extension of our lives which are there, and these kind of crimes are very much prominent. So whatever are the real life crimes, we are actually taking them to the metaverse as well. So and since it is a metaverse without boundaries, so we are seeing the crimes like violence, obscenity, harassment, everything getting on to the metaverse as well. All right. So one last question to both the guests is, how important is regulation in this space? Since we're talking about a lot of crimes, a lot of concerns in this sector, what is the role of policymakers and regulators and importance of regulations in this sector? If I may take that question. Yeah. The roles of the regulators here is to be the sentinel for the common public, as also to be the watchguard for the providers or the contractors who are giving out the metaverse service. Because if either of them is, having certain lack replacements, or they are not being taken very, very seriously, the balance will not be maintained. Sure. And for that, the sentinel here just cannot, sit and be the judge, jury, and the executioner of the scenario, but also needs to be one of the most experienced, expert-based, analysts of the same. So I think the government rather has to move beyond, and I think certain, initiatives are already underway where they can assimilate the experts who've already built this thing, form certain actionable committees and not just committees for minutes of the meetings, and take certain decisions which are actionable for the consumers first, with the mentality of the consumer safety being the king here and not just the commercialization aspect. And also make sure that privacy and security, the lines are not merged. Often the debate is, should users' privacy or nation security being given example or, being given certain importance? I think if we find the right balance of both with the rightful cooperation of the intermediaries here, that is something that we will be moving towards a utopian metaverse. Utopian metaverse, that's a word coming in from Dipi. So Doctor, your last closing comments on the regulations. Yeah, very important. And one really has to understand that since metaverse is not going to be controlled by any government, right? And it's a cross-border kind of environment, what we are seeing. It's that every government will have to come on board to come up with some kind of a regulations, like even now what we are seeing for the crypto. Every government is coming up with their own regulations, and then they're trying to, come up with some thought process which are in sync with each other. Similarly, in the case of metaverse, we'll have to think of those kind of things, because it's not only the crime what we are talking of, it's an economy, because NFTs are the ones which are being transacted. That's a real hard money. And those kind of things, when it comes to money with crime, transborder, the regulations have to be really very stringent, very thoughtful, and they have to really think of how we have to, monitor the complete metaverse. And most importantly, which we have to see is we have to work on the digital forensics as well, because whenever the metaverse comes up, how do we really investigate a case when it happens? Right now, we talk to the cyber cops, like I was just bringing it out, trying to solve your cyber crime cases. The metaverse has got its own challenges of, technology-wise, processes-wise, the attack technique-wise, the privacy issue-wise. So those kind of things we really need to skill ourselves before the regulations come in, right? And then practically the meta cops, the meta laws which we talk of, even the laws have to be aligned to the metaverse crimes which are going to be there. So those kind of things which we'll have to really align ourselves to the metaverse in few years from now. Fantastic. So to conclude, the metaverse cybersecurity concerns are critical in the wake of rapidly evolving things. That's what both the guests have highlighted. So these issues need to be addressed with utmost sincerity and earnestness. So as the entire concept of metaverse evolves around the digital space, data concerns, data securities, thefts, its growing prospect is future will depend upon the data protection companies are able to extend to users, and that government will be responsible for the regulations on this. Thank you so much, Deepika, for being a part of this interaction and sharing your knowledge with our viewers. Doctor, thank you so much for being a part of this interaction. You spoke really well about all the aspects about the metaverse and the cybersecurity concern. Thank you to both the guests. Thank you.
Thank you for watching this special show on Digitally Unplugged. This is Manoj Dara signing off, but keep watching Crypto TV for more such interesting updates. Thank you. Today we are going to discuss Metaverse in details, and today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar. Metaverse is a 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. We can see the lot of development of the Metaverse in upcoming time. રઈસમાં શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી એનએફટીનો ધંધો ચાલુ કરી દીધું છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્વાણ એ પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીસ એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસી હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી એનએફટી જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક એનએફટી ક્રિએટ કેમ ના કરું. સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી એનએફટી લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ એનએફટી. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની એનએફટી માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ, તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4,100ની એક ટોયલેટ પેપર રોલની એનએફટી ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જ જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની એનએફટીમાં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર એનએફટી યુએસએની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની 4 મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ એનએફટીની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે. એનએફટી એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી એનએફટી ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મિન કંપની ઈચ એનએફટીની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસ રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ, ચેરિટી કરવાનું
આ જરા અતરંગી રસ્તો છે નહીં? તો આ કંઈ નથી, નેક્સ્ટ વિયર્ડ એનએફટી નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ એનએફટી નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન એનએફટી. આ એનએફટી વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક એનએફટી આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી એનએફટી બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે $1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી ક્રેઝી રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે. સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની એનએફટીને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7 કરોડ 65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો? તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાસ્ટ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ, અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ. ઓકે, થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ એનએફટી નું નામ છે સેલ યોર સોલ એનએફટી. યસ, ધેટ્સ વાય આઈ કોલ્ડ ઇટ વિયર્ડ. રિસેન્ટલી 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને એનએફટીનો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની એનએફટી મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ એનએફટી માર્કેટ પ્લેસ ઓપનસી ઉપર પોતાના સોલની એનએફટી લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ એનએફટી સેલ કરવામાં આવી છે. એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાનશેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ એનએફટી સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે, જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ્ડ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા ક્રેઝી જ કહેતા હતા જ્યારે તેને ઇલેક્ટ્રિક કાર અને રીયુઝેબલ રોકેટના કોન્સેપ્ટ્સને દુનિયા સામે પહેલીવાર મૂક્યા હતા. આજે એ વર્લ્ડનો રિચેસ્ટ મેન છે. સો સ્ટે હંગ્રી એન્ડ સ્ટે લિટલ ક્રેઝી ફોર સક્સેસ. અને આ મંત્ર સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. આવી વિયર્ડ, એક્સાઇટિંગ અને ક્રેઝી સ્ટોરી સાથે આપણે ફરી મળશું.
ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहेत, त्याचे किती प्रकार असतात, त्याचे फायदे काय आहेत, हे आपण मागील एपिसोड मध्ये जाणून घेतलं. तर आज आपण पाहणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे ॲक्टर्स आहेत. त्यात प्रथम क्रमांक आहे इन्व्हेस्टर, जे क्रिप्टो ॲसेटच्या दुनियेत सर्वात महत्त्वाचे ॲक्टर आहेत. म्हणजेच जी लोक वेगवेगळ्या क्रिप्टो ॲसेटमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्ट करतात. तुम्हाला माहित आहे का, सर्वात जास्त क्रिप्टो ओनर्स हे भारतात आहेत, म्हणजेच जवळपास 10 करोड एवढे. आणि ह्यामध्ये सर्वप्रथम 24 वयोगटातील तरुण मंडळी आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला कळत असेलच की तरुणाईमध्ये याचा जास्त क्रेज पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फायनान्शियल इंटरमिजिएटरीज, म्हणजेच आर्थिक मध्यस्थी. क्रिप्टो ॲसेटच्या मार्केटमध्ये जे दुसरे मेन ॲक्टर आहेत ते आहेत ब्रोकर आणि ॲडवायझर. स्टॉक मार्केट प्रमाणेच येथे सुद्धा ब्रोकर्स आणि ॲडवायझर्स ट्रेडर्सला क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ॲडवाइज करत असतात. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण म्हटलं तर आहे ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सचेंजेस. यामध्ये ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि एक्सचेंजेसवर क्रिप्टो ॲसेटची होते जास्तीत जास्त डीलिंग. जगातील टॉप 5 एक्सचेंजेस आहेत बायनान्स, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, कारकेड आणि कुकॉइन. आणि भारतात जर पाहिलं तर टॉप एक्सचेंजेसमध्ये कॉइनस्विच, कुबेर, वझिरेक्स इत्यादी आहेत. चौथ्या क्रमांकावर आहे वॉलेट प्रोव्हायडर्स. आपल्याला तर माहीतच आहे की क्रिप्टो करन्सी ही नेहमी वॉलेट्समध्ये स्टोअर केली जाते, मग ते हॉट वॉलेट असू दे किंवा कोल्ड वॉलेट. ग्लोबली जर पाहिलं तर भरपूर असे वॉलेट्स प्रोव्हायडर आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस वॉलेट, जे बिगनर्ससाठी खूप चांगलं आहे. नंतर इलेक्ट्रियम वॉलेट, जे खास करून बिटकॉइनसाठी चांगलं आहे. त्यानंतर मायसिलियम, जे मोबाईलसाठी चांगलं आहे. नंतर लेजर नॅनो एक्स, हे ऑफलाईन क्रिप्टो वॉलेटसाठी चांगलं आहे. आणि शेवटी एक्झोडस, हे डेस्कटॉपसाठी चांगलं आहे. तर आपण पुन्हा वळणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटच्या ॲक्टर्सकडे. तर 5व्या क्रमांकावर आहे पेमेंट आणि मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेटचे बरेच ट्रान्झॅक्शन हे व्हिसा कार्ड आणि मास्टर कार्ड सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून सुद्धा करता येते. खरं तर यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट डीलिंगसाठी मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस, जे शॉपिफाय आणि वूकॉमर्स सोबत इंटिग्रेट करते.
BitPay हे वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट गेटवे आहे आणि यावर भरपूर प्रकारचे वर्सटाईल पेमेंट ऑप्शन आहेत. यासारखंच कॉइनगेट सुद्धा खूप ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सोबत इंटिग्रेट करत असतात. पुढे 6व्या क्रमांकावर जर म्हटलं तर आहे लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्सची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे. तसेच हाय लिक्विडिटीचा अर्थ आहे प्राइस स्टेबल असणं आणि त्यात कोणत्याही प्रकाराचे चढ उतर नसणं. आता यामध्ये 5 लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स आहेत, ज्यामध्ये लंडन UK मधून FXCM Pro, मॉस्को रशियामधून B2 ब्रोकर, सायप्रस मधून लेव्हिरेट आणि लंडन UK मधून X ओपन हब आणि भरपूर सारे आहेत. नेक्स्ट 7व्या क्रमांकावर आहे मायनर्स आणि व्हॅलिडेटर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये होणारी सर्व ट्रान्झॅक्शनला मायनर किंवा व्हॅलिडेटर्स अप्रूव्ह करत असतात. मायनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करतात आणि व्हॅलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेकला. निश्चितच आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असणार की क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कोण असतात आणि कोण कोण यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात. मग चला तर प्रश्नाची उत्तरं आम्ही आपल्याला देतो. बघा, क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 5 पार्टिसिपेंट असतात. फर्स्ट, युजर्स, जी लोक या लीगल एंटिटीज म्हणजेच कायदेशीर संस्थांमध्ये असतात, जे क्रिप्टो ॲसेट सोबत पिअर टू पिअर पेमेंट करत असतात किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे परचेस किंवा सेल करत असतात. सेकंड, मायनर्स, ब्लॉकचेनवर होणारे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे प्रूफ ऑफ वर्क कन्सेन्सस मेकॅनिझमच्या थ्रू मायनर्स हे व्हॅलिडेट करत असतात. यासाठी मायनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअरचा अजून खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्युटिंग पॉवरसाठी वापर होत असतो. या कामाच्या बदल्यात मायनर्सला नेहमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो ॲसेटमध्ये कॉम्पेन्सेट केलं जातं. थर्ड, क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून युजर्स आपल्या क्रिप्टो ॲसेटला फिएट करन्सीच्या बदल्यात किंवा दुसऱ्या क्रिप्टो ॲसेटच्या बदल्यात एक्सचेंज करू शकतात. या सर्व्हिसेससाठी क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस हे फीस चार्ज सुद्धा करते. हे एक्सचेंजेस कोणत्या ॲडमिनिस्ट्रेटर सोबत संलग्न आणि स्वतंत्र असू शकते किंवा थर्ड पार्टी प्रोव्हायडर सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल Bitfinex आणि कार्केड. फोर्थ, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या ऐवजी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा ट्रान्झॅक्शन फॅसिलिटेट करत असतात, जे अशा मार्केट प्लेस सारखे काम करत असतात जे वेगवेगळ्या युजर्सला कनेक्ट करतात. एक्सचेंजेस सारख्या या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म क्रिप्टो ॲसेटला परचेस किंवा सेल नाही करता येत, तर फक्त त्याच्याकडे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनला फॅसिलिटेट करत असतात. 5. वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सला असे वॉलेट प्रोव्हाइड करतात जे क्रिप्टो ॲसेटची होल्डिंग, स्टोरेज आणि ट्रान्सफर्समध्ये हेल्प करतात. हे वॉलेट्स युजर्ससाठी प्रायव्हेट की होल्ड करत असतात आणि युजर्सला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर उपस्थित पब्लिक कीच्या माध्यमातून क्रिप्टो ॲसेटमध्ये ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी मदत करत असतात. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सची ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री अशा प्रमाणे मेंटेन करतात की जी रीडेबल असेल, जेणेकरून ट्रान्झॅक्शनची सिक्युरिटी राखली जाईल. वॉलेट प्रोव्हायडर सुद्धा 2 प्रकारचे असतात, एक हार्डवेअर आणि दुसरे सॉफ्टवेअर वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट्सला स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा 2 पद्धती असतात, एक ऑनलाईन म्हणजेच हॉट वॉलेट आणि दुसरे ऑफलाईन म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज. कधी कधी एक्सचेंजेस युजर्सची क्रिप्टोग्राफिक कीला सेफगार्ड करून कस्टोडियन वॉलेट प्रोव्हायडर्सला फायदा सुद्धा पोहोचवत असते. तर मित्रांनो, क्रिप्टो ॲसेट्सच्या खास प्रोग्राममध्ये सध्या एवढंच. मला आशा आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन तुमच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं आम्ही निरसन केलं असणार. क्रिप्टो विषयीचे अशाच प्रकाराचे नवीन टॉपिक्स आम्ही आपल्या समोर घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. बाय.
changing, we will too. ट्रेड वही होगा, ट्रेंड हम बदलेंगे और साथ ही बदलेगा फ्लेवर भी। सिर्फ क्रिप्टो की बातें होगी with lots of fun. So be ready for the new experience with us. Death is significant and inevitable part of life. Thinking and talking about it may be considered dystopian. However, when it comes to financial matter, it is best to anticipate the inevitable and take adequate precautions and make appropriate provisions. Tongzo, a 33-year-old, lost his life savings after vesting his funds with a cryptocurrency trader who died, taking the password to access funds to the grave. Zoe is among the thousands of customers left in lurch after following Gerald Jerry Cotton's mysterious death in 2018 at an age of 30, leaving $150 million worth of crypto assets in limbo. Zoe trusted Quadriga CX, Canadian largest cryptocurrency exchange, with $500,000. A big chunk of it was given to him by his parents, but when co-founder Cotton died during a honeymoon in India, the money was lost forever. Investing in cryptocurrency is considered risky, and to dive without detailing on how to access the savings for near and dear ones can be termed as irresponsible. This is Manoj Dara. You are watching a special show on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? There are plenty of examples of horror stories of people passing away without making a proper plan to bequeath their crypto holdings to their family. According to a study by Cremation Institute, nearly 90% of the crypto owners are worried about what will happen to their crypto after they pass away. As far as cryptocurrency is concerned, it's important to understand how to secure your cryptocurrencies and leave instructions with your loved ones for retrieving your financial assets after you die. There are a number of ways for crypto investors to bestow their crypto to the next generation. All crypto traders store their holdings either in hot wallets or cold wallets. Sharing keys with trusted family members is probably one of the most straightforward methods to pass on your cryptos. Some of the most prominent people in the crypto industry have publicly claimed to use this method to ensure their crypto fortunes get passed on to the next generation. Hal Finney, an earlier supporter of Bitcoin and recipient of the first Bitcoin transaction from BTC creator Satoshi Nakamoto, willed his crypto holdings to his children by simply providing his keys. This crypto inheritance practice of sharing the keys with the trusted family members is straightforward but may not be suitable for everyone in the crypto community. This way of bequeathing Bitcoin could also be considered risky, as shared keys come with the responsibility of keeping those assets secure. As far as hot wallets are concerned, major cryptocurrency exchanges from around the world allow the bereaved to gain access to the family members' assets after providing a number of documents, including a death certificate and a last will. There are also some projects that are dedicated to ensuring the inheritance of digital assets. For example, companies such as Safe Haven, CASA and Trustverse are working on their own solutions that allow people to bequeath their crypto assets using blockchain technology and cryptography. Protecting our family and loved ones is every individual's top priority. So make sure you have a proper plan and a will in place so that even when you are not around, your crypto holdings are there to protect your family's financial future. We will leave you with a slice of conversation Crypto TV had with Mr. Jeetu Kataria, CEO DIFX, where he emphasized about a new nomination feature his exchange has introduced. The biggest tech what we have integrated just this month and we went live with our architectural change is the nomination program, wherein what we feel that we have seen lots of exchanges today. I won't name these exchanges, but they are sitting on billions and billions of dollars of crypto assets which are unclaimed, wherein the family members of these users who just gone, who died, they don't know how to get these assets. Today, within 6 months, we made this whole platform of DIFX nomination program, wherein you can nominate up to 5 family members, and if anything happens to you,
automatically these all assets what you have on DIFX platform will automatically goes to your family members, and that's all is on blockchain. Everything what a user is putting in is recorded on the blockchain. So that's how tech and transparency we have shown to the world that how an exchange should run. Thank you so much for watching this special story on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? Please like, subscribe and share. Thank you. आजकल जहां देखो NFTs की चर्चा है, जिसे देखो वो NFT बना रहा है या बेच खरीद रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज तो इससे करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NFT बनाना कोई रॉकेट साइंस है, इससे कमाना बेहद मुश्किल है, टू कॉम्प्लिकेटेड या टू टेक्निकल है, तो मैं आपको बता दूं कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। NFT बनाने के लिए आपको थोड़ा टैलेंट, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा लक चाहिए। लक इसलिए ताकि आपका आर्ट ऑडियंस के साथ क्लिक करे। तो चलिए बातों में वक्त नहीं गवाते हैं, आपको NFT बनाने का इजी वे बताते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की NFT बनानी है, और वो कुछ भी हो सकता है। कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो गेम कलेक्टिबल, कोई मीम, जिफ, यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी। बस जो भी हो वो रेयर हो और यूनिक हो। इससे आपकी NFT को वैल्यू मिलेगी, और हाँ, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वरना कोई लीगल ट्रबल हो सकती है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिजिटल एसेट सिलेक्ट कर लिया तो उसे NFT बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन को अपनी NFT के लिए यूज करना चाहते हैं। इन दिनों NFT आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। बाकी पॉपुलर ऑप्शंस हैं टीजोस, Polkadot, Cosmos and Binance Smart Chain. स्टेप नंबर 3, अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है तो फिर आपको डिजिटल वॉलेट बनाना होगा अपनी NFT क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपनी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी, और इस वॉलेट के थ्रू आप अपने डिजिटल एसेट को एक्सेस कर पाएंगे। Coinbase, WazirX, Zep कुछ पॉपुलर इंडियन NFT वॉलेट्स में से हैं। MetaMask, मैथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट। ग्लोबली ये वॉलेट्स काफी यूज किए जाते हैं। आपके वॉलेट में कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ज्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स ईथर एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है तो उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करें, so that you can use it to create and sell NFTs. स्टेप नंबर 4, एक बार आपका डिजिटल वॉलेट बन गया और आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है, तो अब आप NFT क्रिएट और सेल करने के लिए तैयार है। बस एक अच्छी डिटेल रिसर्च करके बेस्ट NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करनी है आपको। WazirX, Collection, Mint, BeyondLife.club जैसी कई अच्छी मार्केटप्लेसेस हैं इंडिया में, जिन पर गैस फीस भी ज्यादा नहीं है। WazirX $1 की गैस फीस पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। कलेक्शन सेल प्राइस का 5% लेता है। तो वहीं इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर मार्केटप्लेस OpenSea की गैस फीस $100 से $150 के बीच रहती है। OpenSea के अलावा Axie, Larva Labs, NBA Top Shot, Rarible ये कुछ बेस्ट मार्केटप्लेसेस में से एक हैं। लेकिन आपको अपनी NFT के हिसाब से मार्केटप्लेस चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेम NFT के लिए Axie मार्केटप्लेस है, बास्केटबॉल फोकस्ड NFTs के लिए NBA टॉप शॉट है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ मार्केटप्लेसेस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है और उनके प्लेटफॉर्म पर वही यूज होती है, जैसे कि Rarible। NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप NFT मिंट करने के लिए नेसेसरी फीस चुका पाए। स्टेप नंबर 5, अब आप अपनी NFT को अपलोड करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिलेक्टेड NFT मार्केटप्लेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है एज टू हाउ टू अपलोड योर NFT,
और इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी NFT फाइल जो कि PNG, GIF, MP3 या कोई भी और फाइल टाइप हो उसे मार्केटेबल NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप 6, अपनी NFT को मिंट करने के लिए फाइनल स्टेप पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कैसे मोनेटाइज करेंगे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन फिक्स्ड प्राइस। आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जो भी पहला इंसान वो प्राइस देने को तैयार होगा वही आपका बायर होगा। टाइम्ड ऑक्शन। टाइम्ड ऑक्शन से ऑडियंस को एक टाइम लिमिट मिलेगी, यानी थोड़ा वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितने पर बिड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन अनलिमिटेड ऑक्शन। इस तरह की ऑक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें अपने हिसाब से ऑक्शन को एंड कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी NFT का मिनिमम प्राइस सेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। उस पर रॉयल्टी रखें ताकि अगर आपकी NFT किसी सेकेंडरी मार्केट पर रीसेल हो तो आपको उसका फायदा मिलता रहे। NFT कैसे क्रिएट और सेल करें वो तो आप समझ गए हैं। NFT बाय करने का प्रोसेस भी बहुत इजी एंड सिमिलर है। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाएं, उस वॉलेट को फंड करें, बेस्ट मार्केट प्लेस चूज करें, वॉलेट को उस मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट करें, फिर जो भी NFT आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बिड सबमिट कर दीजिए और अब आप अपनी पसंदीदा NFT खरीद पाएंगे। नाउ दैट यू नो ऑल अबाउट NFTs, तो देर किस बात की, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए और उतर जाइए NFT मार्केट के मैदान में। क्या पता बिग बी की तरह आपकी NFT भी करोड़ों कमाए। क्रिप्टो से जुड़ी और कई चीजों को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरीज जरूर देखिए। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे। ये पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया। नमस्कार, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। मेटावर्स या नावामुळेच भविष्यातील होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे स्पंदन मिळते। आज आपण पाहणार आहोत की का ग्लोबल ब्रँड्स हे मेटावर्स मध्ये आपलं प्रेझेन्स वाढवत आहेत। शेवटी या मेटावर्स मध्ये असे काय आहे की यास ॲडव्हर्टायझिंगचे भविष्य म्हटले जात आहे। जर तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंगच्या फ्युचर बद्दल माहिती करून घ्यायची असेल तर एकदा त्याच्या भूतकाळाबद्दलही जाणून घेऊया। मायकेल एड्रिच नावाच्या इंग्लिश इन्व्हेंटर कम एंटरप्रेनरने असे काही केले की ज्यामुळे शॉपिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया ही कायमचीच बदलली। त्यांनी पहिल्यांदाच टीव्हीवर ॲड पाहून एखादं प्रोडक्ट खरेदी करून एक छोटीशी सुरुवात केली जी आज ई कॉमर्स आणि डिजिटल मार्केटिंगची मल्टी-बिलियन डॉलरची इंडस्ट्री बनली आहे। मग ब्रँडने इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विट आणि इन्स्टाद्वारे अग्रेसिव्हली आपल्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली। सर्व काही ठीक सुरू होतं, पण कोविडच्या लाटेमुळे जग ठप्प झाले, अर्थव्यवस्था ठप्प झाली। लॉकडाऊन दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगमुळे लोकांनी व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये आपलं इंटरॅक्शन वाढवलं। यामुळे रिटेल सेल ही खाली घसरली आणि ई कॉमर्सने मोठ्या प्रमाणात उभारी घेतली। मग काय, ऑब्वियसली अपेक्षापेक्षाही डिजिटल मार्केटिंगचे बजेट वाढले आणि तिथून मेटावर्स नावाची सर्वात मोठे टेक्नॉलॉजी रेव्होल्यूशन सुरू झाले। जागतिक बँकिंग कंपनी सिटी ग्रुपच्या मते 2030 पर्यंत मेटावर्स मध्ये 13 ते 14 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार आहे, ज्यापैकी $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त मेटावर्स ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धीसाठी वापरले जाईल। हा $14 ट्रिलियन आकडा इतका मोठा आहे की
जर तुम्हाला याचे रूपांतर रुपयात करायचे झाले तर तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलेटर छोटे पडेल. मेटावर्समध्ये ई कॉमर्स आणि ट्रेडिशनल रिटेल स्पेस मिळून बिझनेस ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगचा नेक्स्ट फेज तयार होणार. एका लेटेस्ट स्टडीनुसार कळलं आहे की आपले ॲव्हरेज अटेन्शन स्पॅन फक्त 8 सेकंडचे असते. आता रिटेलर्सला कळलं आहे की फक्त 8 सेकंदात ग्राहकाला त्यांचा प्रोडक्ट्स बद्दल सांगून ते प्रोडक्ट्स विकणे हे खूप कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता वन ॲड्स फिट ऑल सारखे जनरलाइज ॲड कॅम्पेन सारखं काम नाही चालणार. आता ॲडव्हर्टायझिंग वर्ल्ड हे पर्सनलाइज वर्ल्डकडे आपलं ध्यान केंद्रित करत आहे. तुम्हाला वाटेल पर्सनलाइज ॲड म्हणजे प्रत्येक ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या जाहिराती, हे कसं शक्य आहे? वेल, आय सेट मेटावर्स आहे तर हे शक्य आहे. होय, मेटावर्स मधील मोठ्या कंपनीज या ना केवळ ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या पद्धती बदलत आहेत, तर कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि ब्रँड इंटरॅक्शनद्वारे सुद्धा पर्सनलाइज टच देऊन रेव्होल्युशनलाइज करत आहेत. उदाहरणार्थ, भारतात 2022च्या व्हॅलेंटाईन्स डेवर कॅडबरी डेअरी मिल्क सिल्कने हाऊ फार विल यू गो टू मेक देम ब्लश लॉन्च केले, जे लव्ह बर्डसाठी ऑगमेंटेड रियालिटी टेक्नॉलॉजी ड्रायव्हन ॲड कॅम्पेन सुरू केलं होतं, ज्यामध्ये लव्ह बर्ड्स एकमेकांना सिक्रेट लव्ह नोट्स देऊ शकतात, ज्याला कोणतेही न्यूजपेपर ॲड, होर्डिंग किंवा बिलबोर्डला आपल्या मोबाईलद्वारे स्कॅन करून इमर्सिव्ह वर्ल्ड ऑफ ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये बघता येऊ शकतं. एवढंच नाही तर या कॅम्पेनमध्ये एका लकी कपलला चंद्रावर डेटसाठी देखील पाठवण्यात आलं होतं. खरं तर हा चंद्र मेटावर्समध्ये आहे आणि ही व्हर्च्युअल डेट व्हर्च्युअल मूनवर अरेंज करण्यात आली होती. भारतात ऑगमेंटेड रियालिटी आणि मेटावर्सला मर्ज करणारा हा पहिला ॲड कॅम्पेन होता. आता तर ही सुरुवात आहे. मेटावर्समध्ये तर अशी हायपर पर्सनलाइज ॲड्सची सुनामी येणार आहे जी ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया बदलून ठेवणार आहे. जगातील मोठ्या मोठ्या कंपनीज या मेटावर्सला घेऊन फार एक्साइटेड आहे. फेसबुक बद्दल बोलायचे झाले तर झुकरबर्गने तर ह्याचे नाव बदलून मेटा ठेवले आहेत. असं म्हटलं जातं की येणाऱ्या डेकेडमध्ये फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी ही पूर्णपणे मेटावर्स कंपनीमध्ये ट्रान्सफॉर्म होऊन जाईल. फेसबुक किंवा मेटा प्लॅटफॉर्म्स आपल्या सबसिडरी रियालिटी लॅब्सच्या थ्रू AR आणि VR ग्लासेस डेव्हलप करत आहेत, ज्यामुळे फिजिकल वर्ल्ड आणि डिजिटल वर्ल्डला मिळून एक डिजिटल रियालिटी क्रिएट करण्यात येईल, ज्यामुळे ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगसाठी एक सर्वात मोठा नवीन एव्हेन्यू ओपन होणार आहे. मेटाप्रमाणेच मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल मध्ये सुद्धा अफोर्डेबल AR किंवा VR ग्लासेसला मार्केटमध्ये लॉन्च करण्याची रेस लागली आहे. आणि खेळ हा फक्त चष्म्याचा नाही आहे. ह्या सर्व कंपनीज आपल्या मेटावर्स सुद्धा लॉन्च करणार आहेत. ज्याचा चष्मा आणि मेटावर्स मार्केटमध्ये हिट झाला तर समजून जा की त्यावर ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी पैशांचा पाऊस पाडतील. यामध्ये काही शंका नाही. फक्त टेक कंपनीजच नाही तर ऑटोमोबाईल पासून फॅशन इंडस्ट्री पर्यंत सर्व मोठ्या कंपनीज या मेटावर्समध्ये आपले ब्रँडिंग करतील. ह्युंडाई, डिझनी, ॲमेझॉन, गुची, लुई विटॉन, कोका-कोला, रिलायन्स, इन्फोसिस, सॅमसंग, नायकी सारख्या बऱ्याच कंपनीज मेटावर्समध्ये आपल्या ब्रँडिंगवर 24/7 काम करत आहेत. कारण एका स्टडीनुसार 2026 पर्यंत जगातील 25% लोक डेली ॲटलीस्ट 1 तास मेटावर्समध्ये स्पेंड करतील. येणाऱ्या काळात वर्क, शॉपिंग, एज्युकेशन, सोशल फंक्शन आणि एंटरटेनमेंट सर्व काही मेटावर्समध्ये होणार. इन शॉर्ट, जसजसे मेटावर्समध्ये लोक ॲड होतील तसतसे ब्रँड आपले ॲड्स त्या ठिकाणी ॲड करत जातील. कोणत्याही ब्रँड्स किंवा बिझनेसला Web3 ची फ्युचरिस्टिक वेव्हला राईड करून आपली जागा बनवायची असेल तर त्यांना टेक सॅव्ही बनून मेटावर्स ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या सोबत आपले पाऊल पुढे घेऊन जावे लागेल. नाहीतर ते ब्रँड आणि कंपनी कुठे हरवतील ह्याचा पत्ता कोणालाही लागणार नाही. आजच्या या एपिसोडमध्ये
बस एवढंच. मेटावर्स बाबत अजून बरेच एक्साइटिंग अपडेट्स घेऊन मी तुमची क्रिप्टो दोस्त अँड होस्ट वैभवी सावंत तुमच्या भेटीला पुन्हा येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. रईस फिल्म में शाहरुख का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा. अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. वेल, एनएफटी के कुछ दीवानों ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और एब्सोल्युटली क्रेजी और वियर्ड एनएफटीज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. Hi, I'm Ruchi Sharma and I'm back with a list of crazy, weird, bizarre, outlandish, completely mad NFTs for you. अब आप कहेंगे रुचि यार तुम हर बार NFTs की बात क्यों करती हो? तो इसलिए क्योंकि I can talk NFTs, I can walk NFTs, I can eat NFT, I can drink NFT and when I sleep, I dream about NFTs. ये NFTs का चस्का ही कुछ ऐसा है यार. लेकिन NFT के लिए मेरा चस्का इज नथिंग कंपेयर टू द फॉलोइंग 3 NFT ओनर्स एंड क्रिएटर्स. इन तीनों ने तो क्रेजी बनने की हदें ही पार कर दी हैं. जानना चाहते हैं? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्रेजी NFTs की लिस्ट में सबसे ऊपर है सेल योर सोल NFT. नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, आपने बिल्कुल ठीक सुना. अब NFTs पर आत्माओं का डेरा हो गया है. पता नहीं कब किस क्लिक के साथ किसकी आत्मा NFT आपको पोजेस कर ले. वेल, एज यू नो, आई एम अ बिट फिल्मी, तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है. बट डोंट वरी, इस आत्मा की NFT का हॉरर से कोई लेना देना नहीं है. तो हुआ कुछ ऐसे कि 21 साल के स्टीजन वैन नाम के डच स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर NFT का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने पॉलीगॉन पर अपनी सोल यानी आत्मा की ही NFT मिंट कर डाली. इतना ही नहीं, बंदे ने वर्ल्ड की बिगेस्ट NFT मार्केट प्लेस ओपन सी पे अपनी आत्मा की NFT को लिस्ट भी कर दिया. अरे कोई जाकर इस डच स्टूडेंट से पूछे कि भैया तुम्हारी 7 पुश्तों में भी किसी ने आत्मा को देखा है? लेकिन ये पागलपन यही खत्म हो जाता तो भी कोई बात थी. लेकिन ना, शेर को सवा शेर मिल गया और किसी बेहद समझदार इंसान ने इस डच स्टूडेंट की आत्मा की NFT को 300 यूरोज यानी करीब 25,000 रुपए में खरीद लिया. क्या क्या क्या? मेरा भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही रिएक्शन था. इस डच स्टूडेंट की सोल वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन सोल यानी आत्मा है जिसे बतौर NFT बेचा गया है. इसीलिए जनाब ने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी आत्मा की NFT की मार्केट वैल्यू अराउंड $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए बताई है. अब इन्होंने अपनी सोल की NFT की इतनी क्रेजी वैल्यूएशन क्या सोच कर रखी है, इसका जवाब तो शायद बेचारे की आत्मा को भी नहीं पता होगा. और सुनिए, अपनी आत्मा की NFT के साथ इस डच स्टूडेंट ने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट भी अटैच किया है जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ओनर उसकी सोल को यूज, रीसेल या फिर किसी डेटी को सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ा सकता है. वाओ, इट सडनली टुक अ वेरी डार्क टर्न, है ना? अगर आपको दुनिया का पहला सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. गो अहेड. फिलहाल तो मेरा दिमाग क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लोड हो रहा है कि आफ्टर ऑल सोल की ओनरशिप कैसे मिलेगी, सोल को यूज, रीसेल और आत्मा की बलि कैसे दी जाएगी. फिल्मों में तो हमने देखा है कि सोल इज लाइक थिन एयर, बिल्कुल आर पार. खैर, दीवानों की बातें दीवाने समझे. अब बात सेकंड क्रेजी NFT और उसके अतरंगी क्रिएटर की, जिन्हें कहा जाता है बॉडी हॉरर फिल्मों का मास्टर. पिछले 50 सालों में वर्ल्ड सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड द फ्लाई,
डेड रिंगर्स, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और अपकमिंग विगो मॉर्टेंसन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर के डायरेक्टर मिस्टर डेविड क्रॉननबर्ग, जो आजकल अपनी फिल्मों के लिए नहीं पर रियल लाइफ बॉडी हॉरर टाइप NFT के लिए सुर्खियों में है। इनके NFTs का नाम है इनर ब्यूटी कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स। याक। अनफॉर्चुनेटली जैसा नाम वैसी NFT। डायरेक्टर साहब को पता नहीं अपने किडनी स्टोन में क्या इनर ब्यूटी दिख गई कि उन्होंने अपनी पथरी की फोटो की NFT बना दी। सुपर रेयर नाम की क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेस पर 28 मार्च 2022 को किडनी स्टोन के फोटो की NFT रिलीज भी कर दी। भला किडनी स्टोन भी कोई दुनिया को दिखाकर बेचने वाली चीज है, पर लोग NFT बनाकर बेच रहे हैं और हैं कुछ नमूने जो उसे परचेज भी कर रहे हैं। इयो। वैसे क्रॉननबर्ग ने इस साल से पहले सितंबर 2021 में द डेथ ऑफ डेविड क्रॉननबर्ग नाम की शॉर्ट फिल्म को NFT बनाकर नॉन फंजिबल टोकन की दुनिया में डेब्यू किया था। ये 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी काफी वियर्ड थी, जिसमें डेविड अपनी डेड बॉडी को देखते हैं, फिर अपनी डेड बॉडी से चादर खींचकर बगल में सो जाते हैं। अब इस वियर्ड आर्ट के मतलब का क्या सर पैर निकालें, लेकिन किसी ने इस NFT को $90,000 यानी अराउंड 69 लाख में परचेज किया था। भाई ये सुपर रिच और सुपर क्रिएटिव लोगों को समझना हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में 69 लाख रुपए उड़ा दिए। पता नहीं इनके किडनी स्टोन्स की NFT कितने में बिकेगी। इसे भी कोई खरीद ही लेगा जिसकी अकल पर पत्थर पड़े होंगे। खैर, ये किडनी स्टोन एट द एंड ऑफ द डे रियल तो है, लेकिन हमारी नेक्स्ट NFT एक ऐसे रॉक के बारे में है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी एक क्रेजी NFT लवर ने इस वर्चुअल रॉक की NFT के लिए पे किए हैं $1.3 मिलियन, यानी अराउंड 10 करोड़ रुपए। मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे रईस जो 100-200 करोड़ मुझे किसी NFT के लिए ऐसे ही हंसते हंसते दे दे। आफ्टर ऑल मेरे गार्डन में भी बहुत से पत्थर हैं। एनीवेज, इस NFT का नाम है क्लिप आर्ट ऑफ एथर रॉक। दरअसल ये कार्टून रॉक्स की JPEG इमेज दुनिया में सिर्फ 100 है, जिसे 2017 में क्रिप्टो पंक्स के बाद एज ए इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टेबल NFT लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम बाइंग, कलेक्टिंग एंड सेलिंग, इसकी कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे ट्रॉन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर जस्टिन सन ने सिर्फ अपना कॉलर टाइट करके इंप्रेशन झाड़ने के लिए खरीदा है। भाई वड्डे लोग वड्डी बातें। वर्चुअल पत्थर की फोटोग्राफ को करोड़ों में खरीद रहे हैं। हमें तो किचन में नया मार्बल लगवाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। Well, that's all in my list of wacky NFTs for now. ऐसी ही अतरंगी NFT की एक और नई क्रेजी लिस्ट के साथ मैं रुचि शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। थ्री 4D और यहाँ तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। हाय, क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथेरियम बद्दल जाणून घेऊया। इथेरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथेरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच। इथेरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे। गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत। इथेरियम हे डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो। इथेरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे। हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते। हे ॲप्लिकेशन इथेरियम नेटवर्कवर चालवता येतात। इथेरियम आर्किटेक्चरचे 2 पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी
आणि इथिरियम ब्लॉकचेन. इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटरीन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते. तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला. ब्युटरीनला गणितात रस आहे. त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते. इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाराशिवाय. हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात. इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत. वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच. उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो. इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात. इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सी बद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्ही मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पॅम अशा बऱ्याच शब्दांमध्ये फसली आहे सध्या एनएफटीची दुनिया, ज्याने आता एनएफटीची जेन्युइनिटीवर एक मोठा प्रश्न उभा केलाय. मागील एका वर्षात जसजसे एनएफटीच्या ट्रेंडमध्ये गती पाहायला मिळाली, एनएफटीज मोठ्या प्रमाणात ह्यूज कलेक्शन्स करत होती. त्याला पाहून तर असंच वाटत होतं की एनएफटीज हे असं स्पीडीली पुढे जात आहे की त्याला न कोणी थांबू शकेल न कोणी हरवू शकेल. परंतु आता अचानक एनएफटीजवर बरेच आरोप लागत आहेत, ज्यामुळे मोठे मोठे एनएफटी मार्केट प्लेस आता कठोर भूमिका घेत आहेत. वास्तविक पाहिलं तर एनएफटीची सर्वात मोठी मार्केट प्लेस ओपनसीवर त्यांच्या इंटरनल कलेक्शन स्टोअर फंड कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून युजर्सला जेवढी पाहिजे तेवढी एनएफटीज मिंट करण्याची कन्व्हिनियन्स होती. मात्र या सुविधांचा मोठा फटका आता ओपनसी आणि त्यांच्या बऱ्याच बायर्स आणि सेलर्सला सहन करावा लागतोय. झालं असं की या सर्व्हिसचा चुकीचा फायदा उचलत बऱ्याच लोकांनी फेक एनएफटी कलेक्शन्स लॉन्च केली. हो, ओपनसीने स्वतः उघड केलाय की फ्री मिंटिंग एनएफटीज नुसार लॉन्च केल्या गेलेल्या एनएफटीज मध्ये 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शन्स आणि स्पॅम आहे. ओपनसीच नाही तर अजून अशा बऱ्याच एनएफटी मार्केट प्लेस मध्ये आहेत जे या स्कॅमच्या फंद्यात अडकले आहेत. अजूनही त्या अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत.
जसे की डेबियन आर्टने मागील काही महिन्यांमध्ये 80,000 फ्रॉड अलर्ट जारी केले आहेत. एवढंच नाही तर एक अजून प्लॅटफॉर्म लुक्स रेअरवर वॉश ट्रेडिंग सारख्या फसवणुकींमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. चला तर पाहूयात वॉश ट्रेडिंग हे काय असतं. कधी कधी एकाच ग्रुपची लोक आपसात एनएफटीला बाय आणि सेल करून अवैधरित्या त्या एनएफटीची ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि व्हॅल्यू हे दोघांनाही वाढवत असतात. बरं, चला काही उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊयात. मित्रांनो, तुम्ही बिपलला तर ओळखतच असाल, ज्यांची एनएफटी एव्हरी डे द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन आतापर्यंतची हायेस्ट एनएफटी कलेक्शन केली आहे. ज्या आर्टचे बायर मेटा कोवन ऍक्च्युअली बिपलचे बिझनेस पार्टनर आहे आणि हे वॉश ट्रेडिंग मोठ्या लेवलवर होत आहे. एका रिसर्चनुसार 2017 मध्ये 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड झाल्यात आणि टोटल ट्रेडर्स मधून फक्त 10% ट्रेडर्सने 90% एनएफटी ट्रान्झॅक्शन्स केली आहेत आणि हाच ग्रुप 97% एनएफटीजला कमीत कमी एकदा तरी ट्रेड नक्कीच करतो. म्हणजेच या एनएफटीची व्हॅल्यू आणि ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवण्यासाठी एक ग्रुप एकत्र येऊन आपली साठगाठ करून आपले हेतू साध्य करतात. एनएफटीच्या दुनियेत कशा प्रकारे फसवणूक सुरू आहे याचा अंदाजा तुम्ही यावरून लावू शकता की येथे बऱ्याचदा $multi million वर्थ रग पूल सुद्धा होत असतात, जेथे अनॉनिमस फाउंडर्स गुंतवणूकदारांचा पैसा घेऊन छू मंतर होऊन जातात. असंच काहीच झालं एव्हॉल्व एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डॅडी एप क्लब आणि ब्लॉकबस्ट सोबत. अजब गजब गोंधळाने भरलेली आहे ही एनएफटीची दुनिया. असंच एक प्रोजेक्ट आहे जे प्रॉमिस करतं ओनरशिप ऑफ कलर्सचं. एवढंच नाही, प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही खरेदी केलेला कलर कोणी दुसऱ्याने वापरला तर तुम्हाला त्याची रॉयल्टीज मिळणार असे प्रॉमिस सुद्धा केले गेले आहे. आणि आता तर एनएफटी फ्रॉड हे कोर्टापर्यंत घेऊन जात आहेत. एका कॅनेडियन कंपनीने सॉथबीज आणि आर्टिस्ट केविन मॅकॉयवर $1.5 मिलियन केस ठोकली आहे. मे 2014 मध्ये मिंट केले गेलेले क्वांटम नावाच्या आर्टला जगाची पहिली एनएफटी म्हणून ओळखलं जातं. जून 2021 मध्ये सॉथबीचे ऑक्शन नेटिव्हली डिजिटल मध्ये हे आर्ट $1.47 मिलियन मध्ये विकलं गेलं. कॅनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंगचे सोल मेंबर ज्यांनी ही केस टाकली होती त्याला तर असं वाटलं होतं की तोच क्वांटमचा खरा हकदार आहे, कारण या एनएफटी लॉन्चच्या 7 वर्षानंतर जेव्हा मॅकॉयची ओनरशिप संपली होती तेव्हा त्यांनी त्यांचे अधिकार सिक्युअर केले होते. खरं तर ही सारी कन्फ्युजन यासाठी झाली कारण क्वांटम मुळात बिटकॉइनच्या कोडवर मॉडेल नेमकॉइन नामक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेअरवर मिंट केली गेली होती. नेमकॉइनवर ओनरशिपला प्रत्येक 250 दिवसानंतर रिन्यू करणं हे जरुरी आहे, नाहीतर कोणी याला क्लेम करू शकतं. आणि मॅकॉय 2014 मध्ये क्वांटमला मिंट करून 2015ला त्याला रिन्यू करणं विसरून गेले. जेव्हा 6 वर्षांपर्यंत हे एनएफटी रिन्यू नाही केलं गेलं तेव्हा 6 एप्रिल 2021ला एक्झिओसने एक आर्टिकल इश्यू केलं ज्याची हेडलाईन होती एक्सक्लुझिव्ह द फर्स्ट एव्हर एनएफटी फ्रॉम 2014 इज ऑन सेल फॉर $7 मिलियन प्लस. त्याच्या 2 हप्त्यानंतर फ्री होल्डिंगच्या सोल मेंबर्सने @अर्ली एनएफटी नावाच्या ट्विटर हँडलच्या माध्यमातून या एनएफटीला रजिस्टर केलं होतं. एनएफटी सोबत जोडल्या गेलेल्या या फसवणूक आणि घोटाळ्यांबद्दल क्रिप्टो मायनरचे सीईओ आणि को फाउंडर रघु राजशेखर यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे आणि हे घोटाळे कसे टाळायचे ते पाहूयात. सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं. तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया. ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है. दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे एनएफटीज के नाम पे कि आप एनएफटी का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दें, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग. तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं. तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही है. बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने एनएफटी बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम. अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है. मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं. बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन. द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है. अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है. जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं. सो अब लोग देखने लगे कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं. लेट्स से काफी फेमस एनएफटी कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब.
तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि व्हेरिफाईड अकाउंट्स है या नाही। मित्रांनो, म्हणजेच ही टोटल एनएफटीची दुनिया सध्या जस्टिस कस्टडीमध्ये आहे हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही। जोपर्यंत येथे काही स्ट्रिक्ट रूल्स आणि रेग्युलेशन्स जारी केले जाणार नाहीत तोपर्यंत या पुढाकार न घेणंच चांगलं आहे। मित्रांनो, या खास स्टोरीमध्ये सध्या एवढंच। अशाच प्रकारच्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा आपल्या भेटीला येणार आहे। तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। जर तुम्हाला फॅशनचा जलवा बघायचा असेल आणि ते सुद्धा मेटावर्स मध्ये, तर तुम्ही अगदी बरोबर ठिकाणी आला आहात। कारण मेटावर्सच्या इमर्जन्समुळे अशा दोन इंडस्ट्रीजचं मिलन झालं आहे जी आतापर्यंत कधीच एकत्र नव्हती। म्हणजेच एक आहे फॅशन इंडस्ट्री आणि दुसरी आहे टेक इंडस्ट्री। आज आपण मेटा फॅशन संबंधित वॅकी फॅशन बद्दल बोलणार आहोत अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली सस्टेनेबल फॅशन बद्दल, ज्याला बनवलं गेलं मेटावर्सच्या व्हर्च्युअल दुनियेमध्ये। आता तुम्ही म्हणाल, व्हर्च्युअल फॅशनचा रिअल वर्ल्ड मध्ये काय फायदा आहे? तर कोणतेही घर किंवा बिल्डिंग बनवण्यापूर्वी त्याची ब्लूप्रिंट तयार केली जाते। डायरेक्ट घर बनवलं तर वेळ, पैसा आणि रिसोर्सेस वेस्ट होतीलच, पण तुम्हाला अपेक्षित परिणामही मिळणार नाही। सेम फंडा हा फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये अप्लाय होत असतो। दररोज जगभरातील कपड्यांची फॅक्टरीज करोडो अरबो रुपयांचे कपडे धनाधन मॅन्युफॅक्चर करत आहेत। जेव्हा हे कपडे विकले जात नाहीत तेव्हा ते वेस्ट होतात, तर मग त्यांना लँडफिलमध्ये डंप केलं जातं, ज्यामुळे पैशांसोबत इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, फॅब्रिक आणि वेळेसारखे रिसोर्सेस तर वेस्ट जातातच, पण त्याहून अधिक पोल्युशन वाढतं। व्हर्च्युअल फॅशनच्या द्वारे आपण टाइम, मनी, फॅब्रिक, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी सारख्या रिसोर्सेसची बचत करू शकतो आणि आवश्यक तेवढेच कपडे मॅन्युफॅक्चर करू शकतो। मग काय, वेस्टेज झिरो, पोल्युशन कमी, झालं तर की फायद्याची डील। तुम्हाला माहित आहे का, 10% ग्लोबल कार्बन एमिशनचे कारणीभूत फॅशन इंडस्ट्रीज आहे। 2020 मध्ये झालेल्या एका सर्वे मधून हे माहित पडतंय की मोठमोठ्या फॅशन डिझायनर्स, बायर्स आणि मॉडेल्स लंडन, मिलान, पॅरिस आणि न्यूयॉर्क मध्ये फॅशन शो अटेंड करण्यासाठी जेव्हा गेले तेव्हा त्यांच्यामुळे 2,41,000 टन कार्बन एमिशन प्रोड्यूस झाले। मित्रांनो, 51,000 गाड्यांना दिवस रात्र चालवण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर किंवा प्रदूषण होत असतं। याला रोखण्यासाठी एक सर्वात सोपा उपाय आहे। लेट मी गिव्ह यू एन एक्झाम्पल। मागील वर्षी जेव्हा हेल्सिंकी फॅशन वीक 100% डिजिटली ऑर्गनाइज झाले, तेव्हा त्या इव्हेंटच्या प्रत्येक व्हिजिटरची कार्बन फुटप्रिंट 137 kg पासून कमी होऊन फक्त 0.66 kg झाली आहे। तुम्हाला माहित आहे का, ऑन ॲव्हरेज एका गारमेंटला बनवण्यासाठी अप्रॉक्सिमेटली 3,300 लिटर पाणी वेस्ट होत असतं। मित्रांनो, चांगलं होईल की अगोदर आपण व्हर्च्युअली कपडे डिझाईन करून तेवढेच कपडे मॅन्युफॅक्चर करू जेवढी रिक्वायरमेंट असेल। जगभरात आणि खास करून भारतात लोकांना एक रोग आहे ज्याचं नाव आहे काय म्हणणार लोक, आणि यामुळे आपण खूप वेळा त्या गोष्टी ट्राय नाही करत ज्याला आपल्याला करणं गरजेचे असते। फॅशनचा एक प्रकार आहे ज्याचे नाव आहे वॅकी फॅशन, म्हणजेच अतरंगी कपड्यांची पद्धत, ज्याला आपल्याला रिअल लाईफमध्ये रेअरली घालत असतो। परंतु व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारची लज्जा न बाळगता लेडी गागा आणि मायकल जॅक्सन प्रमाणे वॅकी आणि स्टायलिश डिजिटल कपडे
आपल्या अवतारला परिधान करून आपला छंद पूर्ण करू शकतात. आतापर्यंत फॅशन शोज फक्त सेलिब्रिटीज, मॉडेल्स आणि श्रीमंत लोक ही अटेंड करू शकत होते. यु नो, वड्डे लोक वड्डी बाते. पण मेटा फॅशनच्या मार्फत लखनौ किंवा लालपूर प्रमाणे शहराचे टॅलेंटेड डिझायनर्स लॉस एंजल आणि पॅरिसचे बिग शॉट डिझायनर प्रमाणे आपल्या टॅलेंटला जगभरात शोकेस करू शकतात. एवढंच नाही, आता आपण व्हर्च्युअली ग्लोबल फॅशन शोज आणि इव्हेंट्समध्ये घरी बसून फक्त लॅपटॉप, कॉम्प्युटर किंवा स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या थ्रू पार्टिसिपेट सुद्धा करू शकता. विश्वास होत नसेल तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन समजून सांगते. रिसेंटली डिसेंट्रलँड नावाची व्हर्च्युअल दुनिया म्हणजेच मेटावर्समध्ये जगातील फर्स्ट मेटावर्स फॅशन वीक ऑर्गनाईज झाले होते, ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या 3D अवतारच्या माध्यमातून वेगवेगळे फॅशन इव्हेंट, शॉपिंग एक्सपिरियन्स, पॅनल डिस्कशन आणि आफ्टर पार्टीजमध्ये विदाउट खर्च करता इवन अ सिंगल रुपये पार्टिसिपेट करू शकता. मार्च 2022 मध्ये झालेल्या ह्या 4 दिवसाच्या मेगा व्हर्च्युअल फॅशन इव्हेंटमध्ये टॉमी हिल्फिगर, डॉल्चे अँड गबाना, फॉरएव्हर 21, सेल्फ्रिज प्रमाणेच जगभरातील मोठमोठे फॅशन ब्रँड्सने पार्टिसिपेट केलं होतं. कारण ह्या मोठ्या ब्रँड्सला कळलं आहे की सस्टेनेबल फॅशनचे फ्युचर तर मेटावर्सच आहे. आय एम शुअर तुम्ही हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक झाला आहात की ही मेटावर्सची फॅशनची दुनिया कशी दिसत असेल. तर नॉट टू वरी, मी या इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट सुद्धा केलं आणि आपल्या इंटरॅक्शनसाठी रेकॉर्ड सुद्धा केलं होतं. तर मग चला आणि पहा जगातील पहिली मेटावर्स फॅशन इव्हेंट. अहो, आता तर ही फक्त सुरुवात आहे. मेटावर्स फॅशन तर अजून डेव्हलप होणार आहे. इट्स गोइंग टू चेंज हाऊ वी शॉप, ड्रेस, अप्रोच द फॅशन वर्ल्ड. आणि ह्या इमर्जिंग व्हर्च्युअल फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये आपले इंडियन डिझायनर जसे की मनीष मल्होत्रा आणि रघुवेंद्र राठोड सुद्धा आपल्या NFTs लॉन्च करून हळूहळू मेटावर्समध्ये आपले पाऊल पुढे टाकत आहे. मित्रांनो, तो दिवस दूर नाही जेव्हा मोबाईल आणि इंटरनेट प्रमाणे मेटा फॅशन सुद्धा आपल्या लाईफचा इंटिग्रल पार्ट बनेल. जर आपल्याला इको फ्रेंडली आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह वे मध्ये क्लीन, ग्रीन आणि सस्टेनेबल फॅशनला नेक्स्ट लेवल पर्यंत घेऊन जायचं असेल तर आज नाही तर उद्या आपल्याला मेटा फॅशनला अडॉप्ट करावंच लागेल. मेटावर्स सोबत अजून बऱ्याच काही एक्साइटिंग आणि एंगेजिंग अपडेट्स सोबत मी आपली क्रिप्टो होस्ट आणि दोस्त वैभवी सावंत तुम्हाला परत भेटणार आहे. तोपर्यंत कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीव्ही. સુધીમાં દુનિયાના 500 કરોડ કરતા પણ વધારે લોકો મેટાવર્સની કરોડો ખરબો ડોલર્સની ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે. આવનારા સમયમાં મેટાવર્સની ડિજિટલ દુનિયામાં પૈસાનો વરસાદ થવાનું છે. વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ બેંક JP મોર્ગન એ તો મેટાવર્સમાં પોતાની બ્રાન્ચ પણ ખોલી દીધી છે. આટલું જ નહીં, સેમસંગ, હુન્ડાઈ, ફરારી, ગુચી, ડોલ્ચે અને ગબાના, હીરાનંદાની, ઇન્ફોસિસ, રિલાયન્સ, માઇક્રોસોફ્ટ, એપલ, ફેસબુક, નાઇકી, એડિડાસ આ બધી દિગ્ગજ કંપનીઓ તો કલેક્ટિવલી હજારો કરોડ રૂપિયા મેટાવર્સમાં ઇન્વેસ્ટ પણ કરી દીધા છે. આ બધું સાંભળી સહેજે પ્રશ્ન થાય કે આ મેટાવર્સ છે શું? કેમ કે વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ કંપનીઝ આની પાછળ ગાંડી થઈ ગઈ છે. તો સિમ્પલ વેમાં સમજાવું તો જેમ પૃથ્વીલોક, સ્વર્ગલોક અને પાતાળલોક હોય તેમ ડિજિટલ ડાયમેન્શનમાં
કમ્પ્યુટર કોડથી ક્રિએટ કરેલા લોકનું નામ છે મેટાવર્સ. યસ. હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્બાન AKA પારો. વેલ, ટુડે નો દેવા, કારણ કે આજે આપણે એક નવી દુનિયામાં જશું જ્યારે દેવા હોય કે ના હોય આની પોસિબિલિટી હજી સુધી ક્રિએટ કરવાની બાકી છે. આપણે માઇન્ડ બ્લોઈંગ વર્લ્ડ ઓફ મેટાવર્સ વિશે વાત કરશું અને સમજશું કે આ મેટાવર્સ છે શું. કેમ કે મેટાવર્સને ઇન્ટરનેટનું ફ્યુચર અને ફોર્થ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે. અને આટલું જ નહીં, એક સિટી બેંક વાલા સિટી ગ્રુપ ઇનકોર્પોરેટેડના એસ્ટિમેટ પ્રમાણે 2030 સુધીમાં મેટાવર્સની ઇકોનોમી $13 to 14 ટ્રિલિયન ડોલરની થઈ જશે. $14 ટ્રિલિયન એટલે કે રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરો તો 14 જન્મ લેવા પડશે. એટલો મોટું ફિગર છે. ઓ ગોડ. આવડી મોટી ઇકોનોમિક પાઈને બિઝનેસ માઇન્ડેડ ગુજરાતીઓ બાઇટ ન કરે એ તો ઇમ્પોસિબલ છે. મેટાવર્સને કમર્શિયલાઇઝ કરીને પૈસા છાપવા હોય તો સૌથી પહેલા આપણે મેટાવર્સના બેસિક્સને ક્લિયર કરી લઈએ. મેટાવર્સ શબ્દથી શરૂઆત કરીએ તો મેટાવર્સ વર્ડને દુનિયામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકન રાઇટર નીલ સ્ટેફન્સને પોતાની સાઈ-ફાઈ નોવેલ સ્નો ક્રેશમાં યુઝ કર્યો હતો. મેટાવર્સને તમે મિરર વર્લ્ડ, AR ક્લાઉડ, ધ સ્પેશિયલ ઇન્ટરનેટ, વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનેટ અથવા મેજિક વર્ડ્સ પણ કહી શકો છો. કોવિડ લોકડાઉન દરમિયાન સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના કારણે ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં આપણું ઇન્ટરેક્શન લિમિટેડ થઈ ગયું હતું. ત્યારે આપણે બધાનું ડિજિટલ ઇન્ટરેક્શન વધી ગયું હતું. વર્ક ફ્રોમ હોમ, ડિજિટલ વેડિંગ, ટેલિફોનિક બેસવું અને ઓનલાઈન પોલિટિકલ કેમ્પેનથી લઈને ઓનલાઈન ક્લાસીસ અને ઝૂમ કોલ, ફેમિલી રિયુનિયન અને નેટફ્લિક્સની સ્લમ્બર પાર્ટીઝ એન્જોય કરતા ફિઝિકલ વર્લ્ડ અને ડિજિટલ વર્લ્ડ એકબીજાથી ઇનસેપરેબલ થઈ ગયા છે. આ તો હજુ શરૂઆત છે. જેવી રીતે જેટ એન્જિન, કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટથી દુનિયા નવી ઉડાન ભરી, એવી જ રીતે મેટાવર્સથી આપણું વર્લ્ડ હદ કરતાં વધારે ટ્રાન્સફોર્મ થવાનું છે. મેટાવર્સમાં ફિઝિકલ, ઓગમેન્ટેડ અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીનું ત્રિવેણી સંગમ થવાનું છે. મેટાવર્સને તમે ફક્ત ડિજિટલ સ્પેસ સમજવાની ભૂલ નહીં કરતા, જ્યાં તમે જસ્ટ લોગિન કરીને એન્ટ્રી લઈ લીધા તે પતી ગયું એમ ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇમેજિન કરો કે નેક્સ્ટ 100-200 યર્સમાં ઇન્ડિયાનો ઇસરો, અમેરિકાનો નાસા અને એલોન મસ્કના સ્પેસએક્સ મળીને મંગળ ગ્રહ ઉપર હ્યુમન કોલોની સ્ટાર્ટ કરે. જેમ ઇન્ડિયામાં રૂપિયા ચાલે, અમેરિકામાં ડોલર ચાલે, તેમ મંગળ ગ્રહ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે કોઈને કોઈ કરન્સી તો જરૂર પડશે, રાઈટ? સિમિલરલી આ મેટાવર્સ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે એટલે ત્યાં ફિઝિકલ કરન્સી નહીં ચાલે, પણ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી ચાલશે. વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એટલે ડિજિટલ કરન્સી, ક્રિપ્ટો કરન્સી લાઇક બિટકોઇન, ઇથેરિયમ એન્ડ ડોજકોઇન. હવે સમજ્યા ડિજિટલ કરન્સીને ફ્યુચર ઓફ મની શું કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમ કે તેનો ઉપયોગ ફ્યુચરિસ્ટિક વર્લ્ડ ઓફ મેટાવર્સમાં થવાનું છે. હવે મેટાવર્સમાં કેમ એન્ટ્રી લેવી, તેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કેમ કરવું એની ઉપર વાત કરીએ તો તમે કમ્પ્યુટર, લેપટોપ અને સ્માર્ટફોન વડે મેટાવર્સ સાથે જોડાઈ શકો છો. પણ એ એક્સપિરિયન્સ અધૂરો લાગે. ખરેખર મેટાવર્સની મજા વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી ગ્લાસીસ ઓર ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી ગ્લાસીસથી જ આવે. આ AR, VR ગ્લાસીસ એટલે ડિજિટલ દિવ્ય ચક્ષુ. જેમ 3D મૂવી જોવા જાઓ એટલે 3D ચશ્મા લેવા પડે ના, તેમ મેટાવર્સ માટે આ સ્પેશિયલ ચશ્મા છે. તમને તો ખબર જ હશે કે ફેસબુકે તેનું નામ ચેન્જ કરીને મેટા કરી નાખ્યું છે. તેનું વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન આ મેટાવર્સ જ છે. ફેસબુક એટલે કે મેટા પ્લેટફોર્મની એક કંપની એ છે રિયાલિટી લેબ્સ, જે મેટાવર્સ માટે AR અને VR ચશ્મા, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરે છે, જેને પહેરવાથી તમને એવું જ લાગે કે તમે એક નવી જ દુનિયામાં આવી ગયા છો.
ડીસેન્ટ્રલેન્ડ અને સેન્ડબોક્સ જેવી કંપનીઝ એ પોતાનું મેટાવર્સ એટલે કે ડિજિટલ લેન્ડ ક્રિએટ કરી છે, જેમાં તેમને પ્લોટ વેચવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે. તેમની પોતાની ડિજિટલ કરન્સી પણ છે. ડીસેન્ટ્રલેન્ડના નેટિવ ટોકનનું નામ માના છે, જ્યારે સેન્ડબોક્સના ટોકનનું નામ સેન્ડ છે, જેને તમે વઝીરેક્સ જેવા ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ પર બાય અને સેલ કરી શકો છો. આ મેટાવર્સમાં દલેર મહેંદી, સ્નૂપ ડોગ, એડ્રિયાના ગ્રાન્ડે જેવા સિંગરે પોતાનું કોન્સર્ટ્સ પણ કર્યા છે. મેટાવર્સમાં સેમસંગે પોતાનું ન્યૂયોર્કના ટાઈમ સ્ક્વેરમાં આવેલા ફ્લેગશિપ શોરૂમનો રેપ્લિકા સ્ટોર પણ ચાલુ કરી દીધું છે. અક્ષય કુમાર અને ટાઈગર શ્રોફે પોતાની નેક્સ્ટ ફિલ્મ બડે મિયાં છોટે મિયાં એનું ટ્રેલર પણ મેટાવર્સમાં લોન્ચ કરી દીધું છે. ઇન શોર્ટ, મેટાવર્સની દુનિયા બહુ જ મોટી છે. આજે મેં તમને ફક્ત મેટાવર્સની મજેદાર દુનિયાના નાનું ટ્રેલર આપ્યું, પણ પિક્ચર અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત. મેટાવર્સ અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી વધારે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની પ્રોમિસ સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો દોસ્ત અને હોસ્ટ પાર્વતી નિર્બાન તમારી રજા લઉં છું. ક્રિપ્ટો વર્સના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મજામાં રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. डोनेशंस करते हैं? आप कहेंगे रुचि ये भी कोई सवाल है? डोनेशंस एंड चैरिटी तो सीक्रेटली करनी चाहिए, ढिंडोरा पीट कर नहीं. हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम कितनी डोनेशंस करते होंगे? फ्रैंकली हजारों में, राइट? क्योंकि लाखों में तो सिर्फ रईस, सेलिब्रिटीज चैरिटी करते हैं, और ये चैरिटी भी हमने 20s में या 30s में शुरू की होगी, है ना? लेकिन एक हाई स्कूल की बच्ची है जो ना सिर्फ 14 इयर्स की उम्र में मिलियंस कमा रही है, बल्कि मिलियंस में चैरिटी भी कर रही है. हो गए ना हैरान? मिलिए एबिगेल से, जो यंग टीनेज एनएफटी मिलियनेयर्स में से एक है. एबिगेल फेमस है अपनी बेलूजीज एनएफटी के लिए, जो कि बेलुगा व्हेल से इंस्पायर्ड है. दरअसल एबिगेल 2018 में अपने परिवार के साथ जॉर्जिया एक्वेरियम विजिट करने गई थी. वहां उसने पहली बार बेलुगा व्हेल्स को देखा एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. वेल, ड्राइंग का शौक तो एबिगेल को हमेशा से था, लेकिन जॉर्जिया एक्वेरियम से लौटने के बाद उन्होंने बेलुगा को ही अपनी ड्राइंग इंस्पिरेशन बना लिया. एबिगेल के टैलेंट से उनका बड़ा भाई एडम काफी इंस्पायर था. उसने एबिगेल को एनएफटीज के बारे में बताया और इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया. फिर क्या था, एबिगेल ने अपने आईफोन 8 पर बेलूजीज ड्रॉ करनी शुरू कर दी. वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, एबिगेल की बेलूजीज कलेक्शन की ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग्स उन्होंने अपने आईफोन 8 पर ही बनाई है. ड्राइंग तो तैयार हो गई, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था. तो एडम ने एबिगेल को इन व्हेल्स को कंपाइल करने के लिए स्क्रिप्ट डेवलप करने में और व्हेल्स को डेकोरेट करने में हेल्प की, जिसके बाद तैयार हुई 8000 यूनिक पिक्चर्स. फिर एबिगेल ने 3 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें वो खुद, एक फैमिली मेंबर और उनकी एक फ्रेंड शामिल है, जो इन बेलूजीज की डिजाइनिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी और कम्युनिटी आउटरीच तक सब कुछ हैंडल करती है. अक्टूबर 2021 में एबिगेल ने इन सोलाना बेस्ड बेलूजीज को अल्फा आर्ट एनएफटी मार्केटप्लेस पर सेल के लिए लॉन्च कर दिया. इसकी बिडिंग 0.8 सोल के साथ शुरू हुई और देखते ही देखते महज 10 घंटों में $1,021,000 की टोटल सेल्स के साथ उनकी पूरी कलेक्शन सोल्ड आउट हो गई. इनमें से ऑर्का व्हेल सूट में एक बेलुगा को $10,000 का हाईएस्ट सेल प्राइस मिला. एक नेक कॉज के साथ जुड़े होने की वजह से इस कलेक्शन को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली. इस सेल का कुछ हिस्सा बेलुगा फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कई चैरिटीज को दिया गया.
अब तक एबिगेल कुल $240,000 की चैरिटी कर चुकी है, जिसमें सनशाइन किड्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन विद कैंसर को $100,000 और $50,000 ओशन डिफेंडर्स अलायंस को दिया गया। महज एक साल में एबिगेल ने कामयाबी की ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई है एबिगेल, जिन्हें ना सिर्फ मीडिया कवर कर रही है बल्कि बड़े एस्टैब्लिश्ड टीवी शोज भी इनवाइट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कामयाबी तो बहुत लोग हासिल करते हैं, लेकिन नेम और फेम कमाने के साथ साथ सेम लेवल की चैरिटी, और वो भी टीनेज में, शायद ही किसी ने की हो। होप बहुत से लोगों के लिए एबिगेल रोल मॉडल बने और लोग उनसे इंस्पिरेशन लें और कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी काम आए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए डू वॉच माई स्टोरीज। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। ये पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लेंगोइस की क्रिएशन है। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी, और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया। तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड एनएफटीज म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे। नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी एनएफटीची नवीन लिस्ट। आता मी तुम्हाला अशा 3 एनएफटीज बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल। चला तर मग सुरू करूया। तर या टॉप 3 क्रेझी एनएफटीच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची एनएफटी, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची एनएफटी। नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात। आता एनएफटीज वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय। माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा एनएफटीच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल। तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं एनएफटीच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये। हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन बन शेक या नावाच्या डच स्टुडंटवर एनएफटीचे क्रेज एवढा हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच एनएफटी मिंट करून टाकली आहे। एवढंच नाही, या भाईने जगातील सर्वात मोठी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची एनएफटीला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय। अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो। ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या एनएफटीला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय। या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला एनएफटीच्या माध्यमातून विकलं गेलंय। म्हणून या महाशयने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या एनएफटीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे। आता यांनी आपल्या सोलच्या एनएफटीची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल। अजून एका आपल्या आत्म्याच्या एनएफटी सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राइब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो। बाप रे बाप। जर तुम्हाला एनएफटीचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे। चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी एनएफटी आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल। हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं। वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत।
यांच्या एनएफटीचे नाव आहे इनर ब्युटी, म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची एनएफटी. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच एनएफटी बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केटप्लेसवर 28 मार्च 2022ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच एनएफटी रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक एनएफटी बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा एनएफटीला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला एनएफटी बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड एनएफटीचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या एनएफटीला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंडे बाबा आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची एनएफटी किती मध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची एनएफटी आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटी मध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी एनएफटी लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या एनएफटी साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या एनएफटीचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची जेपॅग इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल एनएफटी लॉन्च केलं गेलं होतं. बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचन मध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी एनएफटीज. अशाच प्रकारच्या अतरंगी एनएफटीची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. Blockchains have a bridge problem and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests and holding a lot of currency, and unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure. हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार,
बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो, या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी। इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोर्नेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक जोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चॉम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोर्नेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोर्नेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी RPO वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है। बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी। ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माई का लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है
तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपल्यासोबत कधी असं होतं का? कधी आपल्या पेरेंट्सचे मेडिकल रिपोर्ट्स मिसप्लेस होतात, तर कधी अगदी महत्त्वाची फाईल सुद्धा हरवते। किती चांगलं होईल की जर का आपल्या फॅमिलीचे संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट्स कोणत्या अशा नेटवर्कवर असतील की जिथून आपण कोणतेही त्यांना ॲक्सेस करू शकू। सतत एक्सपांड होणाऱ्या या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आता हे शक्य होणार आहे। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. With only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, or Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT, Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is,
OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। Death is significant, an inevitable part of life. Thinking and talking about it may be considered dystopian. However, when it comes to financial matter, it is best to anticipate the inevitable and take adequate precautions and make appropriate provisions. Tongzo, a 33-year-old, lost his life savings after vesting his funds with a cryptocurrency trader who died, taking the password to access funds to the grave. Zoe is among the thousands of customers left in lurch after following Gerald Jerry Cotton's mysterious death in 2018 at an age of 30, leaving $150 million worth of crypto assets in limbo. Zoe trusted Quadriga CX, Canadian largest cryptocurrency exchange, with $500,000. A big chunk of it was given to him by his parents. But when co-founder Cotton died during a honeymoon in India, the money was lost forever. Investing in cryptocurrency is considered risky, and to dive without detailing on how to access the savings for near and dear ones can be termed as irresponsible. This is Manoj Dara. You are watching a special show on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? There are plenty of examples of horror stories of people passing away without making a proper plan to bequeath their crypto holdings to their family. According to a study by Cremation Institute, nearly 90% of the crypto owners are worried about what will happen to their crypto after they pass away. As far as cryptocurrency is concerned, it's important to understand how to secure your cryptocurrencies and leave instructions with your loved ones for retrieving your financial assets after you die. There are a number of ways for crypto investors to bestow their crypto to the next generation. All crypto traders store their holdings either in hot wallets or cold wallets. Sharing keys with trusted family members is probably one of the most straightforward methods to pass on your cryptos. Some of the most prominent people in the crypto industry have publicly claimed to use this method to ensure their crypto fortunes get passed on to the next generation. Hal Finney, an earlier supporter of Bitcoin and recipient of the first Bitcoin transaction from BTC creator Satoshi Nakamoto, willed his crypto holdings to his children by simply providing his keys. This crypto inheritance practice of sharing the keys with the trusted family members is straightforward but may not be suitable for everyone in the crypto community. This way of bequeathing Bitcoin could also be considered risky, as shared keys come with the responsibility of keeping those assets secure. As far as hot wallets are concerned, major cryptocurrency exchanges from around the world allow the bereaved to gain access to the family members' assets after providing a number of documents, including a death certificate and a last will. There are also some projects that are dedicated to ensuring the inheritance of digital assets. For example, companies such as Safe Haven, CASA and Trustverse are working on their own solutions that allow people to bequeath their crypto assets using blockchain technology and cryptography. Protecting our family and loved ones is every individual's top priority. So make sure you have a proper plan and a will in place so that even when you are not around, your crypto holdings are there to protect your family's financial future. We will leave you with a slice of conversation Crypto TV had with Mr. Jeetu Kataria, CEO DIFX, where he emphasized about a new nomination feature his exchange has introduced.
the biggest tech what we have integrated just this month and we went live with our architectural change is the nomination program, wherein what we feel that we have seen lots of exchanges today. I won't name these exchanges, but they are sitting on billions and billions of dollars of crypto assets which are unclaimed, wherein the family members of these users who just gone, who died, they don't know how to get these assets. Today, within 6 months, we made this whole platform of DIFX nomination program, wherein you can nominate up to 5 family members, and if anything happens to you, automatically these all assets what you have on DIFX platform will automatically goes to your family members, and that's all is on blockchain. Everything what a user is putting in is recorded on the blockchain. So that's how tech and transparently we have shown to the world that how an exchange should run. Thank you so much for watching this special story on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? Please like, subscribe and share. Thank you. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. नमस्कार, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मेटावर्स या नावामुळेच भविष्यातील होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे स्पंदन मिळते. आज आपण पाहणार आहोत की का ग्लोबल ब्रँड्स हे मेटावर्स मध्ये आपलं प्रेझेन्स वाढवत आहेत. शेवटी या मेटावर्स मध्ये असे काय आहे की यास ॲडव्हर्टायझिंगचे भविष्य म्हटले जात आहे. जर तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंगच्या फ्युचर बद्दल माहिती करून घ्यायची असेल तर एकदा त्याच्या भूतकाळाबद्दलही जाणून घेऊया. मायकेल एल्ड्रिच नावाच्या इंग्लिश इन्व्हेंटर कम एंटरप्रेनरने असे काही केले की ज्यामुळे शॉपिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया ही कायमचीच बदलली. त्यांनी पहिल्यांदाच टीव्हीवर ॲड पाहून एखादं प्रोडक्ट खरेदी करून एक छोटीशी सुरुवात केली जी आज ई कॉमर्स आणि डिजिटल मार्केटिंगची $multi-billion इंडस्ट्री बनली आहे. मग ब्रँडने इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विट आणि इन्स्टाद्वारे अग्रेसिव्हली आपल्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. सर्व काही ठीक सुरू होतं, पण कोविडच्या लाटेमुळे जग ठप्प झाले, अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. लॉकडाऊन दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगमुळे लोकांनी व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये आपलं इंटरॅक्शन वाढवलं. यामुळे रिटेल सेल ही खाली घसरली आणि ई कॉमर्सने मोठ्या प्रमाणात उभारी घेतली. मग काय, ऑब्विसली अपेक्षापेक्षाही डिजिटल मार्केटिंगचे बजेट वाढले आणि तिथून मेटावर्स नावाची सर्वात मोठे टेक्नॉलॉजी रेव्होल्यूशन सुरू झाले. जागतिक बँकिंग कंपनी सिटी ग्रुपच्या मते 2030 पर्यंत मेटावर्समध्ये $13 ते $14 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था बनणार आहे, ज्यापैकी $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त मेटावर्स ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धीसाठी वापरले जाईल. हा $14 ट्रिलियन आकडा इतका मोठा आहे की जर तुम्हाला याचे रूपांतर रुपयात करायचे झाले तर तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलेटर छोटे पडेल. मेटावर्समध्ये ई कॉमर्स आणि ट्रेडिशनल रिटेल स्पेस मिळून बिझनेस ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगचा नेक्स्ट फेज तयार होणार. एका लेटेस्ट स्टडीनुसार कळलं आहे की आपले ॲव्हरेज अटेन्शन स्पॅन फक्त 8 सेकंडचे असते. आता रिटेलर्सला कळलं आहे की फक्त 8 सेकंदात ग्राहकाला त्यांचा प्रोडक्ट्स बद्दल सांगून ते प्रोडक्ट्स विकणे हे खूप कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता वन ॲड्स फिट ऑल सारखे जनरलाइज ॲड कॅम्पेन सारखं काम नाही चालणार. आता ॲडव्हर्टायझिंग वर्ल्ड हे पर्सनलाइज वर्ल्डकडे आपलं ध्यान केंद्रित करत आहे. तुम्हाला वाटेल पर्सनलाइज ॲड म्हणजे प्रत्येक ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या जाहिराती,
हे कसं शक्य आहे? वेल, आय सेट मेटावर्स आहेत तर हे शक्य आहे. होय, मेटावर्स मधील मोठ्या कंपनीज या ना केवळ ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या पद्धती बदलत आहेत, तर कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि ब्रँड इंटरॅक्शनद्वारे सुद्धा पर्सनलाइज टच देऊन रेव्होल्युशनलाइज करत आहेत. उदाहरणार्थ, भारतात 2022च्या व्हॅलेंटाईन्स डेवर कॅडबरी डेअरी मिल्क सिल्कने हाऊ फार विल यू गो टू मेक देम ब्लश लॉन्च केले, जे लव्ह बर्डसाठी ऑगमेंटेड रियालिटी टेक्नॉलॉजी ड्रायव्हन ॲड कॅम्पेन सुरू केलं होतं, ज्यामध्ये लव्ह बर्ड्स एकमेकांना सिक्रेट लव्ह नोट्स देऊ शकतात, ज्याला कोणतेही न्यूजपेपर ॲड, होर्डिंग किंवा बिलबोर्डला आपल्या मोबाईलद्वारे स्कॅन करून इमर्सिव्ह वर्ल्ड ऑफ ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये बघता येऊ शकतं. एवढंच नाही तर या कॅम्पेनमध्ये एका लकी कपलला चंद्रावर डेटसाठी देखील पाठवण्यात आलं होतं. खरं तर हा चंद्र मेटावर्समध्ये आहे आणि ही व्हर्च्युअल डेट व्हर्च्युअल मूनवर अरेंज करण्यात आली होती. भारतात ऑगमेंटेड रियालिटी आणि मेटावर्सला मर्ज करणारा हा पहिला ॲड कॅम्पेन होता. आता तर ही सुरुवात आहे. मेटावर्समध्ये तर अशी हायपर पर्सनलाइज ॲड्सची सुनामी येणार आहे, जी ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया बदलून ठेवणार आहे. जगातील मोठ्या मोठ्या कंपनीज या मेटावर्सला घेऊन फार एक्सायटेड आहे. फेसबुक बद्दल बोलायचे झाले तर झुकरबर्गने तर ह्याचे नाव बदलून मेटा ठेवले आहेत. असं म्हटलं जातं की येणाऱ्या डेकेडमध्ये फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी ही पूर्णपणे मेटावर्स कंपनीमध्ये ट्रान्सफॉर्म होऊन जाईल. फेसबुक किंवा मेटा प्लॅटफॉर्म्स आपल्या सबसिडरी रियालिटी लॅब्सच्या थ्रू AR आणि VR ग्लासेस डेव्हलप करत आहेत, ज्यामुळे फिजिकल वर्ल्ड आणि डिजिटल वर्ल्डला मिळून एक डिजिटल रियालिटी क्रिएट करण्यात येईल, ज्यामुळे ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगसाठी एक सर्वात मोठा नवीन एव्हेन्यू ओपन होणार आहे. मेटाप्रमाणेच मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल मध्ये सुद्धा अफोर्डेबल AR किंवा VR ग्लासेसला मार्केटमध्ये लॉन्च करण्याची रेस लागली आहे. आणि खेळ हा फक्त चष्म्याचा नाही आहे. ह्या सर्व कंपनीज आपल्या मेटावर्स सुद्धा लॉन्च करणार आहेत. ज्याचा चष्मा आणि मेटावर्स मार्केटमध्ये हिट झाला तर समजून जा की त्यावर ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी पैशांचा पाऊस पाडतील. यामध्ये काही शंका नाही. फक्त टेक कंपनीजच नाही तर ऑटोमोबाईल पासून फॅशन इंडस्ट्री पर्यंत सर्व मोठ्या कंपनीज या मेटावर्समध्ये आपले ब्रँडिंग करतील. ह्युंडाय, डिझनी, ॲमेझॉन, गुची, लुई विटॉन, कोका-कोला, रिलायन्स, इन्फोसिस, सॅमसंग, नायकी सारख्या बऱ्याच कंपनीज मेटावर्समध्ये आपल्या ब्रँडिंगवर 24/7 काम करत आहेत. कारण एका स्टडीनुसार 2026 पर्यंत जगातील 25% लोक डेली ॲटलीस्ट 1 तास मेटावर्समध्ये स्पेंड करतील. येणाऱ्या काळात वर्क, शॉपिंग, एज्युकेशन, सोशल फंक्शन आणि एंटरटेनमेंट सर्व काही मेटावर्समध्ये होणार. इन शॉर्ट, जसजसे मेटावर्समध्ये लोक ॲड होतील तसतसे ब्रँड आपले ॲड्स त्या ठिकाणी ॲड करत जातील. कोणत्याही ब्रँड्स किंवा बिझनेसला Web3 ची फ्युचरिस्टिक वेव्हला राईड करून आपली जागा बनवायची असेल तर त्यांना टेक सॅव्ही बनून मेटावर्स ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या सोबत आपले पाऊल पुढे घेऊन जावे लागेल. नाहीतर ते ब्रँड आणि कंपनी कुठे हरवतील ह्याचा पत्ता कोणालाही लागणार नाही. आजच्या या एपिसोडमध्ये बस एवढंच. मेटावर्स बाबत अजून बरेच एक्साइटिंग अपडेट्स घेऊन मी तुमची क्रिप्टो दोस्त अँड होस्ट वैभवी सावंत तुमच्या भेटीला पुन्हा येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV.
Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Moving to an upgrade, taking blockchain ahead. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Yes, it's Ethereum 2.0, an upgrade to current Ethereum blockchain technology. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host and crypto dose Parvati Nirban, aka Paro. And today's episode is all about the blueprint of Serenity. Yes, it is Serenity. Serenity is the new name of the Ethereum upgrade to 2.0. Ethereum 2.0, also known as ETH2 or Serenity, is the long-awaited final upgrade to the Ethereum blockchain network. The overall goal of the ETH2 update is to increase the performance of the network. Questions like what is blockchain and why would we want to use it will eventually transform into questions like why isn't blockchain being used in this case or that case? Why so? Well, at present, the Ethereum 1.0 network is not robust enough to handle the future demand for blockchain-based technology. Problems with scalability and usability prevent Ethereum from being completely viable alternative. Imagine going to a local marketplace. In a regular day scenario, you take a considerable time to do shopping from local vendors, right? Now imagine if it rains at peak rush hours. Then it's almost impossible to finish shopping in the same time, and also it is very difficult to get as many things due to the traffic being jammed, etc. etc. Same thing happened with CryptoKitties app, which was launched on Ethereum 1.0. The transaction fees on the network was initially low, but as the application gained popularity and became a wild success, it became too expensive for people to continue using the app. It became like a market being jammed due to rain, clogged and whatnot. CryptoKitties was an experimental app built on the Ethereum network and launched in 2017. This app allowed users to create and trade unique digital kittens. Within its first week after launching, CryptoKitties went viral and clogged the Ethereum network with a huge number of transactions. And the transaction fees to send some CryptoKitties hit a whopping 6 figures. Can you imagine spending lakhs of rupees just to transfer a digital cat on a computer network? That's just insane, right? The current Ethereum platform manages this transaction fees to a low amount, but about 15 transactions per second being processed is not enough. So, with the Ethereum 2.0 update, it would potentially process tens of thousands of transactions per second. Really, that's just like dream come true. So, how is Ethereum upgrade will land us to such a high number of transactions? Well, answer to that question is beacon chain. Well, this means something's gonna have a lighthouse effect, which means beacon chain will have a lighthouse effect. Well, we were talking about the number of transactions. So, which means the number of transactions per second will have a lighthouse effect? That is going to be amazing because it's going to solve so many problems regarding speed with which current Ethereum platform or rather the blockchain technology is working. So what exactly is this beacon chain? Let's try and understand it. The beacon chain is basically the phase 0 stage of Ethereum 2.0 and has connection with existing Ethereum 1.0 blockchain network, which means even though beacon chain is an entirely new and separate chain that is being developed, it still operates with the same Ethereum ecosystem and acts as a bridge that will allow the transfers of Ether and other digital assets from 1.0 network to 2.0. To simply understand this, it's like how you would do a new iOS upgrade on your iPhone. Yup, it is going to be as simple as that. Amazing, right? It is going to be an amazing upgrade, and in the next episode we will get into the details of how exactly the beacon chain works.
which is the algorithm it is being built on. For now, I am your host Parvati Nirban signing off. Gonna say goodbye, take care, and keep enriching yourself with crypto awareness. See you very soon. Till then, keep watching Crypto TV. थ्री डी 4D और यहाँ तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IERC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उड़ाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लग ही गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था। इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्रीकृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था।
अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि FBI अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली CBI को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि FBI ने इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही US प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए CBI से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है, मुकदमा कोर्ट में है और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। नमस्कार, मी वैभवी सावंत पुन्हा एकदा आपला शो क्रिप्टोची गपशप मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। तर मित्रांनो, मागील एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेतलं की स्टेबल कॉइन म्हणजे काय, ते कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचे प्रकार कोणते। तर आज आपण चर्चा करणार आहोत टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। त्या अगोदर आपल्या माहितीसाठी रशियाने युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी आपली लढाई तीव्र करत असतानाच क्रिप्टोकरन्सीची किंमत ग्रो होताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे एकूण क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप हे $2 ट्रिलियन ओलांडले आहे। आता पाहूयात टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। तर सर्वात प्रथम स्टेबल कॉइन आहे तेथर। तेथर हे 2014 मध्ये रियल कॉइन म्हणून लॉन्च केलेले पहिले स्टेबल कॉइन होते। तेथर हे क्रिप्टो मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टेबल कॉइन आहे, ज्याचे एकूण मार्केट कॅप $77.5 बिलियन एवढे आहे। तेथर 428 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांना वापरण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात
उपलब्ध असलेले स्टेबल कॉइन म्हणून ओळखलं जातं. तेथरची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि मार्केट लीडरचा दर्जा असूनही वारंवार होणाऱ्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमुळे आणि ऑडिट नाकारल्यामुळे तेथरला बऱ्याच लीगल सिक्युरिटीला समोर जावे लागत आहे. तेथरला $41 मिलियन एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि न्यूयॉर्कमध्ये सराव करण्यास बंदीही घातली गेली. जरी या निष्कर्षाचा तेथरच्या क्रिप्टो मार्केटमधील दैनंदिन कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरीही गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगून तेथरशी संपर्क केला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे USD कॉइन म्हणजेच USDC. USDC कॉइन 2018 मध्ये कॉइन बेसद्वारे सादर केले गेले होते, जे जगातील पहिले पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज आहेत. USDC सध्या मार्केट कॅपनुसार दुसरा सर्वात मोठा स्टेबल कॉइन आहे. त्याचे मूल्य $42.1 बिलियन आहे. USDC 294 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहे आणि अधिक व्यापकपणे उपलब्ध आहे. दरम्यान फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि रेग्युलेटर सोबत सुद्धा USDC काम करत आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बायनान्स USD म्हणजेच BUSD. BUSD हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंज बायनान्सने 2019 मध्ये लॉन्च केले होते. मार्केट कॅपसह BUSD सध्या तिसऱ्या नंबरवर असून $14.3 बिलियन एवढे आहेत, जे केवळ 103 एक्सचेंजवर उपलब्ध असून BUSD त्याच्या कॉम्पिटिटर पेक्षा लेस ॲसेसिबल आहे. BUSDच्या युजर्सना बायनान्सवर शून्य शुल्क ट्रेडिंग आणि कन्व्हर्शन प्रवेश मिळतो आणि त्याचे स्टेबल कॉइन्स लेंडिंग सर्व्हिसमध्ये जमा करू शकतात, ज्यात वार्षिक 15% पर्यंत उत्पन्न मिळतो. सुरक्षितेचा प्रश्न येतो तेव्हा गुंतवणूकदारही निश्चित राहू शकतात, कारण BUSD मासिक ऑडिट्स प्रकाशित करते आणि जे वॉल स्ट्रीट रेग्युलेटर्सनी मंजूर केलेल्या 3 स्टेबल कॉइन पैकी एक आहे. चौथ्या क्रमांकावर आहे टेरा USD म्हणजेच UST. टेरा हे ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क आहे जे लुना टोकनद्वारे गव्हर्न्ड डिसेंट्रलाइज्ड अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइनचा सेट ऑफर करते. कॉइन मार्केट कॅपच्या डेटानुसार मार्चच्या सुरुवातीस लुना $90 खाली ट्रेड करत होता, परंतु 29 मार्च पहाटे आशिया वेळेनुसार लुना $106.14 नवीन सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. टेरा लुनाची भक्कम कामगिरी शक्यतो युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू करण्यासाठी रशियन सेनेने प्रवेश केल्यापासून जागतिक बाजारपेठेला घेरलेल्या अनसर्टनिटीतून येते. अखेरीस 5व्या क्रमांकावर आहे डाय. डाय हे सर्वात लोकप्रिय कोलॅटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन आहे आणि मार्केट कॅपनुसार एकूण 5व्या क्रमांकावर आहे. त्याचे मूल्य सध्या $9 बिलियन आहे. डाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि 221 वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर प्रवेश केला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चरली डाय इतर स्टेबल कॉइन पेक्षा कितीतरी जास्त तांत्रिक आहे. USDT सारख्या US डॉलर्सद्वारे थेट पाठिंबा मिळवण्याऐवजी डाय ETH सारख्या क्रिप्टो मालमत्ता लॉकअप करण्यासाठी आणि त्या कोलॅटरलवर आधारित टोकन तयार करण्यासाठी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरते. हे मेकर प्रोटोकॉलचे उत्पादन आहे जे इथेरियम ब्लॉकचेनवर चालते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला स्टेबल कॉइन बद्दल संपूर्ण माहितीही कळलीच असेल. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. क्रिप्टोची गपशप या शो मध्ये मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो TV. Hello
and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies. These Axies are NFTs and their crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable. And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के हमारे शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस शो का उद्देश्य है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रही सभी धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से आपको अवगत कराना। पिछले एपिसोड में हमने आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे स्कैम्स के बारे में बताया और ऐसे स्कैम से कैसे बचा जाए इसकी पूरी जानकारी भी आपको दी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी पर नजर डालने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्यों हैक होते रहते हैं और क्रिप्टो डकैती में भी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि क्रिप्टो डकैती से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि क्रिप्टो के इतिहास में हुई सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की डकैती के बारे में। इन सभी डकैती में से एमटीगॉक्स, बिटग्रेल, कॉइनचेक, क्यू कॉइन, पैनकेक बनी, पॉली नेटवर्क, क्रीम फाइनेंस, बैजर डैव, वोल्कान फोर्ज और बिटमार जो अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीगॉक्स के बारे में। एमटीगॉक्स सबसे पहला बड़े पैमाने पर हुआ एक्सचेंज हैक था और यह अब तक एक एक्सचेंज से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिटकॉइन यानी बीटीसी डकैती बनी हुई है। वही दूसरी ओर एमटीगॉक्स रॉबरी ये एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि इस साइट ने 2011 से फरवरी 2014 तक कैश को लीक किया था। हैकर्स ने कुछ वर्षों में एक्सचेंज से 100,000 बीटीसी और इसके कंज्यूमर से 750,000 बीटीसी चुरा लिए थे। उस समय इन बिटकॉइन चोरी की वैल्यू करीब $470 मिलियन थी, लेकिन अब देखा जाए तो यह अमाउंट लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इस चोरी के तुरंत बाद एमटीगॉक्स लिक्विडेशंस में चला गया, जिसमें लिक्विडेटर्स ने चोरी किए गए बीटीसी के लगभग $200,000 की वसूली की। अब बात करते हैं दूसरा एक्सचेंज हैक, जिसका नाम है बिटग्रेल। दोस्तों, बिटग्रेल एक छोटा इटालियन एक्सचेंज था जो नैनो यानी एक्सेनो जैसे डाउटफुल क्रिप्टो में ट्रेड करता था। इस एक्सचेंज को फरवरी 2018 में हैक कर लिया गया था, जिसमें एक्सेनो की कीमत कुछ सेंट से बढ़कर $33 हो गई थी। नैनो वॉलेट से अराउंड $150 मिलियन वैल्यू के 17 मिलियन कॉइन्स की चोरी हुई थी। कई यूजर्स ने अटैक से पहले एक्सचेंज को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। जांच के अनुसार कॉइन्स को कोल नॉट हॉट वॉलेट से चुराया गया था। इस बारे में पिछले 3 वर्षों में जांच जारी रही। फिर इटालियन अथॉरिटीज ने इस अटैक्स के पीछे बिटग्रेल के ओनर का हाथ होने का आरोप लगाया। दोस्तों, अब तीसरा एक्सचेंज हैक है कॉइनचेक। जापान बेस्ड कॉइनचेक से जनवरी 2018 में $530 मिलियन वैल्यू के एनईएम एक्सीएम टोकन चोरी हो गए थे। हैकर्स ने इस फैक्ट का फायदा उठाया था कि करेंसी को
हॉट वॉलेट में रखा गया था, जिसका मतलब है कि वॉलेट सर्वर से कनेक्टेड था और प्रॉपर सिक्योरिटी के अभाव के कारण हैकर फंड्स की चोरी करने में कामयाब हो गया था। जब चुराए गए कॉइन्स की पहचान की गई और उसे एनईएम डेवलपर्स द्वारा मार्क किया गया। हालांकि अनुमान लगाया गया था कि ये पैसे डार्क मार्केट्स में अवेलेबल थे। अब तक जापान के इस हैकर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर बात करें क्यूकॉइन एक्सचेंज हैक के बारे में, तो क्यूकॉइन ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी कि हैकर्स ने प्राइवेट कीज में इथेरियम, बीटीसी, लाइटकॉइन, रिपल, स्टेलर ल्यूमन्स, ट्रॉन और टीदर निकालने से पहले उनके हॉट वॉलेट की प्राइवेट कीज प्राप्त कर ली थी। दोस्तों अब बात करते हैं पैनकेक बनी की। तो ये हैक अटैक मई 2020 में हुआ। एक फ्लैश लोन अटैक था जिसमें हैकर्स ने प्लेटफॉर्म से $200 मिलियन की चोरी की थी, जिसे क्रिप्टो करेंसी चोरी के अधिक गंभीर मामलों में से एक माना जाता है। अटैक को अंजाम देने के लिए हैकर ने इसकी कीमत में हेरफेर करने और इसे पैनकेक बनीज के बनी या बीएनबी बाजार में बेचने से पहले बड़ी मात्रा में बाइनेंस कॉइन यानी बीएनबी को लोन दिया था। इसने हैकर को एक फ्लैश लोन के माध्यम से बड़ी संख्या में बनी ऑब्टेन करने को अलाउ किया था और कीमत कम करने के लिए सभी बनीज को मार्केट में डंप कर दिया और फिर पैनकेक स्वैप का उपयोग करके बीएनबी को रिपे किया। इतने बड़े हैक के बाद हैकर्स ने फिर से क्यूकॉइन को अपना निशाना बनाया और 25 सितंबर 2021 को $285 मिलियन की धोखाधड़ी की। हालांकि एक्सचेंज ने बाद में चोरी हुए अमाउंट में से $240 मिलियन वापस जुटा लिए थे। अगर बात करें पॉली नेटवर्क नाम के अटैक के बारे में, तो अगस्त 2021 में एक हैकर ने पॉली नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और कुल $600 मिलियन से अधिक के फंड को चुरा लिया। इस अटैक में एक ट्विस्ट देखने मिला कि हैकर ने प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया और इश्यूअर्स द्वारा जमा किए गए टीदर में $33 मिलियन को छोड़कर अधिकांश फंड्स वापस करने के लिए वो सहमत हो गया। पॉली नेटवर्क के अनुसार चोरी हुए एसेट्स का $200 मिलियन एक खाते में बंद कर दिया था, जिसे हैकर के पासवर्ड की आवश्यकता थी। शुरुआत में हैकर ने हैक की गई क्रिप्टो को सौंपने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पॉली नेटवर्क ने उन्हें सिस्टम फ्लॉ की खोज के लिए $500,000 का इनाम दिया और यहां तक कि उन्हें नौकरी की पेशकश भी की। फिर उसके बाद पॉली नेटवर्क ने खुलासा किया कि प्राइवेट की उन्हें मिस्टर व्हाइट हैट द्वारा सौंपी गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं क्रीम फाइनेंस अटैक के बारे में। तो इस हैक में अक्टूबर 2021 में हैकर्स ने $130 मिलियन की चोरी की थी और आपको बता दें कि यह क्रीम फाइनेंस का साल का तीसरा बड़ा हमला था। हैकर्स ने क्रीम फाइनेंस से फरवरी 2021 में $37 मिलियन और अगस्त 2021 में $19 मिलियन चुराए थे। हालिया हमले में हैकर्स ने डिफाई प्लेटफॉर्म के फ्लैश लेंडिंग सिस्टम में एक फ्लॉ समझने वाली चीजों का इस्तेमाल किया। इथेरियम नेटवर्क पर वे क्रीम फाइनेंस के सभी टोकन और असेट्स लेने में सक्षम थे, जिसकी कुल वैल्यू $130 मिलियन थी। वही अगर बात करें बैजर डाओ अटैक के बारे में, तो दिसंबर 2021 में एक हैकर ने डिफाई नेटवर्क बैजर डाओ पर कई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से असेट्स चुराने में सफलता प्राप्त की थी। माना जाता है कि यह प्रॉब्लम नवंबर 10 को शुरू हुई, जब एक मैलिशियस स्क्रिप्ट को वेबसाइट के यूजर इंटरफेस में इंजेक्ट किया गया था। हो सकता है कि इस अटैक में स्क्रिप्ट के सक्रिय होने के दौरान यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को इंटरसेप्ट किया गया हो। उस समय अटैकर ने लगभग $50 मिलियन मूल्य के 896 BTC चुरा लिए थे। वोल्कैन फोर्ज नाम के अटैक के बारे में बात करें तो दिसंबर 2021 में हैकर्स ने ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप वोल्कैन फोर्ज से $130 मिलियन की चोरी की थी। उन्होंने 4.5 मिलियन के PYR टोकन निकालने से पहले 96 अलग अलग वॉलेट की प्राइवेट कीज चुरा ली थी। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे आखिरी अटैक के बारे में, जिसका नाम है बिटमार्ट। दोस्तों दिसंबर 2021 में बिटमार्ट के हॉट वॉलेट को हैक करने के परिणाम स्वरूप लगभग $200 मिलियन की चोरी हुई थी। सबसे पहले यह सोचा गया था कि इथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से $100 मिलियन की चोरी की गई थी, लेकिन एडिशनल रिसर्च में पाया गया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के माध्यम से और $96 मिलियन चोरी हो गए थे। आपको बता दें कि इसमें 20 से अधिक टोकन्स लिए गए, जिनमें BSC USD, बाइनेंस कॉइन, BNBB पे और सेफ मून जैसे ऑल्ट कॉइन्स के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में मून शॉट, फ्लोकी इनू और बेबी डॉज भी शामिल है। तो दोस्तों अब तक हमने क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में हुए
सबसे बड़े घोटाले के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी घोटाले से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए बेस्ट तरीकों में से एक तरीका है पहले अपने वॉलेट को सुरक्षित करना और मार्केट में प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना खुद का रिसर्च करना। किसी की कही गई बात पर विश्वास न करें, इसके बजाय इन्वेस्टमेंट के बारे में किए गए हर एक क्लेम्स के बारे में बारीकी से जांच करें। खासकर उनके बारे में जांच करें कि जो छोटी अवधि में भारी रिटर्न का वादा करते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, पब्लिक पर्सनालिटी हो या कोई स्ट्रेंजर हो। और हाँ, कोई आपसे बिटकॉइन पेमेंट्स मांगता हो या आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर्स करता हो। जब भी संभव हो, अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और एक्सचेंज पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा इनेबल करें। इसके अलावा किसी को भी अपने क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की या सीड फ्रेज न दे और उस इंफॉर्मेशन को आप याद से कोल्ड वॉलेट में ऑफलाइन जरूर रखें। साथ ही वेबसाइट्स के यूआरएल को 2 या 3 बार जरूर जांच लें। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्कैमर्स फिशिंग स्कैम की कोशिश करते समय एक वैलिड साइट की यूआरएल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिसमें कहीं पर लेटर्स और नंबर्स भी आपको बदले हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि 1 के लिए I हो सकता है या O अक्षर के लिए 0 हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी ऐसे भी ऑफर की जा सकती है जिसमें आपको अपफ्रंट कॉस्ट भरने के लिए बोला जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की ऑफर्स को तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। आज के एपिसोड में क्रिप्टो वर्ल्ड के इतिहास में हुए सबसे बड़ी स्कैमिंग के बारे में हमने जाना, साथ ही हम इससे कैसे बचे ये भी हमने जाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और क्रिप्टो टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिप्टो टीवी दुनिया का एकमात्र चैनल है जो आपको क्रिप्टो वर्ल्ड की दुनिया में हो रही सभी अपडेट्स के बारे में अवगत कराता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। रुचि, व्हाट्स अप विद यू? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। You are daydreaming? Yeah, I'm daydreaming. This is a crime. It is a crime। पर पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ Okay. और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया। मैडम, आपकी मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आटे वाले की पर्ची आई होगी। हाँ, क्योंकि मैं 80 से ऊपर चला रही थी। Very true. So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी सोच लिया है, तो बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं। तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट मैंने अभी लिया, गुच्ची का। हाँ वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका। तो सरकास्टिकली बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहां पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स। सो आज हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या-क्या things that are required. We have also understood that एक क्रिप्टो वॉलेट बनाने के लिए KYC एंड बेसिक सिंपल चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना, अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज।
कीज? Yes, exactly. चाबी रहती है इसके अंदर? तो ये चाबी आपके घर की नहीं है. इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप you can get it बना back. देता चाबी वाला. But this is the key which you will lose. You will lose all your money. Oh. Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ. Public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address. That is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing, but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete, and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. हाँ बिल्कुल बताइए. मेरा ना दिमाग बहुत, तुम तो जानते हो, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें. तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ. तो अगर यही मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No, because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. My God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं. जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टोकरेंसी. आई वांट टू नो दैट. सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट. सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स. सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ नहीं होंगे. सेफ नहीं है. इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम. एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड. और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक concern होता है hot wallets में. तो मतलब hot wallet थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है. So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं, इतना मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point, देखा? I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ. तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं. यू कैन स्टोर इट. देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, एक्स एंड एक्स. तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर. एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन योर प्राइवेट की. यू हैव टू स्टोर इट, इन अ लॉकर. हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली. या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड. आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूं, मुझे ज्यादा इजी है. लिख लूंगी फिर रख लूंगी. Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए. हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं. तो उसके लिए एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मैं ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? That is the most important. जैसे हम बताते हैं कि it is always secure to keep a two-way authentication. One it comes in your email, one it comes as an OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, right? So how to keep it safe and secure, two-way authentication. It is always advisable to keep a two-way authentication. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स. सो इनफैक्ट दे कैन गेट इनटू योर ब्राउजर, दे कैन स्टील योर मनी इजीली एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप
तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है. नेवर यू आर सपोज टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना ओटीपी किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. Extraordinary. So this was our tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर कैसा पासवर्ड बनाओ कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही strong पासवर्ड होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा, एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते ना, हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा, ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है. थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज कर सकती हूँ सिक्योर? Very valid point which you have raised, because that means you are thinking over how to double your investment. So it is always advisable not to use public Wi-Fi, because they can divert you to some or the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहाँ से आपका सारा डेटा उनके इजीली विद इन सेकंड्स आ सकता है. They can steal your money with a wink of an eye. Oh my God. And it's gone. That means it's gone forever. Nothing is safe. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, that is safe? Of course, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links, download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course. There are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid such attacks or cybercrime attacks, or maybe some hackers, they are really smart. As we have always telling, the hacker का एक बहुत बड़ा हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also जिनका अभी जैसे DeFi के frauds बढ़ गए हैं, decentralized finance में लगभग 600% से ज़्यादा उनका cyber crime बढ़ गया है. That means they have stolen roughly around $10.5 billion worth. चलो, मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मेरा फ़ोन तो यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. दैट इज सेफ. आपका फ़ोन यूज़ करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क, सो दैट सच एक्टिविटीज डजंट रिपीट. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. बट हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग that's a basic hygiene level which we maintain. If you are partying also, then definitely you have to ensure that you don't reveal your secrets, just like you are not supposed to reveal your cryptocurrencies. हाँ, बिल्कुल absolutely. अच्छा, कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, if I tell somebody, a friend, my brother, my sister to handle, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी, तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 2-वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको 2-वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसा लेके भी ऐसे ही भाग जाएंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली एक गुची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा.
of course, that is something which you have. I mean, choices is Up yours, to me, huh? but definitely you have take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and Ruchi Sharma. thank you. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell, and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days, and the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel, and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, or Captain America, Black Panther or Iron Man fan, and you say, hey Jarvis, buy me my NFT, Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans, and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more Crazy Coins with Kunal. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील. तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे.
बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे? याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं, जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्सपेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंटसाठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे, पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल, तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्कमध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेजमध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जे या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge.
Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. I'm really happy when this report was recently published. So now people can refer to this report and make their business cases. Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. And our second guest is Tom Lyons. We have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble, and we also wanted to do some original research in that direction. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो की इस क्रेजी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है मिलेनियल्स पे चढ़ा क्रिप्टो का क्रेज। तो दोस्तों, हर सेंचुरी के दौरान टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव होते हुए देखा गया है। जैसे कि 20वीं सेंचुरी में इंटरनेट एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसने पूरी जनरेशन को बदल कर रख दिया। ठीक उसी तरह 21वीं सेंचुरी में ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी से आई बदलाव की लहर यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा क्रिप्टो की माला जब ही नहीं रही है बल्कि उसे अपनाकर मुनाफा भी कमा रही है। यह बात सच है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कई तरह के रिस्क और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज से भरे हुए हैं, लेकिन इसका अट्रैक्शन ऐसा है कि इन सब के बावजूद लोग चाहकर भी इसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। महज बातों में नहीं बल्कि चलिए इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स की तरह नजर घुमाते हैं। जहां इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक को 1 करोड़ क्लाइंट्स के अकाउंट तक पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता था, वही वजीरेक्स और कॉइन डिसेक्स ने देखते ही देखते लगभग 4 साल से भी अधिक 1 करोड़ क्लाइंट्स का आंकड़ा अपने नाम कर लिया है। जबकि कॉइनसेज कुबेर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 1 साल में भी 1 करोड़ के क्लाइंट्स को खुद से जोड़ लिया। इंडिया के बाद अगर बात इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है तो चीजें यहां भी बेहद चौंकाने वाली है। फॉरेन में 45% यंग जनरेशन यानी 18 to 35 वर्ष के लोग क्रिप्टो को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करना पसंद से लेकर उन मर्चेंट को भी ट्रस्ट करते हैं जिनके द्वारा क्रिप्टो को ऑफर किया जाता है। वही दूसरी तरफ सर्वे में शामिल 18 से 35 वर्ष के लगभग 40% लोगों का कहना है कि आने वाले साल में गुड्स एंड सर्विसेज के भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखते हुए 42% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने कहा कि उन्होंने 2020 में एप्पल पे या गूगल पे जैसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके फियाट में पेमेंट किया था, जबकि 21% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने बताया कि उन्होंने बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन को भी अपनाया था। अब 18 से 35 वर्ष के लड़के और लड़कियों के बीच कौन कितने परसेंट आने वाले 12 महीनों में किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, चलिए आपको बताते हैं। जहां 24% लड़के हमेशा क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, वहीं सिर्फ 11% लड़कियों ने अपनी हामी भरी है। दूसरी तरफ जहां 33% लड़के काम के मामले में क्रिप्टो का ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, वहीं 28% लड़कियों ने भी इसे चुना है। हालांकि 43% लड़के और 61% लड़कियां इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनके अलावा बात करें इन्वेस्टोपीडिया द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे की, तो अमेरिका में मौजूद 28% मिलेनियल्स का कहना है कि वो क्रिप्टो को अपने रिटायरमेंट को सपोर्ट करने के रूप में देख रहे हैं। यह आंकड़ा उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है जिन्होंने कहा था कि वो बचत 25% और स्टॉक इन्वेस्टमेंट 27% का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां लोग क्रिप्टो के नाम से डरा करते थे, कई इसे सट्टे तक का नाम दिया करते थे, उनका अब पिछले 2 साल में क्रिप्टो की दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल चुका है, जिसकी वजह तेजी से आई इस दुनिया में आया हुआ उछाल है। खास करके हमारी न्यू जनरेशन बड़ी संख्या में क्रिप्टो पर अपना भरोसा जमा रहा है, जबकि पुराने जनरेशन से कई इसे रिटायरमेंट के लिए सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आसमान में इतना न उड़ते उड़ते आगे निकल जाए कि अपना वापस लौटना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ जो क्रिप्टो को रिटायरमेंट के रूप में देख रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से अपना फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो की इस तेजी से आगे बदल रही दुनिया से आपको दूर रहना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन टेक्नोलॉजी की इस रेस में बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी दिलचस्प जानकारी को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।
Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello everyone, you're watching Crypto Masters. I'm Vinita Chatterjee. Crypto Masters is a show where the masters of the game give us a guided tour of the entire crypto ecosystem. And today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar, who is none other than a gaming expert, a tech enthusiast, and a metaverse meta starter. Welcome to the show. Hello, Vinita. Thank you for the invitation on the Crypto TV. I'm honored to be here. Thank you so much, Vikram, for joining us today, because today we are going to discuss metaverse in details. So tell me, Vikram, what is metaverse all about? Yeah, this is a very good question. The metaverse, we have to understand first what is a metaverse. What metaverse is a 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. So there is a mixed combination where we can take the experience of the 3D virtual world in gaming, shopping, singing. We can see the lot of development of the metaverse in upcoming time. So why do you think metaverse is so popular among the youngsters today? Yeah, this is a very interesting question. I think like the technology is one of the part of this world that is going to change the universe very rapidly. So I think the metaverse as well as the blockchain technology, and if we are integrating all them together on one platform, that's make me more excited, and it's feeling of every tech enthusiast, either if it's youngsters or a aged person, or however, the technology and the metaverse have potential to change the world. Now, everything, whatever we are doing in the real world, in physical world, we can see these things in the virtual world. We can, whatever we are doing, जो हम चीज डेली लाइफ में हम रूटीन में करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मेटावर्स में पॉसिबल हो सकती है. तो कहने का मतलब, हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, ये चीज भी वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकती है. हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, इसके अलावा भी जैसे गेमिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सारी एक्टिविटीज हम इसमें इजीली कर सकते हैं, और यही इसको खास बनाती है मेटावर्स को यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने में. आप कह रहे हैं कि हम लोग जो रियल लाइफ में कर सकते हैं वो सारे मेटावर्स में एक अलग तरीके से कर सकते हैं, तो आप थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं? या डेफिनेटली, अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और एक कोई आपको एसेट है, वो आपको जज करना है, उसके पैरामीटर्स चेक करने हैं, तो वो चीज आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंजॉय कर सकते हैं बाय बाइंग समथिंग, बाय यूटिलाइजिंग समथिंग. और अगर आपके पास कोई चीज बाय की हुई है, उसको आप अगर रेंट पे भी देना चाहें तो भी दे सकते हैं, अगर वो आपके पास यूज पे नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आप गेमिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है गेम खेलते खेलते अगर आपका टूर का कोई आप ट्रिप जाना चाहते हैं, तो ट्रिप का प्लान बन जाता है. आफ्टर 3 days यू कैन कम एंड यू कैन फिनिश दैट गेम अगेन. सो ऐसी चीजें जो वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकती है, ये Web3 के आने के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है. और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे. अभी के टाइम में गेमिंग सेक्टर के अंदर हमें काफी सारा रुझान देखने को मिल रहा है, जो Web3 बेस्ड है और ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग है, तो उसका ज्यादा हमें स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है. अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपसे पूछूं कि जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं, तो उसमें और एक मेटावर्स की दुनिया में गेमिंग में क्या डिफरेंस दिखेगा? सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि पबजी की गेम में आप कोई कैरेक्टर बाय कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होती है, वो कैरेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड हो सकते हैं. बट मेटावर्स गेमिंग में कुछ प्री डिफाइंड क्वांटिटीज होती है, जो कि उसको एनएफटीज फॉर्म में हो सकती है क्रिप्टो एसेट्स के फॉर्म में हो इन अपकमिंग टाइम. ये सारी चीजें क्लियरली आपको देखने को मिलेगी. उस
जो एनएफटी और क्रिप्टो बेस्ड जो आइडेंटिटीज होती है उनकी एक वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से वो चीज उसको यूनिक बनाती है। नॉर्मल गेमिंग में आपका एक कैरेक्टर होता है, उसके जैसे आप रेप्लिका अलग अलग तैयार कर सकते हैं, इट्स लाइक इन पोकेमॉन और अदर गेम्स। There are a lot of examples in the normal game, traditional game, which is based on the web 2. बट मेटावर्स गेम्स में आपके जो भी एसेट होता है यूटिलाइज करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ एनएफटीज होता है, और उसका एक प्रॉपर एक सिग्निफिकेंस, एक रोल होता है, एक कॉपीराइट होता है, उसका एक एग्जिस्टेंस होता है। उस एग्जिस्टेंस की वजह से वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक यूनिक होता है। वो ब्लॉकचेन बेस्ड होने के कारण उसका पब्लिक लेजर में एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें जो हम ब्लॉकचेन गेमिंग में कुछ पॉसिबल कर सकते हैं वो मेटावर्स गेमिंग में पॉसिबल है, और उसका प्राइस एप्रिशिएशन टाइम बाय टाइम होता है। सबसे अलग चीज जो मेटावर्स गेमिंग में हमें देखने को मिलती है वो है एनएफटीज आप होल्ड कर सकते हैं, आप रेंट पे भी दे सकते हैं, आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि मतलब आम आदमी जैसे नॉर्मली गेम खेलता है तो उसके लिए वो जो एसेट्स होता है वो कोई वैल्यू का नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेटावर्स की दुनिया में गेम खेलते हो तो आप एनएफटी क्रिएट कर सकते हो और उसको आप रेंट भी कर सकते हो। प्लीज थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना। या जैसे कि आपने एक्स इन्फिनिटी गेम है, उसमें कुछ एक्सेस है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेटावर्स का एक गेम है जो काफी पॉपुलर है। एक्सेस कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ एक वर्क करना पड़ेगा, इज लाइक यू हैव टू बाय 3 एक्सेस फॉर द एंट्री इन द गेम एंड टू प्ले। फॉर दैट यू हैव टू कलेक्ट दोज एनएफ इन फॉर्म ऑफ द एनएफटी। जो भी आप एक्सेस इकट्ठी कर रहे हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, उनको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, और उन एक्सेस को आप यूटिलाइज करके बैटल्स को जीत के और भी आप अच्छे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनएफटी और इन फॉर्म ऑफ एनी क्रिप्टो। सो बेसिकली स्मूथ लिविंग पोर्शन है एसएलपी, उस फॉर्म में आपको एक्सेस के साथ में आपको कई सारे रिवॉर्ड्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये जो रिवॉर्ड्स हमें मिलता है वो क्या हम लोग रियल लाइफ में इनकैश कर सकते हैं? या ये बहुत ही नॉमिनल सी क्वांटिटी में होने की वजह से इसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है, और इसके टाइम बाय टाइम वैल्यू एप्रिसिएशन होने की वजह से इन जो एसेट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ एनएफटी और इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो और टोकन। क्रिप्टो है, टोकन है, वो डायरेक्टली एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, आइदर इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। नाउ इफ इट्स एनएफटी यू कैन सेल, publicly sell, you can trade, however you can store. This is a very interesting thing that people are storing the NFTs, few NFTs, which is more profitable in upcoming time. और आपने $100 में आपने कोई NFTs बाय किया, एक्सेस इकट्ठी की, और अपकमिंग टाइम में जैसे जैसे वो NFTs सारे सेल आउट हो जाते हैं तो उन एक्सेस की वैल्यू बढ़ जाती है और आप उसे अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ द एक्स इन्फिनिटी गेम। गेमिंग वर्ल्ड में मेटावर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जी एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं इंडिया में बात करूं तो टेक महिंद्रा ने एक टेक एम्बर्ज जो लास्ट मंडे आई थिंक लास्ट वीक में ही अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से एक इंडिया में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी टेक कंपनीज है वो इंडिया में अच्छा वर्क करके और मेटावर्स में डायरेक्टली एंट्रीज लेना चाहती है। नो डाउट इंडिया इज द बिगेस्ट हब ऑफ आईटी, सो डेवलपमेंट के मामले में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपकमिंग टाइम में भी देखने को मिलेगा, और ये कंटिन्यू भी है। और इससे और भी ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो अभी गेमिंग सेक्टर में ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डेवलप्ड इन द गेमिंग साइड, अदर सेक्टर्स विल बी ओपन सून। सो अपकमिंग टाइम में जो अदर सेक्टर्स है उन पे भी हमारा फोकस रहेगा, मेटावर्स का फोकस रहेगा कि उन सेक्टर्स को हम कैसे ब्लॉकचेन बेस और क्रिप्टो बेस और एआई बेस बना सकते हैं। ओके अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि अभी गेमिंग इज़ द फ्यूचर। तो हमारी देश की जनता मेटावर्स और गेमिंग को लेके आगे क्या देख सकती है? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स एंड गेमिंग इन इंडिया? ब्लॉकचेन में फ्यूचर है, फ्यूचर था और फ्यूचर रहेगा। ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो अदर एजुकेशन सेक्टर से भी हो सकते हैं, गेमिंग भी हो सकती है, बट गेमिंग सेक्टर में होने की वजह से इसके काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। जैसे जैसे इंडिया के टेक जायंट्स हैं वो एंट्री ले रहे हैं, तो ये काफी बढ़िया वे है कि हम इसको और भी ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। ग्रेट।
So, what are the popular Indian gaming brands in the metaverse at the moment? It's a universe where all platforms works in a global way. Roblox and Gepetto and Minecraft. These are the top brands which is entered in the metaverse recently. So these are the Indian brands. तो अभी जो हाल ही में सिनेरियो है, दुनिया में वॉर हो रहा है और बहुत ही तकलीफ का माहौल है, आपको लगता है कि हमारे जो मेटावर्स की दुनिया है वहाँ पर भी इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ये क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और अभी बहुत लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, यू थिंक इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स लाइक वॉर? व्हाट डू यू थिंक? आपने वॉर के सीन की बात की, वॉर के सीन में एक क्रिप्टो मार्केट में अनसर्टेनिटीज देखने को मिली थी, बट ब्लॉकचेन सेक्टर में ट्रस्ट बढ़ा था। उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट है जो वापस रिकवरी भी हुआ था। उसकी एक खास वजह यह है कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, और इवन यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो बेस्ड जो ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन फॉर्म ऑफ asset, or you can say a cryptocurrency. Why is metaverse so significant for a common man? There are some players who want to fulfill their dreams in the practical life, but they cannot fulfill due to lack of assets, resources, infrastructure, and they want to be on the top in their dreams. So that thing can be fulfilled. अगर मैं मार्स पे जाना चाहूँ तो मैं मेटावर्स के अंदर ऐसे गेम्स है अपकमिंग टाइम में हमें देखने को मिलेंगे, या ऐसी एक दुनिया है जो क्रिएट होगी जिसमें मैं मार्स के ट्रैवल कर सकता हूँ, वहाँ का 3D व्यू ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में एक कॉमन मैन के लिए ये मेटावर्स है वो जरूरी है। एज एन आर्टिस्ट यू ऑल्सो थिंक लाइक मेटावर्स कैन बी रिवोल्यूशनरी स्टेप। Bollywood has completely come into metaverse. So many artists are launching their own creations in metaverse. आपको क्या लगता है metaverse हमारी जिंदगी को improve कर सकता है? फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज इम्पॉसिबल होती है और डिफिकल्ट होती है वो चीजें मेटावर्स में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आपको यूएस में कोई पेमेंट ट्रांसफर करनी है बट आप उस बैंक का एक स्टाफ से मिलना चाहते हैं, ऐसा ही कैरेक्टर एक स्टाफ उस बैंक का मेटावर्स में भी पॉसिबल हो सकता है, जिससे आप डील करें, उनका बिहेवियर चेक करें, उनकी कस्टमर सर्विस किस लेवल पे है वो चेक करें। ऐसी सारी चीजें जो हम एक फिजिकली देखना चाहते हैं कर सकते हैं, और विद इन ए टाइम फ्रेम हम उन चीजों को वर्चुअली भी कर सकते हैं। एनी क्लोजिंग कमेंट्स फॉर आवर व्यूअर्स? जहां तक आपको होता है परफेक्ट नॉलेज लीजिए और फिर आप अपने करियर की शुरुआत कीजिए मेटावर्स के अंदर। Thank you so much Vikram for coming to our show and encouraging us about the world of metaverse. आपके साथ बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि metaverse की दुनिया तो बहुत ही exciting है and we are waiting eagerly to see what lies in the future. Thank you very much. Thank you Vinita. And thank you viewers, keep watching Crypto Masters to get the guided tour of the world of crypto, blockchain, metaverse, web3 and everything that is to do with technology. Keep watching your favorite channel Crypto TV. वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। Hello and welcome to 3.0 TV. This is Manoj Dara. So, Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge. So, to explain this entire business readiness report for our viewers, we have invited two special guests. Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. He is the regional head of Enterprise Ethereum Alliance, joining us from Malaysia. Samrat, welcome on Crypto TV. Thank you, Manoj, for having me once again. And our second guest is Tom Lyons, Senior Communication Specialist,
Enterprise Ethereum Alliance, and he is joining us from Switzerland. Tom, welcome on Crypto TV. It's a pleasure to be here. Thanks for having me. So my first question to Tom is, if you can just take us through this Ethereum Business Readiness Report. What is the main objective behind it, and what is the main intention and the target it intends to achieve? Yeah, sure. I would be glad to. So we have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble on the sort of state of the business Ethereum ecosystem. We focus very much on what we call business Ethereum. So the use of Ethereum and the Ethereum-related technology, sort of outside the usual speculative use cases like DeFi, or the fintech use cases like DeFi and stuff. And we wanted to talk about who's building, what's the state of being able to build business solutions on Ethereum, and we also wanted to do some original research in that direction. And maybe I'd like to point out that this is very much based on some quantitative research. So we did some market research into the state of business projects, but it's also very much a qualitative report. So we did a lot of interviews and we did a bunch of case studies, and we'd like to get this sort of view from the ground. Fantastic. So a lot of interviews, a lot of case studies, and the main objective is to look forward. Samrat, what is your opening remarks on this? I'm really happy when this report was recently published, it's serving 2 or 3 big purposes, Manoj. One is, as Tom rightly pointed out, is educating the community outside of the current bubble, right? Which is, eventually it means that bringing in more people, right, and hence aiding adoption. That's number one. Number two, which I feel is really, really big, is using EEA's database of projects and doing some quantitative original research out of what they are doing, what are their successes, what are their failures, etc. So that's a fabulous job which Tom has done. And the third thing which I feel, which is extremely important, this is giving a reference point to people. So now people can refer to this report and make their business cases. I think that was something which was missing. People used to look for data sources. Oh, where should I go? What should I quote? Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. So Tom, what Samrat has said, that what I've picked from the opening remarks is this report is focused on all those individuals who are looking for a solution in this space. And this report's intent to highlight few things which we have picked up, and I want you to just clarify this for our viewers in the simpler format. So the report says that the awareness has been supported by the highly visible success of consumers from the DeFi platforms and NFTs for art and collectibles. So we have been witnessing a boom in 2021, and everyone is aware of the fall which this cryptocurrency market has witnessed. So what is the current situation, and what is the plan which the ecosystem is intending and highlighting for all those businesses who are looking to come in this space? Tom, for you. So it's very interesting. In the course of our research, I heard, especially in the conversations I had with business people who are actually trying to build on Ethereum, we heard over and over again that the example of DeFi, right? For example, the success of Uniswap, and this is the example outside of the market movements, okay? The fact that it works was very, very powerful for the business champions within organizations. I talked to one woman in a very large multinational who said, I've been talking about blockchain for 3 years and nobody understood. When I showed them Uniswap, and this is like the Uber of exchanges, people understood it. So people can see, aha, here's a decentralized here's a decentralized business model that's actually working. And it was the same with NFTs. So our report isn't about NFTs for collectibles, but the fact that this has been very popular and that it's working also for brands has got a lot of people's attention. Fantastic. Such as, if you can just give a few examples. Well, so I told the examples of Uniswap and all the DeFi stuff, but you have NFTs for large brands like Marvel, and you have people are seeing the market, right? Sure. So what Tom is saying that Samrat, there is actually lot. This report is a guide for all those individuals who are looking to step in the ecosystem. What is your thought on this, and how do you suggest by reading this report there can be a broader solutions to all those individuals who are under concern?
Yeah, absolutely. So, Manoj, in a way, this is helping businesses make their decisions. This is giving them the right parameters. This is also giving them peer analysis. So, let's say if I have a business model which is similar to something which Tom has covered in the report, and he's also and the businesses that Tom has covered are really the top-notch ones. So, I would sort of have a path that this is something which I could achieve. This is what I could do. All right. Learning from other people's successes. The other thing which it is also bringing in is Manoj, just to add another point, which is also the availability of such people within the Ethereum ecosystem. So it sort of gives a very high degree of confidence to people who are building on Ethereum that these companies have trusted Ethereum and utilizing that technology. And with EA membership, I think that's something which is fantastic with EA that Tom, Dan, James, they've all been working on connecting businesses together. So Fantastic. when companies join the EA, they are able to access these people. So since Tom, we are talking about the entire ecosystem. You're talking about bringing in a lot of new businesses to your entire network. So we are doing it at a time when the merge is actually in process, and the sustainability and performance of the mainnet remains a concern. That's what we are not saying. The report is saying. So Ethereum's high energy use, its relative limited capacity, and high transaction cost surface time and again. And is it set to change? So what are you suggesting the viewers or for those individuals who are looking for a solution by reading this report? So there are two aspects to that. The sustainability issue should be theoretically completely solved when the merge happens, because Ethereum's energy use, when it moves to proof of stake, should be reduced by something like 99.99%. Now, energy use was a huge blocker for almost everybody we talked to, because people are concerned about sustainability, and there's also huge reputational issues, especially if you're a large multinational or a brand. People associate blockchain with high energy use, and then they say, oh, why are you using this? So that's going to change. In terms of performance, there's two things. First of all, you can get you can use the Ethereum ecosystem in highly performant ways if you use L2s right now. But it's not so straightforward, but you can do that. So the solutions are already there. And over the course of the next 12 to 18 months, when we start getting in sharding and other enhancements to the mainnet, then performance should improve dramatically. But we expect these L2s, these sort of enhancements to the mainnet to stay and continue to be important. So time and again, this L2, this letter comes to us in a way wherein there is a question mark ahead of it. Samrat, please understand what I am trying to ask you is, will the layer 2 solutions still exist? Will they work in tandem with what Ethereum's frame of mind or the aggressive nature in which it is coming out after the merge? Will they merge with it? Or you have a different idea? Sure, Manoj. And this is just my personal opinion, okay? I believe they're definitely going to coexist. Ethereum, I look at Ethereum as the global settlement layer, and the L2s are providing much more value than just a blockchain network. You can now comfortably say just a blockchain network, because while there is the privacy and security and speed via sharding which Ethereum will provide, there are also purpose specific software which L2s are providing. For example, Polygon. Look at Polygon, what it's doing. Recently launched ZK rollups as well. So I think it's a expanding ecosystem, and both of these players will coexist even after the merge. Tom, your quick view on this, on the layer 2 solutions. Actually people are expecting that layer 2 will vanish. All they have to open a new shop and design something that will help them to earn their bread and butter. So what is your opinion on this? So I have to agree with Samrat on this one. The conversations and the research we did rather indicated that the L2s are going to stay. There's going to be a room for this, either for extra capacity or more for these use case specific chains, right? And you can use L2s. So one of the other trends we saw is sort of a merging of public and private blockchain going forward. Perfect. And L2s are going to play a role in that. So you'll be able to spin up your own private chain, but still be connected to the mainnet.
Right. So you want to highlight something on the private and the public blockchain comment which Tom has made, Samrat? Yeah, I think it's Manoj. It's just giving a lot of confidence to businesses to start utilizing blockchain in more ways than we had imagined till now. So I think even after the merge, it's a should I call it uphill or downhill? That's something which it remains to be seen. But it's a better journey going forward, definitely. Are we hinting towards gaining? The dominance at which Bitcoin is currently. Will Ethereum surpass that? That's a question you ask me almost each time. So from a cryptocurrency, purely from a financial value perspective, I don't see. This is again my personal view. I don't see it crossing Bitcoin. Bitcoin is excelling and has been excelling because of different reasons altogether. The kind of people who are holding it or the transaction it is used for. Ethereum has an intrinsic value. It is utilized as a utility token, mostly on the Ethereum network, right? So these are not comparable, but yes, from a usage perspective, definitely it has got way more users than what Bitcoin is. Right. So let's move on to the second segment, Tom, and which is actually highlighting about the observations and trends in the current ecosystem. What are your observations? What is the thought process that has gone in? Because the lion's share of activity is focused on the blockchain and the infrastructure projects. At a time when the financial services related industries and its use cases such as capital market payments and insurance are at maybe second, third or the fourth position. So what is the ecosystem doing to gain the lost ground, and what is the thought process that has gone in? If you can just start that. So maybe to clarify that, I'm glad to do so. So what we did was we did a sort of we had a survey and we did some research and we collected a database about 120 projects, but this is a special kind of database. We were focusing on business-oriented projects, either from the vendor side or the adopter side. So not the fintech stuff and not the speculation or finance oriented stuff, really people trying to build. And we tried to use that. We never said it was a definitive collection, but we tried to use it to give us ideas of where the action is on the business side. And there was, obviously no surprise that most of the action is still in infrastructure. So, people building out the Ethereum ecosystem infrastructure, whether it's an L2 or whether it's a development services and stuff like that. And obviously there's still the lion's share of activity in fintech related stuff, whether it's marketplaces. Let me see, I have it right here in front of me. Well, it's marketplaces or similar kind of fintech use cases. But we also saw a lot of action in things like supply chain. Now, there's no surprise. That's been a use case for a very long time. But what we're seeing is these sort of builder use cases starting to take prominence. You mentioned about supply chain, Tom. Is there any traction in any other segment, such as medical or pharmaceutical, or for that matter? There's traction, but there's less. The healthcare segment, I think personally, is very, very interesting, and I expect a lot of action there. But it's highly complex because of the privacy issues. We do understand in business there is a push and pull strategy. So are you trying to pull in all those individuals who are not getting attracted towards you, or you have a different idea? I would say I never thought of it like that. But I'll go for pull. It's all about business, Tom. Yeah. I'll go for the pull strategy in the sense that we're trying to educate and fantastic provide clarity, right? Now, one thing, if I may, we didn't talk about in this report, we've developed a business readiness framework. I guess we're going to talk about that in a second. And that's really a decision-making framework to show where are we and for different use cases and where are we in different parameters that businesses would understand. So what we did is we after all our discussions and talking to the people who are trying to, building and the experts and also the consultants, we tried to break down different parts of the ecosystem into a bunch of parameters. So there'll be I gotta take a look here, but things like things you have to think about when you want to build, like network cost or decentralization and security, how that works together, scaling, privacy, sustainability as an issue, usability, interrupt, and we have a set of these, and we explained them, and then we sort of plotted for different business types where are we today. So for if what would be
what criteria would be more or less important for you if you were a corporate, if you were an SME, or if you were a startup. And then we wanted to introduce this to the community as a way for decision makers to judge for themselves: is my business, is this good for my business and good for my use case? But it's also a way to educate, to understand the different parts of the ecosystem, different parameters of the technology. Fantastic. So we think this is something new, and we hope it will be useful. Something new and useful. That's what the two key words which I've picked from Tom. But Samrat, in business we say that show me the money. So by following this report or by following this thesis principle, how will one earn money? That is the most important thing, What is actually the way forward and where are the opportunities? Is this report highlighting those? So yes, Manoj, I am definitely excited about the businesses which will be jumping onto the blockchain bus because of this report. So you asked, show me the money and where are the opportunities? So definitely Tom has covered some real life case studies and real interviews of people who made successful decisions. One way it is helping businesses is it is giving a decision matrix to them, for them to be able to decide, what are the parameters to consider while they are taking their blockchain decisions. What are the, there were some businesses which were on the edge because of the ESG concerns. They have to do their reporting because of the geography where they are. So it's helping them make that decision as well. Second part, which is important, which is an overall EEA initiative, which I see, which is investing heavily on content. So it's you will see a lot of, the same report is also giving out of, it's educational, it's Tom had highlighted that also, that is educational also. It's giving a lot of perspective to people. It's sort of helping them synchronize, because, there's a lot of noise out there about blockchain, about crypto in general. So fantastic. It's good to hear from the EEA that, here are our perspectives. Here are the EEA official statements about describing something which is related to Ethereum. So you will also see this being followed up by, actually, this was in parallel, right, Tom, which was the EEA primer series. Yeah. We also do primers, which EEA is another initiative. There's also a super initiative, which I'm also fortunately part of, which is called training quality. So now we are developing a framework for globally managing all training, which is being done for Ethereum and blockchain platforms in general. So courses can come and get qualified. So it's currently being made. That framework is being made. There's a huge working group which is working on it. So what I'm trying to say is that, business leaders will be able to make better decisions. Fantastic. In blockchain. So, Yeah. So Tom, business leaders can make better decisions. That's what Samrat is saying. All right, we'll take a short break, and when we will return, we will speak more about the business readiness report. Welcome back on 3.0 TV. This is Manoj Dara, and we have special guest Mr. Tom Lyons and Samrat Kishore from the Ethereum ecosystem to discuss about the business readiness of Ethereum ecosystem. So you guys are involved in a lot of trainings, to educate all those individuals who are ready to come into your ecosystem and join your ecosystem. So is this question about privacy remains a key concern, because your report is already highlighting, and what are you answering them, all those individuals who are currently bothered about this privacy aspect? So
it's extremely important to a lot of people, especially in the business world. So one of the main blockers of using blockchain has always been nobody wants to give their data away. Nobody wants to, and that's why, you know, you have large consumer platforms like Amazon, but you don't have huge global business-oriented platform like that because people are worried about the data. So what we're telling people is that this is being solved through the L2s and also through the advances in cryptography. Like everyone's talking about zero knowledge proofs, but there are other things. We think that, or I personally think that it's possible within the next couple of years to sort of square this circle between the transparency, which makes blockchain work, and the privacy, which makes it useful for business. All right. And can I add a point to the show me the money question? Yeah. Please go ahead. Please do. Okay. Please, Tom. Because this is more interesting. A couple of our use cases really. So there's two things you're going to get out of a blockchain use case that works. You're going to gain efficiencies and save money. And you're going to be able to address larger markets. Now, for example, one of our use cases involves Microsoft Azure, the cloud platform, and you know, for their global cloud computing platform, for all their server farms, they introduced a blockchain-based, a private Ethereum-based platform, okay, for all of their suppliers. And they tokenized every single component. So every SSD, every hard drive, everything and globally in Microsoft Azure is represented by a token. Okay, and then these tokens flow along the supply chain. By doing this, they were able to introduce massive efficiency to the whole system. Okay, and they saving, by their estimates, about $50 million a year doing this. Okay, they also gain transparency into the whole supply chain. And we see a lot of stories like this. And if I can tell a second story, one of the other cases I have involves Birra Peroni. So that's the most popular beer in Italy. And they wanted to do on the consumer loyalty side, they decided they tokenized their beer making process such that you can, if you buy a bottle of beer in Italy now, Peroni, you can scan a QR code and you can see exactly where all the ingredients came from and what batch it came from. But in order, and this is all based on, this is also using tokenizing all the elements on the supply chain. But one of the ancillary benefits of this was, in order to do that, they had to digitize the whole supply chain anyway. So they're gaining also efficiencies, they're gaining transparency into their own work, so it's helping them. Fantastic. It's a very, very good example, Tom, which you gave. But my next question to Samrat is, as the technology is maturing, Samrat, the world of private and public blockchain is converging. That's what the report has also mentioned. So companies today can use blockchain as a service offerings or those L2s that offer private options to quickly spin off application-specific blockchain-based solutions. So what are we trying to achieve? If you can just, actually I have not understood this line. How can you explain this to me? Okay, very simple terms. I think the starting point is so there was a period of time, especially in India, where blockchain took off because a lot of startups were getting funded, right? So 2019, actually not just India but across the world. You look at Singapore, you look at Silicon Valley, startups were getting bizarre amounts of valuations only because they were using blockchain. Now, what are they using blockchain for is the next question, which people started asking, past couple of years, and especially when the crypto prices are a leading indicator, right? I mean, they just went up, and everybody got so interested that they wanted to, know more and more, and then those same startups got more money. So, fantastic. So in a way, it has, and you're right. You're asking that question is very, very important. That what is a private blockchain? How are these two worlds converging? And what does it mean? I mean, what does it mean for the average people or average businesses? So technically, it's totally dependent on the business use case. If you want to open up access to transactions to an outside party from a business, you need to use a hybrid. You need to use a hybrid blockchain. You have to have. So imagine it to be like a time zone. The GMT that we use for time zones, right? We are currently in 3 different time zones, all of us. So we use GMT to synchronize, right? So blockchain, and that's what we're trying to do in baseline protocol. We're using blockchain at the center for synchronizing transactions in 2 different systems.
And one very important thing, the best way to implement blockchain is to not put data on the blockchain. So no data really goes on the blockchain; it stays outside. Only proofs can be sent out. Metadata can be sent out on the blockchain. So that ways you could even be opening up your data to your competition. You can be opening up your data to your providers. Anybody in the supply chain actually. But still, nobody will have access to your data. They will just have access to metadata, which may be giving them some information. For example, what we are doing in baseline protocol, since we spoke about supply chains. So, for example, are we able to synchronize two different fields in two different systems to make sure that the entries are correct, they are matched at all times across the supply chain? So stuff like that. So that's how blockchain is presently being used. It's a team sport. So one thing very important is which I want to highlight, and since you asked that question, it's a team sport. It's like I give that example a lot, which is it's like the first fax machine. You cannot operate till the time you have somebody on the other side who's ready to receive it. So you have to have these two parties. So there's a counterparty absolutely required at all times. Now it depends if it is inside your business, your perimeter, then you can have a private blockchain. If it is outside, you have to rely on a public blockchain for synchronizing. The third thing which you asked, which was L2 spin-ups, definitely the way forward. I think it's one major shift that you will see, Manoj, is that most of the platforms, most of the innovation which happened in the blockchain world was open source. Perfect. And that was also the reason for rapid innovation and rapid adoption of this technology, because people just would spin things up and they would experiment. So a 3-people company could be competing to an Infosys, for example, in doing something great. So that's where I see L2s. The L2s are enabling businesses to try things out, implement things faster, fail faster, and create new business models. But thanks to Tom and Samrat, now I can understand what are the ingredients that go in my beer. So moving on. Tom, my next question to you is, so as we are talking about the barriers of adoption, you have spoken to a lot of people in the ecosystem. Some are accepting what you are saying and suggesting, and there are few who are on the back foot. So according to you, if you can just highlight with few examples, what are the barriers of adoption in this space? Okay, so first of all, we've talked about sustainability, which I think is not going to be a barrier going forward. Another big issue that we haven't talked about yet is regulation. So regulation shows up as a blocker or as a question mark for a lot of people. But we have to understand, and we try to explain in the report, there are two aspects to regulation. There's cryptocurrency regulation, where regulators around the world are often very skeptical and worried about consumer protection. But there's also blockchain technology regulation, and we find many jurisdictions are rather open to it. So the big example we bring in the report is here in Switzerland, where I live. The Swiss government has basically given legal status to tokenize assets. Fantastic. But you talk to the U.S. regulators in Europe. We have MiCA now. So there's a lot of people who come into this space really need to look at regulation among these two aspects: the cryptocurrency one, which is one thing, and the technology where jurisdictions are rather open. And then another blocker, I think, is basically understanding, what do I do with this? Why do I need it? How do I get into it? And to echo what Samrat just said, if to me personally, if you ask yourself why blockchain, the answer is always going to be because you have to coordinate among multiple parties. Okay, it's not a database for yourself. It's a synchronization engine and a settlement engine. Fantastic. Since we are talking about the barriers of adoption, and you spoke really well about the regulations, so very quickly, if you can just highlight about the futures of NFTs. If you can just briefly explain, we have seen a boom in 2021, and we are at a level wherein markets have corrected because of the obvious reasons, and hence the volumes have also corrected. So how do you see this future of NFTs going forward? Okay, so I have to say that our report has nothing to say at all about the future of the art and collectible NFT market. But NFTs are a theme throughout the report for business use. And what I find very interesting and what we point out is that, first of all, the idea of an NFT is rather old. It's not new.
It's one of the base use cases of blockchain, a non-fungible token. Right. It's just a unique representation of an asset in digital form. And we are seeing the use of these NFTs, which everyone associates now with art, in these business use cases. I mentioned the Microsoft tokenizing all of its hard drives. Vera Peroni tokenizing the ingredients in its supply chain. People are one of our use cases. A company is tokenizing company receivables and sort of making not a security, but making an asset out of them. So, and a lot of people are looking at fantastic are looking at NFTs on the brand side as people talk about NFTs as the new CRM. It's a new way for businesses to interact with and build relationships to their customers. I think that's an important thing, and I think the whole. I think we're going to just start seeing a real boom in understanding the value of tokenization of pretty much anything. Fantastic. So, Samrat, very quickly, if you want to highlight on the regulation aspect, which Tom has highlighted. So, in Switzerland, there are certain regulations that are supporting the entire ecosystem. So, very quickly, if you can just highlight that in India perspective as well. Sure, Manoj. So, I think the crypto regulations have been, there's been flip-flop around taxation. That's the only glitch I see, which is taxation on the gains people have made out of cryptocurrency. But what we are talking about today is use of software. So there is absolutely no way that the government can ban using a certain technology, unless you're creating applications which are not legal and sort of related to betting, etc. So all that is not legal. But I think there is absolutely, I don't see there is no regulatory hurdle in utilizing Ethereum. Fantastic. Till the time you're not doing things which are not in the purview of the law. Yeah. So Tom, this if you can just explain, since we are at the last leg of this interview, and we are talking about the section 3, which is the assessing the business readiness of the Ethereum ecosystem. So how do you see this, the potential and capabilities of public Ethereum and the Ethereum ecosystem by shedding light on the current real value deployments of Ethereum and the Web3 solutions which they intend to achieve? If you can just simplify this for our viewer. Yes, so our main conclusions are that when we looked at the ecosystem today, it's come a very, very long way. There's no doubt about it. And I would say that the pieces are in place for the safe and productive use of Ethereum. They're all there, but they don't necessarily fit together yet, right? It's not, things aren't necessarily integrated. So you're going to have to understand a bit or build a bit on your own to really be able to put everything together. But as opposed to even, 12 or 18 months ago, there's many more options to get help. And there's many more, people understand the setups better. And I think that the most interesting thing that came out to me personally was seeing this sort of increase in awareness of what a decentralized business model is and what it's good for and what not. So people are not afraid of public blockchain anymore. And businesses tend to be, they're looking at the stuff and saying, okay, I think there's something here. And that, that goes back to where Ethereum is, but the whole Web3 movement, I think, is starting to really make inroads. All right. Samrat, your closing remarks on this. I think the best closing remarks with this would be that Ethereum is ready for business. Okay. Thank you so much, Tom, for joining from Switzerland and explaining our viewers what this business readiness reports means for our for the individuals who are looking to come in your ecosystem. Thank you so much, Samrat, for joining us from Malaysia and sharing your views about the entire report ecosystem and the way forward. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction and coming and talking on 3.0 TV. Thank you so much. Thank you for having me. It's great. That's all there is in today's Digitally Unplugged. This is Manoj Zara signing off. But keep watching 3.0 TV for more such interesting interviews. Until then, thank you.
Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people, thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. नमस्कार मित्रांनो, क्रिप्टो टीव्ही मध्ये तुमचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. तुम्ही आतापर्यंत ऐकलेल्या सर्व कॉइन पैकी हे समजणे थोडे कठीण आहे. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. डेव्हलपर्स ब्लॉकचेनला पोल्काडॉट सिस्टीमशी लिंक करू शकतात आणि अगदी नवीन ब्लॉकचेन तयार करू शकतात. जेव्हा गुंतवणूकदार डेव्हलपर्सना नवीन तंत्रज्ञानाकडे वळताना पाहतात तेव्हा ते त्याचे लक्ष वेधून घेते. जेव्हा बिटकॉइन आणि इथेरियमचा विचार केला जातो तेव्हा गुंतवणूकदारांना त्याच्या मूल्यावर आधारित कॉइन्सचे अपूर्णांक खरेदी करावे लागतात. पोल्काडॉट जे सध्या $21.24 व्यापार करते ते अधिक परवडणारे आहेत, ज्यामुळे ते अधिक आकर्षक खरेदी बनते. पोल्काडॉट वेगळे आहे कारण ते पॅराचेन्स ऑफर करते, जे कनेक्टेड ब्लॉकचेनची मालिका आहे. या ब्लॉकचेन एकमेकांच्या बरोबरीने व्यवहाराला गती देतात. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अनेक लेन्स असल्यामुळे नेटवर्क ओव्हरलोड होण्याची शक्यता कमी होते. पोल्काडॉट म्हणजे काय? पोल्काडॉटची स्थापना 2016 मध्ये इथेरियमचे फॉर्मर को-फाउंडर आणि CTO गॅव्हिन वुड्स यांनी केली होती. पोल्काडॉटचे तंत्रज्ञान अलीकडच्या वर्षात ब्लॉकचेनच्या मेजर अडॉप्शन इश्यूजला रिसॉल्व्ह करते. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट प्रोटोकॉल असंबंधित ब्लॉकचेन्सना एकमेकांशी सुरक्षितपणे बोलण्याची परवानगी देण्यासाठी डिझाइन केले आहेत, जेणेकरून मूल्य किंवा डेटा इथेरियम आणि बिटकॉइन ब्लॉकचेन दरम्यान कोणत्याही इंटरमिडियरीज प्रवाहित होऊ शकेल.
हे अनेक समांतर ब्लॉकचेन वापरून स्पीडी आणि स्केलेबल होण्यासाठी देखील डिझाईन केले आहेत, जे मुख्य ब्लॉकचेनच्या प्रक्रियेची मागणी पूर्ण करते. पोल्काडॉट टोकन पोल्काडॉट नेटवर्कमध्ये 2 मुख्य कार्य करते. पहिले, हे एक गव्हर्नन्स टोकन आहे जे होल्डर्सना प्रोटोकॉलच्या भविष्याबद्दल बोलण्याची परवानगी देते. आणि दुसरे, ते स्टेकिंगसाठी वापरले जाते. ज्या पद्धतीने पोल्काडॉट नेटवर्क व्यवहारांची व्हेरिफिकेशन करते आणि नवीन डॉट्स जारी करते. तुमच्या गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून एक्सचेंजवर डॉट खरेदी आणि विक्री केली जाऊ शकते. पोल्काडॉट नेटवर्कमध्ये रिले चेन नावाची मुख्य ब्लॉकचेन आणि अनेक युजर्सने तयार केलेल्या पॅरलल चेन्स किंवा पॅराचेन्स समाविष्ट आहेत. यात एक कनेक्टिंग लेयर किंवा ब्रिज देखील आहे, जो बहुतेक ब्लॉकचेन दरम्यान मूल्य आणि डेटा हस्तांतरित करण्यास अनुमती देतो आणि अगदी नॉन ब्लॉकचेन डेटाबेसशी कनेक्ट करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. डॉट होल्डर स्टेकिंग सिस्टम स्पष्टीकरण. पोल्काडॉट नेटवर्क सुरक्षित करण्यासाठी, व्यवहारांची सिक्युअर व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी, नवीन डॉट तयार करण्यासाठी आणि डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेन्सस मेकॅनिझम वापरते. डॉट होल्डर स्टेकिंग सिस्टम शी संवाद साधू शकतात असे अनेक मार्ग आहेत, जसे त्यांना किती वेळ, टेक्निकल नॉलेज आणि पैसा अर्पण करायचे आहे. व्हॅलिडेटर सर्वाधिक काम करतात. ही एक प्रमुख कमिटमेंट आहे आणि त्यासाठी टेक्निकल नो हाऊ आवश्यक आहे. व्हॅलिडेटर होण्यासाठी तुम्हाला एक नोड चालवावा लागतो, ज्यामध्ये कमीत कमी वेळ असेल आणि तुमच्या स्वतःचा डॉटची भरीव रक्कम असेल. त्या बदल्यात तुम्हाला कायदेशीर व्यवहार करण्याचा अधिकार मिळतो. रिले चेन मध्ये व्यवहारांचे नवीन ब्लॉक्स जोडण्याचा आणि ट्रान्झॅक्शन फीज तसेच टिप्स ह्यात सवलत मिळण्याचा अधिकारही मिळतो. नॉमिनेटर नियमित गुंतवणूकदारांना इनडायरेक्टली स्टेकमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देतात. तुम्ही तुमच्या काही डॉट्स नियमानुसार वागण्याचा तुमचा विश्वासीय असलेला व्हॅलिडेटरला सोपवू शकता. त्या बदल्यात तुम्हाला तुमच्या निवडलेल्या व्हॅलिडेटरद्वारे कमवलेल्या डॉट्सचा आयोग मिळेल. तुम्ही कोणत्या व्हॅलिडेटरला निवडता याविषयी सावधगिरी बाळगा, कारण जर तुमचा व्हॅलिडेटर नियम तोडत असेल तर तुमचा काही हिस्सा जप्त होऊ शकेल. अशा 2 विशेष भूमिका देखील आहेत, ज्यांना सामान्यतः पूर्ण व्हॅलिडेटर बनण्यापेक्षा कमी कमिटमेंटची आवश्यकता असते, परंतु नॉमिनेटर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कमिटमेंटपेक्षा टेक्निकल स्किल आवश्यक असते. पहिले, कलेक्टर्स हे व्हॅलिड पॅराचेन्स ट्रान्झॅक्शनचे ट्रॅक ठेवतात आणि ते रिले चेन व्हॅलिडेटर्सकडे सबमिट करतात. सेकंड, फिशरमॅन नेटवर्क. फिशरमॅन नेटवर्कवर बॅड बिहेवियर शोधण्यात आणि रिपोर्ट करण्यात मदत करतात. वरीलपैकी कोणत्याही भूमिकेद्वारे थेट नेटवर्कमध्ये भाग घेऊन तुम्ही डॉट रिवॉर्ड्स प्राप्त करण्यास सक्षम होऊ शकता. डॉट होल्डर्सना नेटवर्कच्या प्रशासनामध्ये देखील एक मत आहे आणि ते प्रपोज सॉफ्टवेअर अपग्रेड्स वर मतदान करण्यास सक्षम आहेत. डॉटची खरेदी कशी करावी? तुम्ही विविध क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि वॉलेट वापरून डॉट खरेदी, विक्री आणि प्राप्त करू शकता. क्रिप्टो करन्सीवर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. NFT मार्केटप्लेसेस का सबसे रिलायबल नाम OpenSea,
जो फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। लेकिन कब तक? ओपनसी को जोरदार मात देकर नंबर 1 के इस टाइटल को हथियाने की फिराक में है एक नहीं बल्कि 5 दमदार दावेदार, जो ओपनसी के पैरों तले जमीन कब खिसका दे कोई कह नहीं सकता। ओपनसी पर एक और फ्रॉड और खेल खत्म, टॉप पोजीशन गई हाथ से। ओपनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर अब तक 1.4 मिलियन वॉलेट्स के थ्रू एनएफटीज ट्रेड हुई हैं। इसकी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है $23.5 बिलियन, यानी इसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर डैपरैडर से करीब $5 बिलियन ज्यादा। लेकिन ओपनसी जितनी अपनी कामयाबी के लिए सुर्खियों में है, उतनी ही चर्चा है इसकी खामियों की। ओपनसी पर इन तमाम गड़बड़ियों की शुरुआत हुई 2020 में, जब ओपनसी ने अपने यूजर्स को बगैर अप्रूवल के फ्री एनएफटी मिंट करने की इजाजत दी, जिसके चलते ओपनसी पर न्यूली मिंट की गई एनएफटीज में से 80% आर्ट फेक और स्पैम साबित हुआ। ये बात ओपनसी ने खुद कबूली। वैसे ओपनसी ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बचाने के लिए अपने यूजर्स का दिल भी कई बार जीता है। जैसे कि इसी साल जनवरी में ओपनसी ने अपने यूजर्स को $1.8 मिलियन रीइंबर्स किए, क्योंकि यूजर्स ने ओपनसी पर चल रही इन्हीं गड़बड़ियों के चलते गलती से अपनी एनएफटीज रियल वैल्यू से बेहद कम कीमत पर बेच दी थी। इतना ही नहीं, एक वॉलेट ने ओपनसी पर एक बग को एक्सप्लॉइट करके $800,000 कमाए और फिर बोर्ड एप की 3 अल्ट्रा एक्सक्लूसिव एनएफटीज रीसेल की। डिस्पाइट ऑल दीज ग्लिचेस, ओपनसी की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि 2020 में $95 मिलियन की सेल से 2021 में सीधे $25 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कुछ भी कहो, नंबर 1 पोजीशन होती तो बेवफा है, तभी तो इस पोजीशन पर फिलहाल 5 उभरती मार्केटप्लेसेस की नजर है। कौन सी है ये मार्केटप्लेसेस? चलिए बताते हैं आपको। नंबर 1 पर है कॉइनबेस। 2012 में लॉन्च हुई कॉइनबेस 89 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। कॉइनबेस अब जल्द अपनी एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च करने की तैयारी में है। जनवरी 2021 में ही कॉइनबेस पर रजिस्टर्ड वेटलिस्ट थी 1.1 मिलियन पीपल, जबकि ओपनसी के एक्टिव यूजर्स हैं 1 मिलियन। कॉइनबेस एनएफटी पीयर टू पीयर होगी और इनिशियली इथेरियम ब्लॉकचेन पर होगी, लेकिन आगे चलकर कई मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करेगी। कॉइनबेस ने ऑलरेडी लेजी लायंस एंड डेड फेलास के साथ पार्टनरशिप कर ली है। कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज का मानना है कि वो अपने एनएफटी मार्केटप्लेस के थ्रू अपनी ईयरली रेवेन्यू में ओवर $1.26 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं। भाई वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है FTX NFTs। पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुई FTX NFT मार्केटप्लेस, लेकिन ये कॉइनबेस मार्केटप्लेस से काफी अलग है। ये पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स को अपने एसेट की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उनका तमाम डेटा FTX नेटवर्क पर रिकॉर्डेड और स्टोर्ड है। साथ ही मार्केटप्लेस सोलाना पर है, ना कि इथेरियम पर। NFT मार्केटप्लेस में सोलाना की हवा चल रही है और बहुत सी NFT मार्केटप्लेसेस अब सोलाना पर स्विच कर रही हैं। ओपनसी 2.5% फीस चार्ज करता है, जबकि FTX NFT मार्केटप्लेस सिर्फ 2% फीस ही चार्ज करता है। इस मार्केटप्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट एल्योरिंग एस्पेक्ट है इसकी पेरेंट कंपनी। सैम बैंकमैन-फ्राइड ओन्ड FTX क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसकी वैल्यूएशन इस साल ओवर $32 बिलियन हो गई है। So as far as legitimacy, security or fraudulent free activity is concerned, FTX NFT marketplace is a very trusted option. लंबी रेस का घोड़ा है, कब आगे निकल जाए कोई कह नहीं सकता। इस लिस्ट में अगला नाम है एवरग्रो कॉइन NFT मार्केटप्लेस का। एवरग्रो कॉइन लेकर आ रहा है BNB चेन पर अपनी नई NFT मार्केटप्लेस, जो ऑफर करेगी एक नया प्रोटोकॉल, और वो है NFT लेंडिंग। इसकी मदद से NFT ओनर्स अपनी NFT को गिरवी रखकर किसी क्रिप्टो करेंसी में लोन ले पाएंगे और उसके जरिए कई DeFi प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट कमा पाएंगे। NFT लेंडिंग की बदौलत NFT ओनर्स अपने डिजिटल एसेट को बिना बेचे उससे पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे
और क्योंकि एवरग्रो एनएफटी मार्केटप्लेस बीएनबी चेन पर है, तो उन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद मार्केटप्लेसेस पर चार्ज की जा रही गैस फीस के मुकाबले यहाँ काफी कम गैस फीस चुकानी होगी। सितंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद अब तक एवरग्रो कॉइन ने अपने होल्डर्स को ओवर $35.5 मिलियन चुकाए हैं। ऑल्दो ओपनसी के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, पर यू नेवर नो कब ये मिलियंस बिलियंस में बदल जाए। सो कीप एन आई आउट फॉर एवरग्रो कॉइन एनएफटी मार्केटप्लेस। और चलिए इस लिस्ट में अगला नाम है रेडेबल का। शुरुआती दिनों में रेडेबल ने मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम में ओपनसी को कई बार कड़ी मात दी, लेकिन 2021 में आए एनएफटी बूम की बाढ़ को रेडेबल संभाल नहीं पाया। खैर, हाल फिलहाल में ओपनसी पर छाए काले बादलों का फायदा रेडेबल ने खूब उठाया। एक से बढ़कर एक यूटिलिटीज ऑफर करके रेडेबल ने साबित कर दिया कि ओपनसी को सबसे बड़ा खतरा रेडेबल से ही है। हाल ही में रेडेबल ने रारी नाम से अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च करके एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है, क्योंकि ओपनसी अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। और इस लिस्ट में 5वां नाम है जोरा। ओपनसी के कंपेटिटर्स में एक नाम जोरा का भी है। अब आप कहेंगे जोरा ये कौन सी एनएफटी मार्केटप्लेस है, इसका नाम तो कभी नहीं सुना। जी हाँ, इस मार्केटप्लेस के ज्यादा चर्चे नहीं हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही डैपरैडर की टॉप 25 मार्केटप्लेस बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन कुछ वजनदार एनएफटीज हैं इस परमिशनलेस ऑन चेन प्लेटफॉर्म की झोली में। आप जानकर हैरान होंगे कि प्लीजर डाओ ने $4 मिलियन में ओरिजिनल डोज मीम एनएफटी जोरा पर ही मिंट की थी। जोरा के कई फायदे हैं। एक तो जीरो फी फॉर लिस्टिंग, बाइंग और सेलिंग, और उससे बड़ा फायदा आर्टिस्ट अपने आर्ट का प्राइस खुद चुन सकते हैं और आर्ट रीसेल पर रॉयल्टीज भी मिलती है। बेशक ओपनसी ट्रेड और वॉल्यूम के मामले में लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस है, लेकिन ओपनसी के फास्ट एक्सपेंशन का खामियाजा उसकी सिक्योरिटी को उठाना पड़ा। अगर जल्द ओपनसी ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद एरर्स को दूर नहीं किया, तो उसका नंबर 1 का ताज छिनते देर नहीं लगेगी। होप यू लाइक द स्टोरी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मी संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीव्हीच्या या अजब गजब दुनियेत आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत, जे थेट त्या क्रिप्टो करन्सी बाबत आहे, जी तुम्हाला, मला आणि अगदी संपूर्ण जगाला माहित आहे। ती म्हणजे बिटकॉइन क्रिप्टो करन्सी, ज्याला डिजिटल गोल्ड सुद्धा म्हटलं जातं। पण या बिटकॉइनचे मूळ क्रिएटर नेमकं कोण असू शकेल, याची उत्सुकता नक्कीच तुम्हाला लागली असणार। मला एक सांगा, तुम्ही कधी सातोशी नाकामोटो बाबत ऐकलंय का? आपल्यापैकी बहुतेक जणांना सातोशी नाकामोटो बद्दल माहीतच असेल, पण काही जणांना सातोशी नाकामोटो हे काय आहे याबद्दल माहिती नसणार। मी सांगतो, सातोशी नाकामोटो हेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत। पण सातोशी नाकामोटोच्या मागे नक्की तो कोण व्यक्ती आहे, ज्याने सातोशी नाकामोटो या नावाच्या माध्यमातून जगाला बिटकॉइनचे क्रेज लावले आहे? मित्रांनो, सातोशी नाकामोटो या नावाच्या पाठी खूप मोठा झोल आहे। जगातला सर्वात मोठा क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनच्या व्हाईट पेपरच्या अनुसार सातोशी नाकामोटो हे बिटकॉइनच्या क्रिएटरचे नाव आहे। परंतु या नावाच्या पाठीमागे असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा इतिहास हा आजही जगातील टॉप मोस्ट मिस्ट्री आहे। अजूनही कोणाला माहित नाहीये की सातोशी नाकामोटो हे एका व्यक्तीचे नाव आहे की एका ग्रुप ऑफ युजर्सचे नाव आहे। 21व्या शतकाच्या या टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेत स्वतःच्या आयडेंटिटीला सिक्रेट ठेवणं ही काही साधी गोष्ट नाहीये। सातोशी नाकामोटो या नावामुळे लोकांमध्ये हा संभ्रम होता की हे नाव जॅपनीज असू शकतं, पण त्यांच्या रायटिंगमध्ये इंग्लिशचे कमांड पाहून लोकांना वाटलं ते जॅपनीज नसून एक नेटिव्ह इंग्लिश स्पीकिंग व्यक्ती असणार। जगभरातील संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर सातोशी नाकामोटो हे नाव अखेरीस फ्लोरिडाच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात पोहोचलंय। कारवाई सुद्धा झाली
आणि अमेरिकन कोर्टानं डिसिजन सुद्धा दिलं आणि अखेरीस जगाच्या समोर पहिल्यांदा सातोशी नाकामोटोच्या पाठीमागे असलेला मिस्टेरियस चेहरा हा जगाच्या समोर आलाय. पण या केस नंतर बिटकॉइनच्या रिअल क्रिएटरची मिस्ट्री सॉल्व्ह झाली की नाही हे जाणून घेण्यासाठी तयार व्हा. या केसमध्ये एका बाजूला आहे ऑस्ट्रेलियाचे कम्प्युटर सायंटिस्ट क्रेग राईट, ज्यांनी बिटकॉइनचे सोल क्रिएटर सातोशी नाकामोटो असल्याचा क्लेम केलाय, आणि दुसऱ्या बाजूला आहे आयरा क्लेमन, ज्यांनी दावा केलाय की 2013 मध्ये स्वर्गवासी झालेले त्याचे मोठे बंधू डेव्हिड क्लेमन, जे एक कम्प्युटर सिक्युरिटी एक्सपर्ट सुद्धा होते, त्यांनी क्रेग राईट सोबत मिळून बिटकॉइनला क्रिएट आणि माइन केलं होतं. म्हणजेच डेव्हिडच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबानं क्रेग राईटच्या 1.1 मिलियन बिटकॉइन्सवर 50% क्लेम केला होता, ज्याची अंदाजे मार्केट व्हॅल्यू $57 बिलियन म्हणजेच $5,700 करोड एवढी आहे. या डॉलर्सच्या आजच्या प्राइसनुसार कन्वर्ट केलं तर एवढे शून्य ऍड होतील की अक्षरशः कॅल्क्युलेटर छोटं पडेल. आजच्या आर्थिक तंगीमुळे आपण फुकटचे ₹5 पण सोडत नाही, मग क्रेग राईट $5,700 करोड कसे सोडतील? त्यांनी कोर्टात स्पष्टपणे सांगितलं की मीच बिटकॉइनचा सोल क्रिएटर आहे, पण असे कोणतेच कागदपत्र नाही आहेत की जे प्रूव्ह करू शकेल की त्यांची आणि डेव्हिड सोबत कोणत्याही प्रकारची पार्टनरशिप प्रूव्ह करू शकेल. कोर्टानं सुद्धा या केसमध्ये जरा वेगळ्या पद्धतीने जजमेंट दिलं. पहिलं कोर्टाने क्लेमन फॅमिलीद्वारा क्रेगवर लावलेले सर्व क्लेम्स रिजेक्ट केले. सोबत कोर्टानं हेही म्हटलं की क्रेग राईट सातोशी नाकामोटो आहे की नाही याचे कोर्टाला काहीही लेणं देणं नाहीये. परंतु कोर्टाने क्लेमन फॅमिलीला निराश देखील केलं नाही. फ्लोरिडाच्या ज्युरीने क्रेग राईटवर अवैधपणे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी घेतल्यामुळे $100 मिलियन म्हणजेच $10 करोड दंड ठोठावला आणि हा आदेश सुद्धा दिला की ही अमाऊंट क्रेग राईट आणि स्वर्गीय डेव्हिड क्लेमन द्वारा फाउंडेड कंपनी WNK इन्फो डिफेन्स रिसर्च LLC थ्रू क्लेमन फॅमिलीला दिली जावी. पण मित्रांनो, $5,700 करोड मधून क्रेग राईटला फक्त $10 करोड देणं हे त्याच्यासाठी जड नव्हतं. इथे क्रेग राईटची तर लॉटरीच लागली. त्यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाला आपली जीतच मानली. त्यांना वाटलं की कोर्टाने इनडायरेक्टली डिक्लेअर केलं की तेच बिटकॉइनचे वन अँड ओनली क्रिएटर आहेत. क्लेम हा आयरा क्लेमनने केला होता, म्हणून त्याचे भाऊ डेव्हिड क्लेमन हेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत याला प्रूव्ह करण्याचे बर्डन ही त्यांच्यावर होतं. पण अखेरीस ते कोर्टात प्रूव्ह करू शकले नाहीत. हरता क्लेमन फॅमिलीचे वकील फ्रीडमॅनने ज्युरीला सांगितलं की डेव्हिडच्या मृत्यूपूर्वी क्रेग राईटने त्यांच्या समोर कबूल केलं होतं की त्यांनी आणि डेव्हिड क्लेमन या दोघांनी एकत्र मिळून बिटकॉइनला क्रिएट आणि मिंट केलं होतं. डेव्हिडच्या मृत्यूनंतर क्रेग राईटने खोटं बोलून फ्रॉड करून क्लेमनच्या फॅमिलीला त्यांचा हक्क हा द्यायचा नव्हता. जर का क्रेग राईटला कोर्टाने सांगितलं असतं की त्याने प्रूव्ह करून दाखवा की तोच सातोशी नाकामोटो आहे, तर गोष्ट थोडी वेगळी असली असती. परंतु या कोर्ट केस नंतर सुद्धा काही लोकांना वाटतंय की क्रेग राईट हा एक नंबरचा फेकूचंद आहे, म्हणजेच बिटकॉइनचा क्रिएटर सातोशी नाकामोटो नाही आहे. फ्लोरिडा कोर्टाचे निर्णय भले क्रेग राईटच्या बाजूने आला असेल, परंतु जनतेच्या कोर्टात क्रेग राईटला फेकूचंदच मानलं जात आहे. लोकांना अजूनही असंच वाटतंय की रिअल सातोशी नाकामोटोची आयडेंटिटी अजूनही एक मिस्ट्रीज आहे. दरम्यान हल्लीच टेस्लाचे क्रिएटर बिलियनियर एलॉन मस्क यांनी या मिस्ट्रीमध्ये स्वतःची एक थिअरी ऍड केली आहे. त्यांच्यामध्ये क्रिप्टोग्राफर आणि कम्प्युटर सायंटिस्ट निक झॅबोच सातोशी नाकामोटो म्हणजेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत. कारण बिटकॉइनची व्हाईट पेपरची रायटिंग आणि निक झॅबोच्या रायटिंगमध्ये खूप सिमिलॅरिटी आहे. पण ऑफिशियली निक झॅबोने सातोशी नाकामोटो होण्याचा क्लेम हा डिनाय केलेला आहे. मुळात आता सातोशी नाकामोटोची मिस्ट्री कोण आणि कधी सॉल्व्ह होणार कुणास ठाऊक. असो, पण अशाच इंटरेस्टिंग स्टोरीज घेऊन मी पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. Blockchains have a bridge problem and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests and holding a lot of currency
And unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Moving to an upgrade, taking blockchain ahead. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Yes, it's Ethereum 2.0, an upgrade to current Ethereum blockchain technology. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host and crypto dose Parvati Nirban, aka Paro. And today's episode is all about the blueprint of Serenity. Yes, it is Serenity. Serenity is the new name of the Ethereum upgrade to 2.0. Ethereum 2.0, also known as ETH2 or Serenity, is the long-awaited final upgrade to the Ethereum blockchain network. The overall goal of the ETH2 update is to increase the performance of the network. Questions like what is blockchain and why would we want to use it will eventually transform into questions like why isn't blockchain being used in this case or that case? Why so? Well, at present, the Ethereum 1.0 network is not robust enough to handle the future demand for blockchain-based technology. Problems with scalability and usability prevent Ethereum from being completely viable alternative. Imagine going to a local marketplace. In a regular day scenario, you take a considerable time to do shopping from local vendors, right? Now imagine if it rains at peak rush hours. Then it's almost impossible to finish shopping in the same time, and also it is very difficult to get as many things due to the traffic being jammed, etc. etc. Same thing happened with CryptoKitties app, which was launched on Ethereum 1.0. The transaction fees on the network was initially low, but as the application gained popularity and became a wild success, it became too expensive for people to continue using the app. It became like a market being jammed due to rain, clogged and whatnot. CryptoKitties was an experimental app built on the Ethereum network and launched in 2017. This app allowed users to create and trade unique digital kittens. Within its first week after launching, CryptoKitties went viral and clogged the Ethereum network with a huge number of transactions. And the transaction fees to send some CryptoKitties hit a whopping 6 figures. Can you imagine spending lakhs of rupees just to transfer a digital cat on a computer network? That's just insane, right? The current Ethereum platform manages this transaction fees to a low amount, but about 15 transactions per second being processed is not enough. So, with the Ethereum 2.0 update, it would potentially process tens of thousands of transactions per second. Really, that's just like dream come true. So, how is Ethereum upgrade will land us to such a high number of transactions? Well, answer to that question is Beacon Chain. Well, this means something's gonna have a lighthouse effect, which means Beacon Chain will have a lighthouse effect. Well, we were talking about the number of transactions. So, which means the number of transactions per second will have a lighthouse effect? That is going to be amazing because it's going to solve so many problems regarding speed with which current Ethereum platform or rather the blockchain technology is working. So what exactly is this Beacon Chain? Let's try and understand it. The Beacon Chain is basically the phase 0 stage of Ethereum 2.0 and has connection with existing Ethereum 1.0 blockchain network, which means even though Beacon Chain is an entirely new and separate chain that is being developed, it still operates with the same Ethereum ecosystem and acts as a bridge that will allow the transfers of Ether and other digital assets from 1.0 network
to 2.0. To simply understand this, it's like how you would do a new iOS upgrade on your iPhone. Yup, it is going to be as simple as that. Amazing, right? It is going to be an amazing upgrade. And in the next episode, we will get into the details of how exactly the beacon chain works, which is the algorithm it is being built on. For now, I am your host Parvati Nirban signing off. Gonna say goodbye, take care, and keep enriching yourself with crypto awareness. See you very soon. Till then, keep watching Crypto TV. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्ही मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आजकाल जिथे बघावं तिथे सध्या NFT ची चर्चा सुरू आहे. ज्याला बघावं तो NFT बनवतोय आणि त्याची खरेदी विक्री सुद्धा करतोय. खरं तर सेलिब्रिटी यातून करोडोंची कमाई करतायत. जर तुम्ही असा विचार करत असाल की NFT बनवणं हे काही रॉकेट सायन्स वगैरे आहे, त्यातून कमाई करणं खूप अवघड आहे, खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, खूप टेक्निकल आहे, तर मित्रांनो रिलॅक्स व्हा. काळजी करू नका, यापैकी असं काहीच नाहीये. यासाठी फक्त थोडं टॅलेंट हवं, थोडं ज्ञान, थोडं नशीब सुद्धा गरजेचं आहे. नशीब यासाठी की जेणेकरून तुमचे आर्ट हे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल. चला आता आपण जास्त वेळ न घेता मी तुम्हाला थेट NFT बनवण्याचा अगदी सोपा मार्ग सांगतो. स्टेप नंबर 1. सर्वप्रथम तुम्हाला NFT नेमकी कोणत्या वस्तूची बनवायची आहे ते ठरवायचं आहे. आणि ते काहीही असू शकतं. कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्युझिक, संग्रहित केलेले व्हिडिओ गेम्स, कोणते मीम्स, गिफ्ट, अहो अगदी ट्वीट सुद्धा. बस एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की ते रेअर आणि युनिक असणं गरजेचं आहे. कारण यामुळे तुम्हाला तुमच्या NFT ची किंमत मिळेल आणि हो, तुमच्याकडे त्याचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट सुद्धा असणं गरजेचं आहे. अन्यथा तुम्ही कायदेशीर अडचणी सुद्धा येऊ शकता. स्टेप नंबर 2. एकदा का तुमची डिजिटल ॲसेट निवडली की मग त्यास NFT बनवण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला ठरवावं लागेल की तुमच्या NFT साठी तुम्हाला कोणते ब्लॉकचेन वापरायचे आहे. सध्या NFT आर्टिस्ट आणि क्रिएटर्स मध्ये इथेरियम हे सर्वात लोकप्रिय ब्लॉकचेन आहे. या व्यतिरिक्त जसे बाकी पॉप्युलर पर्याय सुद्धा आहेत, जसे की टेझॉस, पोल्काडॉट, कॉस्मॉस आणि बायनान्स स्मार्ट चेन. स्टेप नंबर 3. जर तुमच्याकडे डिजिटल वॉलेट नसेल तर तुम्हाला तुमचा NFT तयार करण्यासाठी अगोदर डिजिटल वॉलेट तयार करावं लागेल. कारण की तुमच्या इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुम्हाला क्रिप्टो करन्सीची आवश्यकता असणार आहे. आणि या वॉलेटद्वारे तुम्ही तुमच्या डिजिटल ॲसेटला ॲक्सेस करू शकाल. कॉइनबेस, वझिरेक्स, झेपपे ही काही लोकप्रिय अशी भारतीय NFT वॉलेट आहेत. तर दुसरीकडे मेटामास्क, मॅथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट ही जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी वॉलेट्स आहेत. मुळात तुमच्या वॉलेट्समध्ये काही क्रिप्टो करन्सी असणं गरजेचं आहे. बहुतेक NFT प्लॅटफॉर्म हे इथर नावाच्या क्रिप्टो करन्सी स्वीकारतात, जी इथेरियम ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्मची क्रिप्टो करन्सी आहे. तुमच्याकडे इतर कोणतीही क्रिप्टो करन्सी असल्यास ती तुमच्या डिजिटल वॉलेटशी कनेक्ट करा की जेणेकरून तुम्ही NFT तयार करण्यासाठी आणि त्याची विक्री करण्यासाठी वापरू शकाल. स्टेप नंबर 4. एकदा का जर तुमचे डिजिटल वॉलेट बनले आणि तुमच्याकडे क्रिप्टो करन्सी देखील आहे, तर आता तुम्ही NFT तयार करण्यासाठी आणि त्याची विक्री करण्यासाठी पूर्णपणे तयार झालात. बस आता एक डिटेल रिसर्च करून सर्वोत्तम अशी NFT मार्केटप्लेस निवडा. वझिरेक्स, कॉलेजियन, कॅलामिंट, बियॉन्ड लाईफ.क्लब सारखे अनेक मार्केट प्लेसेस सध्या भारतात उपलब्ध आहेत, ज्यावर गॅस फीज ही जास्त लागत नाही. वझिरेक्स पर ट्रान्झॅक्शन $1 ची गॅस फी चार्ज करतं, तर कॉलेजियन हे 5% गॅस फी चार्ज करतं. तर तेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वात लोकप्रिय असणारं मार्केट प्लेस ओपन सीची गॅस फी ही $100 ते $150च्या घरात आहे. ओपन सी शिवाय एक्झी, लार्वा लॅब्स, क्रिप्टोपंक्स, NBA टॉप शॉट, रॅरिबल ही काही सर्वोत्तम मार्केट प्लेस आहेत. परंतु तुम्हाला तुमच्या NFTच्या हिशोबानं मार्केट प्लेस निवडावं लागेल. उदाहरणार्थ गेम NFT साठी एक्झी मार्केट प्लेस आहे, तर बास्केटबॉल फोकस NFT साठी NBA टॉप शॉट नावाचं मार्केट प्लेस आहे. हे लक्षात घेणं देखील महत्त्वाचं आहे की काही मार्केट प्लेसची आपली क्रिप्टो करन्सी सुद्धा असते
आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर जे रेअर असतात त्याचाच वापर होत असतो. NFT मार्केटप्लेस निवडल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या डिजिटल वॉलेटशी जुडणं हे आवश्यक असतं की जेणेकरून तुम्ही NFT मिंटिंगसाठी आवश्यक असे शुल्क भरू शकाल. स्टेप नंबर 5. आता तुम्ही तुमच्या NFTला अपलोड करण्यासाठी पूर्णपणे तयार झालात. तुम्ही सिलेक्ट केलेल्या NFTला आता मार्केटप्लेस हे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप गाईड करेल की NFT ही कशा प्रकारे अपलोड करायची आहे आणि या प्रोसेस मार्फत तुम्ही तुमची NFT फाईल म्हणजेच PNG, GIF, MP3 यापैकी कोणतेही किंवा अजून अशी कोणती फाईल टाईप जी त्यास मार्केटेबल NFT मध्ये कन्वर्ट करू शकेल. आता सर्वात शेवटची स्टेप नंबर 6. तुमच्या NFTला मिंट करण्यासाठी या फायनल स्टेपवर तुम्हाला फक्त हे डिसाईड करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या NFTला कशा प्रकारे मॉनिटाईज कराल. यासाठी सुद्धा तुमच्याकडे 3 ऑप्शन आहेत. एक फिक्स प्राइस. तुम्ही एक फिक्स प्राइस डिसाईड करू शकता. यामध्ये जो पहिला व्यक्ती ती प्राइस देण्यासाठी तयार होईल तोच पहिला बायर बनेल. सेकंड आहे टाइम ऑक्शन. टाइम ऑक्शनच्या माध्यमातून ऑडियन्सला बीट करण्यासाठी थोडा वेळ मिळतो की जेणेकरून ते डिसाईड करू शकतात की त्याला नेमकं किती अमाऊंटवर बीट करायचं आहे. आणि 3 नंबर अनलिमिटेड ऑक्शन. या प्रकारच्या ऑक्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारची टाइम लिमिट नसते. जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ऑक्शनला एंड करू शकता. मित्रांनो, काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे की जसं आपल्या NFTची मिनिमम प्राइस सेट करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात लॉस होणार नाही. सोबत त्यावर रॉयल्टी ही जरूर ठेवा की जेणेकरून तुमची NFT कोणत्याही सेकंडरी मार्केटमध्ये रिसेल झाली तर त्याचा फायदा हा तुम्हाला मिळतच राहील. मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्हाला माहीतच पडलं असेल की NFT ही कशा प्रकारे क्रिएट आणि सेल करता येते. NFT बाय करण्याची प्रोसेस सुद्धा सिमिलरच आहे. त्यासाठी सर्वात पहिलं एक डिजिटल वॉलेट बनवा. नंतर त्या वॉलेटला फंडिंग करा. त्यानंतर बेस्ट मार्केटप्लेसची निवड करा. वॉलेटला त्या मार्केटप्लेस सोबत कनेक्ट करा. त्यानंतर जी NFT तुम्हाला विकत घ्यायची आहे त्यासाठी बीड सबमिट करा आणि बस आता तुम्ही तुमची आवडती NFT खरेदी करू शकता. मित्रांनो, मला विश्वास आहे की तुम्हाला आता NFT बद्दल प्रत्येक गोष्ट माहिती पडली असेल. मग वाट कसली बघताय? आपले आर्ट क्रिएट करा आणि बिंदास उतरा NFTच्या मार्केटमध्ये. कुणास ठाऊक बिग प्रमाणे तुमची NFT देखील करोडो रुपये कमवेल. क्रिप्टोच्या दुनियेतील अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओज अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी मी म्हणजे संदीप कसालकरच्या स्टोरीज आवर्जून पहा. आजची स्टोरी कशी वाटली याच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर द्या. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी माइंड. पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है,
विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया। Hi, this is me, Yashasvi Acharya. DeFi or decentralized finance is an umbrella term representing a collection of financial products and services created and offered over the distributed ledger technology. The intermediation of financial institutions is denecessitated by these protocols with the use of cryptographic proof of transactions. These protocols also make use of advanced tools like programmed smart contracts and tokenization to design innovative financial products offered to participants of the blockchain peer-to-peer network. The DeFi ecosystem appeared with smart contract-enabled blockchain platform Ethereum going live in 2015. And today, by end of November 2021, has proliferated to more than 250 protocols with over $100 billion in total value logged in these protocols. The DeFi ecosystem is rapidly innovating and emerging with wonderful new products, which is disrupting the financial products and services marketplace. These products include stablecoins, decentralized exchanges, decentralized lending and borrowing platforms, decentralized asset management tools, decentralized autonomous organizations or DAOs and governance, insurance products, derivatives products, margin trading products, payment solutions, staking solutions, KYC and identity solutions, tokenization, yield aggregation platforms, prediction markets, infrastructure and developing tooling products, analytics services, among many such offerings. The innovation in the DeFi segment is prolific and exciting. This segment is evolving rapidly as better and better protocols are coming up with each innovative iteration and market offering in any particular segment. The blockchain projects are also evolving, and so are the applications in the form of DeFi. The returns of the DeFi instrument are quite handsome when compared to similar traditional finance products and services. The traditional financial product and service marketplace is also referred as CeFi, acronym for centralized finance. This is possible because the smart contracts and decentralized consensus reduce the counterparty risk, monitoring and arbitration cost, and also the cost of intermediation. The programmable nature of decentralized applications also provides the flexibility to order the best possible combinations of these instruments to maximize returns. This feature is given a very interesting terms. It is called money Legos, indicating that parts can be joined together in a preferred order of precedence depending on the comfort of the user. Oracles on the decentralized ecosystem connect the real-world trigger events to smart contracts, enabling conditional execution of the same. This enables creation of derivatives, prediction markets, and a lot of other possibilities. Tokenization of the real-world assets helps granularization of high-value assets, helping address a wider investor base and also brings them into digital realm, transcending the geographical boundaries, helping cater to a larger digital global audience. Programmability of the decentralized applications in the financial realm help create bespoke products for the users, providing for many interesting innovations in this area. Currently, as the craze of DeFi grips and drives the imagination of investors, we can say we are for some very interesting times in this area. However, along with innovation suitably follows a word of caveat, the DeFi segment is not regulated at the moment. The regulatory framework moves slowly to catch up with the innovation,
and it's the same which is happening in this area. Therefore, users have to be extremely careful with their research of the DeFi project before participating into it and availing its benefits. Choosing on the basis of returns only may not be a judicious approach at the moment. One must do your own research meticulously and observe the proliferation of any project closely before participating in it. One may also avail services of several audit companies who specialize in auditing and security and other features of the smart contracts published by project. If one covers the risk well, DeFi is one segment which would provide the early adopters with exciting returns. That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Have a really good day. Blockchains have a bridge problem and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests and holding a lot of currency, and unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure. Algorand, the future of finance on blockchain. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host Parvati Nirban, and today I am going to take you on a sky ride of Algorand. Now you would think, why is it a sky ride? How a blockchain technology can be connected to a sky ride? Well, then let me tell you, Algorand is the latest technology buzz in the market as Drone Racing League DRL is going crypto. DRL has announced to launch its play-to-earn crypto game on Algorand blockchain. So there begins the ride. Together, DRL and Playground Labs will build a virtual version of the Drone Race League on Algorand. And not just that, Algorand or Algo, being the layer 1 blockchain for decentralized and traditional finance, has added direct fiat payment channels into their network by integrating with Alchemy Pay, which is ACH. Alchemy Pay is a payment solutions provider that connects fiat and crypto economies, and its global merchant network now supports Algorand's Algo token for payments in 65 countries. Even more, Marshall Island is adopting Algorand for the issue of its sovereign currency. So the Marshall Islands is the first country to adopt a national digital currency built on Algorand blockchain. Algorand's Algo token ranked 20th on the Forbes list of most influential digital assets, has the 18th highest market cap of any cryptocurrency, hovering around $11 billion as of 5th Jan 2022. So we know now how Algorand is one of the fastest growing blockchain technology today. Let's find out a little bit of the history of Algorand. Algorand was founded by Silvio Micali, a computer science professor at the Massachusetts Institute of Technology. Silvio received the 2012 Turing Award for his innovative contributions in cryptography, blockchain, and cryptocurrency protocols and electronic cash, making him a leading mind in the cryptocurrency and blockchain industry. Silvio Micali has been a professor of cryptography since 1980s. Around 2015, he started researching how to create a better blockchain technology instead of criticizing Bitcoin. Well thought.
He was then approached by Nikolai Zeldovich, an MIT professor, and based on the success of testing the new blockchain technology with different simulated transactions, the Algorand company was incorporated in 2017. Algorand's white paper was co-authored in 2017 by Silvio Micali and Jing Chan, a professor at Stony Brook University. This blockchain is particularly carbon negative, as it operates on pure proof of stake network, which is the need of the hour as everyone is eyeing green blockchain initiatives. That's true. So, well, in today's time, the Algorand protocol is chosen for its speed, scalability, security, and its ability to effectively implement the required compliance controls and the transactional finality needed for the digital currency. Just like other competitors like Solana, Cardano, Algorand intends to displace Ethereum as the primary blockchain home for decentralized apps, DeFi projects, and crypto-native games of the future, or in crypto speak, the metaverse. So what exactly is this Algorand and how does this new blockchain technology functions? Well, Algorand serves as the infrastructure layer on which we can build crypto networks, decentralized apps, and crypto tokens. It is one of the most prominent layer 1 blockchains available in the ecosystem and include fungible, non-fungible, restricted fungible, and restricted non-fungible assets. Yes, Algorand is the new gen blockchain and is bridging the decentralized and centralized world of finance. Algorand has the biggest advantage as higher transaction speed. It is officially launched in 2019 with its native crypto as Algo with a maximum supply of 10 billion Algo. Algorand maintains a block explorer which keeps an official count of its circulating supply of Algo. Algorand also enables users to create smart contracts and tokens that can represent both new and existing assets. The code for Algorand is open source and can be cloned, copied, otherwise used in private or permission blockchains. As we all know, all cryptocurrencies work on consensus mechanism to approve or disapprove every user-initiated transaction on its network. Legacy cryptos like Bitcoin, Ethereum work on POW, that is, proof of work mechanism, which requires huge computing power and hence consumes a lot of electricity, while Algorand uses pure POS, which is pure proof of stake, which is less power intensive. And how is this pure POS system works? Well, it randomly selects committees from the participating algo holders to validate and approve the next block in the chain. This randomization is the result of unique cryptographic tool called VRF, which is verifiable random function. And pure refers to the users not having to lock up or bond their algos to participate in this process. So to summarize, what sets Algorand apart is its speed and advanced capabilities as it's fast, low cost, decentralized, carbon negative, and has advanced smart contract capabilities. Algorand can process thousands of transactions per second with instant finality and with transaction fees of fraction of a penny, whereas other blockchain can be much more expensive. So that's all from my side on Algorand blockchain technology. I am Parvati Nirban signing off for now. See you again very soon with more technological facts and developments. Till then, keep watching Crypto TV. हाय गाईज, क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर
ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहित आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटिल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉक वाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहेत. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटजी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी
पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही विथ योर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people. Thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. अरे सुनिए ना, जरा पीछे से शुरू करते हैं. हाँ, महबूबा महबूबा. डोंट वरी गाइस, मेरी खिसकी नहीं है. मैं महबूबा का नाम इतनी बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी सेकंड क्रिप्टो क्वीन का नाम है रोया महबूब. हाय गाइस, मेरा नाम है यशस्वी और इस खास सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्वीन ऑफ क्रिप्टोस की. और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ रोया महबूब के बारे में. इनकी अचीवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड की विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं, जहां तालिबान के डर से लड़कियां ABCD पढ़ने तक स्कूल नहीं जा सकती, आवाज उठाकर बात नहीं कर सकती हैं. ऐसी देश में टेक कंपनी का CEO बनना कौन छोटी बात नहीं है, क्या समझे? रोया महबूब अफगानिस सिटाडेल सॉफ्टवेयर कंपनी की फाउंडर भी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट भी हैं. इनकी कंपनी की 50% से भी ज्यादा कर्मचारी वैसे लेडीज हैं. अनफॉर्चुनेटली सितंबर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से टेक ओवर कर लिया था, मिस रोया महबूब को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था. लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा. तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की औरतों के पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट का भी एक्सेस नहीं था. इसलिए मिस रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन से सैलरी देना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, मिस महबूब डिजिटल सिटीजन फंड यानी कि DFC की प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर भी हैं. बॉस लेडी. अगर DCF की बात करें तो ये एक ऐसा NGO है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की लड़कियों और औरतों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे में एडुकेट करने के लिए काम करता है. ब्रावो मिस महबूबा, ब्रावो. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बिटकॉइन क्वीन. इनका नाम है अलकलानी एथरेलेंगे. वैसे काफी टंग ट्विस्टिंग नाम है ना? डोंट वरी, जितना टंग ट्विस्टिंग इनका नाम है उतनी सिंपल एंड स्ट्रेट इनकी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज है. वैसे अलकलानी, जिनको लोग प्यार से बोत्सवाना की बिटकॉइन लेडी भी कहते हैं, ये टाटा बिरला, अंबानी, एलन मस्क की तरह कोई बड़ी प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं.
बोत्सवाना जैसे अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ते पढ़ते ये लेडी अपनी फैमिली के लिए ऑनलाइन साइड इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रही थी कि तभी इनकी नजर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर पड़ी और इसके बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। बैठे बैठे इतनी रिसर्च कर डाली कि इन्होंने अक्टूबर 2013 में बोत्सवाना का फर्स्ट बिटकॉइन मीट ऑर्गेनाइज कर डाला। बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी कंपनी सतोशी सेंटर स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिटी की वुमनिया और उनके हस्बैंडवा एंड एवरी अदर मर्दवा को एजुकेट करते हुए नजर आई। वो घर बैठे बैठे कैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर उनकी मदद करती आई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ बोत्सवाना को ये भी कह दिया कि भैया बिटकॉइन को एल साल्वाडोर की तरह लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लो और क्रिप्टो फ्रेंडली कायदा भी अपना लो। इससे देश जो है वो फायदे में ही रहेगा, है ना। सोने पे सुहागा ये है कि बोत्सवाना की ये लेडी एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट डेवलप कर रही है जिससे डायरेक्टली किसी भी नॉर्मल एटीएम से लिंक किया जा सकता है। सो माय डियर इंडियन लेडीज, अगर ये बोत्सवाना के गांव से बैठे बैठे क्रिप्टो की दुनिया में बवाल मचा सकती हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अब आप कहेंगी कि यार मोटिवेशन से क्या होता है यशी, क्रिप्टो स्पेस में वुमनिया तभी झंडा गाड़ेगी जब वो दूसरी वुमनिया से मिलेगी, राइट। लेकिन कैसे, कहां ढूंढे दूसरी क्रिप्टो लेडीज को? इधर आओ आओ, मैं बताऊंगी ना दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू क्रिप्टो टीवी। मेरा नाम है यशस्वी, साइनिंग ऑफ। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some rags to build it with stacks. Cause I know the stats and a hodler say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal. आपल्यासोबत कधी असं होतं का? कधी आपल्या पेरेंट्सचे मेडिकल रिपोर्ट्स मिसप्लेस होतात, तर कधी अगदी महत्त्वाची फाईल सुद्धा हरवते. किती चांगलं होईल की जर का आपल्या फॅमिलीचे संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट्स कोणत्या अशा नेटवर्कवर असतील की जिथून आपण कोणतेही त्यांना ॲक्सेस करू शकू. सतत एक्सपांड होणाऱ्या या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आता हे शक्य होणार आहे.
नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्ही मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पॅम अशा बऱ्याच शब्दांमध्ये फसली आहे सध्या एनएफटीची दुनिया, ज्याने आता एनएफटीची जेन्युइनिटीवर एक मोठा प्रश्न उभा केलाय. मागील एका वर्षात जसजसे एनएफटीच्या ट्रेंडमध्ये गती पाहायला मिळाली, एनएफटीज मोठ्या प्रमाणात ह्यूज कलेक्शन्स करत होती. त्याला पाहून तर असंच वाटत होतं की एनएफटीज हे असं स्पीडीली पुढे जात आहे की त्याला न कोणी थांबू शकेल न कोणी हरवू शकेल. परंतु आता अचानक एनएफटीजवर बरेच आरोप लागत आहेत, ज्यामुळे मोठे मोठे एनएफटी मार्केट प्लेस आता कठोर भूमिका घेत आहेत. वास्तविक पाहिलं तर एनएफटीची सर्वात मोठी मार्केट प्लेस ओपनसीवर त्यांच्या इंटरनल कलेक्शन स्टोअर फंड कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून युजर्सला जेवढी पाहिजे तेवढी एनएफटीज मिंट करण्याची कन्व्हिनियन्स होती. मात्र या सुविधांचा मोठा फटका आता ओपनसी आणि त्यांच्या बऱ्याच बायर्स आणि सेलर्सला सहन करावा लागतोय. झालं असं की या सर्व्हिसचा चुकीचा फायदा उचलत बऱ्याच लोकांनी फेक एनएफटी कलेक्शन्स लॉन्च केली. हो, ओपनसीने स्वतः उघड केलाय की फ्री मिंटिंग एनएफटीज नुसार लॉन्च केल्या गेलेल्या एनएफटीज मध्ये 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शन्स आणि स्पॅम आहे. ओपनसीच नाही तर अजून अशा बऱ्याच एनएफटी मार्केट प्लेस मध्ये आहेत जे या स्कॅमच्या फंद्यात अडकले आहेत. अजूनही त्या अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत, जसे की डेव्हियन आर्टने मागील काही महिन्यांमध्ये 80,000 फ्रॉड अलर्ट जारी केले आहेत. एवढंच नाही तर एक अजून प्लॅटफॉर्म लुक्स रेअरवर वॉश ट्रेडिंग सारख्या फसवणुकींमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे. चला तर पाहूयात वॉश ट्रेडिंग हे काय असतं. कधी कधी एकाच ग्रुपची लोक आपसात एनएफटीला बाय आणि सेल करून अवैधरित्या त्या एनएफटीची ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि व्हॅल्यू हे दोघांनाही वाढवत असतात. बरं, चला काही उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊयात. मित्रांनो, तुम्ही बिपलला तर ओळखतच असाल, ज्यांची एनएफटी एव्हरी डे द फर्स्ट 5000 डेजने $69 मिलियन ची आतापर्यंतची हायेस्ट एनएफटी कलेक्शन केली आहे. ज्या आर्टचे बायर मेटा कोवन ऍक्च्युअली बिपलचे बिझनेस पार्टनर आहे आणि हे वॉश ट्रेडिंग मोठ्या लेवलवर होत आहे. एका रिसर्चनुसार 2017 मध्ये 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड झालेत आणि टोटल ट्रेडर्स मधून फक्त 10% ट्रेडर्सने 90% एनएफटी ट्रान्झॅक्शन्स केले आहेत आणि हाच ग्रुप 97% एनएफटीजला कमीत कमी एकदा तरी ट्रेड नक्कीच करतो. म्हणजेच या एनएफटीची व्हॅल्यू आणि ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवण्यासाठी एक ग्रुप एकत्र येऊन आपली साठगाठ करून आपले हेतू साध्य करतात. एनएफटीच्या दुनियेत कशा प्रकारे फसवणूक सुरू आहे याचा अंदाजा तुम्ही यावरून लावू शकता की येथे बऱ्याचदा $multi-million वर्थ ड्रग पूल सुद्धा होत असतं, जेथे अनॉनिमस फाउंडर्स गुंतवणूकदारांचा पैसा घेऊन छू मंतर होऊन जातात. असंच काहीच झालं एव्हॉल्व एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डॅडी एप क्लब आणि ब्लॉकवर सोबत. अजब गजब गोंधळाने भरलेली आहे ही एनएफटीची दुनिया. असंच एक प्रोजेक्ट आहे जे प्रॉमिस करतं ओनरशिप ऑफ कलर्सचं. एवढंच नाही, प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही खरेदी केलेला कलर कोणी दुसऱ्यांनी वापरला तर तुम्हाला त्याची रॉयल्टीज मिळणार असे प्रॉमिस सुद्धा केले गेले आहे. आणि आता तर एनएफटी फ्रॉड हे कोर्टापर्यंत घेऊन जात आहेत. एका कॅनेडियन कंपनीने सॉथबीज आणि आर्टिस्ट केविन मॅकॉयवर $1.5 मिलियन ची केस ठोकली आहे. मे 2014 मध्ये मिंट केले गेलेले क्वांटम नावाच्या आर्टला जगाची पहिली एनएफटी म्हणून ओळखलं जातं. जून 2021 मध्ये सॉथबीचे ऑक्शन नेटिव्हली डिजिटल मध्ये हे आर्ट $1.47 मिलियन मध्ये विकलं गेलं. कॅनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंगचे सोल मेंबर ज्यांनी ही केस टाकली होती त्याला तर असं वाटलं होतं की तोच क्वांटमचा खरा हकदार आहे, कारण या एनएफटी लॉन्चच्या 7 वर्षानंतर जेव्हा मॅकॉयची ओनरशिप संपली होती तेव्हा त्यांनी त्यांचे अधिकार सिक्युअर केले होते. खरं तर ही सारी कन्फ्युजन यासाठी झाली कारण क्वांटम मुळात बिटकॉइनच्या कोडवर मॉडेल नेमकॉइन नामक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेअरवर मिंट केली गेली होती. नेमकॉइनवर ओनरशिपला प्रत्येक 250 दिवसानंतर रिन्यू करणं हे जरुरी आहे, नाहीतर कोणी याला क्लेम करू शकतं. आणि मॅकॉय 2014 मध्ये क्वांटमला मिंट करून 2015ला त्याला रिन्यू करणं विसरून गेले. जेव्हा 6 वर्षांपर्यंत हे एनएफटी रिन्यू नाही केलं गेलं तेव्हा 6 एप्रिल 2021ला एक्झिओसने एक आर्टिकल इश्यू केलं ज्याची हेडलाईन होती एक्सक्लुझिव्ह द फर्स्ट एव्हर एनएफटी फ्रॉम 2014 इज ऑन सेल फॉर $7 मिलियन प्लस. त्याच्या 2 हप्त्यानंतर फ्री होल्डिंगच्या सोल मेंबर्सने @earlyNFT नावाच्या ट्विटर हँडलच्या माध्यमातून या एनएफटीला रजिस्टर केलं होतं. एनएफटी सोबत जोडल्या गेलेल्या या फसवणूक आणि घोटाळ्यांबद्दल क्रिप्टो मायनरचे सीईओ आणि को फाउंडर रघु राजशेखर यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे आणि हे घोटाळे कसे टाळायचे ते पाहूयात. सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं. तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे बिल्ड करके बेच दिया. ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है. दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि
काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दें, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं, तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही है। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। अब मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हो किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे। सो अब लोग देखने लगे कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नाही। मित्रांनो, म्हणजेच ही टोटल NFT ची दुनिया सध्या जस्टिस कस्टडीमध्ये आहे हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही। जोपर्यंत येथे काही स्ट्रिक्ट रूल्स आणि रेग्युलेशन्स जारी केले जाणार नाहीत तोपर्यंत या पुढाकार न घेणंच चांगलं आहे। मित्रांनो, या खास स्टोरीमध्ये सध्या एवढंच। अशाच प्रकारच्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा आपल्या भेटीला येणार आहे। तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। जर तुम्हाला फॅशनचा जलवा बघायचा असेल आणि ते सुद्धा मेटावर्स मध्ये, तर तुम्ही अगदी बरोबर ठिकाणी आला आहात। कारण मेटावर्सच्या इमर्जन्समुळे अशा दोन इंडस्ट्रीजचं मिलन झालं आहे जी आतापर्यंत कधीच एकत्र नव्हती। म्हणजेच एक आहे फॅशन इंडस्ट्री आणि दुसरी आहे टेक इंडस्ट्री। आज आपण मेटा फॅशन संबंधित वॅकी फॅशन बद्दल बोलणार आहोत अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली सस्टेनेबल फॅशन बद्दल, ज्याला बनवलं गेलं मेटावर्सच्या व्हर्च्युअल दुनियेमध्ये। आता तुम्ही म्हणाल व्हर्च्युअल फॅशनचा रिअल वर्ल्ड मध्ये काय फायदा आहे? तर कोणतेही घर किंवा बिल्डिंग बनवण्यापूर्वी त्याची ब्लूप्रिंट तयार केली जाते। डायरेक्ट घर बनवलं तर वेळ, पैसा आणि रिसोर्सेस वेस्ट होतीलच, पण तुम्हाला अपेक्षित परिणामही मिळणार नाही। सेम फंडा हा फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये अप्लाय होत असतो। दररोज जगभरातील कपड्यांची फॅक्टरीज करोडो अरबो रुपयांचे कपडे धनाधन मॅन्युफॅक्चर करत आहेत। जेव्हा हे कपडे विकले जात नाहीत तेव्हा ते वेस्ट होतात, तर मग त्यांना लँडफिलमध्ये डंप केलं जातं, ज्यामुळे पैशांसोबत इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, फॅब्रिक आणि वेळेसारखे रिसोर्सेस तर वेस्ट जातातच, पण त्याहून अधिक पॉल्युशन वाढतं। व्हर्च्युअल फॅशनच्या द्वारे आपण टाइम, मनी, फॅब्रिक, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी सारख्या रिसोर्सेसची बचत करू शकतो आणि आवश्यक तेवढेच कपडे मॅन्युफॅक्चर करू शकतो। मग काय, वेस्टेज झिरो, पॉल्युशन कमी, झालं तर की फायद्याची डील। तुम्हाला माहित आहे का 10% ग्लोबल कार्बन एमिशनचे कारणीभूत फॅशन इंडस्ट्रीज आहे। 2020 मध्ये झालेल्या एका सर्वे मधून हे माहित पडतंय की मोठमोठ्या फॅशन डिझायनर्स, बायर्स आणि मॉडेल्स लंडन, मिलान, पॅरिस आणि न्यूयॉर्क मध्ये फॅशन शो अटेंड करण्यासाठी जेव्हा गेले तेव्हा त्यांच्यामुळे 2,41,000 टन कार्बन एमिशन प्रोड्यूस झाले। मित्रांनो, 51,000 गाड्यांना दिवस रात्र चालवण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर किंवा प्रदूषण होत असतं। याला रोखण्यासाठी एक सर्वात सोपा उपाय आहे। लेट मी गिव्ह यू एन एक्झाम्पल।
मागील वर्षी जेव्हा हेल्सिंकी फॅशन वीक 100% डिजिटली ऑर्गनाईज झाले, तेव्हा त्या इव्हेंटच्या प्रत्येक व्हिजिटरची कार्बन फुटप्रिंट 137 kg पासून कमी होऊन फक्त 0.66 kg झाली आहे. तुम्हाला माहित आहे का, ऑन ॲव्हरेज एका गारमेंटला बनवण्यासाठी अप्रॉक्सिमेटली 3300 लिटर पाणी वेस्ट होत असतं. मित्रांनो, चांगलं होईल की अगोदर आपण व्हर्च्युअली कपडे डिझाईन करून तेवढेच कपडे मॅन्युफॅक्चर करू जेवढी रिक्वायरमेंट असेल. जगभरात आणि खास करून भारतात लोकांना एक रोग आहे ज्याचं नाव आहे काय म्हणणार लोक, आणि यामुळे आपण खूप वेळा त्या गोष्टी ट्राय नाही करत ज्याला आपल्याला करणं गरजेचे असते. फॅशनचा एक प्रकार आहे ज्याचे नाव आहे वॅकी फॅशन, म्हणजेच अतरंगी कपड्यांची पद्धत, ज्याला आपल्याला रिअल लाईफमध्ये रेअरली घालत असतो. परंतु व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारची लज्जा न बाळगता लेडी गागा आणि मायकल जॅक्सन प्रमाणे वॅकी आणि स्टायलिश डिजिटल कपडे आपल्या अवतारला परिधान करून आपला छंद पूर्ण करू शकतात. आतापर्यंत फॅशन शोज फक्त सेलिब्रिटीज, मॉडेल्स आणि श्रीमंत लोक ही अटेंड करू शकत होते. वड्डे लोक वड्डी बाते. पण मेटा फॅशनच्या मार्फत लखनौ किंवा लालपूर प्रमाणे शहराचे टॅलेंटेड डिझायनर्स लॉस एंजल आणि पॅरिसचे बिग शॉट डिझायनर प्रमाणे आपल्या टॅलेंटला जगभरात शोकेस करू शकतात. एवढंच नाही, आता आपण व्हर्च्युअली ग्लोबल फॅशन शोज आणि इव्हेंट्समध्ये घरी बसून फक्त लॅपटॉप, कॉम्प्युटर किंवा स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या थ्रू पार्टिसिपेट सुद्धा करू शकता. विश्वास होत नसेल तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन समजून सांगते. रिसेंटली डिसेंट्रलँड नावाची व्हर्च्युअल दुनिया म्हणजेच मेटावर्समध्ये जगातील फर्स्ट मेटावर्स फॅशन वीक ऑर्गनाईज झाले होते, ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या 3D अवतारच्या माध्यमातून वेगवेगळे फॅशन इव्हेंट, शॉपिंग एक्सपिरियन्स, पॅनल डिस्कशन आणि आफ्टर पार्टीजमध्ये विदाउट खर्च करता इवन अ सिंगल रुपये पार्टिसिपेट करू शकता. मार्च 2022 मध्ये झालेल्या ह्या 4 दिवसाच्या मेगा व्हर्च्युअल फॅशन इव्हेंटमध्ये टॉमी हिल्फिगर, डॉल्चे अँड गबाना, फॉरएव्हर 21, सेल्फ्रिज प्रमाणेच जगभरातील मोठमोठे फॅशन ब्रँड्सने पार्टिसिपेट केलं होतं. कारण ह्या मोठ्या ब्रँड्सला कळलं आहे की सस्टेनेबल फॅशनचे फ्युचर तर मेटावर्सच आहे. आय एम शुअर तुम्ही हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक झाला आहात की ही मेटावर्सची फॅशनची दुनिया कशी दिसत असेल. तर नॉट टू वरी, मी या इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट सुद्धा केलं आणि आपल्या इंटरॅक्शनसाठी रेकॉर्ड सुद्धा केलं होतं. तर मग चला आणि पहा जगातील पहिली मेटावर्स फॅशन इव्हेंट. अहो, आता तर ही फक्त सुरुवात आहे. मेटावर्स फॅशन तर अजून डेव्हलप होणार आहे. इट्स गोइंग टू चेंज हाऊ वी शॉप, ड्रेस, अप्रोच द फॅशन वर्ल्ड. आणि ह्या इमर्जिंग व्हर्च्युअल फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये आपले इंडियन डिझायनर जसे की मनीष मल्होत्रा आणि रघुवेंद्र राठोड सुद्धा आपल्या NFTs लॉन्च करून हळूहळू मेटावर्समध्ये आपले पाऊल पुढे टाकत आहे. मित्रांनो, तो दिवस दूर नाही जेव्हा मोबाईल आणि इंटरनेट प्रमाणे मेटा फॅशन सुद्धा आपल्या लाईफचा इंटिग्रल पार्ट बनेल. जर आपल्याला इको फ्रेंडली आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह वे मध्ये क्लीन, ग्रीन आणि सस्टेनेबल फॅशनला नेक्स्ट लेवल पर्यंत घेऊन जायचं असेल तर आज नाही तर उद्या आपल्याला मेटा फॅशनला अडॉप्ट करावंच लागेल. मेटावर्स सोबत अजून बऱ्याच काही एक्साइटिंग आणि एंगेजिंग अपडेट्स सोबत मी आपली क्रिप्टो होस्ट आणि दोस्त वैभवी सावंत तुम्हाला परत भेटणार आहे. तोपर्यंत कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीव्ही.
पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई ना सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया। સુધીમાં દુનિયાના 500 કરોડ કરતા પણ વધારે લોકો મેટાવર્સની કરોડો ખરબો ડોલર્સની ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે. આવનારા સમયમાં મેટાવર્સની ડિજિટલ દુનિયામાં પૈસાનો વરસાદ થવાનું છે. વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ બેંક જેપી મોર્ગન એ તો મેટાવર્સમાં પોતાની બ્રાન્ચ પણ ખોલી દીધી છે. આટલું જ નહીં, સેમસંગ, હુન્ડાઈ, ફરારી, ગુચી, ડોલ્ચે અને ગબાના, હીરાનંદાની, ઇન્ફોસિસ, રિલાયન્સ, માઇક્રોસોફ્ટ, એપલ, ફેસબુક, નાઇકી, એડિડાસ આ બધી દિગ્ગજ કંપનીઓ તો કલેક્ટિવલી હજારો કરોડ રૂપિયા મેટાવર્સમાં ઇન્વેસ્ટ પણ કરી દીધા છે. આ બધું સાંભળી સહેજે પ્રશ્ન થાય કે આ મેટાવર્સ છે શું? કેમ કે વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ કંપનીઝ આની પાછળ ગાંડી થઈ ગઈ છે. તો સિમ્પલ વેમાં સમજાવું તો જેમ પૃથ્વીલોક, સ્વર્ગલોક અને પાતાળલોક હોય તેમ ડિજિટલ ડાયમેન્શનમાં કમ્પ્યુટર કોડથી ક્રિએટ કરેલા લોકનું નામ છે મેટાવર્સ. યસ. હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્બાન એકે પારો. વેલ, ટુડે નો દેવા, કારણ કે આજે આપણે એક નવી દુનિયામાં જશું જ્યારે દેવા હોય કે ના હોય આની પોસિબિલિટી હજી સુધી ક્રિએટ કરવાની બાકી છે. આપણે માઇન્ડ બ્લોઈંગ વર્લ્ડ ઓફ મેટાવર્સ વિશે વાત કરશું અને સમજશું કે આ મેટાવર્સ છે શું. કેમ કે મેટાવર્સને ઇન્ટરનેટનું ફ્યુચર અને ફોર્થ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે. અને આટલું જ નહીં, એક સિટી બેંક વાલા સિટી ગ્રુપ ઇનકોર્પોરેટેડના એસ્ટિમેટ પ્રમાણે 2030 સુધીમાં મેટાવર્સની ઇકોનોમી 13 to 14 ટ્રિલિયન ડોલરની થઈ જશે. 14 ટ્રિલિયન ડોલર એટલે કે રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરો તો 14 જન્મ લેવા પડશે. એટલો મોટું ફિગર છે. ઓ ગોડ! આવડી મોટી ઇકોનોમિક પાઈને બિઝનેસ માઇન્ડેડ ગુજરાતીઓ બાઇટ ન કરે એ તો ઇમ્પોસિબલ છે. મેટાવર્સને કમર્શિયલાઇઝ કરીને પૈસા છાપવા હોય તો સૌથી પહેલા આપણે મેટાવર્સના બેસિક્સને ક્લિયર કરી લઈએ. મેટાવર્સ શબ્દથી શરૂઆત કરીએ તો મેટાવર્સ વર્ડને દુનિયામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકન રાઇટર નીલ સ્ટેફન્સને પોતાની સાઈ-ફાઈ નોવેલ સ્નો ક્રેશમાં યુઝ કર્યો હતો. મેટાવર્સને તમે મિરર વર્લ્ડ, એઆર ક્લાઉડ, ધ સ્પેશિયલ ઇન્ટરનેટ, વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનેટ અથવા મેજિક વર્ડ્સ પણ કહી શકો છો. કોવિડ લોકડાઉન દરમિયાન સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના કારણે ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં આપણું ઇન્ટરેક્શન લિમિટેડ થઈ ગયું હતું. ત્યારે આપણે બધાનું ડિજિટલ ઇન્ટરેક્શન વધી ગયું હતું. વર્ક ફ્રોમ હોમ, ડિજિટલ વેડિંગ, ટેલિફોનિક બેસવું અને ઓનલાઈન પોલિટિકલ કેમ્પેનથી લઈને ઓનલાઈન ક્લાસીસ અને ઝૂમ કોલ, ફેમિલી રિયુનિયન અને નેટફ્લિક્સની સ્લમ્બર પાર્ટીઝ એન્જોય કરતા કરતા ફિઝિકલ વર્લ્ડ અને ડિજિટલ વર્લ્ડ એકબીજાથી ઇનસેપરેબલ થઈ ગયા છે. આ તો હજુ શરૂઆત છે. જેવી રીતે જેટ એન્જિન, કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટથી દુનિયા નવી ઉડાન ભરી, એવી જ રીતે મેટાવર્સથી આપણું વર્લ્ડ હદ કરતાં વધારે ટ્રાન્સફોર્મ થવાનું છે. મેટાવર્સમાં ફિઝિકલ, ઓગમેન્ટેડ અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીનું ત્રિવેણી સંગમ થવાનું છે. મેટાવર્સને તમે ફક્ત ડિજિટલ સ્પેસ સમજવાની ભૂલ નહીં કરતા, જ્યાં તમે જસ્ટ લોગિન કરીને એન્ટ્રી લઈ લીધા તે પતી ગયું એમ ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇમેજિન કરો કે નેક્સ્ટ 100-200 યર્સમાં ઇન્ડિયાનો ઇસરો, અમેરિકાનો નાસા અને એલોન મસ્કના સ્પેસ એક્સ મળીને મંગળ ગ્રહ ઉપર હ્યુમન કોલોની સ્ટાર્ટ કરે. જેમ ઇન્ડિયામાં રૂપિયા ચાલે, અમેરિકામાં ડોલર ચાલે, તેમ મંગળ ગ્રહ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે
કોઈને કોઈ કરન્સી તો જરૂર પડશે, રાઈટ? સિમિલરલી આ મેટાવર્સ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે એટલે ત્યાં ફિઝિકલ કરન્સી નહીં ચાલે, પણ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી ચાલશે. વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એટલે ડિજિટલ કરન્સી, ક્રિપ્ટોકરન્સી લાઈક બિટકોઇન, ઇથેરિયમ એન્ડ ડોજકોઇન. હવે સમજ્યા ડિજિટલ કરન્સીને ફ્યુચર ઓફ મની શું કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમ કે તેનો ઉપયોગ ફ્યુચરિસ્ટિક વર્લ્ડ ઓફ મેટાવર્સમાં થવાનું છે. હવે મેટાવર્સમાં કેમ એન્ટ્રી લેવી, તેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કેમ કરવું, એની ઉપર વાત કરીએ તો તમે કમ્પ્યુટર, લેપટોપ અને સ્માર્ટફોન વડે મેટાવર્સ સાથે જોડાઈ શકો છો, પણ એ એક્સપિરિયન્સ અધૂરો લાગે. ખરેખર મેટાવર્સની મજા વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી ગ્લાસીસ ઓર ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી ગ્લાસીસ થી જ આવે. આ AR VR ગ્લાસીસ એટલે ડિજિટલ દિવ્ય ચક્ષુ. જેમ 3D મૂવી જોવા જાઓ એટલે 3D ચશ્મા લેવા પડે ના, તેમ મેટાવર્સ માટે આ સ્પેશિયલ ચશ્મા છે. તમને તો ખબર જ હશે કે ફેસબુકે તેનું નામ ચેન્જ કરીને મેટા કરી નાખ્યું છે. તેનું વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન આ મેટાવર્સ જ છે. ફેસબુક એટલે કે મેટા પ્લેટફોર્મની એક કંપની એ છે રિયાલિટી લેબ્સ, જે મેટાવર્સ માટે AR અને VR ચશ્મા હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરે છે, જેને પહેરવાથી તમને એવું જ લાગે કે તમે એક નવી જ દુનિયામાં આવી ગયા છો. ડીસેન્ટ્રલેન્ડ અને સેન્ડબોક્સ જેવી કંપનીઝ એ પોતાનું મેટાવર્સ એટલે કે ડિજિટલ લેન્ડ ક્રિએટ કરી છે, જેમાં તેમને પ્લોટ વેચવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે. તેમની પોતાની ડિજિટલ કરન્સી પણ છે. ડીસેન્ટ્રલેન્ડના નેટિવ ટોકનનું નામ માના છે, જ્યારે સેન્ડબોક્સના ટોકનનું નામ સેન્ડ છે, જેને તમે વઝીરેક્સ જેવા ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ પર બાય અને સેલ કરી શકો છો. આ મેટાવર્સમાં દલેર મહેંદી, સ્નૂપ ડોગ, એડ્રિયાના ગ્રાન્ડે જેવા સિંગરે પોતાનું કોન્સર્ટ્સ પણ કર્યા છે. મેટાવર્સમાં સેમસંગે પોતાનું ન્યૂયોર્કના ટાઈમ સ્ક્વેરમાં આવેલા ફ્લેગશિપ શોરૂમનો રેપ્લિકા સ્ટોર પણ ચાલુ કરી દીધું છે. અક્ષય કુમાર અને ટાઈગર શ્રોફે પોતાની નેક્સ્ટ ફિલ્મ બડે મિયાં છોટે મિયાં એનું ટ્રેલર પણ મેટાવર્સમાં લોન્ચ કરી દીધું છે. ઇન શોર્ટ, મેટાવર્સની દુનિયા બહુ જ મોટી છે. આજે મેં તમને ફક્ત મેટાવર્સની મજેદાર દુનિયાના નાનું ટ્રેલર આપ્યું, પણ પિક્ચર અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત. મેટાવર્સ અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી વધારે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની પ્રોમિસ સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો દોસ્ત અને હોસ્ટ પાર્વતી નિર્બાન તમારી રજા લઉં છું. ક્રિપ્ટો વર્સના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મજામાં રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. डोनेशंस करते हैं? आप कहेंगे रुचि ये भी कोई सवाल है? डोनेशंस एंड चैरिटी तो सीक्रेटली करनी चाहिए, ढिंडोरा पीट कर नहीं. हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम कितनी डोनेशंस करते होंगे? फ्रैंकली हजारों में, राइट? क्योंकि लाखों में तो सिर्फ रईस, सेलिब्रिटीज चैरिटी करते हैं, और ये चैरिटी भी हमने 20s में या 30s में शुरू की होगी, है ना? लेकिन एक हाई स्कूल की बच्ची है जो ना सिर्फ 14 इयर्स की उम्र में मिलियंस कमा रही है, बल्कि मिलियंस में चैरिटी भी कर रही है. हो गए ना हैरान? मिलिए एबिगेल से, जो यंग टीनेज NFT मिलियनेयर्स में से एक है. एबिगेल फेमस है अपनी बेलूजीज NFT के लिए, जो कि बेलुगा व्हेल से इंस्पायर है. दरअसल एबिगेल 2018 में अपने परिवार के साथ जॉर्जिया एक्वेरियम विजिट करने गई थी.
वहां उसने पहली बार बेलुगा व्हेल्स को देखा एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। वेल, ड्राइंग का शौक तो एबिगेल को हमेशा से था, लेकिन जॉर्जिया एक्वेरियम से लौटने के बाद उन्होंने बेलुगा को ही अपनी ड्राइंग इंस्पिरेशन बना लिया। एबिगेल के टैलेंट से उनका बड़ा भाई एडम काफी इंस्पायर था। उसने एबिगेल को NFTs के बारे में बताया और इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया। फिर क्या था, एबिगेल ने अपने iPhone 8 पर बेलुजीज ड्रॉ करनी शुरू कर दी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, एबिगेल की बेलुजीज कलेक्शन की ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग्स उन्होंने अपने iPhone 8 पर ही बनाई है। ड्राइंग तो तैयार हो गई, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। तो एडम ने एबिगेल को इन व्हेल्स को कंपाइल करने के लिए स्क्रिप्ट डेवलप करने में और व्हेल्स को डेकोरेट करने में हेल्प की, जिसके बाद तैयार हुई 8000 यूनिक पिक्चर्स। फिर एबिगेल ने 3 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें वो खुद, एक फैमिली मेंबर और उनकी एक फ्रेंड शामिल है, जो इन बेलुजीज की डिजाइनिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी और कम्युनिटी आउटरीच तक सब कुछ हैंडल करती है। अक्टूबर 2021 में एबिगेल ने इन सोलाना बेस्ड बेलुजीज को अल्फा आर्ट NFT मार्केटप्लेस पर सेल के लिए लॉन्च कर दिया। इसकी बिडिंग 0.8 सोल के साथ शुरू हुई और देखते ही देखते महज 10 घंटों में $1,021,000 की टोटल सेल्स के साथ उनकी पूरी कलेक्शन सोल्ड आउट हो गई। इनमें से ऑर्का व्हेल सूट में एक बेलुगा को $10,000 का हाईएस्ट सेल प्राइस मिला। एक नेक कॉज के साथ जुड़े होने की वजह से इस कलेक्शन को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। इस सेल का कुछ हिस्सा बेलुगा फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कई चैरिटीज को दिया गया। अब तक एबिगेल कुल $240,000 की चैरिटी कर चुकी हैं, जिसमें सनशाइन किड्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन विद कैंसर को $100,000 और $50,000 ओशन डिफेंडर्स अलायंस को दिया गया। महज एक साल में एबिगेल ने कामयाबी की ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई है एबिगेल, जिन्हें ना सिर्फ मीडिया कवर कर रही है, बल्कि बड़े एस्टैब्लिश्ड टीवी शोज भी इनवाइट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कामयाबी तो बहुत लोग हासिल करते हैं, लेकिन नेम और फेम कमाने के साथ साथ सेम लेवल की चैरिटी, और वो भी टीनेज में, शायद ही किसी ने की हो। बहुत से लोगों के लिए एबिगेल रोल मॉडल बने और लोग उनसे इंस्पिरेशन लें और कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी काम आए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए डू वॉच माई स्टोरीज। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। थ्री 4D और यहां तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. With only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days, and the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, Captain America,
Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. So in today's episode of Digitally Unplugged, we will explain the common questions and myths of crypto investors as far as taxation is concerned. So a report on crypto trading in India, based on a survey conducted by the crypto exchange WazirX, found that 1% tax deducted at source on every crypto transactions had deterred the majority of investors from trading in the digital assets. So to explain the entire episode of taxation, we have invited two special guests. Our first guest is Mr. Raj Kapoor, founder, India Blockchain Alliance. Sir, welcome on Crypto TV. Thank you. Always happy to be here. And our second guest is Mr. Indy Sarkar, co-founder, TaxCrypt. Indy sir, welcome on Crypto TV. Thank you so much, Manoj. Happy to be here. All right. So, Indy sir, we'll begin with you. My first question to you is, what is the current tax situation as of now? And there is actually, we have been reading out in newspapers and reports that because of the higher tax structure, there is a shift in volume that is happening. So what is, according to you, the current situation as far as India is concerned? Well, first of all, in February, in the budget recently by the Union Government of India, they announced the fact that there'll be taxation on crypto assets and crypto trading. And what they introduced at that point was a flat 30% tax on all crypto gains from 1st of April, and also the application of TDS on all crypto transactions from the 1st of July. So to some extent, it did rattle the markets. It did rattle the crypto ecosystem because this is something quite new. And taxation was always seen as something outside of the crypto universe applying to other financial assets. So by definition, it has created an element of uncertainty. Lots of questions were raised. And at the same time, I think it's, as with any fledgling industry or ecosystem, these are all bumps along the way that the industry has to handle. And taxation is the reality of any investment market, and to that extent, it's perhaps here to stay, but it might evolve over the next few years. All right, sir. Raj sir, your opening remarks on that, few keywords which I've picked from what Indy sir has mentioned in his opening remark is, there is taxation, although taxation has been announced, there is a uncertainty and market is not taking it in a positive manner. So what is your take on that, sir? Yeah, I completely agree with that. Wherever there is uncertainty, there is a market reaction. And in this case, it's been a very adverse reaction. WazirX says 50% of them are concerned. I say more than 90% are really concerned. I mean, that's of course a very small sample they would have taken, I'm sure. But I think 90% of us are very unclear. There is a lot of information asymmetry, everybody giving a lot of their own options and their own points of view. But I think what is really required is a very structured approach, and an approach where the common man, the retail investor, understands it very, very in simple layman terms. Let's not complicate the matter. Taxes are important, yes. However, clarity around them is even more important. The major concern, I think, still with a lot of people is because it cannot be offset against any other profits, etc. And that is causing ambiguity. Also, are the NFTs going to be taxed? Are other assets going to be taxed? Lots and lots of such questions are in this industry, and we need to address them. And we need professionals who are focused in this space for that. And I think Indy is doing a great job there.
All right. So from this opening remarks from both the gentlemen, so what we have understood is there is a sense of ambiguity and there is a bit of confusion going on in the market. So let's discuss about this in detail and make our viewers aware of what are the current situation as far as taxation is concerned in India. So, Indy sir, my next question to you is, investors are confused if they need to file taxes on crypto for financial year ending 31st March, that is 2022. So, given the tax policy has only come this year, so what is your view and what kind of situation on ground level is there? If you can just explain this for our viewers, sir. This is a really important question, Manoj. A lot of people are under the belief system that the taxation rules merely apply from the 1st of April 2022. But in fact, the government wants crypto investors to file taxes for the previous financial year, which is for 31st March 2022, on the basis of prevailing tax norms. And many crypto investors that are getting prudent advice are filing on the basis of normal financial assets, based taxation. In other words, short-term and long-term gains. And to that extent, they're trying to ensure that there's no questions raised later or penalties applied later on. So if you're a crypto investor, and I've had a trading history over the financial year March 2022, you're prudent to file and disclose your crypto activity and file taxes on the basis of short-term and long-term gains. So, all right. So, what's your view on this, sir? What is happening on ground reality, since you are associated with many projects and you work with a lot of blockchain projects, a lot of NFT projects as well? What is the sense you are getting from the market, Raj sir? Yeah, what I'm getting from the market is, do we really need to be in India when all the taxation is unclear, where there is such a lot of ambiguity, there is opacity, there is no clarity? Do we need to be in India? And unfortunately, the answer I'm getting from most of them are, I think we'll have our compliance and jurisdiction shifted outside India. I see that as an exodus of talent. I see that as an exodus of funds going out of the country. I see that as a lot of taxes which we could have collected nicely, maybe if we had just structured it a little better. It's all going out. The industry is not happy. Technology takes a beating. And as an industry voice, I can say one thing. Unanimously, all my partners, my alliances, all the companies we work with, all have one thing in common. The ambiguity is not good for the development of not only the technology, but for our economy as well. I see that, I'm seeing this as a brain drain 2.0. A lot of our companies are going to go outside and settle down. Not the best thing for India. So, Indy sir, that's a big statement coming from Mr. Raj Kapoor. He said that. So there is a bit of ambiguity as far as all his projects is concerned, and the entire ecosystem is asking for one thing, that is clarity. So, what kind of transactions are taxable? Since you mentioned about the short-term and the long-term gains which are made, so if you can just simplify this process for our viewers, how this entire situation looks like. Got it. First of all, the government policy on crypto taxation is at a very, very early stage. So one has to understand that perhaps the government policy on virtual digital assets, which includes cryptocurrencies, NFTs, and others, and therefore the VDA policy and conversation around that is significantly important. Lots of activity, I'm told, is taking place in that space. But going forward from 1st of April, what has essentially been read by the crypto investor community as a disincentive to the crypto industry is the fact that the 30% flat rule for taxation, without providing the necessary clarity around how it's actually going to be applied, has clearly caused some uncertainty. But the 30% tax rule applies to all crypto gains. And there is no ability to offset losses against these gains, which is unlike what you have in the other financial asset space. Now, what is also unclear, and I think that this is something that investors need to realize, is that there is also this myth that you only pay your taxes when you convert your cryptocurrency holdings to fiat currency or real money. In other words, you're converting it to INR in a normal bank account. That's also a flawed understanding of crypto taxation. Your taxes are due the minute you are
trading crypto assets, either staying within Bitcoins and you've got gains in it, or converting one crypto asset to another crypto asset, these are all taxable events. And there are complexities around it. Not only is there complexity around the gains and capturing the 30%, but also now you have TDS. So you have to basically account for TDS. All right. So Raj sir, very quickly, you want to add anything to it? Oh, well, I would say, if I was to recommend something, I think you should cut the TDS down to 0.01%, instead of 1.0%. That would what I would suggest. That would be it'll have much Sir, more. but how will it make a difference? Because since it's 1% and volumes are down roughly around 90% on all the exchanges. Yeah. So what difference is going to make as far as TDS 1%? Is it customers are going to pay or the exchanges are going to bear this? See, if you reduce if 30% is already quite on the higher side, that's for sure. If you add another 1% on that, is obviously a lot of people will say the volumes will go down because a lot of people will say, I don't need to trade so many times. Okay, all right. So, Indy sir, how is crypto taxation different? Since you have mentioned in details, so how is crypto tax different and complex when you compare it with the traditional tax structure in India? If you can just explain that, sir. Yeah, the complexities are at quite a few levels. So one of the complexities is you could be trading Bitcoins and just locking gains on Bitcoins. That's a simple aspect of it. You could be also, selling your Bitcoins or trading your Bitcoin for a portion of it to buy Ethereum. So all of these are partial or rather, fungible transactions. And at every point, you could have multiple trades happening where the concept of first in, first out could apply to your holdings for tax purposes. So generally speaking, crypto investors are undertaking a lot of transactions. This is a very volatile market. So transactions tend to be quite aggressive in terms of frequency of trading. And therefore, every event of trade is a point of reference for taxation. Right. So you have to be able to capture these elements. And in the absence of technology and in the absence of a smart solution, this is what's caused a great deal of anguish to a crypto investor that's not necessarily fully aware of the tax implications. So great deal of anguish, that's a word coming in from Andy sir. It's a big statement, sir. So since you mentioned about a lot of companies that are moving away from India outside, so my next question to Raj sir is, in addition to around 24% of the respondents are contemplating shifting their traditional activities to international exchanges. That's what you have been already mentioned in this interaction as well. So owing to the higher taxation, that's the conclusion which we have drawn. The only country emerging as a big benefit from this shift is Dubai, Singapore, and United States of America. So we have been to Miami to cover the Bitcoin 2022 conference. So there was a lot of optimism around, when we had been there. So what's your take on that, sir? Optimism, when things are going good, then everybody's an optimist. And when things are going down, everybody's a naysayer. I think that's a wrong way of looking at approaching things. I think we should take the up and down all in our stride. That's one part. I think crypto is just one part of a bigger picture, that is blockchain. Blockchain is the ultimate winner out here. Crypto is a great use case, yes. And I think it's just a question of time before there is some sort of a bounce back. But I think I have a little question here actually, and that is for India actually. Sorry to digress a little, but it's still in my mind and I wanted to speak it out today. Manoj, with your permission, I will ask. Yeah, please go ahead, sir. Please go ahead. So one of the questions like Indy is, how is the stance for NRIs now or people of Indian origin? Because how are they going to be taxed? Which is the country which will be responsible for the taxation? And which, if there's a persecution, which is the country which will be actually doing that? Can you answer this for me? It's been playing in my head for a long time. That's a great question, Raj. And I think that there are complexities on this which are yet to be fully understood and appreciated. But I'll give you a great base case example of this. If I'm an NRI and I'm trading and I've got an account with an international exchange, and therefore for taxation purposes, I'm not a resident Indian, then India has no tax jurisdiction. But again, these are things that will get far more clarified. And to that extent, I think the rules of regular financial assets, when you're buying equities or bonds for an NRI that is not based in India, would apply. In the case of an NRI that has a local
let's say, centralized exchange account with any of the exchanges that are registered in India and therefore seen as an India, account holder, again, there are FEMA rules that would apply if you're NRI. So is it an NRE account that's feeding the crypto account, and therefore is it a local bank account? Because NRIs are not, under the FEMA rules, you need to have separate bank accounts to be able to transact locally in India. So lots of considerations would come in. But the fact is, guys, I think the way I see this, and to that extent, I remain optimistic, is that for the first time, the government, with its taxation announcement on crypto, is de facto giving crypto some level of recognition. Fantastic. As an industry. While it's not officially recognized yet, if you read the official communication on it. But I do believe that this is albeit a baby step, but it's a step in the right direction, where the government is taking, a step to recognize the industry. I also believe, and this is not just the Indian government considerations, DeFi remains, the decentralized exchanges remain a real point of contention for India as well as for the governments around the world. And I think to that extent, managing systemic risk and protecting investors from a public policy standpoint is going to be top of the agenda. And taxation being an element of compliance stroke revenue generation to bring it at par with other financial assets is how I would read the broader discourse, in the country, as well as internationally in terms of how crypto gains legitimacy over time. So Indy sir, you mentioned that protecting investors should be government's top agenda. My follow-up question to you is, what measures should government take to retain them? That's what is actually we are discussing about it. This is a great question, and I think that the investor protection issues have played out quite openly in the last couple of months with the rout that we've seen in crypto trading and crypto markets worldwide. You had many exchanges that have gone under and have gone into bankruptcy or receivership. And and this is really for the benefit of investors, when you have a brokerage account in the normal stock market world, you have an online broking account or what have you, if a brokerage goes under, your holdings are protected because there is a custodian behind that is basically holding, your stocks and bonds, and all you do is just you move it to another online account, etc. The investor protection issues here is when an exchange is coming under pressure and they're putting a halt to withdrawals, etc., and the liabilities of the exchanges are now, being met, or rather has the risk of being met through account holders. This is an area of real concern, and it should be for crypto investors. So to that extent, regulation is not a bad thing if it creates safety nets, and if the safety nets were to come through in a kind of constructive fashion, it's only going to be positive for the industry in the long haul. So in this first segment, we have discussed about all the macro aspects of taxation is concerned and what is the way forward. So stay tuned on Crypto TV to watch this micro segment, that is segment 2. Thank you. Today we are going to discuss Metaverse in details, and today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar. Metaverse is a 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. We can see the lot of development of the Metaverse in upcoming time.
Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV in segment 2 of taxation, wherein we'll be discussing about all the micro aspects that have concerned or bothered the industry. So Raj sir, we were talking to a couple of gaming projects who are operating outside India. So they have a lot of developers worldwide who are helping them to develop a game. So this is just an example to understand how the tax structure looks like. So there are in that gaming company, we will not mention that company. They have roughly around 5 developers from India, and they were accepting their salaries in cryptos. So how is this structure looking like? How the crypto workers' salary will be taxed in India after the tax, the changed regime? And do they have to pay 1% TDS for every salary payment? Or if you can just clarify this, because there are a lot of developers who will be watching your interview, sir. Yeah, well, most developers I know are not taking any more in tokens and coins. That's the first thing. I work with a lot of them myself, so I know that for sure. They have actually refused to take it now. Earlier, it was a norm. As I told you, when things are good and everything is soaring upwards, everybody's happy to take the token. When it's going downwards, nobody's happy to take the token or the coin. Now, coming from a tax perspective, well, I think the same tax provisions will apply, but there again has to, as Indy said, this is just evolving. We are just at the beginning. We are at the ground floor of our taxation policy, basically, vis-a-vis crypto or digital assets. What happens now is there will be definitions. They will have the branching out. NFTs will, I'm sure, be treated differently. Crypto will be treated differently. Salaries and token. First of all, there has to be clarity whether anybody can accept a salary or reward or a sort of a compensation in tokens. Even that is not very clear. So, advice to any developers: take cash, take fiat right now. That's my advice. Right now, things may change, and let clarity come. They're going to be taxed in the same way. Once they actually convert their holdings, they're going to be taxed the same way. It's not going to be much different. But the most important question here is it legally allowed for us to take tokens or coins as compensation? That is the fundamental question. That needs to be absolutely clear, and that's not clear right now. So, Andy sir, your very quick take on this, sir. Sure. This is a really interesting question, and the complications, as you've seen, this is a great use case. But if I'm the taxman sitting there and saying, how do I tax people being paid in cryptocurrency, for example, the taxman is going to say, this is income, this is salary, this is income. And therefore, if you're receiving, 0.5 Bitcoin as payment of salary, well, 0.5 Bitcoin in terms of at the point of receipt is a value, because there's a market value for that Bitcoin. That's your income. And therefore, to the extent to which you need to pay your taxes, it's normal income tax rules that would apply. And to that extent, if it hasn't been deducted by the payer of the salary, like we have in normal company terms when you're paying salaries to employees, there's deduction, then the recipient is obligated to file their taxes on the marginal tax rate on the basis of which they're receiving their salary. So it's seen as regular income tax. The mode of, the type of payment is less important as opposed to the value of receipt of Fantastic. that income. So, Indy sir, very quickly, if you can just also highlight before we move to our micro sections, wherein we'll cover all the NFT tax implications as well. So, very quickly, if you can just highlight or mention few countries that are actually low on taxes, and that is the reason why people are moving away from India to those segments. Well, I mean, one of the things that you have is there are jurisdictions around the world like Singapore, Dubai, that have been seen as fairly favorable to taxation currently. But then again, Singapore has no capital gains tax even for trading in capital markets, Fantastic. In equity markets. Yeah. So, you really have to think of it in terms that taxation policies around the world and crypto continue to evolve. And there's likely to be convergence between financial assets and crypto assets with some checks and balances. All right, so we move to our next segment, that is micros as far as taxation is concerned. So we will discuss in detail, in all those sectors who are having or concerns as far as ambiguity, or for that matter, if there is any clarity is required. So we'll begin with NFT section with Raj sir.
transactions in NFT sale and purchase, what kind of clarity you would like to provide? And will it attract kind of TDS? And if you can just simplify this tax structure in NFTs for our viewers who are actually engaged in buying and selling in India. Well, NFTs basically one of the most complicated issues of an NFT is where is it originated? Basically, that's there. Then cross-border transactions are also there. That's another thing which needs to be addressed. Compliances, does it have any compliances? It doesn't have any right now. These 2-3 things are immediate which come to mind, top of the mind recall, which come among. There are many others, of course, countrywide, etc. Different rules, regulations from a country perspective. So it boils down to the question, we don't have the clarity, we don't have the framework. We've been actually asking for a framework for a long time and put forward several suggestions as well. Let's see where that takes us. NFTs, as we speak, and I think Indy will give a better, from a taxation perspective, he'll be able to answer that. For me, I think there will be the same taxation, the rules would apply as of now as they are to crypto, which is not exactly true, because how do you determine the value of an NFT, basically? It's a perceived value, it's a notional value. So I think, Indy, you would say something from a tax perspective. Sure. From an industry perspective. The one thing which Raj, which we probably need to further elaborate is that when you're looking at international NFTs or cryptocurrencies traded in foreign currency, from an India perspective, if you're an India tax resident, not only do you have to worry about the 30% on a crypto to crypto mark to market value, you also have to take into account exchange rate fluctuations. Fantastic. INR versus the dollar or whatever. Valid point, sir. So the whole exchange angle. And I think from normal NFT taxation standpoint, whether there's going to be a distinction between NFTs and crypto, as Raj clearly pointed out, is a matter of public policy that needs clarity. But I think the real double whammy here that's the investors have been spooked is you're only being taxed on your gains and you're not being allowed any offset in your losses. Offsetting. That in a highly volatile trading environment causes a massive disincentive to trade. So I think this is something that government policy will reflect on as it evolves as taxation policy. So, Indy sir, just a question as far as our traders and viewers all those viewers who are watching this interaction is, there are quite frequent NFT trades that are happening. So, will both buyers and sellers have to pay TDS of 1%, or is it that only buyer pays it? If you can just clarify this for our viewers. The TDS is payable on one side. The person who is essentially making the payment, again, there's some clarity here to be had. And therefore, the TDS is deducted, at the point of payment to the recipient. And therefore, whoever is deducting the TDS files the TDS against, the person that is in receipt of it. So TDS at the end of the day is not double taxation, it's an offset. And I think the primary purpose of TDS is to create a kind of transaction ID where every transaction is now being, with a TDS component can be recognized within the government system. So it's traceability more than anything else, I would think. All right. Raj sir, you want to quickly add to it? No, I agree with the double whammy aspect of it. That's one part. TDS, again, TDS also, by the way, the government use it as another option, for a lot of illegal trade as well. So we got to have even that addressed along with all the taxation. I'm talking from a overall compliance perspective, not only from a tax perspective. But I think TDS will have to be separated from crypto, as it's a completely different asset class. So I always think I don't see it's the same as crypto, although of course the fundamental and underlying technology is the same. But we need to have more clarity on NFTs, for example, because it also has your gas fees, etc. Are you going to deduct the gas fees and then have a profit on it? What is going to be the cost? There is a lot of ambiguity again. Ambiguity. As long as there's ambiguity, there are going to be questions. Another question, for example, could be, how about if a charitable organization puts across an NFT and somebody buys it? Is the charitable organization also, the tax, does it apply to them as well? That's a question again, which is going to come up, because a lot of things are happening. A lot of charitable organizations coming up and buying NFTs. Why are they buying it? Fantastic. Is there a way out? Is it a loophole? That's a super valid point, sir. Let me ask a follow-up question to Indy sir on this. It's a case study, just for example. So, if NFTs are quite volatile like crypto, as we all are aware, a user
say for example, there is a user who might sell it today, for example, 40% profit and pay taxes on it. But in NFT, they might make 80%. There are some NFTs, they might make a 60% losses. So how will users cope with this heavy taxation that doesn't offset losses, since you have already mentioned that? So is there a way NFT traders can manage their losses? At the moment, Manoj, this is an element of real uncertainty in terms of whether you will be allowed NFT to NFT offsets. But the policy of the government right now is very clear. We're only interested in gains. So the 30% rule applies to all gains. There's nothing that has been said that you can offset losses or create accumulated losses for future tax purposes, as we have in the financial asset world, where you're allowed to carry accumulated short-term losses. So I think to that extent, this is a part of public policy that needs clarification. I think there's enough conversation going around in the government circles and in public policy in that sense. So expect more clarity. I think like I said right at the beginning, these are baby steps towards granting crypto as an industry legitimacy. And therefore, there's going to be some pain along the way or some uncertainty along the way as we traverse this journey. Fantastic. So baby steps and uncertainty, those are the two key words, Raj sir, which I've picked from this statement. So as we enter in our last leg of this interaction, so there are a couple of questions which I want you to answer is, what will be the taxation on crypto gifts? So if you can just highlight that. Say for example, if someone wants to gift someone in cryptos, so will they be taxed, and who will be taxed? If you can just highlight that. From what I see, taxation. Sorry, yes, Raj. No, actually, it's your question, Indy. You should go ahead and answer it. Right. So you have your gift rules that are in place. So up to 50,000 rupees, you're not taxed for receipt of gifts. And therefore, anything above that, you are liable for, calculating your taxes as per the crypto tax rules. And again, with all of these things, there's need for more clarity. And I think to that extent, the flat 30% rule was an initial step, which, as we've all said, has, a lot of these use cases need more explanation. And if there's any exceptions to be made, then public policy or government policy on taxation will arrive at something on this. All right, Rasa, you want to add quickly to it? Will you be gifting someone in cryptos, or you would prefer the traditional cash measure? Yeah. Well, if you have to gift in cryptos, you shouldn't be sitting in India, that's for sure. All right. I would rather give it in cash. I'll stick to cash right now. I'd rather gift them some knowledge rather than give them that. All right. So Indy sir, my next question to you is, how are crypto airdrops taxed in India? So there are a lot of airdrops that are happening, and there was some indication by Indian government about the airdrop thing. If you can just clarify this for our viewers as well, that's it. Again, details would emerge on this front, but generally, when you're receiving an airdrop, your crypto taxation is calculated on the basis of a kind of cost basis, and then your exit price, and therefore the difference is what you would pay your taxes on. If you've received an airdrop where your cost of acquisition is zero, then the cost basis calculation on one side of the equation is zero. So if you end up selling it for 10,000 or what have you at some point, then your 30% obligation is on the entire 10,000. Now, perhaps there is, government has its thought process around this. You might receive an airdrop and you've transferred money separately to them, which is where they're trying to control this by saying, hey, you know what, on a cost basis, some of these transactions will be deemed value zero, and therefore you're liable for taxation on across, all of its value at the point of when you're either converting to another crypto or converting to fiat. So if you can just clarify this for our viewers, sir. Say for example, someone in India is having say maybe 500 Luna before the episode that happened. Mm-hmm. And for that matter, that algorithmic stablecoin, which I don't want to mention that as well, that is the reason why the market is down. So, and they had come out with a 2.0 version where the airdrops were actually activated. So how will that tax structure look like? If you can just clarify that, sir. Again, it's the version 2.2 is seen as a separate crypto asset altogether. And therefore, any airdrops, this is where all the complications come in. It would be treated as a separate crypto asset. Therefore, there are two transactions taking place here. One from the Luna 1 to Luna 2 is one transaction. So if there's any gains to be had there,
you would essentially, be liable for taxes. And then what you do with Luna 2 down the line, in terms of, exit or conversion, if there's any kind of upside value in a mark-to-market sense, then you're liable for taxes again. But as if you've taken a loss, profit on one and loss on the other, and the loss can't be offset, that's the bit that I think the investors would love to see some clarity and perhaps some understanding where some level of loss adjustments are offered to the industry, like you have in normal financial assets. So what's your very quick take on that, sir? Losses तो है ही वहाँ पर, और यहाँ पर जो नया एयर ड्रॉप मिल रहा है उसके ऊपर भी उनको टैक्सेस भरने को आ रहा है, तो ये कुछ काइंड ऑफ discouraging situation is there which is actually going on in India, sir? Discouraging to khair, I mean, I think to that extent, crypto investors को ये भी समझना है कि till such time policy clarity emerges where a lot of these kind of use cases, which are not the normal use cases, are factored into the taxation policy where you know specifically how you would address them. There's uncertainty. These are very legitimate questions, but under the current regime, without any offset, there's clearly some level of disincentive. But clarity will emerge. I have full confidence that I always tell people that taxation is here to stay, and the level of taxation we can debate and argue, but it's also steps to legitimize the crypto industry over time. All right, one last question to you both is, Raj sir, we have seen total value locked in the DeFi space coming down from 74 billion. It has come down by 60%. So what is the entire episode? It has been under trouble and under broader concern as well. So what is your take, and what are the tax structure as far as the DeFi transactions are concerned? If you can just mention that as well, sir. Basically, when you make structures in a hurry, they're always going to fall or have impact, that's for sure. It's like for anything, you make a bridge in a hurry, you'll have the same problem. All these structures came up with a lot of patchy work if you look at it very carefully. I'll keep it simple without going into the technical aspect of it. But if you look at it, most of the structures were not prepared or tailored for in environments such as what we experience right now. Taking a step back a little bit, let's see, we are in the same stage as what GST was when it started off, basically. It started off with something, and look at the entire contours of it now are completely different 2 years, 3 years down the line. There has been a paradigm shift. There have been a lot of iterations, a lot of additions, a lot of discussions around it, a lot of debates around it. And now it's going towards some levels of maturity. Whether it's DeFi, whether it is the taxations, everything is in the same space right now. Fantastic. A, lack of awareness. B, lack of frameworks. 3, lack of clarity. All this is putting just unnecessary questions for a lot of us. Whereas actually we can make this much more simplified. I'm not saying simple, but simplified for the common man. And that's missing. We're completely missing that. These structures are they're not very stable right now. They need a change and they need an overhaul. Structures are not stable as of now and they need a change. That's a word coming in from Mr. Raj Kapoor. Indy sir, your closing remarks on this, sir. My closing remarks would be that investors should not be too discouraged. I think that they need to understand that the industry is in a very early stage of development. Government policy will emerge. If the government had to ban crypto, I think the ban would have come through by now. But I do believe that regulation will come through when it comes to managing systemic risk, providing for investor protection, and also, the sensitive area around national security, which is around terror financing and anti-money laundering, and therefore any anti-money laundering provisions that might come in. These are the broader issues that the government is going to, grapple with as part of its overall policy. And within all of this, taxation, I think if the industry gets stability and there's certainty in many aspects and there's investor confidence is raised, taxation will evolve in a way that investors will live with taxation. Haven't we lived with taxation in the capital markets? All right. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much for being part of this interaction. Andy sir, thank you so much. Raj sir, thank you so much. You both of
gentlemen have actually clarified और यहाँ पर लेकर एक बहुत ही अच्छा एक tax structure को लेकर आपने बहुत अच्छी तरीके से explain किया. Indy sir, thank you so much for clarifying the entire tax structure as far as India, international, and what is the way forward. And Raj sir, you gave a very fantastic overview about how the companies are leaving India and moving to other destinations because of a broader uncertainty. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction. Thank you so much, Manoj. Thank you for having us. Thank you. All right, that's all there is in today's Digitally Unplugged, the special episode on taxation. We hope you like our presentation and stay tuned on Crypto TV for more such interesting episodes. Thank you. Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge. Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. I'm really happy when this report was recently published. So now people can refer to this report and make their business cases. Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. And our second guest is Tom Lyons. We have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble, and we also wanted to do some original research in that direction. Cryptocurrency is a new notion, and it's difficult to grasp in a society where actual goods have long had exchangeable value. Cryptocurrency is the future of online payment, and we say this confidently because millions of cloud services and e-commerce websites already accept Bitcoin and other cryptocurrencies as a payment mode. You can buy a luxury car in Singapore and other countries and real estate properties in El Salvador, United States of America, and many other nations with cryptocurrencies. In India, the government has recently taxed profits from cryptos at 30%, which is an indicator that crypto transactions have a future in the Indian markets. However, these businesses need to integrate a crypto payment gateway to accept bitcoins or other cryptocurrencies on their websites or app. There are many crypto payment providers, but most of them do not fit the Indian market. This video will provide you with all the information related to crypto payments along with some of the best crypto gateway services in India. I am Manoj Dara and you are watching this special segment on what is cryptocurrency payment gateway. A cryptocurrency payment gateway, like payment processors, gateway, and acquiring bank credit cards, is a payment processor for digital currencies. It allows you to accept cryptocurrency as a mode of payment for your goods and services. It can be integrated on your website, mobile app, or to receive a payment via a link. Every payment you make online is processed through a payment gateway like C Avenue, Razorpay, etc. These payment gateways provide payment modes like credit card, debit cards, and net banking. On the contrary, crypto gateway receive payments from buyers' crypto wallets and deposit it in the seller's crypto wallet. The crypto payment processor also converts and deposits fiat currency directly in the vendor's bank account after deducting of necessary charges. A suitable crypto payment processor could accept all popular cryptocurrencies like Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tether, etc. Payment gateway. Why it is crucial? The Indian online market is catching up with global cryptocurrency market. India is the hub of world services industries with thousands of BPOs, service exporters, and SaaS businesses that need receive payments from abroad. As cryptocurrency is free from exchange rates and highly secure with blockchain technology, the crypto payment gateway is one of the best ways to receive international payments. The payment gateway allows you to accept cryptocurrencies as payment and receive fiat currency in exchange. If you don't understand or trust it,
Let's get into the details. Flow of the payment will make you understand how this following workflow is carried out in terms of steps. First step, the customer opts to pay its cryptocurrency during a checkout, which is in store or in the web or in the app. Step 2, the crypto gateway calculates the required payment in terms of cryptocurrencies specified by the buyer. Step 3, the buyer pays the amount in crypto through his crypto wallet. Step 4, the blockchain is scanned using the integrated payment gateway where nodes confirm validates the transactions. Step 5, once the transaction is confirmed, the fee is generated. Crypto payment gateway credits the merchant's account with the desired cryptocurrency opted by him. Step 6, the crypto payment processor sends payment to merchants in designated bank account or other payment services like PayPal. Just an example, this is done at the regular intervals or as requested by the merchants. So you must be wondering, what are the advantages if you opt for a payment gateway? No geo barriers. Unlike fiat money, vendors can quickly receive international transfers without regulatory compliance. No bank account. A single digital wallet is used to send and receive cryptocurrency. Vendors don't even need a bank account to receive payments. Low transaction fees. The transaction fees made for payments received made through a payment gateway cryptocurrency is very low when you compare with other modes of payment. No chargebacks. Cryptocurrency payment gateway gives sellers freedom from chargebacks as completed payments can't be reversed under any circumstances. Fifth point, allows you to receive any valid crypto payment securely. Sixth one is reduces volatility risk as most of the gateways provide fixed buying and selling rates. 7th point, it allows users to exchange the crypto for fiat money or one crypto to other easily. So you must be wondering, we have gone through all the advantages. What are the disadvantages associated with it? Because you may be receiving payments from all over the world in different time zones, you must rely on providers' capability to offer uninterrupted services. Second, the payment does go through a third party and become traceable, defeating the primary purpose of cryptocurrency. Third, the transaction fees are considered higher when payment is received through a crypto gateway. Fourth, in case your payment gateway is hacked, any funds in your provider's account will be lost while you wait for them to be transferred. Well, the crypto market has tremendous potential for inclusivity and advantages when compared to bank transfer. So we have all understood how integrating crypto payment gateway in websites and app would help businesses to receive payments from around the globe in real time without any complications. It is high time that Indian merchants adopt these payment options for expansion, growth and profitability. But will they have government support? That only time will tell. Until then, keep watching Crypto TV. This is Manoj Dara signing off. Thank you so much. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या या खास शो मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, क्रिप्टो करन्सी सध्याच्या या दुनियेत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. परंतु सध्या याचा वापर केवळ नफा कमवण्यासाठीच नाही, तर दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठीही केला जातोय. आज आपण क्रिप्टोशी संबंधित अशाच काही इन्स्पायरेशनल आणि इम्पॅक्टफुल गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत, जे वास्तविक जीवनातील घटना आहेत आणि ज्यामुळे लोकांचे जीवन बदलले आहे. याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया मधलं युद्ध. या युद्धामध्ये एक 20 वर्षांचा युक्रेनियन रेफ्युजी, ज्याला रशियन आक्रमण सुरू असताना आपला देश सोडावा लागला, त्यावेळी त्याच्याकडे फक्त $2000चे बिटकॉइन्स होते आणि त्याला या युद्धामुळे त्याच्या पेनड्राईव्ह आणि कोल्ड वॉलेट मध्ये स्टोअर असणारी क्रिप्टोच शेवटी त्याच्यासाठी आशेचं किरण ठरली. असंच एक दुसरं उदाहरण आहे अफगाणिस्तानमध्ये राहणारी एक टेक कंपनीची सीईओ रोया मेहबूबचं. मागील वर्षी तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर रोयाला अफगाणिस्तान सोडण्यापलीकडे काहीच पर्याय नव्हता, आणि तेही अशा वेळेस जेव्हा रोयाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अफगाणी महिलांना बाहेर काम करण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यांना त्यांच्या बँक अकाउंट्सला सुद्धा
ऍक्सेस करण्यासाठी काही बंधनं लादली गेली होती. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये या अफगाणी महिलांचा आधार बनला क्रिप्टो. रोया मेहबूबने आपल्या अफगाणी एम्प्लॉईजला बिटकॉइन मध्ये त्यांचा पगार देऊन त्यांची मदत केली. मित्रांनो, क्रिप्टोचे महत्व लोकांना तेव्हा कळलं जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये तुफान युद्ध सुरू झालं. जेव्हा चारही बाजूला युद्धाचे वातावरण होतं. स्टॉक एक्सचेंज, बँक्स पूर्णपणे बंद होते. एटीएम मशीनची अक्षरशः तोडफोड झाली होती. लोकल करन्सीची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट डाऊन झाली होती. तेव्हा युक्रेनच्या मदतीला जगभरातून लोक धावून आली आणि अखेरीस क्रिप्टोमध्ये आर्थिक मदत म्हणजेच डोनेशन्स देण्यात आले. युक्रेनचे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे डेप्युटी मिनिस्टर मिस्टर अलेक्स बॉनियाकॉव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार युक्रेनला आतापर्यंत $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन मिळाले आहेत, ज्याचा उपयोग ते बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाईट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाय आणि हेल्थकेअर साठी करतायत. मित्रांनो, युक्रेनियन सरकार सध्या बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट आणि डोज कॉइन मध्ये क्रिप्टो डोनेशन ऍक्सेप्ट करते. तर दुसरीकडे काही नॉन प्रॉफिट्स आणि फिलॅन्थ्रॉपिक ऑर्गनायझेशन जसे कमबॅक अलाइव्ह, युक्रेन डाव, एंडॉवमेंट आणि क्यू इंडिपेंडन्स सुद्धा क्रिप्टो करन्सी डोनेशन्सला डायरेक्टली ऍक्सेप्ट करतात. मित्रांनो, यात काही दुमत नाहीये की काळानुसार क्रिप्टो करन्सीमध्ये डोनेशनची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढताना पाहायला मिळते. मित्रांनो, 2020च्या तुलनेत 2021 मध्ये डिजिटल ऍसेट डोनेशन्स मध्ये 583% वृद्धी पाहायला मिळाली होती. लोक क्रिप्टो डोनेशनचा उपयोग युद्धग्रस्त देशांमध्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीडित लोकांच्या मदतीसोबत पर्यावरण संरक्षण, कोरोना पॅन्डेमिक सारख्या कठीण प्रसंगामध्ये वंचित लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी करते. जर पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात म्हटलं तर पृथ्वीच्या 6% पृष्ठभागाला कव्हर करणाऱ्या ब्राझिलियन अमेझॉनच्या जंगलाला डिफॉरेस्टेशन आणि फॉरेस्ट फायर पासून वाचवण्यासाठी 1987 मध्ये स्थापित केलेल्या रेन फॉरेस्ट फाउंडेशनने क्रिप्टो कम्युनिटीच्या मदतीमुळे $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन अक्वायर केले आहे, ज्याचा उपयोग वातावरणाला प्रोटेक्ट करण्यासाठी केला जाणार आहे. दुसरीकडे सेव्ह द चिल्ड्रन हे जगातील प्रथम आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आहे, ज्याने फिलिपाईन्समध्ये टायफून हायानमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर 2013 पासून बिटकॉइनला डोनेशनच्या स्वरूपात स्वीकार करण्यास सुरुवात केली होती. यासोबत मागील वर्षी या ऑर्गनायझेशनने #HODLHOPE कॅम्पेनच्या माध्यमातून $5 मिलियन पेक्षा जास्त डोनेशन स्वीकारले आहेत, ज्याचा उपयोग युक्रेनच्या युद्धग्रस्त भागातील मुलांच्या मदतीसाठी करण्यात येतोय. भारतात जर म्हटलं तर मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इथेरियमचे को फाउंडर विटालिक बुटेरिन यांनी $1.5 बिलियन क्रिप्टो करन्सीज बऱ्याच एनजीओला डोनेट केली, ज्यामध्ये कोविड-19 रिलीफ फंडच्या स्वरूपात भारताला देखील $1 बिलियन डोनेशन मिळाले. पण मित्रांनो, शेवटी जिथे माया म्हणजेच क्रिप्टो आहे तिथे माया जाल नसणं असे होऊ शकणार नाही. अलीकडे अशा बऱ्याच घटना समोर आल्या जिथे स्कॅमर्सने फेक क्रिप्टो डोनेशन वेबसाइट्स आणि ऍडव्हर्टायझिंगच्या माध्यमातून युक्रेनच्या नावावर लोकांना अक्षरशः लुटलंय. एवढंच नाही तर पॅन्डेमिक दरम्यान सुद्धा डार्क वेबवर असे बरेच फेक कोविड-19 चॅरिटीजने सुद्धा $मिलियन चा घोटाळा केला होता. म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही चॅरिटी किंवा एनजीओला क्रिप्टो डोनेट करायचं असेल तर त्या एनजीओ आणि ऑर्गनायझेशन बद्दलची संपूर्ण माहिती थोरोली चेक जरूर करून घ्या. अमेरिकेसह बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोमध्ये डोनेशन्स दिल्यावर डोनर्सला टॅक्स इन्सेंटिव्ह सुद्धा मिळतात. पण अनफॉर्च्युनेटली भारतात क्रिप्टो डोनेशन्सवर सध्या टॅक्स लावला जातोय. लेट्स होप भविष्यात भारतात फियाट करन्सी सारखंच क्रिप्टो डोनेशन्स मध्ये सुद्धा टॅक्स इन्सेंटिव्ह मिळेल की जेणेकरून जास्तीत जास्त क्रिप्टो होल्डर्स हे क्रिप्टो डोनेशनच्या मार्फत गरजूंना मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे घेऊ शकतील. मित्रांनो, मला आशा आहे की आमची खास स्टोरी आपल्याला नक्कीच आवडली असणार. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला तुम्ही नक्कीच लाईक करा व शेअर करा आणि हो, कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. ये पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया।
ओके यस यस यस। ओह हाय, वो क्या है ना, मैं जरा गेमिंग में बिजी हो गई थी। क्या गेम है यार, वाओ, आई एम जस्ट ब्लोन अवे। Amazing graphics, attractive in-game features and ample opportunities to earn. Yes, खेलते खेलते कमाओ, और क्या चाहिए लाइफ में। अरे मैं गेमिंग की यूनिवर्स यानी मेटावर्स की बात कर रही हूँ, जिसका बज़ आजकल हर तरफ है। और हो भी क्यों ना, जो रेवेन्यू इन दिनों मेटावर्स क्रिएट कर रहा है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। एक तो गेमिंग का क्रेज और उस पर NFT की सुपर हिट कलेक्शन का रिकॉर्ड। ये एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसे हर कोई आजमाना चाहता है। नो वंडर 2021 में NFT गेमिंग ने $5.17 बिलियन जनरेट किए थे, यानी 1.75 ट्रिलियन रुपीस। वाओ, इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में NFT गेमिंग ने ओवर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। और ये तो महज साल की शुरुआत है, आगे आने वाले तमाम क्वार्टर्स की रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, ये बात तो तय है। यानी अब बात अरबों से खरबों तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप सोच रहे थे कि पेंट ब्रश उठाकर पीपल की तरह पेंटिंग बनाकर मिलियंस कमाएंगे, देन थिंक अगेन, बिकॉज़ NFT गेमिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ कई ज्यादा कमाने के चांसेस काफी ब्राइट है। ब्लॉकचेन गेमिंग ना सिर्फ तेजी से बढ़ रही है बल्कि NFT स्पेस पर राज भी कर रही है। यकीन नहीं होता? अरे मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, पूरी रिसर्च करके आई हूँ। आई विल टॉक इन नंबर्स। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक NFT की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 बिलियन से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि जितनी रियल जमीन नहीं बिक रही, उससे कहीं ज्यादा गेमिंग वर्ल्ड में वर्चुअल लैंड बिक रहा है। सोचिए, हम रियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, फिर लोन लेते हैं, और लोग वर्चुअल लैंड ले रहे हैं, वो भी फुल डाउन पेमेंट पर। मेटा मेट्रिक सॉल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वर्चुअल लैंड की सेल $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा जंप आया है। हांगकांग बेस्ड कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने जनवरी 2022 में करीब $5 बिलियन रेज किए हैं। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? यही नहीं, क्रिप्टोकिटीज डेवलपर डैपल लैब्स ने अपने NBA टॉप शॉट के प्रोजेक्ट के साथ अप्रैल 2022 में करीब $305 मिलियन की सेल की। वहीं पोकेमॉन से इंस्पायर्ड NFT बैटलिंग गेमिंग एक्सी इन्फिनिटी ने फरवरी 2022 में ओवर $4 बिलियन के साथ हाईएस्ट NFT सेल्स वॉल्यूम का रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है ये फिगर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेमिंग NFT इज द फ्यूचर। आई मीन, एंटरटेनमेंट और अर्निंग का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर पेरेंट्स ब्लॉकचेन पर गेमिंग खेलने पर डांटे तो उन्हें जरा ये सक्सेस नंबर्स दिखा देना। आई एम श्योर फिर वो कहेंगे, अरे अरे खेलो खेलो, मन लगाकर खेलो, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बट बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर। NFT और ब्लॉकचेन गेमिंग क्रिप्टो वर्ल्ड का ही पार्ट है, जहां पर अक्सर बना रहता है डिजिटल लुटेरो यानी हैकर्स का खतरा। बात करें गेमिंग जॉइंट एक्सी इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म की, तो एट द एंड ऑफ मार्च 2022 ऑलमोस्ट क्लोज टू अप्रैल फूल डे, कुछ हैकर्स ने रॉनन ब्रिज की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सी इन्फिनिटी से $625 मिलियन चुरा लिए, यानी करीब 4,750 करोड़ रुपीस की चोरी। अब वो बात अलग है कि एक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर स्काई मेविस और उनके बाइनेंस जैसे सपोर्टर्स की जेबें और उसमें रखी दौलत कुएं से भी गहरी है, इसीलिए उन्होंने गेमर्स की चोरी हुए पैसे रीइंबर्स करने का वादा किया है। So my advice is, before you start your blockchain and NFT gaming journey on any platform, make sure कि आप उस प्लेटफॉर्म का व्हाइट पेपर पढ़ें, पता लगाएं कि उसके डेवलपर्स और सपोर्टर्स कौन हैं। क्या उनके व्हाइट पेपर में इन द इवेंट ऑफ हैक आपके हार्ड अर्न्ड कैश को रीइंबर्स करने का क्लॉज है। ऑल्सो मेक श्योर आप नए सिंगल या लिमिटेड गेम्स वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, क्योंकि यू नेवर नो ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे या नहीं। बेहतर होगा आप रोबस्ट इकोसिस्टम वाले बिग प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें, थोड़ा धन कमाएं, फिर चाहे तो अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक यू कैन डैबल इन न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। So all the best, keep playing, keep earning and keep watching Crypto TV. Till then, this is Ruchi Sharma signing off. Have a great day.
Hello and welcome to the Coin Monitor. This is Manoj Dara. So today, major cryptocurrencies were trading in green on value buying a day after traders dumped riskier assets such as cryptocurrencies on concerns that the Fed will increase interest rates next month in the largest economy, which is United States of America. So if you talk about the global cryptocurrency market, which was at $1.02 trillion, which is actually a 1% higher. So if you talk about IC50 index of cryptocurrencies was trading up by 1% to trade at 31,100 points. Bitcoin was trading at $21,407, up 0.5%. So the primary cryptocurrencies fell hard last week, which was dumped from a month high, which was trading at around $25,200 to a multi-week low of just under $21,000. This happened in less than 7 days. So if you talk about Ethereum, the second largest crypto, was trading higher by 2% at $1,600. So Ethereum has also lost over $500. At one point, it was trading at roughly around $2,050, and there were a lot of optimism about the merge. So now, though the second largest crypto is trading confidently about the $1,600 after a 5.5% daily increase. So if you talk about Binance BNB, which is on my left, was trading higher by 0.4% to trade at $297, just inches away from tapping $300 mark. So next on the list is Cardano's ADA token, which was trading higher by 1.5% to trade at $0.46. Ripple's XRP token too added 1.5% to trade at $0.34. There is an update on both the coins. Let me share it with you. So according to CoinShare latest weekly fund flow report, few cryptocurrencies ended the week with the positive flows, and Cardano and the Ripple's XRP are two amongst them. So Cardano finished the week with a positive flow of $5 lakh, which is $500,000. At the same time, XRP gained roughly around $300,000. So at the moment, both cryptocurrencies are under a lot of pressure, despite positive news which is surrounding them as the fund inflow which we have just mentioned to you. XRP is trying to fight back against the US Securities and Exchange Commission by proving that it is not a security and uniting tens and thousands of people in class action lawsuits. And on the other hand, Cardano is busy launching the multi-layered Vassal hard fork, where every single largest bug in the system is instantly characterized as catastrophe. So this is something which the problem continues. So next on the list is Polygon Matic, which is trading higher by 2.5% at $0.81. Solana Sol was up by 1.5% and it was trading at $35. Polkadot was up by 5.6%, was trading at $7. Avalanche AVAX was also trading at $22 with a strength of 1.8%. So let me share a development on Avalanche AVAX. So this protocol is, this blockchain network in recent time has been growing on the back of rising game fee activity which has been witnessed. So that's what analysts are saying, where a good portion of the new daily transaction volume is coming from gamers. So, and thanks to the new high profile games such as DeFi Kingdoms that are choosing Avalanche for its fast speed and the low fees. That's what the market is actually betting on. Next on the list is Doge, the popular meme coin, was trading up by 2% at $0.068. Shiba Inu was trading flat. So let's get a technical perspective view from our technical expert Ayushi Verma. Ayushi, welcome on 3.0 TV. Thank you, Manoj, for inviting me here. So let's quickly get started with the Bitcoin. So as we have seen the fall, on Friday, that was a big fall, around 10% fall we have seen. So the price is now trading below than the trend line as well as a very important level of 22,600, and also the price is trading below than the 100 EMA. So and also we are not getting any indication that the price is gaining some momentum and it's going upward. No, we are not getting that kind of any indication as of now. So looking at the current situation, we are getting a very low volume. So it's clearly seen that the buyers and the sellers both are not available in the part in the you can say trading part. And yes, that's the reason the price is not moving on either side. So we are getting only small doses or a spinning top formation as of now. And what we expect, we can be seeing that the price might able to see or might able to be there in a particular range, and that range could be, the resistance could be the 22,600 and the support area could be 20,000. So this is for the Bitcoin. And if you look at the
Ethereum. So Ethereum is showing little good momentum. Why? Because I'll tell you the reason. So in case of the Bitcoin, the price is trading below than every important level, whether it is a moving average, it's a trend line, or a support area. But in case of the Ethereum, if you look at here, this momentum, so we are seeing, we can see that the price is now hovering around at this particular trend line, and as well as this 100 EMA. So that is something good news, because if the price holds up this level, if the price trades higher than 1510, higher than this 100 EMA, higher than this trend line, we will be getting an indication that okay, very soon we might able to see a level of 1725 as well. So now what we can see, till the time the price just holds up this level, we can be sure that the price might able to come to the resistance again. So the resistance is at 1725 and support it's at 1510. So this is for the Ethereum. And if you look at the index, so this is the IC15 index, and you can see that the price is now trading in a very small range. So what is the range? Again, because there is no much momentum from the major cryptocurrencies, so the price is again, it's trading with a support area of 29,383 and with a resistance area of 35,483. So these are the levels for this IC index chart. So what we can expect, if the price starts moving up of the main cryptocurrencies, you will see the price will able to reach to the resistance. Otherwise, if that doesn't happen, we can see that the price might again come back to this particular trend line. So this is something we need to see. We need to have the data, and then we will be able to tell you further things what can happen to the IC15 index.
the world of crypto. Blockchain platforms की हर छोटी बड़ी हलचल की information, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। Hello and a very warm welcome to all the viewers. This is Manoj Zara. So cryptocurrency prices are mimicking stocks and bonds like never before, penalizing investors who acquired Bitcoin and other digital assets to diversify their portfolio. Because central banks increased the supply of fiat money in 2020 and 21, crypto prices surged, and now the Fed is tightening. Crypto and equity markets are correcting lower. Digital asset investments products saw inflows totaling $9.3 billion in 2021, which is up 36% from 2020. While the rise from 2019 to 2022 was far bigger at 806%, total asset management in 2021 end was at $62.5 billion. For several years, advocates of Bitcoin, Ether, and other cryptocurrencies claimed they could serve as alternative investments that help set off losses in an investment portfolio, or at least cushion any declines in stocks and bonds. These arguments, among others, help convince more hedge funds and other professional investors to include Bitcoin and Ether in their portfolio. Well, Morgan Stanley said the increased involvement of institutions which are sensitive to availability of capital and therefore interest rates has contributed in part to higher correction between Bitcoin and equities. Retail traders were dominant around 4 years when Bitcoin traded below $10,000. A trade of thickening volume and Coinbase exchange from retail users in 2021 have fallen from 80% in 2018. But that has fallen over the years as institutional interest has picked up as per Coinbase business model adjusted to accommodate institutional needs. Well, Morgan Stanley also opined that increased trading volume share of crypto institution versus retail has contributed to higher correlation between Bitcoin and equities. Large funds such as Cathie Wood's ARK Investments Management LLC and companies including Elon Musk's Tesla and Michael Saylor's MicroStrategy have purchased Bitcoin, moves that has helped financial markets become more aligned with the crypto markets. Meanwhile, crypto-related companies such as Coinbase Global Inc. have gone public over the past year or so, which has further connected digital trading markets with the stock markets and bonds. Citigroup is of the view and also mentioned in a research note that within the equity sector, crypto assets appear to exhibit an increasing correlation to the cyclical stocks, in particular sector which are more inflation sensitive such as energy, materials and industrials. Citi Research also noted that market volatility and inflation expectations share a similar negative relation to financial market volatility, and even notes that they find a weak statistical association between crypto returns and inflation expectations. Both of these attributes have only become prevalent recently and has been distinctively weaker historically. The 3 months correlation between cryptocurrencies, Bitcoin and Ether and the major US stocks indices hits its highest level on the record between 0.67 and 0.78 last week, according to the Dow Jones market data. The correlation of 1 suggests the markets are moving in lockstep, but 0 say they aren't related. The 1 and the 2 month correlation are at the record levels. Market participants opine that the correlation between Bitcoin and equity indices has remained high and will continue to do so unless Bitcoin becomes widely used as a medium of payment, which looks unlikely to happen soon. The correlation is now on the test as Fed hikes interest rates and unwinds its balance sheet. Whether it will continue, we will know soon as Feds unfold its stance. Keep watching Crypto TV for more such interesting updates. This is Manoj Dara signing off. Thank you. आपल्यासोबत कधी असं होतं का? कधी आपल्या पेरेंट्सचे मेडिकल रिपोर्ट्स मिसप्लेस होतात, तर कधी अगदी महत्त्वाची फाईल सुद्धा हरवते. किती चांगलं होईल की जर का आपल्या फॅमिलीचे संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट्स कोणत्या अशा नेटवर्कवर असतील
की जिथून आपण कोणतेही त्यांना ॲक्सेस करू शकू. सतत एक्सपांड होणाऱ्या या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आता हे शक्य होणार आहे. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some racks to build it with stacks because I know the stats and the hodlers say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal. नमस्कार मित्रांनो, क्रिप्टो टीव्ही मध्ये तुमचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. तुम्ही आतापर्यंत ऐकलेल्या सर्व कॉइन पैकी हे समजणे थोडे कठीण आहे. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. डेव्हलपर्स ब्लॉकचेनला पोल्काडॉट सिस्टीमशी लिंक करू शकतात आणि अगदी नवीन ब्लॉकचेन तयार करू शकतात. जेव्हा गुंतवणूकदार डेव्हलपर्सना नवीन तंत्रज्ञानाकडे वळताना पाहतात तेव्हा ते त्याचे लक्ष वेधून घेते. जेव्हा बिटकॉइन आणि इथेरियमचा विचार केला जातो तेव्हा गुंतवणूकदारांना त्याच्या मूल्यावर आधारित कॉइन्सचे अपूर्णांक खरेदी करावे लागतात. पोल्काडॉट जे सध्या $21.24 वर व्यापार करते ते अधिक परवडणारे आहेत, ज्यामुळे ते अधिक आकर्षक खरेदी बनते. पोल्काडॉट वेगळे आहे कारण ते पॅराचेन्स ऑफर करते, जे कनेक्टेड ब्लॉकचेनची मालिका आहे. या ब्लॉकचेन एकमेकांच्या बरोबरीने व्यवहाराला गती देतात. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अनेक लेन्स असल्यामुळे नेटवर्क ओव्हरलोड होण्याची शक्यता कमी होते. पोल्काडॉट म्हणजे काय? पोल्काडॉटची स्थापना 2016 मध्ये इथेरियमचे फॉर्मर को-फाउंडर आणि CTO गॅव्हिन वुड्स यांनी केली होती. पोल्काडॉटचे तंत्रज्ञान अलीकडच्या वर्षात ब्लॉकचेनच्या मेजर अडॉप्शन इश्यूजला रिसॉल्व्ह करते. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट प्रोटोकॉल असंबंधित ब्लॉकचेन्सना एकमेकांशी सुरक्षितपणे बोलण्याची परवानगी देण्यासाठी डिझाइन केले आहेत, जेणेकरून मूल्य किंवा डेटा इथेरियम आणि बिटकॉइन ब्लॉकचेन दरम्यान कोणत्याही इंटरमिडियरीज प्रवाहित होऊ शकेल. हे अनेक समांतर ब्लॉकचेन वापरून स्पीडी आणि स्केलेबल होण्यासाठी देखील डिझाइन केले आहेत, जे मुख्य ब्लॉकचेनच्या प्रक्रियेची मागणी पूर्ण करते. पोल्काडॉट टोकन पोल्काडॉट नेटवर्कमध्ये दोन मुख्य कार्य करते. पहिले, हे एक गव्हर्नन्स टोकन आहे जे होल्डर्सना प्रोटोकॉलच्या भविष्याबद्दल बोलण्याची परवानगी देते.
आणि दुसरे ते स्टेकिंगसाठी वापरले जाते. ज्या पद्धतीने पोल्काडॉट नेटवर्क व्यवहारांची व्हेरिफिकेशन करते आणि नवीन डॉट्स जारी करते. तुमच्या गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून एक्सचेंजवर डॉट खरेदी आणि विक्री केली जाऊ शकते. पोल्काडॉट नेटवर्कमध्ये रिले चेन नावाची मुख्य ब्लॉकचेन आणि अनेक युजर्सने तयार केलेल्या पॅरलल चेन्स किंवा पॅराचेन्स समाविष्ट आहेत. यात एक कनेक्टिंग लेअर किंवा ब्रिज देखील आहे जो बहुतेक ब्लॉकचेन दरम्यान मूल्य आणि डेटा हस्तांतरित करण्यास अनुमती देतो आणि अगदी नॉन ब्लॉकचेन डेटाबेसशी कनेक्ट करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. डॉट होल्डर स्टेकिंग सिस्टम स्पष्टीकरण. पोल्काडॉट नेटवर्क सुरक्षित करण्यासाठी, व्यवहारांची सिक्युअर व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी, नवीन डॉट तयार करण्यासाठी आणि डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेन्सस मेकॅनिझम वापरते. डॉट होल्डर स्टेकिंग सिस्टम शी संवाद साधू शकतात असे अनेक मार्ग आहेत, जसे त्यांना किती वेळ, टेक्निकल नॉलेज आणि पैसा अर्पण करायचे आहे. व्हॅलिडेटर सर्वाधिक काम करतात. ही एक प्रमुख कमिटमेंट आहे आणि त्यासाठी टेक्निकल नो हाऊ आवश्यक आहे. व्हॅलिडेटर होण्यासाठी तुम्हाला एक नोड चालवावा लागतो ज्यामध्ये कमीत कमी वेळ असेल आणि तुमच्या स्वतःचा डॉटची भरीव रक्कम असेल. त्या बदल्यात तुम्हाला कायदेशीर व्यवहार करण्याचा अधिकार मिळतो. रिले चेन मध्ये व्यवहारांचे नवीन ब्लॉक्स जोडण्याचा आणि ट्रान्झॅक्शन फीज तसेच टिप्स ह्यात सवलत मिळण्याचा अधिकारही मिळतो. नॉमिनेटर नियमित गुंतवणूकदारांना इनडायरेक्टली स्टेकमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देतात. तुम्ही तुमच्या काही डॉट्स नियमानुसार वागण्याचा तुमचा विश्वासीय असलेला व्हॅलिडेटरला सोपवू शकता. त्या बदल्यात तुम्हाला तुमच्या निवडलेल्या व्हॅलिडेटरद्वारे कमवलेल्या डॉट्सचा आयोग मिळेल. तुम्ही कोणत्या व्हॅलिडेटरला निवडता याविषयी सावधगिरी बाळगा, कारण जर तुमचा व्हॅलिडेटर नियम तोडत असेल तर तुमचा काही हिस्सा जप्त होऊ शकेल. अशा दोन विशेष भूमिका देखील आहेत ज्यांना सामान्यतः पूर्ण व्हॅलिडेटर बनण्यापेक्षा कमी कमिटमेंटची आवश्यकता असते, परंतु नॉमिनेटर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कमिटमेंटपेक्षा टेक्निकल स्किल आवश्यक असते. पहिले, कलेक्टर्स हे व्हॅलिड पॅराचेन्स ट्रान्झॅक्शनचे ट्रॅक ठेवतात आणि ते रिले चेन व्हॅलिडेटर्सकडे सबमिट करतात. सेकंड, फिशरमॅन नेटवर्क. फिशरमॅन नेटवर्कवर बॅड बिहेवियर शोधण्यात आणि रिपोर्ट करण्यात मदत करतात. वरीलपैकी कोणत्याही भूमिकेद्वारे थेट नेटवर्कमध्ये भाग घेऊन तुम्ही डॉट रिवॉर्ड्स प्राप्त करण्यास सक्षम होऊ शकता. डॉट होल्डर्सना नेटवर्कच्या प्रशासनामध्ये देखील एक मत आहे आणि ते प्रपोज सॉफ्टवेअर अपग्रेड्स वर मतदान करण्यास सक्षम आहेत. डॉटची खरेदी कशी करावी? तुम्ही विविध क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि वॉलेट वापरून डॉट खरेदी, विक्री आणि प्राप्त करू शकता. क्रिप्टो करन्सीवर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. Blockchains have a bridge problem and hackers know it. Blockchain bridges are a crucial piece of the cryptocurrency ecosystem, which makes them prime target for attacks. Unfortunately, bridges handle a lot of complex requests and holding a lot of currency, and unlike the blockchains themselves, there's no standard for how they are supposed to keep everything secure.
12 साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। इनफैक्ट इस करंट एज ग्रुप में भी हम में से बहुत से हैं जो क्रिप्टो या एनएफटीज की एबीसी तक नहीं जानते। ऐसे में हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कुछ ऐसे होशियार बच्चे जो टीनेज हिट करने से पहले ही मिलियनेयर बन गए हैं। जी हाँ, जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। हैरानी की बात तो यह है कि बेन्यामिन ने ये कमाई एनएफटीज के जरिए क्रिप्टो में की है। क्रिप्टो पंक्स की तर्ज पर बने ये वियर्ड वेल कैरेक्टर्स तो आपने देखे ही होंगे। दरअसल इन फेमस वियर्ड वेल्स एनएफटी के पीछे का असल चेहरा है बेन्यामिन। जी हाँ, 8th क्लास में पढ़ने वाले बेन्यामिन ने ही क्रिएट की है ये पिक्सेलेटेड वेल्स जो रातों रात सुपर डुपर हिट हो गई, और वो भी इस कदर कि बेन्यामिन का क्रिप्टो वॉलेट करीब $1 मिलियन के साथ लबालब हो गया, और वो भी 1 साल से कम वक्त में। Isn't that just crazy? है ना? अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भला वीडियो गेम खेलने की उम्र में ऐसी क्रिएटिव एनिमेटेड इमेजेस क्रिएट करने का आइडिया और उनकी एनएफटीज बनाने की नॉलेज इसे कहां से मिली? तो हुआ कुछ ऐसा कि बेन्यामिन के फादर के एक फ्रेंड जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रामर है, उन्होंने $27,000 में एक रेयर पेपे इमेज खरीदी। बेशक उस वक्त हर कोई उन्हें हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि भला एक जेपेग पर कोई इतनी भारी रकम क्यों बर्बाद करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने उसी इमेज को $500,000 पर बेचकर तमाम हंसने वालों को करारा जवाब दिया। खैर, ये किस्सा बेन्यामिन के दिलो दिमाग में घर कर गया कि एक जेपेग इतनी कीमती साबित हो सकती है। जाहिर है एनएफटी अवतार्स की तरफ बेन्यामिन का ध्यान खिंचा, जहां क्रिप्टो पंक्स ऑलरेडी करोड़ों में कमाई कर रहे थे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बेन्यामिन 5 साल की उम्र से कोडिंग सीख रहा है, लेकिन एनएफटी की इस दुनिया को करीब से जानने और समझने के लिए बेन्यामिन ने दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करना सीखा। फिर काफी सोच विचार के बाद बेन्यामिन ने वियर्ड वेल कैरेक्टर डिजाइन किया। वैसे वेल का कैरेक्टर चूज करने के पीछे भी एक वजह है। जिन रईसों के पास 1000 बिटकॉइन से ज्यादा होते हैं उन्हें वेल कहा जाता है। इसीलिए बेन्यामिन ने इस कार्टूनिश और पिक्सेलेटेड वेल कैरेक्टर के जरिए खुद क्रिप्टो वेल बनने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बेन्यामिन ने जून 2021 में पहली वियर्ड वेल रिलीज की और एक ट्वीट के थ्रेड के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की। मजे की बात तो यह है कि उनकी पोस्ट वायरल हो गई और वो एनएफटी यूनिवर्स में सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी बन गए। बेन्यामिन की कामयाबी का आलम अब ये है कि वो ऐसे डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो मार्वल और डिज्नी के लिए काम करते हैं। बेन्यामिन की इस कलेक्शन में 3350 वेल्स हैं, जिनमें से कुछ ने बेसबॉल कैप या स्वेट बैंड्स पहने हैं, कुछ सिगार के मजे ले रही हैं, तो कुछ हैट फ्लॉन्ट कर रही हैं। बेन्यामिन के पास इस कलेक्शन का डिजिटल कॉपीराइट भी है और इनमें से कुछ तो $20,000 तक में बिकी हैं। बेन्यामिन ने अब तक जितनी वेल कलेक्शन पर काम किया है उनकी टोटल ट्रेडेड कलेक्शन है $5 मिलियन, जिसमें से करीब $1 मिलियन बेन्यामिन के वॉलेट में है। अब तक बेन्यामिन ने अपने वॉलेट में मौजूद क्रिप्टो को फियाट करेंसी में कन्वर्ट नहीं किया है और ना ही इसे कन्वर्ट करने का उनका कोई इरादा है। इनफैक्ट बेन्यामिन के पास तो कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। खैर, बेन्यामिन का मानना है कि क्रिप्टो की वैल्यू आसमान छुएगी, इसीलिए वो फिलहाल अपनी इस क्रिप्टो दौलत को छूना भी नहीं चाहते और वक्त के साथ इसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल कैरेक्टर डिजाइन करने से लेकर इनकी एनएफटीज बेचने तक बेन्यामिन ने सब कुछ बहुत चुपचाप और सीक्रेटली किया। इनफैक्ट उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को तो तब पता चला जब बेन्यामिन की सक्सेस स्टोरी ने सुर्खियां बटोरी। बेन्यामिन को इस बात की खुशी है कि उनकी फैमिली उन पर गर्व महसूस करती है और खास तौर पर उनके बीमार ग्रैंडफादर को बेन्यामिन की मीडिया कवरेज देखकर बहुत खुशी हुई। 12 साल की छोटी सी उम्र में बेन्यामिन ने जिंदगी का फलसफा सीख लिया है, जो ये मानते हैं कि असल खुशी दौलत से नहीं बल्कि फैमिली के साथ बिताए ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स से मिलती है। थी ना दिलचस्प कहानी?
वेल, ऐसी ही कई और यंग NFT मिलियनेयर की कहानियां मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great day. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Today we are going to discuss metaverse in details, and today we are extremely happy to have with us Mr. Vikram Mahar. Metaverse is a 3D virtual reality of this world, which is a combination of the several technologies, as like Bitcoin, artificial intelligence, cryptocurrency, AR, VR, and gaming also. We can see the lot of development of the metaverse in upcoming time. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello and welcome to Crypto Masters. This is Manoj Dara. So, cryptocurrency market is under broader stress as investors shun riskier assets such as stocks and cryptocurrencies amid an uncertain economic environment. So, market participants have now shifted focus on the company performance in United States of America, which will be monitored by the Q2 earnings. That will underline the economic impact of the Federal Reserve's tightening and indicate whether investors should be cautious with their spending on riskier assets like cryptos. Investors also hope that oil prices slid from 3 months peak hit earlier in June could ease pricing pressure and allow the US Federal Reserve to tighten policy less aggressively than initially feared, reducing the risk of an economic recession. So, however, crypto investors are still worried over the consequence of a crypto winter, a common term used for a bear market in the digital assets after Celsius prepares for a bankruptcy and as crypto hedge fund 3 Arrow Capital faces risk of default. To explain the entire sequence, we have invited a special guest. Let me introduce you to Mr. Raj Kapoor, founder of India Blockchain Alliance. Sir, welcome on Crypto TV. Yes, Manoj, thank you for having me here. First of all, it's a wonderful place to come again. Happy to be here once again. Thank you so much, sir. Sir, as we are talking about the global cryptocurrency market is under a broader stress. As we are speaking, market is falling and there are talks of crypto winter. So can you explain this for our viewers? What is this? What does this crypto winter phase means and when does this crypto winter starts and how can you explain or simplify this process for our viewers, sir? Okay. In very, very simple terms, a crypto winter is the beginning of a major downdraft or a bear market in the crypto space. That's the basic, simplest line. However, it is not just one or two or three factors that contribute to a crypto winter. There are plenty of them. Now, we've been seeing in the last few days, weeks and months, Bitcoin, Ether are all on a downward spiral. Right. But it's not just these. Other leading coins and tokens, Cardano, Polygon, all are 60 to 80% down, flat. That is a real big thing. That's one. Why it has happened, I'll explain that to you as well. But besides that, apart from a falling market, the controversy around Luna, the controversy around many, many other companies, many scams have taken place recently.
a lot of security issues, especially from the SEC, USA, inflation, all these have contributed. Even companies like, say, Coinbase and Gemini, they have announced hiring freezes and earlier layoffs. Now, June has seen lots of layoffs in this. All these are contributing. Even the prices of Coinbase have fallen 86%, for instance, in the last 52-week high. And they announced big plans for not only globally, but for India as well. All that has taken a backseat. If you look at it in a very systematic manner, these layoffs, SEC regulations, no clarity, lack of regulations, all put together have brought about a bear phase, which we call crypto winter. Basically, we've just entered it, and this is what is known as a contraction phase. And a period of status means nothing is going to move anyway. It's all going sideways. This is what the industry calls crypto winter. Sir, as we are talking about crypto winter and the road ahead, since you have already mentioned about series of factors that are impacting the global cryptocurrency market, when this year started, we were very optimistic about the growth of cryptocurrency industry. And then there were certain incidents, as you have highlighted, that happened. And hence we are seeing at a level wherein there is a broader concern. So is this the end of the crypto craze, sir? Or is there an advantage of this crypto winter as well? Well, let's be very honest. Every investment has a summer and a winter and an autumn and a spring. However, I would say this is not the first time the crypto winter has ever settled over the market. If you remember, around 2018, Jan to 2020, December, this term actually, crypto winter, first came into being because there was a meltdown in the markets during that time, where Bitcoin had actually lost more than half its market cap. And this didn't happen now. This happened in 2018 to 2020. Even Litecoin, Ethereum, everything went crashing down. Now, I know from experience that crypto winters quite a lot of bear market, and the results aren't different from bear markets. Long-term crypto winters, basically, they take out young startups and actually present companies and to actually consolidate the product rather than rely only on tokens and coins for wealth generation. And now we see one of the key things we see are good companies which are going to be there in the market. The riffraff will all get away. So basically, as I say, we'll sift the wheat from the chaff. We'll have the good, solid companies moving ahead while the others fall by the wayside. In a way, it's a good. This shakeout is needed. We saw a lot of new startups, all of them, and all of them rushing to the markets during the crypto boom, should we say. But all will not survive. And that's a good litmus test now for Perfect. Those who survive and those who go through. In fact, it's a great advantage to be in this space today. So while a lot of people say, oh, this is the end of cryptocurrency, well, it's not. It's a great time to take advantage of it. Now, we can rethink our market strategies. We can rethink our tokenomics. We can rethink the way we approach markets with more value. So we'll see value-based companies, value-based tokens taking the front seat now, and the speculative, not so great coins take a back seat or be weeded out of the system. So I think this is a great thing which has happened in a way it was supposed to happen, quite like the internet bubble which burst many years back. This is a shake-up. This is also a wake-up call for a lot of people to understand the technology better, to understand crypto better, and not just be a blind follower. So I would say this is a great space to understand, learn, educate, become aware, and then invest in real good tokens rather than just speculative or hearsay tokens. So since you mentioned about a broader strategy, what should be the investor strategy as of now? So can you just suggest your views as far as what should be the investors' frame of mind in a falling market, and what should be their moves, calibrated moves? If you can just start with the biggest cryptocurrency, as we are talking about, Bitcoin, is refusing to go about 22,000, which is their 200-day moving average. Right. There is a big resistance as far as whenever it touches that level, there is a big selling. So Bitcoin, as we are talking about, sir, last week we have read this news that in May and June alone, Bitcoin miners, they have sold roughly around 9,500 Bitcoins. Bitfarm is one of the biggest miner. He has sold 3,000 odd Bitcoins. So this is actually a broader concern, and as we speak, there are institutional investors also who have sold their Bitcoins. So
what is the way forward? What is the right strategy to get in? Dominance is coming down from 47, 48% to 41% as we are talking about. What is your advice for the viewers, sir? Okay. Now, as you very correctly said, miners have sold 9,500. Institutional, the institutions are selling. But let's look at the other side. If they are selling, somebody is buying, right? They are buying because of a certain reason, and somebody is selling because of a certain reason. The reason for somebody is buying in a falling market are those people who have deep pockets, who have a long-term strategy, Right, or sir. not look at speculation as an option. That's the first thing. Most important thing, somebody is buying, right? Well, I don't expect crypto to come roaring back like it did in 2021 because the tailwind of the Federal Reserve policy has become a big for the asset class, saying that they're not very sure how they're going to classify it. But if they do classify it as one of the things which is happening now, it's going to be a major move, not only for Bitcoin, but for other cryptocurrencies going forward. Some investors, and I see most investors, are looking at this pullback as an opportunity to accumulate. And that I think is great. So one of the things is we are not going to be seeing too many of speculative investments. We're not going to be seeing too many of people buying, selling, front running, etc. That's not going to happen. Right, sir. Investors will come in and they will double down on the market for the long term. That's going to be one of the things. With Bitcoin less than a third of what it was last year, I see investors viewing it as an opportunity to buy at a discount. We know that there's a limit on and a cap on how many Bitcoins are going to be created. Right, sir. Yes, 40 is that, but long term, people are now accumulating. And I would suggest the same for investors. Don't panic. Hold on. Keep aside enough money which you feel that you can invest for the long term. If you're thinking short term, that's not the right time right now. Fantastic. As we're talking about keep something for the road ahead as well. But there is a big move that has happened, sir. The US Securities and Exchange Commission Chairman, Gary Gensler, has reiterated that cryptocurrencies had the key attributes of a security and some of them fell within the purview of a regulatory body. Since he is hinting towards something, Bitcoin, or for that matter, the biggest cryptocurrency. He was talking in an interaction with CNBC TV 18 and he hinted towards its characteristic as a commodity. So what is your view on that? Is it a big victory for the entire cryptocurrency space, sir? I would take it as a win, that's for sure. When we say every cloud has a silver lining, I would say this is the silver lining. When Gary, in a CNBC interview, mentioned that, he clarified that Bitcoin was a product. And keeping in mind that besides Bitcoin, you're not talking about other crypto, but basically Bitcoin being the market leader sets the tempo for things to come in the future. Even Ether is a commodity. So basically what he said, in a sense, in a very simple words, he acknowledged it as a product. He acknowledged it as an asset class. It has been given some sort of a tangibility. And that I think is really critical. And investors should read between the lines. Regulators should read between the lines that there is regulation coming. There is going to be some frameworks. Fantastic. This ambiguity or opacity, what we call in the markets, is going to be a thing of the past. Fantastic. It's just a question of time, and America is a market leader in this space. While that happens, and I'll tell you some more things as well, even in India, SEBI is working on similar frameworks. I think that is a move also parallelly, which is going to be a big impact in the future. So guys, in the crypto winter, don't panic. Enjoy the winter. Just think you're in Switzerland, guys, and then you can come back to India whenever you want. It's just a question of time. Don't panic. That's a word coming in from Mr. Raj Kapoor, sir. Moving on, there is one more statement which I want your comments on as well. So, SEC Chairman Mr. Gensler, in its declaration concurs with the Chairman of the Commodity Futures Trading Commission, there is CFTC, Rostin Benjamin, who was also stated last month that Bitcoin is a commodity. Sir, there is something which is going on between the commodity segment and the SEC, and however, Benjamin has also stated that Ether or ETH is likewise a commodity. So there is a big hint which they are giving, and they are heading towards a regulation. What's your opinion, sir? I think we're definitely heading towards regulation because I'll tell you what, Manoj, one of the things when we see a crypto winter or a major sudden swing upwards, either way, let's take both sides of the coin. When that happens, that means there is no regulation in place, especially if the upside or the downside has been very sudden and the trajectory moves up or down really fast.
moving up and down means there is no checks and balances in place really. And I think regulation needs to be in place. That is the first major bucket we must be looking at. While we look at what the SEC is doing, what the Bureau of Economics and Analysis, BIA is doing, whether it's SEBI, whether all regulatory bodies, whatever they're doing, they're trying to put together a method in the madness. They're putting all the moving parts into a single place. That is very critical and a very strong acknowledgement of what we're going to see in the future. Even India's crypto policy basically hinges a lot on that, going on and getting feedback from what's happening globally. And I think this is the right move. And I think we'll see the light of the day very, very soon in this. Yeah, as we will, there are a lot of optimistic, words which you have used in your statements, sir. But since we are talking about Ethereum and its road ahead, the merge is actually creating a big inquisitiveness in the minds of investors. So will it happen? And what is your strategy as far as Ethereum is concerned? And a second question, a follow-up on that is, what should investors do in such market as far as should they be focusing on staking or yield farming? What is your opinion, sir, if you can just club these two things? Sure. Well, Ethereum, Bitcoin, all these are large, big players have been there. They have a lot of critical projects happening on them. So one thing for sure, they're not going anywhere. Yes, there will be price volatility. There will have to be a price volatility. There always is. But my opinion, hold on. Yes, Ethereum is now forking and creating better suggestions and solutions to its platform, better inflections in them. That I think will be good for them. And to follow up on your question, what do we do with Bitcoin, Ethereum? We're holding them, prices are down. Well, staking and yield farming are currently the best options. Why? Quite like a bank fixed deposit, they will give you fixed returns. And I think that is an option to exercise while the market stabilizes, while the winter turns into summer and then it goes beyond that. We got to have all our assets, let's leverage them better. And staking offers that, yield farming offers that. So why not get into that space? It's a great space to be. Your securities are safe with you while you hold them, you earn the interest on them. Don't let them lie idle. Go ahead and do that. There are plenty of opportunities. Go ahead. I would suggest please do that. So don't really invest very high right now. Right, sir. So since you mentioned about a fixed return, there is one more crypto lender who has actually promised to give 18.6% per annum. That was Celsius. Yes, Celsius. Yeah, and we are talking about a broader bankruptcy talks. And there is Goldman Sachs who is coming, I don't know, it is coming for its rescue or for its own interest. Roughly around $2 billion is the size of asset which Goldman Sachs intends to buy of Celsius. So how can you explain this entire episode and the impact which Celsius has created on the entire market? Well, Celsius raised money, they raised expectations, but most important, by offering very high yield returns, they actually fueled the greed in every human being that we have. Every human being is greedy and wants more and felt, wow, it's a great opportunity to earn lots of money. Frankly speaking, it's too good to be true. And that's exactly what has happened. When Bitcoin and Ether fell, everything fell. They locked the accounts. Celsius went for a toss. Blah, blah, everything. We all know Celsius was one of the catalysts for the fear cycle of this, fear psychosis in the winters, what we call the crypto winters. Now, Goldman Sachs is actually looking, overall, conceptually, Celsius, what they had was a great concept. The concept you cannot fault. Right, sir. Because it has fallen, Goldman Sachs is now looking at it as an opportunity, raising $2 billion, and mind you, is raising the $2 billion from its investors. Not on his own, that's the key thing, is from his investors who they feel, if they have the faith, which they will have, are going to make it big in this. Basically, the proposed deal is to buy Celsius assets at huge discounts right now in the event that Celsius files for a bankruptcy. So they are looking at the long term, they're looking at gauging interest. Basically, this is one of their strategies, and look at it from a different perspective. It's from their strategy. And they're soliciting commitments from Web3 crypto funds specializing in distressed assets and financial institutions, which have ample cash in hand. They're also basically gauging what are market sentiments for the future. They're not putting in money themselves, they're raising money. That's the big difference. Assets, cryptocurrencies right now, according to them, are being sold cheap, and they would like to get this leverage and manage their part in the fundraising at a lower cost now. So they've also, they already have, they're already talking to restructuring firms. Celsius is doing that.
Well, Goldman Sachs, although has not really pushed the button completely, but they're all there. They're going to do it. So it's a question of time before they do it. And Celsius, while it has a great model, right now it is in great trouble as well. So great models always don't translate into great results. You've got to be a little careful, understand exactly why and how it happened, and just be a little careful. Don't let greed guide you. Let your common sense guide you. And we all have that. Right, sir. So you gave a fantastic piece of advice that what is happening in the Celsius ecosystem. But since we are talking about Celsius, it has always, since the time it has gone under concern from the two tokens, as you mentioned, Terra Luna, the entire ecosystem collapsed, and then Celsius also, was on a downward spiral. So Celsius network threatens to become the industry's Lehman Brothers. Do you agree? First of all. Yes, and I agree. I agree. Anything which is too good to be true generally is too good. All right. And they're not using their funds to do anything. They're using investor funds to make money for themselves, just like a bank does more or less. But in this case, the greed factor playing a bigger role because more people getting inside the system. And of course, crypto basically, in my opinion, has been always based on fast money, greed, etc. That's not a great strategy. Not for crypto, not for anything else. Right. I think all of us need to recalibrate ourselves and say, well, listen, it's a great asset class for the future. Right. It's money 4.0, but it is not a get-rich-quick scheme. That is what we should avoid. The pitfalls is what we should apply. Take away from the system. We should avoid them. So since we're talking about Celsius, Celsius was first to announce the freeze as far as the 1.7 million investors are concerned. Singapore-based hedge fund 3 Arrow has also defaulted on its payments. Yes. So this is actually creating a bigger mess for the entire Babel Finance, as we are talking about. And there is one more exchange, and there is one more, and one more. So what is the current situation? And one more interesting thing which I want to discuss with you, sir, is Bitfarm has actually sold his 3,000 Bitcoins. So actually this is not a statement which we can digest because there is no one to take their Bitcoin and lend. That is something which is happening in this industry. The liquidity situation has gone for a toss. What is your opinion on the current situation, sir? See, liquidity is taken a real beating, that's for sure. But again, if you circle back to my first comment, which I said, if somebody is selling, somebody is buying. Somebody has got the liquidity with them. There are people who are suffering. And of course, those people who have are going to be the ones who are going to take advantage of this. Now, multiple firms, all of them suffering, whether it is Coinbase, whether it is Gemini, even those, they have frozen hiring, etc. Even in India, you look very closer to home. Look at the exchanges like the CoinDCX, WazirX, they have also frozen. A lot of their, recently we had statements saying that we're not hiring anymore and they're all realigning their business, etc. Liquidity is a problem globally now in this space. It grew too fast. In my opinion, it grew really way beyond it should have grown. It's blockchain, which is the big phenomena. It's not necessarily crypto, but the fact is that everybody understood crypto before they understood blockchain. And that brings us to the question, why don't you guys understand blockchain? If you do that, you will understand the vagaries of crypto and then make decisions accordingly. All these companies which you mentioned right now, right from the Coinbase to Gemini to all the others to Celsius, etc., all of them, if you look at it, did not have the blockchain background. They had a crypto understanding and they took advantage of the vagaries of an unregulated space and were first movers in that. And therefore, their success went up, but also their failure. So as they say, what goes up must come down. And that's exactly what we are seeing right now. One last question before we step into our rapid fire question and answer session, sir. So what is your opinion as far as the investor are concerned? So some are sitting on cash, some are sitting on huge losses. So what is your advice to them, sir? Yes. Those sitting on cash, hold and pick up small lots in regular, good, steady, stable coins. Okay, if you can just mention few, sir. Well, I would say Bitcoin is still a good buy, even though it's low. Yes, it's pretty low right now. It's a good time to keep accumulating. Even if it goes down to 18, 16, you can still keep buying it because there is an intrinsic value which people perceive. It doesn't have personally any asset backed anything. So pick up that. Pick up coins which have got some good value in the future. Look at Solana as one of them, Ripple as some of them. These are good to look into the future. If you're looking at quick money, don't look at any of these. Don't look at anything. Put your money on a horse and hope for the best.
But if you're looking at long-term investments, these are the coins which are going to have some value. So I would say still look at Bitcoin, have a look at Ethereum, have a look at Solana, have a look at Avalanche, have a look at Algorand. They are moving pretty fast in the right direction. Plus, they've got projects on them to back them. So they are not speculative coins. They are more tokens and coins which have certain intrinsic value. Look at those. Of course, this is based on their moving averages, their technicals, etc. Crypto winters can be very long, so don't expect overnight success in this. That's for sure. But look at these 4, 5 stable, steady coins. Well, I will not say stable coins, but steady coins. And these are the coins which are going to have intrinsic value going forward. There are many more, but these are the ones which we all know in India. So go ahead and look at these, keep tracking them, and keep putting small amounts aside month on month, week on week, depending on the movements, and keep putting in money in that. That's where you're going to make some money in the future. Fantastic. That's a fantastic piece of advice coming in from Mr. Raj Kapoor. Sir, we enter our last segment, the rapid fire question, where I will ask you some quick questions and you have to answer it in very short and very precise manner and very quickly, sir. So first question is, will Bitcoin bounce back to its level above 30,000, sir, and by when? Okay, my answer is yes, it'll bounce back. By when is a very difficult guesstimate, but I would say within a year and a half, you'll find it beyond that point. That's for sure. Why? Short term, no returns. All right. So my second question to you is, after the merge is complete, so layer 2 solutions, will they still survive? There is always a place for layer 2 solutions. So survival is not the question. How they evolve and innovate for the future, that is going to be the question. Survival is not going to be the question. They will survive. So when can we see the entire global cryptocurrency market touching $3 trillion again, sir? Well, in my opinion, it'll still take a year and a half. We are going through a very terrible winter, lots of things. By the time, there'll be a lot of clarity. As regulations come in place, we will see the movement going upward. It'll be in sync with regulations. Fantastic. The market will be in sync with regulation, and the regulation is the way forward. That's the word coming in from Mr. Raj Kapoor. Thank you so much, sir, for being a part of this special interaction on Crypto TV, and thank you so much for educating our viewers. It was a pleasure having you on Crypto TV, sir. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure being here, Manoj. Thank you so much. Bye-bye. That's all there is in today's Crypto Masters. So cryptocurrency markets are highly volatile. The views of the guest are purely his and doesn't represent of that of Crypto TV. So consult your financial advisor always before making any investment bet. Until then, keep watching Crypto TV. Thank you. Ethereum ecosystem has come out with its business readiness report at a time when the system is preparing for the merge. Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore. I'm really happy when this report was recently published. So now people can refer to this report and make their business cases. Now this is giving a solid reference point coming from the EEA, and it is open to the public. And our second guest is Tom Lyons. We have two main objectives with this business readiness report. We wanted to educate the business community outside the crypto bubble, and we also wanted to do some original research in that direction. Hello and welcome to the Coin Monitor. This is Manoj Dara. So today, major cryptocurrencies were trading in green on value buying a day after traders dumped riskier assets such as cryptocurrencies on concerns that the Fed will increase interest rates next month in the largest economy, which is United States of America. So if you talk about the global cryptocurrency market, which was at $1.02 trillion, which is actually a 1% higher. So if we talk about IC15 index of cryptocurrencies, was trading up by 1% to trade at 31,100 points. Bitcoin was trading at $21,407, up 0.5%. So the primary cryptocurrencies fell hard last week, which was dumped from a month high
which was trading at around $25,200 to a multi-week low of just under $21,000. This happened in less than 7 days. So if you talk about Ethereum, the second largest crypto, was trading higher by 2% at $1,600. So Ethereum has also lost over $500 at one point it was trading at roughly around $2,050, and there were a lot of optimism about the merge. So now, though the second largest crypto is trading confidently above the $1,600 after a 5.5% daily increase. So if we talk about Binance BNB, which is on my left, was trading higher by 0.4% to trade at $297, just inches away from tapping $300 mark. So next on the list is Cardano's ADA token, which was trading higher by 1.5% to trade at $0.46. Ripple's XRP token too added 1.5% to trade at $0.34. There is an update on both the coins. Let me share it with you. So according to CoinShare latest weekly fund flow report, few cryptocurrencies ended the week with the positive flows, and Cardano and the Ripple's XRP are two amongst them. So Cardano finished the week with a positive flow of $5 lakh, which is $500,000. At the same time, XRP gained roughly around $300,000. So at the moment, both cryptocurrencies are under a lot of pressure, despite positive news which is surrounding them as the fund inflow which we have just mentioned to you. XRP is trying to fight back against the US Securities and Exchange Commission by proving that it is not a security and uniting tens and thousands of people in class action lawsuits. And on the other hand, Cardano is busy launching the multi-layered Vassal hard fork, where every single largest bug in the system is instantly characterized as catastrophe. So this is something which the problem continues. So next on the list is Polygon Matic, which is trading higher by 2.5% at $0.81. Solana Sol was up by 1.5% and was trading at $35. Polkadot was up by 5.6%, was trading at $7. Avalanche AVAX was also trading at $22 with a strength of 1.8%. So let me share a development on Avalanche AVAX. So this protocol is, this blockchain network in recent time has been growing on the back of rising game fee activity which has been witnessed. So that's what analysts are saying, where a good portion of the new daily transaction volume is coming from gamers. So, and thanks to the new high profile games such as DeFi Kingdoms that are choosing Avalanche for its fast speed and the low fees. That's what the market is actually betting on. Next on the list is Doge, the popular meme coin, was trading up by 2% at $0.068. Shiba Inu was trading flat. So let's get a technical perspective view from our technical expert Ayushi Verma. Ayushi, welcome on 3.0 TV. Thank you, Manoj, for inviting me here. So let's quickly get started with the Bitcoin. So as we have seen the fall, on Friday, that was a big fall, around 10% fall we have seen. So the price is now trading below than the trend line as well as a very important level of 22,600, and also the price is trading below than the 100 EMA. So and also we are not getting any indication that the price is gaining some momentum and it's going upward. No, we are not getting that kind of any indication as of now. So looking at the current situation, we are getting a very low volume. So it's clearly seen that the buyers and the sellers both are not available in the you can say trading part. And yes, that's the reason the price is not moving on either side. So we are getting only small doses or a spinning top formation as of now. And what we expect, we can be seeing that the price might able to see or might able to be there in a particular range, and that range could be, the resistance could be the 22,600 and the support area could be 20,000. So this is for the Bitcoin. And if you look at the Ethereum, so Ethereum is showing little good momentum. Why? Because I'll tell you the reason. So in case of the Bitcoin, the price is trading below than every important level, whether it is a moving average, it's a trend line or a support area. But in case of the Ethereum, if you look at here, this momentum, so we are seeing, we can see that the price is now hovering around at this particular trend line and as well as this 100 EMA. So that is something good news, because
If the price holds up this level, if the price trades higher than 1510, higher than this 100 EMA, higher than this trend line, we will be getting an indication that okay, very soon we might able to see a level of 1725 as well. So now what we can see, till the time the price just holds up this level, we can be sure that the price might able to come to the resistance again. So the resistance is at 1725 and support it's at 1510. So this is for the Ethereum. And if you look at the index, so this is the IC15 index, and you can see that the price is now trading in a very small range. So what is the range? Again, because there is no much momentum from the major cryptocurrencies, so the price is again, it's trading with a support area of 29,383 and with a resistance area of 35,483. So these are the levels for this IC index chart. So what we can expect, if the price starts moving up of the main cryptocurrencies, you will see the price will able to reach to the resistance. Otherwise, if that doesn't happen, we can see that the price might again come back to this particular trend line. So this is something we need to see. We need to have the data, and then we will be able to tell you further things what can happen to the IC15 index. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies.
These axes are NFTs and the crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable. And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Time is changing, we will too. ट्रेड वही होगा, ट्रेंड हम बदलेंगे और साथ ही बदलेगा फ्लेवर भी। सिर्फ क्रिप्टो की बातें होगी with lots of fun. So be ready for the new experience with us. Cryptocurrency is a new notion, and it's difficult to grasp in a society where actual goods have long had exchangeable value. Cryptocurrency is the future of online payment, and we say this confidently because millions of cloud services and e-commerce websites already accept Bitcoin and other cryptocurrencies as a payment mode. You can buy a luxury car in Singapore and other countries and real estate properties in El Salvador, United States of America, and many other nations with cryptocurrencies. In India, the government has recently taxed profits from cryptos at 30%, which is an indicator that crypto transactions have a future in the Indian markets. However, these businesses need to integrate a crypto payment gateway to accept Bitcoins or other cryptocurrencies on their websites or app. There are many crypto payment providers, but most of them do not fit the Indian market. This video will provide you with all the information related to crypto payments along with some of the best crypto gateway services in India. I am Manoj Dara and you are watching this special segment on what is cryptocurrency payment gateway. A cryptocurrency payment gateway, like payment processors, gateway, and acquiring bank credit cards, is a payment processor for digital currencies. It allows you to accept cryptocurrency as a mode of payment for your goods and services. It can be integrated on your website, mobile app, or to receive a payment via a link. Every payment you make online is processed through a payment gateway like C Avenue, Razorpay, etc. These payment gateways provide payment modes like credit card, debit cards, and net banking. On the contrary, crypto gateway receive payments from buyers' crypto wallets and deposit it in the seller's crypto wallet. The crypto payment processor also converts and deposits fiat currency directly in the vendor's bank account after deducting of necessary charges. A suitable crypto payment processor could accept all popular cryptocurrencies like Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tether, etc. Payment gateway. Why it is crucial? The Indian online market is catching up with global cryptocurrency market. India is the hub of world services industries with thousands of BPOs, service exporters, and SaaS businesses that need receive payments from abroad. As cryptocurrency is free from exchange rates and highly secure with blockchain technology, the crypto payment gateway is one of the best ways to receive international payments. The payment gateway allows you to accept cryptocurrencies as payment and receive fiat currency in exchange. If you don't understand or trust it, let's get into the details.
flow of the payment, we'll make you understand how this following workflow is carried out in terms of steps. First step, the customer opt to pay its cryptocurrency during a checkout, which is in store or in the web or in the app. Step 2, the crypto gateway calculates the required payment in terms of cryptocurrencies specified by the buyer. Step 3, the buyer pays the amount in crypto through his crypto wallet. Step 4, the blockchain is scanned using the integrated payment gateway where nodes confirm validates the transactions. Step 5, once the transaction is confirmed, the fee is generated. Crypto payment gateway credits the merchant's account with the desired cryptocurrency opted by him. Step 6, the crypto payment processor sends payment to merchants in designated bank account or other payment services like PayPal. Just an example, this is done at the regular intervals or as requested by the merchants. So you must be wondering, what are the advantages if you opt for a payment gateway? No geo barriers. Unlike fiat money, vendors can quickly receive international transfers without regulatory compliance. No bank account. A single digital wallet is used to send and receive cryptocurrency. Vendors don't even need a bank account to receive payments. Low transaction fees. The transaction fees made for payments received made through a payment gateway cryptocurrency is very low when you compare with other modes of payment. No chargebacks. Cryptocurrency payment gateway gives sellers freedom from chargebacks as completed payments can't be reversed under any circumstances. Fifth point, allows you to receive any valid crypto payment securely. Sixth one is reduces volatility risk as most of the gateways provide fixed buying and selling rates. 7th point, it allows users to exchange the crypto for fiat money or one crypto to other easily. So you must be wondering, we have gone through all the advantages. What are the disadvantages associated with it? Because you may be receiving payments from all over the world in different time zones, you must rely on providers' capability to offer uninterrupted services. Second, the payment does go through a third party and become traceable, defeating the primary purpose of cryptocurrency. Third, the transaction fees are considered higher when payment is received through a crypto gateway. Fourth, in case your payment gateway is hacked, any funds in your provider's account will be lost while you wait for them to be transferred. Well, the crypto market has tremendous potential for inclusivity and advantages when compared to bank transfer. So we have all understood how integrating crypto payment gateway in websites and app would help businesses to receive payments from around the globe in real time without any complications. It is high time that Indian merchants adopt these payment options for expansion, growth and profitability. But will they have government support? That only time will tell. Until then, keep watching Crypto TV. This is Manoj Dara signing off. Thank you so much. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या या खास शो मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, क्रिप्टो करन्सी सध्याच्या या दुनियेत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. परंतु सध्या याचा वापर केवळ नफा कमवण्यासाठीच नाही, तर दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठीही केला जातोय. आज आपण क्रिप्टोशी संबंधित अशाच काही इन्स्पायरेशनल आणि इम्पॅक्टफुल गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत, जे वास्तविक जीवनातील घटना आहेत आणि ज्यामुळे लोकांचे जीवन बदलले आहे. याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया मधलं युद्ध. या युद्धामध्ये एक 20 वर्षांचा युक्रेनियन रेफ्युजी, ज्याला रशियन आक्रमण सुरू असताना आपला देश सोडावा लागला, त्यावेळी त्याच्याकडे फक्त $2000 बिटकॉइन्स होते आणि त्याला या युद्धामुळे त्याच्या पेनड्राईव्ह आणि कोल्ड वॉलेट मध्ये स्टोअर असणारी क्रिप्टोच शेवटी त्याच्यासाठी आशेचं किरण ठरली. असंच एक दुसरं उदाहरण आहे अफगाणिस्तानमध्ये राहणारी एक टेक कंपनीची सीईओ रोया मेहबूबचं. मागील वर्षी तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर रोयाला अफगाणिस्तान सोडण्यापलीकडे काहीच पर्याय नव्हता आणि तेही अशा वेळेस जेव्हा रोयाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अफगाणी महिलांना बाहेर काम करण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यांना त्यांच्या बँक अकाउंट्सला सुद्धा ऍक्सेस करण्यासाठी काही बंधनं लादली गेली होती.
अशामध्ये अशा कठीण परिस्थितीमध्ये या अफगाणी महिलांचा आधार बनला क्रिप्टो. रोया मेहबूबने आपल्या अफगाणी एम्प्लॉईजला बिटकॉइन मध्ये त्यांचा पगार देऊन त्यांची मदत केली. मित्रांनो, क्रिप्टोचे महत्त्व लोकांना तेव्हा कळलं जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये तुफान युद्ध सुरू झालं. जेव्हा चारही बाजूला युद्धाचे वातावरण होतं. स्टॉक एक्सचेंज, बँक्स पूर्णपणे बंद होते. एटीएम मशीनची अक्षरशः तोडफोड झाली होती. लोकल करन्सीची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट डाऊन झाली होती. तेव्हा युक्रेनच्या मदतीला जगभरातून लोक धावून आली आणि अखेरीस क्रिप्टोमध्ये आर्थिक मदत म्हणजेच डोनेशन्स देण्यात आले. युक्रेनचे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे डेप्युटी मिनिस्टर मिस्टर अलेक्स बॉनियाकॉव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार युक्रेनला आतापर्यंत $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन मिळाले आहेत, ज्याचा उपयोग ते बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाईट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाय आणि हेल्थकेअरसाठी करतायत. मित्रांनो, युक्रेनियन सरकार सध्या बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट आणि डोज कॉइन मध्ये क्रिप्टो डोनेशन ऍक्सेप्ट करते आहे. तर दुसरीकडे काही नॉन प्रॉफिट्स आणि फिलॅन्थ्रॉपिक ऑर्गनायझेशन जसे कमबॅक अलाइव्ह, युक्रेन डाव, एंडॉवमेंट आणि क्यू इंडिपेंडन्स सुद्धा क्रिप्टो करन्सी डोनेशन्सला डायरेक्टली ऍक्सेप्ट करतात. मित्रांनो, यात काही दुमत नाहीये की काळानुसार क्रिप्टो करन्सीमध्ये डोनेशनची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढताना पाहायला मिळते. मित्रांनो, 2020च्या तुलनेत 2021 मध्ये डिजिटल ऍसेट डोनेशन्स मध्ये 583% वृद्धी पाहायला मिळाली होती. लोक क्रिप्टो डोनेशनचा उपयोग युद्धग्रस्त देशांमध्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीडित लोकांच्या मदतीसोबत पर्यावरण संरक्षण, कोरोना पॅन्डेमिक सारख्या कठीण प्रसंगामध्ये वंचित लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी करते. जर पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात म्हटलं तर पृथ्वीच्या 6% पृष्ठभागाला कव्हर करणाऱ्या ब्राझिलियन अमेझॉनच्या जंगलाला डिफॉरेस्टेशन आणि फॉरेस्ट फायर पासून वाचवण्यासाठी 1987 मध्ये स्थापित केलेला रेन फॉरेस्ट फाउंडेशनने क्रिप्टो कम्युनिटीच्या मदतीमुळे $100 मिलियन क्रिप्टो डोनेशन अक्वायर केले आहे, ज्याचा उपयोग वातावरणाला प्रोटेक्ट करण्यासाठी केला जाणार आहे. दुसरीकडे सेव्ह द चिल्ड्रन हे जगातील प्रथम आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आहे, ज्याने फिलिपाईन्समध्ये टायफून हायानमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर 2013 पासून बिटकॉइनला डोनेशनच्या स्वरूपात स्वीकार करण्यास सुरुवात केली होती. यासोबत मागील वर्षी या ऑर्गनायझेशनने #HODLHOPE कॅम्पेनच्या माध्यमातून $5 मिलियन पेक्षा जास्त डोनेशन स्वीकारले आहेत, ज्याचा उपयोग युक्रेनच्या युद्धग्रस्त भागातील मुलांच्या मदतीसाठी करण्यात येतोय. भारतात जर म्हटलं तर मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इथेरियमचे को फाउंडर विटालिक बुटेरिन यांनी $1.5 बिलियन क्रिप्टो करन्सीज बऱ्याच एनजीओला डोनेट केली, ज्यामध्ये कोविड-19 रिलीफ फंडच्या स्वरूपात भारताला देखील $1 बिलियन डोनेशन मिळाले. पण मित्रांनो, शेवटी जिथे माया म्हणजेच क्रिप्टो आहे तिथे माया जाल नसणं असे होऊ शकणार नाही. अलीकडे अशा बऱ्याच घटना समोर आल्या जिथे स्कॅमर्सने फेक क्रिप्टो डोनेशन वेबसाइट्स आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या माध्यमातून युक्रेनच्या नावावर लोकांना अक्षरशः लुटलंय. एवढंच नाही तर पॅन्डेमिक दरम्यान सुद्धा डार्क वेबवर असे बरेच फेक कोविड-19 चॅरिटीजने सुद्धा $मिलियन घोटाळा केला होता. म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला कोणत्याही चॅरिटी किंवा एनजीओला क्रिप्टो डोनेट करायचं असेल तर त्या एनजीओ आणि ऑर्गनायझेशन बद्दलची संपूर्ण माहिती थोरोली चेक जरूर करून घ्या. अमेरिकेसह बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोमध्ये डोनेशन्स दिल्यावर डोनर्सला टॅक्स इन्सेंटिव्ह सुद्धा मिळतात. पण अनफॉर्च्युनेटली भारतात क्रिप्टो डोनेशन्सवर सध्या टॅक्स लावला जातोय. लेट्स होप भविष्यात भारतात फियाट करन्सी सारखंच क्रिप्टो डोनेशन्स मध्ये सुद्धा टॅक्स इन्सेंटिव्ह मिळेल, की जेणेकरून जास्तीत जास्त क्रिप्टो होल्डर्स हे क्रिप्टो डोनेशनच्या मार्फत गरजूंना मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे घेऊ शकतील. मित्रांनो, मला आशा आहे की आमची खास स्टोरी आपल्याला नक्कीच आवडली असणार. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला तुम्ही नक्कीच लाईक करा व शेअर करा आणि हो, कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. ये पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? असल में ये पेंटिंग्स 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया।
ओके यस यस यस। ओह हाय, वो क्या है ना, मैं जरा गेमिंग में बिजी हो गई थी। क्या गेम है यार, वाओ, आई एम जस्ट ब्लोन अवे। Amazing graphics, attractive in-game features and ample opportunities to earn. Yes, खेलते खेलते कमाओ, और क्या चाहिए लाइफ में। अरे मैं गेमिंग की यूनिवर्स यानी मेटावर्स की बात कर रही हूँ, जिसका बज़ आजकल हर तरफ है। और हो भी क्यों ना, जो रेवेन्यू इन दिनों मेटावर्स क्रिएट कर रहा है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। एक तो गेमिंग का क्रेज और उस पर NFT की सुपर हिट कलेक्शन का रिकॉर्ड। ये एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसे हर कोई आजमाना चाहता है। नो वंडर 2021 में NFT गेमिंग ने $5.17 बिलियन जनरेट किए थे, यानी 1.75 ट्रिलियन रुपीस। वाओ, इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में NFT गेमिंग ने ओवर $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। और ये तो महज साल की शुरुआत है, आगे आने वाले तमाम क्वार्टर्स की रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, ये बात तो तय है। यानी अब बात अरबों से खरबों तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप सोच रहे थे कि पेंट ब्रश उठाकर पीपल की तरह पेंटिंग बनाकर मिलियंस कमाएंगे, देन थिंक अगेन, बिकॉज़ NFT गेमिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ कई ज्यादा कमाने के चांसेस काफी ब्राइट है। ब्लॉकचेन गेमिंग ना सिर्फ तेजी से बढ़ रही है बल्कि NFT स्पेस पर राज भी कर रही है। यकीन नहीं होता? अरे मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, पूरी रिसर्च करके आई हूँ। आई विल टॉक इन नंबर्स। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक NFT की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 बिलियन से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि जितनी रियल जमीन नहीं बिक रही, उससे कहीं ज्यादा गेमिंग वर्ल्ड में वर्चुअल लैंड बिक रहा है। सोचिए, हम रियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, फिर लोन लेते हैं, और लोग वर्चुअल लैंड ले रहे हैं, वो भी फुल डाउन पेमेंट पर। मेटा मेट्रिक सॉल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वर्चुअल लैंड की सेल $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा जंप आया है। हांगकांग बेस्ड कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने जनवरी 2022 में करीब $5 बिलियन रेज किए हैं। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? यही नहीं, क्रिप्टोकिटीज डेवलपर डैपल लैब्स ने अपने NBA टॉप शॉट के प्रोजेक्ट के साथ अप्रैल 2022 में करीब $305 मिलियन की सेल की। वहीं पोकेमॉन से इंस्पायर्ड NFT बैटलिंग गेमिंग एक्सी इन्फिनिटी ने फरवरी 2022 में ओवर $4 बिलियन के साथ हाईएस्ट NFT सेल्स वॉल्यूम का रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है ये फिगर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेमिंग NFT इज द फ्यूचर। आई मीन, एंटरटेनमेंट और अर्निंग का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर पेरेंट्स ब्लॉकचेन पर गेमिंग खेलने पर डांटे तो उन्हें जरा ये सक्सेस नंबर्स दिखा देना। आई एम श्योर फिर वो कहेंगे, अरे अरे खेलो खेलो, मन लगाकर खेलो, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बट बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर। NFT और ब्लॉकचेन गेमिंग क्रिप्टो वर्ल्ड का ही पार्ट है, जहां पर अक्सर बना रहता है डिजिटल लुटेरो यानी हैकर्स का खतरा। बात करें गेमिंग जॉइंट एक्सी इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म की, तो एट द एंड ऑफ मार्च 2022 ऑलमोस्ट क्लोज टू अप्रैल फूल डे, कुछ हैकर्स ने रॉनिन ब्रिज की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सी इन्फिनिटी से $625 मिलियन चुरा लिए, यानी करीब 4,750 करोड़ रुपीस की चोरी। अब वो बात अलग है कि एक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर स्काई मेविस और उनके बाइनेंस जैसे सपोर्टर्स की जेबें और उसमें रखी दौलत कुएं से भी गहरी है, इसीलिए उन्होंने गेमर्स की चोरी हुए पैसे रीइंबर्स करने का वादा किया है। So my advice is, before you start your blockchain and NFT gaming journey on any platform, make sure कि आप उस प्लेटफॉर्म का व्हाइट पेपर पढ़ें, पता लगाएं कि उसके डेवलपर्स और सपोर्टर्स कौन हैं। क्या उनके व्हाइट पेपर में इन द इवेंट ऑफ हैक आपके हार्ड अर्न्ड कैश को रीइंबर्स करने का क्लॉज है। ऑल्सो मेक श्योर आप नए सिंगल या लिमिटेड गेम्स वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, क्योंकि यू नेवर नो ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे या नहीं। बेहतर होगा आप रोबस्ट इकोसिस्टम वाले बिग प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें, थोड़ा धन कमाएं, फिर चाहे तो अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक यू कैन डैबल इन न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। So all the best, keep playing, keep earning and keep watching Crypto TV. Till then, this is Ruchi Sharma signing off. Have a great day.
3D, 4D और यहाँ तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। हाय, क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथिरियम बद्दल जाणून घेऊया। इथिरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथिरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच। इथिरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे। गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत। इथिरियम हे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो। इथिरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे। हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते। हे ॲप्लिकेशन इथिरियम नेटवर्कवर चालवता येतात। इथिरियम आर्किटेक्चरचे दोन पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी आणि इथिरियम ब्लॉकचेन। इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटरीन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते। तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला। ब्युटरीनला गणितात रस आहे। त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते। इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाराशिवाय। हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे, जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात। इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत। वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच। उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो। इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात। इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते। त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात, कारण ते एग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात। स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो। क्रिप्टोकरन्सी बद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी। नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप कसालकर। आज मी तुम्हाला क्रिप्टोमध्ये झालेल्या मोठ्या स्कॅम बद्दल सांगणार आहे। अहो, टेन्शन घेऊ नका, मस्करी केली मी। मित्रांनो, नेहमी मी तुम्हाला क्रिप्टोमध्ये होणाऱ्या स्कॅम्स आणि क्राइम्स बद्दल सांगत असतो, पण आज आपण जरा वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत। ते म्हणजे नॉन फंजिबल टोकन म्हणजेच NFT। याचं दुसरं नाव न्यू फास्ट चेंजिंग ट्रेंड सुद्धा असू शकतं। क्रिप्टोच्या या दुनियेत दररोज नवीन नवीन ट्रेंड्स आणि अपडेट्स येत असतात। त्यामध्ये आज आपण बोलणार आहोत NFT लोन्स आणि NFT रेंटिंग विषयी, आणि जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे NFT बाईंग करणं आता फक्त सेलिब्रिटीज आणि श्रीमंत लोकांचे शौक नसून आता NFTच्या माध्यमातून तुम्ही आणि मी ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह इन्कम सोबत लोन सुद्धा घेऊ शकतो। आश्चर्य वाटत असेल ना? ही माहिती जेव्हा मी माझ्या मित्रांना सांगितली तेव्हा ती लिटरली सुपर एक्साइट झाले। या अगोदर बहुतेक लोकांना समजत नव्हतं की इमिनेमने एका एपच्या डिजिटल पेंटिंगसाठी $500,000 खर्च केलाय।
तसेच एकाने तर चक्क कॉलेजच्या एका मुलाच्या सेल्फीचे कलेक्शन $1 मिलियन मध्ये विकत घेतले आहे. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अशा एनएफटीला स्क्रीन ग्रॅब करून फ्री मध्ये सुद्धा वापर केला जाऊ शकतो, मग याला एवढे पैसे का बरं द्यायचे? तर मग मी त्यांना सांगायचो की ऍक्च्युअल एनएफटी विकत घेणं आणि एनएफटीचे स्क्रीन ग्रॅब करणं यामध्ये तेवढाच फरक आहे जेवढा बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्याबाहेर फोटो काढण्यामध्ये आणि ऍक्च्युअली त्यांच्या बंगल्यात जाऊन त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यामध्ये. असो, आता एनएफटी लेंडिंग आणि बॉरोइंग बद्दल म्हटलं तर हे डिसेंट्रलाइज फायनान्सचे एक रिव्हॉल्युशनरी कन्सेप्ट आहे. ज्याप्रमाणे आपण गोल्ड लोन घेण्यासाठी आपल्या गोल्ड ज्वेल्सला गहाण ठेवून त्यावेळी असणाऱ्या गोल्डच्या किमतीनुसार लेंडर कडून गोल्ड लोन घेत असतो, अगदी त्याचप्रमाणे आर्केड सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर आपण आपल्या एनएफटीला गहाण ठेवून लोन घेऊ शकतो. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे प्रत्येक चमकणारी वस्तू ही सोनं नसतं, त्याप्रमाणे प्रत्येक एनएफटीची किंमत ही एकसारखी नसते. जर तुमच्याकडे BAYC सारखी ब्ल्यू चिप एनएफटीज असेल तर साहजिकच तुम्हाला लोन हे तात्काळ आणि मोठ्या स्वरूपात मिळेल. आणि जर का ती एनएफटी हॉट आणि प्रसिद्ध नसेल तर काळजी करू नका, प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. मी तुम्हाला एनएफटी लेंडिंग आणि बॉरोइंग प्लॅटफॉर्मची काही नावे सजेस्ट करतो. यांना तुम्ही एक्सप्लोर करा आणि जाणून घ्या की तुमच्या एनएफटीच्या अगेन्स्ट या प्लॅटफॉर्मद्वारे तुम्हाला किती अमाऊंट मिळेल, त्याचं इंटरेस्ट रेट काय असेल आणि किती वेळेसाठी तुम्हाला हे लोन प्रोव्हाइड केलं जाईल. तर मित्रांनो, एनएफटी लेंडिंग आणि बॉरोइंग प्लॅटफॉर्मचे नावं आहेत NFTFi, आर्केड, Nexio.io आणि ड्रॉप्स. हे सर्व प्लॅटफॉर्म तुमच्या एनएफटीच्या व्हॅल्यूच्या अगेन्स्ट तुम्हाला 80% लोन देते. आणि हो, यामधील प्रत्येक प्लॅटफॉर्मचा इंटरेस्ट रेट हा वेगवेगळा आहे आणि ऑफकोर्स तेही एनएफटीजवर डिपेंड आहे. उदाहरणार्थ, आर्केडचा इंटरेस्ट रेट 5% ते 60% एवढा आहे, तर दुसरीकडे नेक्झिओ आपल्या एनएफटीच्या अगेन्स्ट 12% ते 15% इंटरेस्ट चार्ज करतं. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे घर किंवा गोल्डच्या अगेन्स्ट घेतलेले लोन हे डिफॉल्ट झाल्यावर आपले असेट हे सीज केलं जातं, ठीक त्याचप्रमाणे जर का तुम्ही वेळेत लोनचे रिपेमेंट केलं नाही तर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट मार्फत आपल्या एनएफटीला प्लॅटफॉर्म्स मार्फत सीज करून इनकॅश केलं जातं. ही तर झाली एनएफटी लोनची गोष्ट. पण तुम्हाला माहित आहे का, आपण आपल्या एनएफटीला रेंटवर सुद्धा घेऊ शकतो आणि कोणत्या एनएफटीला शॉर्ट पिरियडसाठी रेंटवर सुद्धा देऊ शकतो. मित्रांनो, आता तुम्ही विचार करत असाल एनएफटी आणि रेंटिंग कसं शक्य आहे. चला तर आपण एक उदाहरण बघूयात. जर आपल्याला मुंबई ते दिल्ली 2 तासात पोहोचायचं असेल तर आपण 5 ते 7 हजारची फ्लाईटची तिकीट घेऊन सहज पोहोचतो. यामध्ये डायरेक्ट करोडो रुपयांचं विमान घ्यायची गरज असते का? नाही ना. अगदी त्याचप्रमाणे संपूर्ण एनएफटीला एकत्रितपणे घ्यायची गरज नसते. काही एनएफटीज खास करून एक्झी इन्फिनिटी सारखा प्ले टू अर्न गेम मध्ये मिंट केली गेलेली एनएफटीला आपण काही वेळेसाठी रेंटवर घेऊन पर्टिक्युलर स्टेज किंवा गेमिंग चॅलेंज क्रॉस करून पुन्हा त्याच्या ओनर्सला रिटर्न देऊन ही पुढे जाता येते. आतापर्यंत गेमिंग इकोसिस्टम मध्ये मिंट केली गेलेली एनएफटीची युटिलिटी ही गेमिंगच्या बाहेर ऑलमोस्ट 0 होती. पण आता युजर्स हे गेम मध्ये मिंट केली गेलेली एनएफटी सारखे कोणते वेपन किंवा आपल्या अवतारच्या डिजिटल स्किनला IQ प्रोटोकॉल सारखे प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट करू शकतात. एवढंच नाही तर नॉर्मल एनएफटीला सुद्धा आपण IQ प्रोटोकॉलवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या मार्फत रेंटवर घेऊ शकतो अथवा देऊही शकतो. याचे 2 फायदे आहेत. एक तर एनएफटी लेंडरला आपल्या एनएफटीच्या मार्फत पॅसिव्ह इन्कम कमवण्याची संधी मिळते, तर दुसरं एनएफटी बॉरोवरला लाखो डॉलर्सची महाग BAYC सारख्या एनएफटीला स्वस्त दरात वापरून स्वतःला शाईन करण्याची संधी मिळते. तर मित्रांनो, पुन्हा रेंटिंग आणि बॉरोइंगचे ट्रान्झॅक्शन्स हे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या मार्फत एक्झिक्यूट केले जातात. उदाहरणार्थ, आपण इमिनेमची एनएफटी ही $200 साठी 2 दिवसांसाठी बॉरो केली आहे, तर 2 दिवसांच्या शेवटी एमिनेमची ती एनएफटी आणि त्याचे रेंट दोन्हीही ऑटोमॅटिकली इमिनेमच्या अकाउंटमध्ये परत केले जातात. मग मित्रांनो, कसा वाटला कन्सेप्ट? इंटरेस्टिंग ना? अशाच प्रकारच्या रेंटिंग आणि लोन्स सारख्या एनएफटी स्पेसमध्ये अजून नवीन आणि ट्रेंडिंग अपडेटची माहिती घेऊन मी पुन्हा आपल्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही.
Hello and welcome to Crypto Masters, where the masters of the game are going to give us a guided tour of the entire crypto ecosystem. I'm Vinita Chatterjee, and today we are extremely excited to have Mr. Abhijit Hajra with us, who is the founder of Touchstone Tire Private Limited, a technology brand, and he is a thought leader, a technocrat, a mentor, and a motivational speaker. Hello, sir. Welcome to Crypto Masters. Thank you, Vinita. I am happy to be in the Crypto Master series and happy to be in the Crypto TV. This is first of its kind in the world, a dedicated crypto channel for the viewers. Thank you very much. Today, we will be discussing a very, very important element of today's life, which is cybersecurity. As we know, cybersecurity is actually a fundamental concept that is ruling the roost, because in today's economy, everything that we do requires cybersecurity. Because of hacking and cyber attacks, cybersecurity has become an essential part of our lives. So, sir, would you kindly tell us how blockchain technology can impact cybersecurity? When we talk about cybersecurity, is basically securing the virtual world. In virtual world, we do a lot of transactions. We do a lot of information exchange. So be it information exchange through email or other app-based communication channel like WhatsApps and messages, or being it a financial transaction or being it a social media post, there are element of risks where the external element can enter into your channel and tamper your data. That can be directly hacking your data, tampering your data, or posting unnecessary hazards by getting your data theft. True. That can create a direct financial loss, or that can hamper your social reputation, that can lead to your confidential information stealing and correlated consequences. So those channels should be secure in a cyber secure environment. So the security of data can be done in two ways. One is that when the data is in rest, we have to secure the data, and when the data is in move, we need to also secure the data. Right. So while doing so, we need to have hardware element in it. So the first, when we try to secure the cyber environment, we came across different models of cybersecurity by securing the network. Okay. So the network is the gateway by which the data is getting entered into the system or getting into a particular environment. Right. So this network needs to be secured. So that's why cybersecurity is obviously one of the major element of cybersecurity is network security. True. So this is one. Then there are antiviruses. Obviously, network security firewall is coming as a part of network security. There are anti-malware, antiviruses, etc., which will eliminate the threat from the malware and virus that is injected in your systems through your network. So that is basically the element of hardware security, network security, and then security through different protecting your data from the viruses through antivirus, etc. Second is that how to secure the data in the move and the data resided in the system. Right. So you have to secure the data by using a secure data vault when the data will be in rest. Okay. So be it you are using an enterprise server, so the secure vault will be created in your enterprise server to secure a data. Otherwise, when the data today, most of the data residing in clouds. Right. So whatever the clouds may be, you have to secure your data in that particular cloud. So you have to create a digital vault to secure your data. That is securing data in rest. But when the data is moving in a channel, like in www World Wide Web, the data is moving from one elements to another elements. Right. So when we do our financial transactions, the data is moving from the user to the banker and the third-party trusted channel and the other beneficiaries and so on and so forth. True. So in this communication channel, there is a chance of data getting breached.
If it is a financial data, there is a direct financial loss. If it is a communication related, information related data, there is a confidentiality damage. Yes, so yes. the data on move has to be secured in the communication channel. So there are number of methods and modes to secure those data using the encryption technology, including different frameworks, models. So one of those models which is an emerging technology is a blockchain, where through a trusted ledger, trusted network, our data can be secured when the data is being communicated between the actors or between the participants in the system. So how can blockchain technology give a positive impact? If you could elaborate on this fact a little bit. Yeah. So when we are talking about cyber security, so we are talking about information communication between several elements and several participants in the node. When we are doing a financial transaction, we are in a simple financial transaction, one is the sender, one element is the sender, or one human being is the sender, another human being is the receiver of that financial product. Right. Yeah. So that financial product, but this financial product is not directly going from the sender to receiver. There is a trusted third-party channel that is the bank. So when I am sending my money to you, suppose, so I am communicating with my bank. So this is basically a trusted third party for me. So the bank is sending money on behalf of me by my request and authentication that money is being sent from my bank to your bank. Right. Yeah. So ultimately your bank account will receive the data that you are intend to receive, and I approve that receipt. So I am sending that money to you in your bank account. Right. So by doing so, I am communicating certain information to my bank, and in terms of that, my bank is communicating certain information to your bank. Right. So the money, after that, the money is being sent based on the certain approvals. Right. So that in that channel, if there is a hacking, obviously, so my money is not safe. Exactly. Or it can be your money in your bank can also be under threat. Yes. So this channel has to be secured. So if we put this entire transaction in a blockchain frame, then obviously blockchain, why the nodes of the blockchain, nodes means me, you, all both the banking entities will be put in a blockchain framework. Okay. And when I'm doing any transactions from one point to another point, one element to another element, one person to another person, so they will be a part of this blockchain node, and their information is secured through a cryptographic, cyber secure cryptographic model or encryption technology. Okay. Your data or your transaction, your money is being, information about your money and bank account, etc., is getting secured by that encryption, and it will be decrypted by only by the authenticated receiver. And because of this blockchain framework, that cannot be, information cannot be compromised, and other elements are also having the encrypted information. So it cannot be compromised, it cannot be stolen also, because I am having the replica of this information in my blockchain node. So ultimately, through this blockchain, we can create a secure transaction framework where I can, without knowing you also, I can create a smart contracts, and transaction can happen securely between the two parties as per agreed model. So not only the financial transaction, but the underlying agreement for which the financial transaction is being conducted can also be secure. So that is basically the beauty of blockchain. So basically we can see blockchain technology is creating a web of trust, and people are actually able to transfer their content, their data, their payments, all of that in a very, very secure space. Now coming to the real life use cases of blockchain technology, which are the sectors where you think cybersecurity and blockchain technology can be extremely efficient? Yeah, there are various domains where cybersecurity and blockchain technology can be used. In some domains, it is used heavily because of its utility and the application in that particular domain,
but the other domains are also picking up. So I can name certain domains where cybersecurity and obviously blockchain technology is very much applicable. Yes. So we can name about defense, we Okay. can name about financial sectors, we can obviously we have discussed about another important sector, that is media communication, then agriculture is there, then land and land records, land and revenue department is there, then we can map all the assets in a urban transformation, urban development space. So there is so on and so forth. Lot of tourism. We can basically create a secure network between all the hospitality environment. So there are a lot of element in it. So all the domains, slowly and steadily, they will healthcare. Healthcare is obviously another very important domain and very relevant right now because of the pandemic situations. There also blockchain technology can create a magic. So as we see, so many sectors are going to benefit from the uses of blockchain technology. Where do you see the future of blockchain technology can lead us? Yeah, as I was telling, that blockchain can create a new environment, and web, we are talking about web 2.0. So that web 2.0 or even web 3.0 can be driven by blockchain. We have seen the WWW, World Wide Web concept, the germination and the rise of internet. Right. So rise of internet has given us a lot of benefits and created a transformation. The entire industry has got transformed by the use of internet. Right. So we can, sitting at home, by the use of internet only, the remote workplace is being possible. The use of internet, we can do a cashless transactions. The entire digital currency and transactions are being conducted by the use of internet. Right. So internet has, the data can be exchanged via internet through mails and other communications channels, messaging communication frameworks. So internet has created a havoc and transformative experience in our day-to-day lives. So after internet, when we are talking about a communication channel through blockchain, that is not only a communication channel, only information exchange within a network, that is talking about creating a secure network and also a trusted network. So blockchain is not only security, that is the interesting part of it. Blockchain talks about the trust, wave of trust between two elements, and also the execution of a trust that we basically figured out by a contract. So that contract can be efficiently executed without the help of physical attorneys within the blockchain framework. So that is the important area where tomorrow's most of the legal element will be transformed to blockchain technologies. So that is basically the interesting part of blockchain technologies, and tomorrow there is a possibility that blockchain will create a blockchain/web 3.0 framework in our entire web-based network. In the future, can we see blockchain technology also merging with the new concept of quantum technology? Yeah, let me elaborate a bit. Quantum is a new way of, advanced way of computing power, doing the computation. Computation means in a computer, we compute through a binary component. So we transform the natural language into binary language in a computer, and computer computes through the binary language. So our processor, computing processor, computes through the binary language. So in quantum, the processor will be a quantum processor, where quantum technology will be adopted for using a processing environment. So processing will be done based on the quantum computing technology, and there will be there is between the 0 and 1 there will be a third state. So that third state will create a lot of difference in our computing power, and the computer will be more and more powerful. While the computer will be more and more powerful, there is a threat in cybersecurity. Right. So the cybersecurity models currently we are using, the basic cybersecurity models, will get disrupted, will get broken very easily. So there, through quantum computing, hackers and intruders, they can compromise your system, compromise your network, compromise your data in a larger way. So to combat that, we need technology. We need more powerful cybersecurity to combat those things. So not only here the powerful cybersecurity technology, the
cybersecurity model has to get changed to adopt that. The new cryptographic methods has to come to adopt quantum computing. So that has to be a quantum resistant security. So by doing so, blockchain framework can adopt to that quantum computing environment, and blockchain can provide secure environment for a quantum computing processing technology. When we talk about COVID, so we have talked about a lot of adversities of COVID has brought to us. But one thing that COVID has brought to us, that COVID has made us way ahead on adopting new virtual environment. So COVID has made the digital adoption far more faster. The 20 years that has become digital transformation 20 years ahead, and 20 years adoption has got adopted in last 2 years. So like that, when quantum will come, it will disrupt, it will break the traditional security model. So cyber security needs to adopt itself by adopting technologies like blockchain, and blockchain has to adopt itself more to combat quantum computing environment and providing security and trust to the elements in the network. Thank you so much, sir, for enlightening us with the futuristic concept of quantum technology and the future of blockchain and cybersecurity. Well, viewers, we are extremely elated to find out that the future of our world is in the hands of the emergence, the advent, and the transformation of blockchain technology. Cybersecurity is going to be the next big thing as blockchain technology addresses all the loopholes. And we are extremely excited to find out more developments from the world of technology. So keep watching your favorite series, Crypto Masters, for all this technology-related content and concepts, and keep watching Crypto TV. Thank you very much. आपल्यासोबत कधी असं होतं का? कधी आपल्या पेरेंट्सचे मेडिकल रिपोर्ट्स मिसप्लेस होतात, तर कधी अगदी महत्त्वाची फाईल सुद्धा हरवते. किती चांगलं होईल की जर का आपल्या फॅमिलीचे संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट्स कोणत्या अशा नेटवर्कवर असतील की जिथून आपण कोणतेही त्यांना ॲक्सेस करू शकू. सतत एक्सपांड होणाऱ्या या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आता हे शक्य होणार आहे. Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dara. So investors in Ethereum and its troubled twin stake Ethereum are nervously anticipating a crypto milestone, the merge. That's the name for a major upgrade of the Ethereum's blockchain network upon which many crypto projects are built, aimed at making it leaner, meaner and cleaner. To explain the entire stake Ethereum episode, we have invited Vivek Singh from Crypto University. Vivek, welcome on Crypto TV. Thanks, Manoj. So विवेक, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये स्टेक इथेरियम सबसे पहले है क्या और उसका यूज कभी होने वाला है और क्या कौन से पर्पस के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है, जहां पर इसका एक व्हाट यू कॉल कितने साल पहले इसका जन्म हुआ था स्टेक इथेरियम का, आप ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बताएं. Okay, so stake ether is basically is ether only, but different form of ether, which is staked on beacon chain. So अभी stake ether stake क्यों किया गया है? पहली बात तो बिकॉज इथेरियम मर्ज जो होगा प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक जाएगा. इन दैट केस यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ इथेरियम इन दैट केस बिकॉज इट इज मूविंग टू प्रूफ ऑफ स्टेक. प्रूफ ऑफ स्टेक का मॉडल क्या पूरा स्टेकिंग के ऊपर ही चलता है, वेरी डज नीड टू स्टेक क्रिप्टो करेंसी, दैट इज स्टेक इथर. तो उसका मतलब ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क जो प्रोसेस था उसमें इथेरियम का से सारी एक्टिविटीज लिंक थी, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें स्टेक्ड इथेरियम लिंक्ड है इसमें. करेक्ट. और स्टेकिंग होता क्या है एक्चुअली? सो स्टेकिंग में अगर एफडी की तरह होता है, यू इन्वेस्ट सम मनी इन एफडी, यू गेट सम इंटरेस्ट, राइट? सो सिमिलरली यू स्टेक सम मनी, यू गेट सम इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी.
इसमें क्या क्रिप्टो करेंसी में आपको इंटरेस्ट मिलता तो है। कितने इथेरियम आपको रखने पड़ते हैं और कौन रखता है ये सारे? मिनिमम 32 इथेरियम रखना चाहिए इफ यू वांट टू रन अ वैलिडेटेड नोड फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक। So you're talking about miners. Yeah, miners. Basically, they are miners, but they are called validators in terms of Ethereum, Ethereum 2.0 language. So say for example, if someone deposited 32 Ethereum, और कहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होता है, उसका प्रोसेस कैसा है विवेक? So it's called Beacon Chain, where they have to stake this Ethereum, and it all started about 2 years back. So some people have initially invested in Ethereum. They have staked some Ether, and I know a lot of people, a lot of whales who have invested good amount of Ethereum, like in this stake Ether. And once the merge is happening, like once the merge happens from proof of work to proof of stake, after about 6 months, they will get this interest. So इसका correlation कैसा है? Is it since you mentioned about it, there is a correlation between stake Ethereum and the Ethereum. So is it a stable coin? First of all, आप थोड़ा सा इसको explain करें. See, it is pegged. It is not pegged actually. It is supposed to be pegged 1:1 ratio. So if you look at stake Ether, the price of stake Ether should be exactly same as Ether, because people have assumed that it is Ether. They have spent consuming that it is Ether, not stake Ether. But the market scenario is different right now. Yeah. So basically, since we are talking about a broader concerns in the cryptocurrency market, there was actually a fall because of the larger collapse of the Terra Luna episode. So how this event has impacted the Ethereum ecosystem, if you can just highlight that. Okay. So if you look at Terra Luna market, Terra Luna crashed badly. Because of that, the entire market sentiment became negative. And not only Terra Luna, if you see other investors like 3AC like 3AC Capital, 3 Arrow Capitals, like they have also sold a lot of stake Ether. They were holding a lot of stake Ether which they have sold. Then after that, what happened with Celsius. So after all this market, negative moves in the market, it impacted stake Ether so much that now stake Ether is not equivalent to Ether, which is it is supposed to be equivalent to Ether, but it is lesser than Ether. So जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एक ब्रॉडर कंसर्न एज फार एज द टेरा लूना एपिसोड तो हुआ ही है, और वहां से लेकर सेल्सियस का जो एक बहुत बड़ा एक ब्रॉडर डिफॉल्ट था, जहां पर उन्होंने विड्रॉल्स उनके कस्टमर्स के अब्रप्टली बंद कर दिए थे. जून 14-15 का एक एपिसोड है, और वहां से लेकर वी हैव सीन अ ब्रॉडर स्लम्प इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. एंड देन द 3 Arrow एपिसोड हैपेंड, एंड देन द बैबल फाइनेंस हैपेंड, एंड देन द वॉयजर थिंग हैपेंड, एंड देन वॉल्ट जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो एक इंडिया रिलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ था. तो उसका कोरिलेशन क्या है स्टेक इथेरियम पे? Okay, so if you look at Ethereum, stake Ethereum, it is running in 2 markets right now, Lido and Curve Finance. So Lido, Curve Finance, it is all depending on market sentiments. If people are positive, the price of stake Ether will go up. If people are negative about it, the price will go down. So because it is trading on Lido and Curve Finance, it is depending on market sentiments. So market sentiments क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. Exactly. So इसकी वजह से क्या हो गया? स्टेक ईथर का प्राइस भी नेगेटिव चला गया, मतलब काफी नीचे चला गया compared to what it's supposed to be. All right. तो सिंस जैसे आपने बताया कि सेल्सियस का और 3 Arrow का भी बहुत बड़ा एक एक्सपोजर था इस पे, तो what were they betting upon, since they can go ahead and directly have Ethereum, but are you saying that कि उनके पास, since they are I'm talking about Celsius, since Celsius is a crypto lender, तो क्या आप बता रहे हैं कि उनके पास में Ethereum थे, उन्होंने वो स्टेक किए और फिर वहां पर उनका एक्सपोजर स्टेक Ethereum पर भी हो गया? Yes, actually, these people were the major holders of staked Ethereum. You take example of 3 Arrow Capital, Celsius. These people were holding major amount of Ethereum. सबसे बड़े holders भी हैं वो stake Ethereum के. Yeah, they were having a lot of control because these VCs are getting liquidated. Now they have only the option is that they can sell the stake Ether they have. So that's why when they are selling stake Ether, the price is getting impacted. तो आप बता रहे हैं कि जैसे से फॉर एग्जांपल मार्केट में उनका पोजीशन तो था ही, इथेरियम उन्होंने स्टेक किए, उनके पास स्टेक इथेरियम भी ऑलरेडी उन्होंने उनके पोजीशन पे थे. मार्केट जैसे नीचे आया, रिडेम्पशन प्रेशर के चलते हुए उन्होंने स्टेक इथेरियम बेचा और हेंस डिस्काउंट वाइड हो गया उसमें. करेक्ट. All right. Because lot of sell-offs is happening, तो अब मार्केट में अब जितने भी सेंटीमेंट्स नेगेटिव होंगे और वैल्यू डाउन होगी. So this is the story which we are trying to explain to our viewers कि ये stake Ethereum, although it is not a stable coin, it is something that is related with Ethereum. Correct. और उसका performance क्यों खराब हुआ? बिकॉज वहां पर एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आई थी मार्केट में, और वहां पर उनको रिडेम्पशन प्रेशर्स के चलते हुए स्टेक इथेरियम पर बिकवाली देखने मिली थी. Yeah, right. So
since we are talking about the entire ecosystem, can stake Ethereum holders redeem their stake ETH? We are not talking about